for you. Partner Biko Vajradanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ. Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा. Gallant Advanced TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो. अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ. Driven by Maruti Suzuki. Technology partner Create Today, Enrich Tomorrow, Panasonic. Gold partner Senco Gold and Diamonds. Design of India for you. Partner Biko Vajradanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. ये जो मौजूदा पार्टियां हैं ये अच्छा काम कर ले. मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते, एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते, लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम. अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं. बचपन से मेरे को याद है 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं. केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा. सुन रहे हैं बचपन से, है ना. अगर केरला में इतने अच्छा तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहां से सीख के कर लेना चाहिए था. केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया, समझ नहीं आता. उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते, मेरे को तो समझ ही नहीं. तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है. जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूं. और आप सीखो, वोट लो, शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो. जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने. बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा. आप लो वोट, आपको मैं वोट दिलाने मैं आ रहा हूं, आपको वोट दिलाने काम कर लो. Was chock-a-block, people were sitting on the gangway also, there was no space. And they were asking very friendly and warm questions, and it was going on very well. But somebody asked me a question कि भाई हम तो आपसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं. एक कोई लेडी थी, must be in her 50s or 60s, लेकिन आप लोग से हमें वो warmth नहीं मिलती. और आप तो समझते हैं कि हम तो आपको अच्छा समझते हैं, आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है. तो there was very little room left for me to move away without answering it. So I did. And in the most polite manner possible, कि एक तो मैंने उन्हें बताया कि ये थोड़ा सा आप रिकॉर्ड सेट करेक्ट कर लीजिए. हमारे मुल्क में मेहदी हसन आए थे, वी गेव देम ग्रेट रिसेप्शन, दे वर ग्रेट इवेंट्स, म्यूजिकल इवेंट्स. हम नुसरत आए थे, फैज साहब जब आए थे तो ही वॉज ट्रीटेड लाइक, एंड ड्यूरिंग मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. सारा ये
कहा जाता है, ये परसेप्शन है, स्टार किड है, सब कुछ प्लेटर पर, सब कुछ परस कर मिलता है। ये जीवन की जो आसानी कही जाती है कि स्टार किड्स को मिलती है, वो आपको मिली, वो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत को कम आंका जाता है ये कहकर? अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा गौर करना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैं बदल नहीं सकती कि मेरे माता पिता कौन है। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ मैं अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी और यही रह चुकी है कि मैं अपना अस्तित्व खुद बना सकूं, और ये मैं करना चाहूँगी। लेकिन मैं भाग नहीं सकती, अपने नाम से भाग नहीं सकती और भागना चाहती भी नहीं हूँ। बस ये कोशिश है कि लोगों को मेरा काम अच्छा लगे और लोग इवेंचुअली मुझे एक इंडिविजुअल के नाते भी देखें। Beautiful launch. A Naya India, an unstoppable India, an unmissable India, an India not dependent, an India that inspires. How can we create this Naya India? For this, we need big ideas. That is why ABP Network presents Ideas of India Summit 2023. Because here every idea is a big idea for Naya India. Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vajradanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make cities. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। By Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vajradanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from internal strengths, the challenges that it needs to overcome, even as it plans to take on a bigger role on the global stage. Now, before we begin the sessions, a note of appreciation for our incredible partners and sponsors. Ideas of India is co-presented by Dabur Vedic Tea, co-powered by Dr. Ortho, Gallant Advanced TMT Sariya and Rajesh Masale, driving partner Maruti Suzuki, technology partner Panasonic, gold partner Senco Gold and Diamonds, in partnership with Vico Laboratories, Jungli Rummy, Tata Capital, Go Gas, Clean and Dry, MMRDA and Sidco. Our knowledge partner is Sharda University. Please extend a warm reception to all our partners. Thank you very much for that.
Dosto, our first session today is with a business leader who has helped put Indian IT services on the global map. In fact, many would tie in the rise of India as an IT hub with the success of his own company. While Infosys is known as a global leader in next generation technology services, its founder is known as a visionary entrepreneur who understands that there are still problems that India is grappling with. He's a compassionate leader who is shaping the next generation's mindset to solve for those. Please extend a very warm welcome to Shri N.R. Narayan Murthy, founder and chairman emeritus, Infosys. Kindly join us on stage, sir. I would also request senior journalist Shankar Iyer to please facilitate this conversation. Good morning, everyone. Good morning. Morning. So, a large part of India, which was not born when the software revolution started, should know that the branding that India has today of a tech superpower was created by a team of committed technology entrepreneurs, and Mr. Narayan Murthy was one of the first fountainheads of that revolution and that idea that we have today, that India, when you see Indians at the top of global corporations, when you see India in the list of tech powers, a large part of that credit goes to people like Mr. Narayan Murthy. So, sir, that gives us a segue to... Sure. So I wrote in my book saying that what tech did for India, the software companies, is what Sony and Panasonic did for Japan in terms of the branding image. In the new India that we see around us, is India getting its branding right? How do you see, and what is your idea of the new India? Well, we all want India to be known as a country that signified the age-old Sanskrit saying that Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the whole world is one family. And second, Sarve Jana Sukhino Bhavantu, that is, let everybody on this planet be happy. I think India's leadership has to be based on these two extraordinary principles that were enunciated probably 3,000 or 4,000 years ago in Sanskrit. Now, in order to do that, we have to conduct ourselves as people with wisdom, as people with compassion, as people who have done well in seizing opportunities in science and technology, in arts and culture, and as people who welcome visitors from all over the world. I would like India to be such a country. Let me stop here. Yeah. Thank you. That's like the most succinct vision statement that you could get for the idea of New India. One of the aspects that the world is talking about, we're looking at, is India's entrepreneurial spirit and also the gung-ho spirit of the youngsters. Yeah. And so typically in the media world,
that Gango spirit is represented by the idea of Startup India, the idea of startups, unicorns, soonicorns. I mean, Bangalore is coming up with new phraseology for those. So how do you see that evolving, the entire? Do you see the startups addressing the needs of India? Do you see the startups as a promising pathway for India's, because now India is being talked about as a $5 trillion economy and a $10 trillion economy. And typically when you started Infosys, it was created to solve problems in India and the rest of the world that arose out of adoption of technology. So are the startups providing those kind of solutions for addressing the issues of India? Well, when we founded Infosys in 1981, the primary objective for us was to leverage the market opportunity in the developed world, particularly in the United States, to create good quality jobs in India. Because at that time, in 1981, when we founded Infosys, there were a lot of engineers, even from IITs, who were without jobs. So that was our objective at that time. Now, today, the entrepreneurs have gone way past that idea. They have realized that India has need for better education. Therefore, you have companies like Baiju trying to bring the power of online education to the remote parts of India. You have healthcare. You have lots of startups in the area of providing good quality health, online services. Then you have transportation, and you have companies like Ola and others, which have done a good job in providing urban transportation. In other words, today the entrepreneurs are a lot more sophisticated than we were. And they are trying to solve some of the basic needs of our country. That is, better transportation, better infrastructure, better telecommunication, better mobile communication, better data communication, better access to restaurants, online access to restaurants. In other words, you name it, they're doing. However, is this sufficient? I think most of these ideas have been borrowed from the US. There's nothing wrong with that. I'm not saying anything wrong. However, the time has come for our country to become a nation that will introduce some new applications that have not happened anywhere else in the world. That's when we can claim that innovation and invention are alive and kicking in this country, that our entrepreneurs are at the leading edge, and they are pushing that leading edge. Therefore, my hope for the country, my desire for our entrepreneurs is that they should start using ideas that have not been thought of anywhere else in the world, particularly in the developed world, and then say, these are our problems.
And therefore, we will be the first one in the world to start thinking of our problems. That's my desire. That's very interesting, because what you're sort of in your larger mentor role, you're saying that we need to find path-breaking ideas for India to forge ahead. Yeah. Would you say that the idea of the world's largest biometric identity system, which your colleague and protege Nandan Nilekani spearheaded, would you say UPI, which is the payments gateway that we have got, would they fall in that category? Well, I think in some sense, yes. There is no doubt about it. Definitely Aadhaar and UPI, Paytm based on UPI or whatever, Bhim or whatever it is. They're all definitely great ideas. But remember one thing. The components of all these things, or even the whole idea of an identity, has already been implemented elsewhere. But nowhere has it been implemented on this scale. I think that is the beauty of Aadhaar, for which we are all very grateful. But, for example, this online payment stuff, mobile payment system was first tried in Kenya, you know very well. It was very successful in Kenya. And we have modified it and adopted it, for which we are all very grateful. There is nothing wrong with that. But I do want people to say that these are the unique problems of India, and we will tackle them, and in the process, we'll create jobs and we will create wealth for investors. That's what I meant as our aspirational target. So in your role as somebody who funds startups, who sort of guides a lot of entrepreneurs, in your conversations, have you come across anybody in sort of looking at this? Or if you were to sort of advise them onto areas that they could look at, or functions that they could look at, can you share some thoughts on if you're looking at something that could be potentially a game changer, potentially a pathfinder? Well, we have a few of those ideas espoused by entrepreneurs. We have worked with them. Let me just talk about one of them. One of the entrepreneurs, who is a PhD from MIT, he is working on an inexpensive diagnosis system for several diseases. And he is looking at the Indian earning power. He is looking at that costing a small fraction of that. I don't want to go further into this because I don't want to, there may be some classified issues with, which he would obviously not want me to discuss. But sounds very exciting. I mean, the idea of a diagnosis system, it sounds fantastic, considering our requirements for healthcare, for population scale healthcare. Now, coming to the context of the global economy, the uncertainty, there's conversations about funds not taking up the second round or third round. Do you think that availability of capital is a challenge for the young entrepreneurs, for the startups? I personally feel that it is not. I am quite used to the situation where
there is extreme competition for obtaining funding in an environment of intense competition. Now, a couple of years ago, there was abundant funding. There were all kinds of investors coming to India. They had made money elsewhere easily or whatever it is, and they wanted to invest huge sums in India. And they did that. Now, today, that funding has dried up. Therefore, our entrepreneurs who are very bright, very smart, will have to realize that the threshold has been raised. Threshold for obtaining funding has been raised. So now they will have to establish their differentiation vis-a-vis other existing ideas in the marketplace even higher. Once that differentiation is high enough, the venture capitalists will be interested in looking at those ideas. And I have no doubt at all that an idea which has true value to India, which has market in India, and which is handled by entrepreneurs who have a desire to control their costs so that as early as possible, they will take the company to a positive cash flow situation. I think they will definitely, there are enough VCs ready to fund them. Do you see a role for the government? I mean, in the US, the GPS and internet and all came out of the DARPA program. Do you see, and Mariana Mazzucato, the economist, has written a lot about this, do you see a role for the state, for the government to sort of step in? Is that advisable, or that could create moral hazards? Well, let's remember that Aadhaar has given birth to a lot of applications in financial inclusion, in finance, in other areas of finance. So I think we already have a good example of how a foundation laid by the government, and then the APIs have been clearly and transparently provided, and there is a market, there is a field where the government operates as an impartial referee. I think the entrepreneurs will fight it out and succeed. I think, as I said, Aadhaar is a good example. UPI, which NPCI has introduced, that's also a very good example. So they're all possible. However, my general advice to entrepreneurs is that no matter where they are operating in the world, whether it's India, US, Japan, it is better that they focus on the market first rather than taking government as the primary market. There's a very important reason, and that is the purpose of the government is to use tax money efficiently for public goods. And when you are thinking of public goods, when you are looking at a public governance system in any country, there is a huge focus on reducing the cost. There is a huge focus on
providing the service to a lot of people. Third, because the primary focus of the government is on established public goods services or public goods, the time taken for a new idea is somewhat long. That happens in India, it happens in US, it happens everywhere. It's nothing to do with a specific country. So therefore, my suggestion to entrepreneurs is to focus on the market outside the government, for them to test their ideas, and then they will grow very fast. Because otherwise, if these youngsters are caught up in the whirlpool of decision making in the public governance system, and they get frustrated because of the natural delays in the system, then they may lose key employees, they may not be able to satisfy the investors. So my request is, yes, government is a very important contributor. However, government has bigger targets, bigger purposes than just your idea. So first focus on the market, and when it is succeeded, then you can start providing it to the government, because then you can afford to put up with the delays and things like that. That's what I would say. So for these startups, for entrepreneurs, for industry to operate, the political economy has to have invested some in skills and training and availability of manpower or skilled people. You pioneered the idea of on-campus training and stuff. Yeah. So I wanted to ask you a question which is really in two parts. One part is, do you see the landscape sufficiently enabling this kind of entrepreneurship? Do we have people who are properly trained, educated? Because a lot of times you hear on industry saying that the employability of some of the youngsters is not good. The second part refers to a sort of cult that is coming, which you spoke about a couple of days back, which is the idea of work from home 3 days a week, the idea of what's now known in Bangalore and elsewhere, in Pune especially, of the moonlighting phenomena. So just two parts, quick thoughts on that. Well, that the two questions you asked, first one is the relevance of training programs, education programs mounted by the corporations within their own premises. And also, sir, general, is the education system delivering or producing the kind of educated people? This is one major factor. Absolutely. I would say from my own experience of having worked with probably 150,000 employees, that there is probably top 10 to 20% of the students who are smart, who are bright, who are as good as anywhere else, and they fit in, they have the employability, they fit in very quickly and very easily. They are not the problem. But the majority of the students coming out of the Indian education system, they are exam oriented. They have been brought up
on the staple diet of coaching classes. They do not study throughout the year. They wake up when the examination is coming and they solve some problems and pass the exam and they forget it. I mean, that has been my experience. Look, I may be wrong, I don't know. Others, it may not be there. But whatever I have seen with a majority of the people at Infosys, that's the thing. So these youngsters need lot of internal coaching before they become employed. That's why we run a 24-week training program in the areas that they were supposed to have learned in their colleges. Now the second issue you spoke about is the moonlighting, work from home, etc. I have a different take on that, and that is, for the first time in the history of this country, in the last 300 years, India has received some respect for primarily its software services, but in a few other areas too. And this is the time for us to consolidate on whatever respect we have received and make sure that we grow that respect. And there's only one way of doing it. That is to work hard, to be disciplined, to innovate further, etc. And my own personal view is that from my own experience, from the experience of many people that I have seen, it is rather difficult to do it from home. Also, if you want to build a culture of an organization, and that culture building is only possible if we all come together in physical form. So therefore, for many of these reasons, I am not enthusiastic about working from home. You know, of course, moonlighting is unethical. I mean, I don't need to say that. Everybody knows that. You cannot be part of two institutions because there may be classified information that may go from company A to company B. That's I need not even spend my time on that. All of you know it's not ethical. So I would say that I want our youngsters who are so much smarter than me to realize that this is an extraordinary opportunity given to them. And this opportunity was not given to me when I was their age. Therefore, they have to seize this opportunity and make our nation even stronger. And to do that, a lot of hard work, a lot of discipline, a lot of sacrifice of personal time, all of that would be needed. And that is best done in an environment of physical proximity, and that creates a certain culture. Therefore, I would request the youngsters to focus on working from the office. Also, home is for spending time with family, and office is for spending time with colleagues. That's the way I have been brought up. So that's my mindset. I don't know whether I'm right or wrong, but that's my view. So, in your long and illustrious career, you have advised your colleagues, you have advised other corporations, you advised the government, you have sort of mentored several people. And now you are in a unique situation or position, I must say. Perhaps you get a lot of advice from people who tell you what to advise the current UK Prime Minister. Do you get that kind of thing? And in your learnings, is there something interesting or something insightful, specific that the UK Prime Minister, Mr. Rishi Sunak, has sought from you? No, I think, I have retired from
I retired from Infosys in 2014. I retired from Catamaran in 2021 when I completed my 75th year. So I don't involve myself in any business activities. I am also not involved in advising anybody because I am just a citizen, and the senior people in the government, the Prime Minister and others, they have umpteen number of qualified advisors. So therefore, they don't need advice from anybody like me. So I don't spend any time on any of those because that's not my job, and there are better people to do that. So I want to press the point a little further. But your professional role, you may have retired, but in your personal role, you cannot retire from a personal role. So I just wanted to press the point, has the young Prime Minister in Britain sought any advice? If you were asked any advice, have you given any advice? No, I think I am a foreigner. Therefore, it is not proper on my part to advise the Prime Minister of a foreign country. I don't do that. Further, I think in 2015, when our son-in-law entered politics, Sudha and I on one side and Rishi's parents on the other side, we had a discussion and we decided, and we communicated to both our daughter Akshita and the son-in-law that as a matter of principle, we will never ever discuss any political issue with them, because we have kept our relationship only to a personal relationship. Beyond that, and our grandchildren are our link. So that's what I would say. That is a template for integrity that you just heard. It's amazing. I think one more round of applause for Mr. Narayan Murthy. Thank you. Thank you. A final word for young India, if you were to give them a mantra. No, I mean, if you see the countries around the world, whether it was Germany and Japan after World War II, or other countries like Singapore and Malaysia in our own midst, they all realized that the only instrument a country has to enhance the prosperity of the country, to improve the income of its citizens, is to work hard, is to show discipline, is to have high aspirations, is to imbibe certain values and perform, because performance leads to recognition. Recognition leads to respect, and respect leads to power. It could be economic power, mostly economic power. And economic power is at the foundation of all other powers, social power, other respect, all of that. If you do well economically as a nation, then automatically people will respect you more and more and more. So my fervent plea to the youngsters in the country is that they should
realize that performance is the only instrument they have. Therefore, they should work very, very, very hard. They should be ultra disciplined, and they should have high aspirations and make this country truly realize its potential, because so many times in the last 40 years I have heard India has potential, India has potential, India has potential. But that doesn't mean anything. Only if we convert that potential into a reality, into a success, then the world will respect us even more. Today there is a certain level of respect for India, no doubt, compared to what it was in the 60s and 70s when I was abroad. But because we have tasted that respect, we have tasted that success, I would request that our youngsters consolidate on that respect. And the only instrument we have is economic power, and therefore they have to work hard, they have to be disciplined, they have to have high aspiration, they have to high value. That's all what I would say. Thank you. That was a superb master class in how to conduct life. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Narayan Murthy. Your humility, your integrity is so endearing to us, inspiring for us. And you call yourself just a citizen. But for all of us, I'm sure, you are the unofficial president. एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। ट्राई करिए। टेस्ट मस्त। जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ, क्योंकि ये बनता है कोल्ड प्रोसेस से। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। ट्राई करिए। अच्छा, टेस्ट मस्त। जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाले। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं राजेश मसाले। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। ट्राई करिए। राजेश मसाले। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Good morning, everyone. Dr. Ghosh and I were chatting
inside, and he said pretty much everything he says is a downer. And while I don't want that to dampen the spirits here this morning, I do think it's the downer we need. Climate change, when one would read a couple years ago, there were conspiracy theories going around that said that climate change or global warming is not a phenomenon. It is a theory. So if you go past the first couple of pages on, say, a popular search engine like Google, climate change deniers say that climate change is a theory, that global warming is a theory and not an actual phenomenon. Present events in the last few years have shown that it's not only a phenomena, but it's knocking on our doors and seriously threatening to break down our doors. Dr. Ghosh was researching his novel, The Hungry Tide, and that was your trigger to get involved in the climate change conversation and become a crusader and change the way people view climate change? Yes, it was. And, just because you said it, let me also repeat that, there's been a lot of research on this, and people find that the easiest way to end a conversation is to use the phrase climate change because it's so depressing and no one wants to hear about it. It's like talking about death, But, there it is. It's real. I mean, just like death is real. And I started working on my novel, The Hungry Tide, way back in the year 2000. And back then, I wasn't really so informed about what was going on in the world. But if you go to my novel, The Hungry Tide is about the Sundarban, which many of us here will be familiar with. But way back even then, you could see these catastrophic impacts unfolding in the forest. Whole islands were disappearing, salt water was coming deeper and deeper inland, people were losing their livelihoods. And in the years after that, there was a series of cyclones which absolutely devastated the Sundarbans. It's strange to talk about these phenomena in these circumstances where we are like in the centers which have made India, today's India, a very dynamic economy, if you like. But all around the margins of this country, there is incredible suffering that is coming because of climate change. In the Sundarbans, there have been so many lives destroyed, so many livelihoods destroyed. And I really think it's kind of really important, for us to pay attention to those things. I mean, the ABP group, they're basically, they're centered in Kolkata. But they have correspondents in, in Delhi, in Bombay. They don't have a correspondent in Goshaba, which is the biggest town in the Sundarban. If they did, I think they would be able to pay closer attention to this because the impacts of what's happening are really devastating. We spoke about the migration that's happening as a result of climate change. But before I want you to talk about the migration specifically from the Sundarbans and the demographic change it's bringing in, which in turn will bring in a political change undoubtedly. I also want to use this platform that ABP has so kindly given me to talk also about how on this chair last year I had a similar conversation with Dr. Sonam Wangchuk. And he talked about how climate change is real and how it's impacting them in Ladakh every day. And as some of you may know, he has been on a protest of sorts, was house arrested. We sat right here and had this conversation, Dr. Ghosh. And I have to give due credit to ABP Network for really not just ticking the box on climate change, and thank you for that, Avinash, and your team. You are really doing something about it by making these uncomfortable conversations happen.
And while the need for a correspondent in the Sundarbans is something that I will leave for them to do something about, but the conversation we had last year is being followed up this year with you, Dr. Ghosh. And I think that is a start. We have to acknowledge the elephant in the room before we can do anything about it. And any precursor to change is discussion, dialogue, debate. We're past the stage of debate, fortunately, on climate change because it is real. But congratulations to you all, the ABP network, for doing this and for enabling conversations like this. So on that note, can we talk about the migration that we were talking about back in the speaker lounge, Dr. Ghosh, the migration that climate change is causing and its ensuing socio-economic and political impact? Yes, certainly. And yes, I'm very glad to be here, and I'm grateful to ABP for inviting me, and most of all for their paying attention to this subject. You know, the difficulty with climate change is that climate change doesn't always manifest itself in extreme events. Rather, it's what has been called slow violence. You know, people are driven slowly from their lands over long periods of time. And an incredible demographic shift has occurred in India, which unfortunately passes largely unnoticed. You know, I had a house in Goa for many, many years. And in the time that I had this house, it was in a small village in Goa, you know, quite sort of removed from Panjim and so on. But I saw over 20 years this incredible demographic shift take place, whereby all the working people in this village were Bengalis. You know, when I first went there, you would never see a Bengali there. But today, the entire working class, all the Malis, all the house painters, all the masons are Bengalis. And either they're Bengalis or they're from Jharkhand, and a certain number from Odisha. But this has happened all the way along the West Coast, and it's passed largely unnoticed. You know, this is the case also in Kerala. It's the case in, you know, just up and down the West Coast. There are schools now in Bangalore where there are more Bengali-speaking children than Kannada-speaking children. And you can be sure that these will have very large repercussions. You know, these movements will have large demographic and political repercussions in the long run. And yet, I never see this covered, you know. And I don't understand why this passes so unnoticed, you know. In my particular case, I see it also elsewhere. You know, Italy is a country that I've been visiting, you know, for the last 30, 40 years. And beginning at about 1999, I began to notice that everywhere you go in Italy, now you hear Bangla everywhere. You see large groups of Bengalis all over Italy, but most of all you see them in Venice. You know, the entire working class of Venice now is Bengali speaking. And this was, you know, so striking to me, because not only are they Bengali speaking, they don't speak the standard Bangla of Kolkata. They speak the language I used to speak with my grandmother, you know. This is the language of Shariatpur and Madaripur in Bangladesh. So, you know, I started having conversations with a lot of these immigrants, and, you know, they're almost entirely Bangladeshi. And it was very, very fascinating to me to learn how they've made these incredibly dangerous, long journeys across the Mediterranean, across Turkey, into Europe. Same is true in America, on the streets of Brooklyn now. You know, I hear Bangla being spoken all the time. All the people who repair houses are Bangladeshis now. So, you know, literally in my lifetime, I have seen this incredible demographic change occurring in front of my eyes, where, you know, Bangla, which never used to be widely spoken in cities like New York, now is spoken everywhere. And that is attributable to climate change? It's not attributable only to climate change, but certainly it's a very large part of it. You know, so in 2016, 2017, I spent a long time doing research, you know, in the migrant camps in Italy. And I was very struck by the number of Bengalis there, but also Punjabis, but Punjabis from Pakistan. Because the Punjabis from Pakistan who've been displaced have been displaced by floods. You know, the Jhelum floods, the Indus floods, and so on.
But also the Bangladeshis, many of them have been displaced by floods. But that's not the only thing. There's also many political factors, economic factors, and so on. But what's very striking, actually, is that Bangladesh is today a very prosperous country. Their GDP per capita has surpassed ours. They have some of the best outcomes in terms of health, etc. And yet, people are leaving there in droves. I think that's the migration and as a fallout of the larger impact of climate change is definitely something that is happening, and it's happening slowly, and we're not acknowledging it. But another thing that we don't adequately talk about, because to some extent it is gaslit, is the climate impact of capitalism. So yesterday, there were a few conversations here, starting with the inaugural session, which Veer Sanghvi conducted with Madam Liz Truss. And she spoke about how capitalism as an experiment, automatically ensuring freedom and democracy, has failed. Clearly, capitalism as an economic experiment ensuring safeguarding our climate has also failed. Do you want to talk about how capitalism destroys climate change in a way, and that there is no compassionate capitalism? Yeah, I mean, as it's often said, capitalism is the greatest market failure of all time, especially in relation to climate change. How can you actually expect people who are told that greed is good, and people who are told that, just go out there and make money for your shareholders, to care about the environment or to care about, the land? And they obviously don't. So, a lot of capitalists, they talk a lot of greenwashing. I should say here that, actually one of the really amazing things about, let's say, Mr. Narayan Murthy, is that, he founded a company which actually was not harming the environment, which was not, in that sense, predatory, I remember once, I was actually flying out of Bangalore, and I was looking at the New York Times, and on the same day, the CEOs of American companies were revealed to be earning these fantastical sums of money. And on that same day, they had a little news article about Infosys, where the top officers refused to take more money. And I was very struck by that there was this kind of really great difference. So certainly, I think that generation of entrepreneurs like Mr. Narayana Murthy and so on, they have shown a different path. And I think if they were to really engage with these issues on a large scale, maybe they could make a difference. But unfortunately, what we see today is that India has wholeheartedly adopted this model of a kind of extractivism in relation to the environment, which is going to lead to absolute disaster. You can just see it. I mean, you look at, right now, sitting here in Bombay, the coastal road, which is going ahead despite the fact that we know that this coast is incredibly threatened by sea level rise. So that this road, no matter what happens within the next 10, 15 years, it's going to be very badly impacted, It's going to be completely exposed to the impacts of sea level rise, of intensification of cyclones and so on. And yet it's going ahead. And why is it going ahead? I have a theory about it, which is everywhere you look in India, actually this is true all over the world, everywhere you look, there's some giant building going up. And I think the huge push for this comes from the cement lobby. The cement lobby is actually one of the most powerful in the world. I mean, the real estate lobbies, the cement lobbies, and they're pushing the building of dams, and dams are just giant blocks of cement, So all these forms of development, or so-called development, I think will in the long run prove to be catastrophic. So what you're essentially saying is that we are compromising the long-term stability of our ecosystem for short-term, short-sighted development goals. Would that be an accurate summary of what you said? Absolutely, yes. But let's go a little long-term backwards into history. Colonialism. You write about how colonialism essentially
also triggered and started what we now today identify as climate change? Do you want to talk about that? Yes, certainly. I should say that the clearest examples of this actually come from the Americas and Australia, and actually from Europe itself. So beginning in the 17th century, when the Europeans were conquering huge territories in North and South America, they started these massive environmental interventions. So all of, say, the northeast of America was re-engineered to look like Britain. You know, so that's why New England and words like cities that are called London, New London. New London, New York, and so on and so forth. Of course, New York. I never made that connection. They were all being rebuilt. And before it was New York, it was New Amsterdam. So, you know, it was all being re-engineered. And this was a project that they implemented on a massive scale. America is the most re-engineered landscape in the world, you know. So all the grasslands of the Midwest were torn down, turned into these monocultures. California, which was largely a desert area, was turned into something altogether different. This was by re-engineering the Colorado River, for example. So the long-term effect of this is now being felt. The most endangered parts of America are the parts that have been most extensively engineered. You know, California, you've seen over the last few years, it's either being flooded or is going up in flames. And this is true of the entire West Coast. If you think of Southeast Australia, it's the same thing. Dr. Gaur, speaking of re-engineering, I think I want to step back a little bit to reiterate the gaslighting that has happened, that we don't realize or are conscious of. When one thinks of colonial-triggered climate change, what is the first thought that comes to your mind? To my mind, it's South America and the loss of the rainforests and the loss of the biodiversity. I don't think of North America as a casualty of colonialism and of capitalism. And that is the extent to which it's been gaslit. We have no idea it's happened. And I think that again entwines itself into capitalism somewhere. Because colonialism and capitalism, you know, to a large extent are entwined. Absolutely. I think that's part of what we forget. And we also forget when we look at America, essentially we are given a certain version of the history, you know. If you look at America from the point of view of the indigenous peoples, or if you look at America from the point of view of black people, it's a completely different history. Because right now, the people who are in the so-called sacrifice zones in America are mainly indigenous and black people. So, for example, the Mississippi Delta, which is another very massively re-engineered landscape, that's the area that is actually worst hit. You know, every day, something like the equivalent of 5 football fields is going underwater in the Mississippi Delta. And the people who live there are almost entirely either indigenous or black. This is also an area which is very important for the fossil fuel industry, you know. So this is also an area which has terribly bad chemicals, you know, chemical contamination across the landscape. Houston, one of the richest cities in the world, the 4th largest city in America, has been absolutely drowned 3 or 4 times in the last few years, you know. We can see already the long-term effects on these landscapes. And I think there, it's really important to make the connection with our own cities, you know. Because, let's say, you know, one of the things that is so noticeable is that the colonial cities of India were built at almost exactly the same time as the big colonial cities of North America. Mumbai was founded in the same decade, the 1660s, as New York, you know. And also re-engineered, as you said. I mean, would you like to just go back for a second? Sorry, I'm interrupting you, but you spoke about how the colonial settlers on the eastern coast of North America re-engineered large parts of the eastern states to resemble England. So New England, New York, New London. And they did so specifically, let's talk about New York, by reclaiming significant portions of lands to make the New York that we know today. Something similar was done to Mumbai as well. Yes, absolutely. I mean, as we know, Mumbai in the 1660s, when the British first
got Mumbai from the Portuguese as part of the dowry of Catherine of Braganza. Mumbai was 6 islands, and the Portuguese had the common sense not to build on the islands. They actually made their base in Bassein, Vasai, which is on the mainland. But the British decided to reclaim large parts of Mumbai, so they joined these 6 islands together over a period of, let's say, 100 years or so. Now, these islands were reclaimed from the sea, but actually, the water never gives anything up willingly. And these islands are going to go back to the sea. One of the most important impacts of climate change is that the Arabian Sea is heating up incredibly fast. The Bay of Bengal is also heating up fast, but the Arabian Sea is heating up even faster. So cyclones are essentially heat engines. You will have noticed over the last 10 years, there have been many more cyclones in the Arabian Sea region. Last year, it was in 2021, just before Amphan hit Calcutta, there was a cyclone that was coming straight at Mumbai, and it veered at the last minute. But you just think of what will happen if a major Category 4 or Category 5 cyclone hits Mumbai. Because, of course, New York is also very exposed to hurricanes, to tropical storms. New York was devastated by Hurricane Sandy. But New York is relatively fortunate because it has barrier islands outside which protect it. So even Staten Island is a kind of protection for New York. Mumbai has no protection at all. If a major cyclone were to come at Mumbai from traveling up the Indian Ocean, if it made a direct hit on Mumbai, it would be catastrophic because the most developed parts of Mumbai are all along the seashore. Now, usually when you have It's prime real estate. Exactly. Everyone who's rich in Mumbai wants a view of the sea. So, these are the most dangerous parts of the city to be in fact. And they are the most exposed in the case of a cyclone hitting. The other problem is that Mumbai is connected to the mainland by two quite narrow roads. So usually cyclones are predicted ahead. But even if you had 5 days to prepare, you would not be able to evacuate Mumbai. It's not physically possible to evacuate 15 million people. And in fact, most middle-class people wouldn't leave because middle-class people have all their savings invested in their flat or in their car. They don't want to leave their flat or their car and go. So they will be sitting ducks, absolutely sitting ducks for a major cyclone. This is something I wrote about at great length in The Great Derangement. And one of the things I feel, rather gratified about is that my book prompted a whole research project, a disaster management research project. So just at the most fundamental level, we are not preparing for that future, and that future is already here. I think it's worrying that the land that we sit on as we speak is potentially in the path of a future hurricane or a future cyclone. And it's likely to be devastating as we witness in other parts of the world. And I don't think the outcome will be pretty, as you have reiterated. Yeah, because Mumbai represents an incredible concentration of risk. 40% of the country's trade goes through Mumbai. Mumbai has all the most important financial institutions in the country. The Mumbai Stock Exchange, the RBI, they're all here. And the Stock Exchange and RBI are actually in very low-level areas. So if there were to be a major flood or cyclone, they'll be completely, they'll be out of action, possibly for weeks. So that's something that's likely to happen at some point in the future. What is happening as we speak right now is the unseasonal rise in temperature. Punjab temperature, Haryana temperature is already in the early 30s, which is devastating for the wheat crop. Wheat and its yield directly impacts our economic health. Wheat inflation can trigger
a potential economic crisis for people living at the subsistence level, which is significant proportion of our population. Now, do you want to talk about that, Dr. Ghosh? That we are sitting here right now when the predicted yield this year is likely to already be impacted. Wheat is green at this time of the year. It's supposed to start ripening in a few weeks from now, but the temperatures have already gone up. And everybody who comes from a wheat growing background is very worried, and so are people like Shankar Iyer. Is he here in the room? I think he's left. We were having this conversation yesterday. Economically, and those who look at economic forecasts of the country are equally worried. But I think the only people who are not worried are, probably the consumers, because they have no idea what's going on. So economists are worried, farmers are worried, and it's happening right now as we speak. This unseasonal rise in temperature, the hottest February we have seen in 54 years. Do talk about that. Oh, yes, absolutely. Yeah, we are globally on the brink of a food crisis. Everybody knows that because, so far we've been protected also because of the grain reserves of countries like Russia, Ukraine, Canada, and so on. But Canada has also been very badly hit in its major breadbasket regions. So absolutely, what you're saying is absolutely true. I mean, the Punjab has been very much disrupted, not only by climate change, but also by certain patterns of agriculture, So the Green Revolution was seen to be a huge boon at a certain point. Now it turns out to be one of those phenomena, the unintended consequences of which have been disastrous in the long run. So essentially what the Punjab farmers did, what was this great miracle was that they were given these genetically modified seeds and told to just pump up fossil water, and now and lots of fertilizer, which was given as a result of subsidy, and free power for water. Free power, so there was actually an incentive for farmers to just sit there and keep pumping up water from the aquifers. Now, the Upper Ganga aquifer is almost exhausted. I'm sure you've seen that in your part. As a kid growing up in Malwa, which is where I hail from, water table in the mid-80s was 15, 20 feet. Today, we are boring in Punjab, in my part of Punjab, at 250 feet. And we grow the world's most expensive basmati by climate cost, by economic cost, if one takes into account the free water for irrigation and, of course, the highly subsidized agricultural fertilizer. And the climate cost is what, is deeply worrying. So you see, there's this vicious cycle that we are locked in. I mean, those fertilizers, those insecticides are all coming from fossil fuels. And we're eating them back in the wheat we eat and consume. So most farmers they keep one patch of wheat where they don't use fertilizer and they don't use insecticides, and that's what we get ground from the local chakki, and we don't eat the rest of the wheat, which is what every farmer in Punjab and Haryana is doing. But I want to go back, Dr. Ghosh, to what you said about how we take short-term developmental calls, which ultimately, like in the case of the development around the coastal road project, like with everything, has disastrous long-term consequences. The Green Revolution, we were taught in schools, it was the best thing to have happened to us, and I think at that point, we needed it. We needed it because we were grain scarce. I mean, that's what we were taught. That was the narrative that was built, that it is for our future. We lack grain, we are food insufficient, and we need to grow more grain in terms of rice and wheat. And when we probably reached the level where, assuming that narrative was not flawed, we probably should have scaled back. Interestingly speaking, in the 60s, this area that I refer to did not grow wheat and rice. We don't even eat rice. We were made to grow this by agricultural scientists. There was constant seeding done from government intervention through radio programs, through television programs, talking about the benefits of these hybrid seeds that allowed for this kind of tall wheat grass, which is what we consume. Traditionally, original wheat is not this tall. But we were taught through programs like Krishi Darshan, which I saw every day at 6 o'clock,
living on the farm, that this is the way to be. And bajra, jawar was what was grown, pulses are what were grown, but now we only grow rice and wheat. And ironically, we don't eat rice. I want to reiterate that. Punjab, Haryana is not a rice staple place because that's not climatically what we are tuned for. Rice is meant for water-intensive, monsoon-driven places. But there was aggressive government intervention, good or bad, to make it happen. But I think the impact of that intervention was clear a long time ago. And we should have scaled back this push for rice and wheat for food grain. Can you talk about the role of government checks and balances in food security, in recalibrating the approach to agriculture, and thirdly, taking into account how they can do that with respect to climate change? See, it's not just the government or the Indian government. It was part of a whole geopolitical thing because the Green Revolution was sponsored by the American state as a part of a Cold War contest with the Soviet Union. It was their seeds as well. It was absolutely, exactly. So now a lot of research has been done on the Green Revolution, and we know that it didn't actually feed billions, as it was said. I mean, that people were managing with their old techniques just as well. So, you know, these things are always embedded within a sort of geopolitical context. That's the really hard part, you know, because climate change itself is in some sense a geopolitical contest. You know, it's a kind of war against the world's poor. That's really what it is. It's what Radhika alluded to when she was introducing the session, that climate change is a full-scale war. That's with the developed nations fighting with the poorer nations to pass the buck. That's right. And to try and make you know, their conscience probably clearer. But if I had to use the last few minutes of this session for actionables, because this has been a downer. And it's a downer we all needed to hear. This was not going to be a pleasant conversation. It is not something we can wish away. And I think the economic cost of climate change is going to rise day by day through sudden events like what we're seeing in Joshimath because of the aggressive amount of construction and destruction of the ecosystem, the tunneling through mountains which destabilizes the whole ecosystem there. But I think the economic cost on day-to-day living, so there's death which comes at you suddenly through an unforeseen event like a cyclone or an earthquake, and then there is slow death, which is through starvation, because that's where we're heading. What are the actionables? If you had to pick two actionables that we should do, which each one of us can do and fight for, what would those two actionables be? Well, they're all the usual sort of reduction of carbon footprint measures, but actually there are many people in the country, there's a whole network of people in the country who are doing really important things at the grassroots level. And one of them, a man who I immensely admire, actually lives in Calcutta. His name is Debol Deb. He is a collector of seeds. He distributes various kinds of seeds, especially of rice, drought-resistant rice, flood-resistant rice. He has these strains of rice which can literally grow under 6 feet of water for as long as a month. You know, so when the Sundarban was badly hit by floods, he has salt-resistant varieties of rice. I think people like him really are the unsung heroes who are working at the grassroots level. And perhaps it's good that they're not so well known, because if they were well known, maybe the big agricultural companies would go after him and try and destroy the kinds of work he does, because these corporations are utterly ruthless. And we know there's nothing known as compassionate capitalism. Thank you so much, Dr. Ghosh. This was a fantastic conversation, and you are so passionate about this, and you articulate this so well. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Ghosh, indeed. And, you would be very happy to know, sir, that ABP network does have a correspondent. एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। ट्राई करिए। टेस्ट मस्त। जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया,
निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, बीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस, गो गैस। क्लीन एंड ड्राई, नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज। सिडको, वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. ये जो मौजूदा पार्टियां हैं, ये अच्छा काम कर लें। मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते? एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते? लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम? अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बचपन से मेरे को याद है, 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं, केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं। केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। सुन रहे हैं बचपन से, है ना? अगर केरला में इतने अच्छा, तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहां से सीख के कर लेना चाहिए था। केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया? समझ नहीं आता। उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते? मेरे को तो समझ ही नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है। जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूं। और आप सीखो, वोट लो, शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो। जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने, बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस कि हमारे माँ बाप के सपने हम पूरे करेंगे। यस और नो? That definitely gives us a sense of his popularity, and of course, Chetan Bhagat is back on stage to facilitate this conversation. Hi, good morning everyone. सर आप सिंगर हैं, रॉक स्टार हैं आप? नहीं क्या सर। ये क्या फिजिक्स? व्हाट इज दिस? फिजिक्स में ऐसे तालियां बज रही हैं, मतलब या तो आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो या रॉक स्टार हो या आई डोंट नो। आप लिटरली यू टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे टफ चीज़ को पढ़ाने का आनंद अलग है। बट लोग ऐसे इमोशनली चीयर कैसे कर रहे हैं इस पे? शायद वो पर्सनली कनेक्ट करते हैं, या जो सबसे टफ चीज़ है उसको अगर अपन आसानी से पढ़ा पाएँ, सरस्वती जी कृपा हो आप पे, तो शायद बच्चे कनेक्ट करते हैं। So you run, for those who don't know NV sir, it only means you are very old, because all young people know him, है ना? बात सही है कि नहीं? करोड़ों, literally crores of views on YouTube, not exaggeration, more views than some movie songs. Thank you. For physics. I don't know. I don't know whether to feel disturbed or feel happy for my country. पर ये हो क्या रहा है बच्चों को कि फिजिक्स में मजे ले रहे हैं?
सर एक्चुअली क्या है कि मुझे फिजिक्स से व्यक्तिगत रूप से बहुत डर लगता था। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो पहली बार मेरे फिजिक्स में 0 नंबर आए, और जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था तो उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो 0 नंबर आए तो किसी बच्चे की बेइज्जती ना हो इसलिए टीचर ने मेरी कॉपी छुपा के दी। तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये सबसे टफ सब्जेक्ट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इस पर बहुत मेहनत करी, और मैं चाहता हूँ कि अब मुझसे पढ़ने वाले या देश के जितने भी बच्चे हैं उनके किसी के भी 0 नंबर ना आए, बल्कि पूरे में से पूरे आए। 0 आए थे? बिल्कुल, पहली बार। 0 के लिए तो मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए सर उसके लिए। 0 मतलब कई बार तो गलती से ही हो जाता है। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर योर जर्नी इज कि आप जब छोटे थे, व्हेन एज अ स्टूडेंट 10th के बाद आप कोटा गए थे। नाउ मेनी ऑफ यू नो कि कोटा में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, राइट? आपको ये पता है कोटा में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, और कई बार उसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आपने दिया था और आपको तो देने ही नहीं दिया, आपने कहा तो नालायक है लड़का। हाँ, कुछ ऐसा हुआ था कि शायद ये नहीं कर पाएगा, ऐसा फादर को बोला गया। मैं कोटा से ही हूँ, वहीं से पला बड़ा हूँ, तो मेरी पैदाइश भी वहीं की है, सौभाग्य की बात है। पर जब पहली बार गया तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को, जो टीचर्स कभी कभी ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें उन बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमें पहली दृष्टि में लायक लगते हैं, पर एक अध्यापक का, एक शिक्षाविद का कार्य ये होना चाहिए कि वो एवरेज बच्चे से भी सितारा निकाल सके। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें शिक्षाविद खुद को कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। टॉपर्स में से टॉपर तो सभी निकालते हैं, एक एवरेज बच्चे में से जिसमें कर्मठता हो, जो कार्य करने की क्षमता रखता हो, जिसमें रियलिटी में जील हो कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं, उसमें से अगर हम कुछ निकाल सकते हैं तो हमें वास्तविकता में शिक्षाविद या देश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य हम जानते हैं, वरना हमको खुद को शिक्षाविद कहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जी, तो ये एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम आप नहीं लेना चाहते जी, लेकिन गूगल करें तो मिल जाएगा कि एनवी सर कहाँ से रिजेक्ट किया गया था, और आपने क्योंकि बाद में वहीं पे जाके जॉब भी की थी। हाँ, फॉर सम टाइम आई हैव डन दैट जॉब। मैं बंसल क्लासेस आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही कोटा की धरती के लिए बहुत श्रोताधार रहे हैं, जिनकी वजह से शायद कोटा बना है। उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। एक शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए वो भी उन्होंने बताया। अभी नारायण मूर्ति साहब भी बोल रहे थे कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, खासतौर से शिक्षाविद में, जो कि शिक्षक है उसके लिए डिसिप्लिन सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे में भी ये गुण और ये संस्कार डाल सके। तो वो वहीं से मेरे पास आया, तो उनको नमन है, प्रणाम है। ठीक है, लेकिन आपका उससे पहले, बिफोर यू स्टार्टेड वर्किंग, यू वेंट टू IIT BHU। यस यस, एंड आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते भी आपने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया था, कोटा पॉइंट। जी जी, कोटा पॉइंट बनारस में खोला था। जी, मतलब आप पढ़ रहे थे, आपको क्लास नहीं जाना था, आपको मतलब क्लास जाते थे, फिर एक और इंस्टीट्यूट चला रहे थे आप। बिल्कुल। मैं इस मामले में हमारी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बचपन से वो कहानी सुनी होगी आप सभी लोगों ने कि भाई किसी गांव में पानी नहीं निकल रहा था, तो एक जगह गड्ढा खोदा, 20 फुट, पानी नहीं निकला, फिर दूसरी जगह खोदा तो पानी नहीं निकला, फिर तीसरी जगह खोदा 20 फुट तो पानी नहीं निकला, 5 जगह जब गड्ढे खोद लिए गए तो पानी नहीं निकला, तो किसी अच्छे इंसान ने बोला कि भाई एक ही जगह खोद लेते तो पानी निकल आता। ये कहानी उन्होंने मुझे बचपन से सुनाई, और जब मैं फर्स्ट ईयर में IIT में सेलेक्ट हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, एवरेज बच्चा था, मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, किसी को ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, पर सेलेक्ट हुआ। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जो भी तुम्हें बनना है जीवन में, वो फर्स्ट ईयर में आप सोच लेना कि आपको क्या बनना है, और पूरे 3 साल उसी पे काम करना है आपको। तो पहली बार मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित था, शिक्षा प्रणाली जो कोटा की है वहीं से पढ़ा था, तो शिक्षकों का मैंने मान सम्मान, उनका ऑरा बहुत कुछ देखा था, तो मैं उससे प्रभावित था। तो मैं अपने शिक्षक के पास गया और मैंने बोला कि सर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, और स्पेशली फिजिक्स का टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देख, ज्ञान बांटने वाले बहुत है, ज्ञान बहुत लोगों को है, पर आपको ज्ञान होना और आप उस ज्ञान को दूसरे बच्चों को अनुसरण करा पाएँ और वो आपकी बात समझ पाए, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने बोला पहले आप पढ़ा के देखिए। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ये बात बोली कि सरस्वती जी आपके साथ हैं कि नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ज्ञान होना एक अलग बात है, पर आप उसे डिलीवर कर पाएंगे एक अलग बात है। उन्होंने बोला पहले पढ़ा के देखो, तो मैंने पढ़ा के देखा, और माता जी की उस बात को याद रखा कि फर्स्ट ईयर से मैंने सोच लिया कि मेरे को पढ़ाना है, और ईश्वर का ऐसा साथ रहा कि मेरे को वहाँ पे कोचिंग खोलने का मौका मिल गया। 3 साल मैंने उसे चलाया। जब 4th ईयर में छोड़ा तो 700 बच्चे हमारी कोचिंग पे थे। वो बहुत कठिन परिश्रम का समय था, 4 घंटे ही सोने को मिलता था, 15-16 घंटे कॉलेज के साथ काम करना, बट हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि मैं वो कर पाया। ठीक है, और उसके बाद आपने कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन किया जॉब में, उससे आपको 7 महीने बाद निकाल दिया, बिकॉज रीजन यू वर टू पॉपुलर। आपने बहुत रिसर्च कर रखी है। सर यूट्यूब पे सब दिया हुआ है, यूट्यूब पे आपके ना ऐसे जब आप लेक्चर के जोक्स आपके हैं वो भी हैं,
ये ऐसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बीच में फिर कहते हैं आजकल मेरी बीवी मायके गई हुई है, मेरे पास बहुत टाइम है। आज तो मेरी बीवी मेरे साथ ही है। खैर हाँ, यहाँ पे बैठी है, कहाँ बैठी है, हाय। एंड वो आपके साथ चलाती भी। एनीवे, सो यू वर फायर्ड फॉर बीइंग टू पॉपुलर। एक्चुअली वो क्या हुआ था? बेसिकली वहाँ पे ऐसा होता था कि बैच सिस्टम होता था, तो मेरी क्लासेस में 2-2, 3-3 बैचेस के बच्चे आ जाते थे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं, कई बार जैसे अपन बोलते हैं ना कि गॉड चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो मेरी क्लासेस में बहुत बच्चे आते थे। तो एक क्लास में जहाँ पे 150 की कैपेसिटी, वहाँ पे 350-400 बच्चा है, बैठने की जगह नहीं है। तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं था। ऐसा 2-5 बार हुआ, तो मैनेजमेंट ने एक दिन आके मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया और बोला आप इंस्टीट्यूट से चले जाइए। तो मेरे पास कोई इलाज नहीं था, उन्होंने मेरे को तुरंत फायर कर दिया। तो मैं घर आ गया चुपचाप, बहुत निराश और हताश हो गए। मुझे नहीं पता था शायद मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है। और आप विश्वास मानिए कि हमारे घर के बाहर करीब 2000 बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि सर हम आप ही से पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे गूज बम्स वाला मोमेंट मेरे जीवन में कभी आया हो कि 2000 बच्चे आपके घर के बाहर खड़े होंगे, सर हम आप ही से पढ़ेंगे। तो मैंने बोला भाई मेरे को पता नहीं कैसे पढ़ाना है। तो बच्चों ने हमारी पहली रेंट प्लेस देखी, बहुत छोटी सी वो जगह थी। फिर वो पहले दिन छोटी बढ़ गई, फिर दूसरी रेंट प्लेस देखी, फिर वो छोटी बढ़ गई, फिर चौथे दिन जाके हमें इतनी बड़ी जगह मिली जहाँ पे हम बच्चों को अकोमोडेट कर पाए। हालांकि ये बात अलग थी कि बच्चों से मैंने उस समय थोड़ा भावुक होकर बोल दिया था कि भाई फीस भी आप ही तय कर लीजिए। तो उन्होंने पहली फीस सिर्फ 2500 रुपये रखी। उसके बाद से मैं बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ कि फीस वो तय करें, फीस हम ही तय करते हैं। बट हाँ, दैट वाज अमेजिंग। और आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी मोशन रखा, जो फिजिक्स का एक चैप्टर भी बच्चों ने ही रखा था ये भी। पर मोशन तो फिजिक्स में पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फ्रिक्शन भी हो सकता था। ये बच्चों ने ही सोचा कि बच्चों ने आके बोला सर मोशन नाम रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। वाह। लेकिन आपने कोटा में 2007 में ये खोला, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स थे, आई मीन लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स आर देयर। और मैं कोटा गया हूँ सर, मतलब एक तरह से पढ़ाई है लेकिन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कट थ्रोट मतलब सच्ची में कटते हैं थ्रोट। मतलब इट इज़ अ हार्ड प्लेस टू ओपन अ बिजनेस। लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट मे बी और नॉट सो मच टुडे। बट उसके बीच में टू ओपन एंड मेक अ न्यू ब्रांड, कोटा में जगह थी आपके लिए? ऑलरेडी इतना चल रहा है। मेरे हिसाब से जगह नहीं, कभी नहीं, जगह खुद को बनानी पड़ती है। किसी एक बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छी कंपनी यूएस में चलाई थी, उन्होंने एक बात बोली थी हमेशा, जिनकी बाद में बहुत बड़ी कंपनी बन के वो रिटायर भी हुए। उन्होंने एक बात बोली थी कि व्हाट इज़ डिफरेंट। उनसे जब पूछा गया कि आपकी कंपनी में क्या डिफरेंट है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके पास लाखों कारें हैं जो रेंट पे देते हैं, आपकी तो सिर्फ 10 कार हैं जो आप रेंट पे देते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने इंटरव्यू में बोली थी, उसका अनुसरण मैं करता हूँ और मेरे फादर भी यही बोलते हैं। उन्होंने एक बात बोला कि जो मेरे से बेहतर कुछ नहीं दे सकता वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती थी कि कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं, शुरुआती दौर की बात मैं आपको कर रहा हूँ, आज तो टीम बहुत स्ट्रांग है, पर ये बात मुझे याद थी कि जैसा अनुभव मैं मेरे बच्चों को करा सकता हूं जो मुझसे पढ़ने आ रहे हैं या हमारे संस्थान में आ रहे हैं, या जितने प्रेम से मैं उन्हें पढ़ा सकता हूं, एवरेज बच्चे को सिलेक्ट करा सकता हूं, ऐसा एक्सपीरियंस कोई किसी को नहीं दे सकता। तो चाहे कितना भी कट थ्रोट कंपटीशन हो, अगर आप सोच लेंगे तो शायद कर पाएंगे। राइट। अब हाउ बिग इज मोशन? कितना, आई डोंट नो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टर्नओवर, व्हाटएवर मेट्रिक यू वांट टू यूज। अभी पूरे देश में फिजिकल क्लासरूम्स में हमारे करीब 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। 60 सेंटर्स हैं हमारे, मेजरली 10 सेंटर्स हमारे कोटा में हैं, 15,000 बच्चे कोटा में पढ़ते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से तो बहुत पढ़ते हैं, बट दिस इज़ फिजिकल क्लासरूम जो पढ़ते हैं, और करीब 2,500 एम्प्लॉयज़ हैं जो साथ में काम करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि शायद शिक्षा की ताकत है कि बहुत सारे शिक्षाविदों का यहाँ पर आज ऐसे मंच पर, हमारे देश की शायद ये ताकत है कि शिक्षकों का सम्मान हो रहा है, और शिक्षा यहाँ पर बैठकर शायद आप जैसे लोगों को, प्रबुद्ध जनों के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार देश के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए कि मैंने अध्यापक के रूप में, मैं शायद थोड़ा भावुक आपको लग सकता हूँ, पर मैंने अध्यापक के रूप में जब ये जीवन यात्रा चालू करी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी शिक्षक को इतना सम्मान मिल सकता है जो मुझे मिलता है। हालांकि मैं जब भी ऐसा सम्मान मिलता है तो मेरे को डर भी लगता है कि शायद हम इसे डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, पर किसी स्टार्स को इतना सम्मान मिलना, पॉलिटिशियंस को इतना सम्मान मिलना, पर ये हमारे यहाँ पे ज्ञान की ताकत है कि शिक्षकों को इतना सम्मान मिल रहा है। तो मैं उसे नतमस्तक होकर स्वीकार भी करता हूँ और वादा भी करता हूँ कि इस कर्तव्य को जरूर निभाऊंगा। अच्छा, ये जो अभी एक सीरीज आई है कोटा फैक्ट्री जी, उसमें एक जीतू भैया है मेन कैरेक्टर। जी जी। लोग कह रहे हैं आप पे बेस्ड हैं। जी हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला तो कि आप पर बेस्ड है। जी। उस शो का नाम कोटा फैक्ट्री है। जी। फैक्ट्री है। बात यह है कि सर हम कैसे देखते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। मेरे हिसाब से दोनों पहलू हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि दोनों की आवश्यकता है।
दुनिया को चलाने के लिए वो कंपनीज भी चाहिए जो प्लेन बनाती हैं, और दुनिया को चलाने के लिए वो कंपनीज भी चाहिए जो पैराशूट बनाती हैं। हम उसको किस नज़रिए से, किस चश्मे से देखते हैं, वो देखना चाहिए। तो कोटा फैक्ट्री नाम शायद ऐसा दिया गया कि ऐसा दिखाया जाए कि हम जो शिक्षाविद कर रहे हैं वहाँ पर, या शायद हम स्कूल्स के कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं अगर कोई अध्यापकगण या कोई स्कूल से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं तो भी मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम स्कूल्स के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। कोटा को शायद इस तरीके से दिखाया जाता है, स्कूल में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, तो उसको ऐसी एकेडमीज में भेजा जाता है खुद स्कूल से, जहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। हम अगर स्कूल का बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, स्पेशली अगर हम हमारी बात करें तो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उसके एक्सपर्ट्स हैं। हमें कॉम्पिटिटर ना मानकर हमें एक स्पेशलिस्ट माना जाए, ताकि हम उन बच्चों को तैयार कर पाएं। हमें कॉम्पिटिटर की तरह ना देखा जाए। तो कोटा फैक्ट्री नहीं है। रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो कोटा ने जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देश को दिए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोटा की धरती से मैं आता हूं। आप लोग अगर वहां पे नहीं गए हैं कभी, तो आके देखिए। सिर्फ किसी बात को सुनिए मत, उसको आके देखिए, तो आपको लगेगा कि वहां का ऑटो वाला, मैस वाला, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे टिकी हुई है। हम बच्चे को भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि अगर कोटा शहर से बच्चों को हटा दिया जाए तो शायद कोटा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो एक बार आइए, पधारिए, आप सभी का वहां पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो कोटा गया हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बार। एक बार तो आप ही के फंक्शन में 2011 में, मोशन के फंक्शन में मैं बहुत बार गया हूँ और मैंने देखा है। एंड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे, 15-16 साल के बच्चे घर छोड़ के आते हैं। इमोशनली दे आर नॉट मैच्योर। आई मीन ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट द एज। एंड दे कम एंड कभी पेइंग गेस्ट रह रहे हैं, कभी कहीं किराए पे देके रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर, नॉट एवरीबडी हैज़ अ, इट्स नॉट लाइक देयर इज़ अ कोटा कैंपस। दे आर वेरी यंग, वेरी वल्नरेबल। एंड एनवी सर, आप भी जानते हैं द सिलेक्शन रेशियो इज़ 2%, 3%, 1% इन दिस एग्जाम्स। बाय डेफिनेशन कोटा चलो थोड़ी परसेंटेज वो बढ़ा सकता है, लेकिन 90% बच्चों का नहीं होगा। आई मीन दिस इज, और 80, आई डोंट नो, इट कुड बी 70, आई डोंट नो, बट मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर कमिंग इन अ वेरी टेंडर एज। माँ बाप ने भेज दिया, कोटा गया, पता नहीं क्या कमाल करने वाला है। बट लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट जो कमाल नहीं कर पाते। एंड द रियलिटी इज दैट स्ट्रेस इज देयर। वी हैव हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ, I don't want to say the word, but the students taking extreme steps for their life. And ये जो cheer भी कर रहे हैं आपको, don't you sometimes feel that responsibility कि they are looking up to me for too much? मेरा काम यार न्यूटन के लॉ पढ़ाना है, ये क्या मतलब? They are literally worshipping you there. How do you see all this? पहली बात का उत्तर जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि कोटा से मैं मानता हूँ कि अगर कोटा में कोई एस्पिरेंट आ रहा है, 100 बच्चे अगर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो शायद 10 या 15 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो टॉप कॉलेजेस में पहुंच पाते हैं या अपने डिजायर्ड कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। पर मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, कोटा वो शहर है जो बच्चे को 14 से 15 घंटे रोज काम करना सिखाता है डिसिप्लिन के साथ। पूरा इकोसिस्टम ऐसा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 बच्चे जो कोटा में आए हैं और पूरे साल जिन्होंने वहां पे निकाला है, उसमें से 95 बच्चे जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 14 से 15 घंटे काम करना सीख जाए, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में उसको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, पर जो 14 से 15 घंटे डिसिप्लिन होकर काम करना सीख जाए, वो जीवन में असफल नहीं हो सकता। हम एक्चुअली थोड़ी सी गलती जो मुझे लगती है कि बच्चों को या अभिभावकों को भी मैं कहता हूं कि हम कोटा क्यों आए हैं। हम रियलिटी में कोटा या किसी भी, हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम रियलिटी में सफल होना चाहते हैं। हम बच्चे को गलत तरीके से ट्रैक करने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर तूने आईआईटी नहीं निकाली या तुमने आईआईटी नहीं निकाली तो तुम असफल हो जाओगे। मैं कहता हूं सफल होने का क्राइटेरिया सिर्फ आईआईटी, डॉक्टर ये नहीं है। सफल होने का क्राइटेरिया डिसिप्लिन होके, कर्मठता के साथ फोकस होके एक ही चीज के लिए काम करना। ये कोटा शहर सिखाता है। इसलिए 100 में से 95 बच्चे वहां पे जीवन में आगे सफल होते हैं। किसी एक एग्जामिनेशन से अपनी सफलता के मापदंड को नाप लेना ये गलत है। जो बच्चे के लिए आप कह रहे हैं प्रेशर ले लेते हैं, शायद इस डिफरेंस को वो कभी कभी नहीं समझ पाते। वो जो संघर्ष है, एक बहुत बढ़िया आईएएस ऑफिसर से 2 मिनट और लूंगा सर। उन्होंने जब उनकी AIR 1 आई 3 साल पहले के उनका इंटरव्यू, उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम बच्चे या लोग संघर्ष और दुख में अंतर नहीं कर पाते हैं। संघर्ष कर्म से आता है। हम 15 घंटे काम कर रहे हैं, इस संघर्ष को हम दुख मानने लगते हैं। ये दुख नहीं है, संघर्ष है। अगर हमें जीवन यात्रा में कुछ ना कुछ पाना है तो हमें संघर्ष से प्रेम करना पड़ेगा। जिस दिन हम संघर्ष से प्रेम करना जान जाएंगे, उस दिन शायद हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। दुख वो है कि हमने कोरोना में किसी अपने साथी को, अपने सहयोगियों को, किसी परिवारजन को छोड़ दिया जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये दुख है। तो पहली बात, हम बच्चे को ये समझाते हैं कि संघर्ष यात्रा है जो जीवन में आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। अगर इस डिफरेंस को बच्चा समझ लें तो वाकई वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि कुछ अप्रिय घटना कोटा में हुई हैं
जो नहीं होनी चाहिए, पर अगर आप परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो पूरे शहर में स्टूडेंट्स में दैट इज द सेम परसेंटेज। कोटा को हाईलाइट बिकॉज ऑफ एनी रीजन शायद ज़्यादा करा जाता है। मैं इसके बाद ये नहीं कहता हूँ कि एक शिक्षाविद होने के नाते हमारा उसमें कर्तव्य नहीं कि हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए उसके लिए, और हम कर्मठता से काम कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ कि मोशन में ऐसी अप्रिय घटना आज तक कभी नहीं हुई है जिस संस्थान को मैं चलाता हूँ। तो शिक्षाविदों से भी ये अनुरोध है कि बच्चे को एक दोस्त की तरह पढ़ाइए, उसको ये समझाइए कि सफलता सिलेक्शन में नहीं, सफलता उस कर्म में है जो आप यहाँ पे आके कर रहे हो और जो यहाँ पे आके आप सीख रहे हो। अगर इस डिफरेंस को समझ जाएगा तो रियलिटी में वो जरूर सफल हो जाएगा। डेफिनेटली कोटा के कुछ लोग बहुत सफल हैं। इनफैक्ट एक सेशन मैं करने वाला हूँ इसके बाद। भाविश अग्रवाल, हु इज फाउंडर ऑफ ओला, एंड ही ऑल्सो वेंट टू कोटा। करेक्ट। बट ही सेड ही ओनली प्लेड वीडियो गेम्स देयर। ही विल टॉक अबाउट इट इन दैट सेशन, ये हाईलाइट है। बट आपने कई बार कहा है कि मेहनत बहुत आप करते हो, आप खुद बहुत काम करते हो। 3 वर्ड्स आप बहुत यूज़ करते हो, जिद, जुनून, मेहनत, टू मेक इट इन लाइफ। फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू मेक इट इन लाइफ, एंट्रेंस एग्जाम हो, कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, जिद, जुनून और मेहनत, ये आपके 3 सीक्रेट्स हैं। व्हाट इज दिस? बिल्कुल है। मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। तो फादर ने एक ही बात बताई कि जिद जब तक नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि सर ने बोला, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था। कई बार एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दे आर ओनली रनिंग टुवर्ड्स फंडिंग एंड ऑल। मेरे हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए फंड चाहिए, मैं मानता हूँ, बस उससे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए जुनून। और जैसा कि मैंने बोला कि जिनको भी आप सर्व कर रहे हैं उनकी केयर करना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से 3 पैरामीटर हैं जो सभी के पास होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स गुड। एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली एड टेक आजकल काफ़ी चल रहा है। इंटेंशन अच्छा है, ठीक है भाई, सबको मिल जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए एजुकेशन में, लेकिन अनएथिकल बिहेवियर भी बहुत है। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा, गवर्नमेंट ने कहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया कंपनी का और हमें लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बिवेयर ऑफ सर्टन एडटेक स्कैम्स। व्हाई इज द गवर्नमेंट सेइंग दैट? आर दे रॉन्ग और इज देयर समथिंग हैपनिंग? टू बी ऑनेस्ट, जिनके लिए बोला गया है मेरे को उसका बहुत आइडिया है नहीं, पर हाँ काम उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है, आई रियली डोंट नो, पर फंडिंग के प्रेशर में हो सकता है कि कुछ ऐसी टैक्टिक्स अपनाई गई हो विच इज़ नॉट लॉजिकल, विच इज़ नॉट करेक्ट। अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से जैसे स्कूलों पर या किसी भी शिक्षण संस्थानों पर गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, वैसे ही एडटेक्स पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे होनी चाहिए। हम इसका सम्मान करते हैं और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। रही बात शिक्षा की, तो सर मैं थोड़ा सा इस पर शिक्षा पे ये बोलना चाहूँगा कि हमें शिक्षा प्रणाली, शायद हम शिक्षाविदों को बदलने की थोड़ी आवश्यकता है। वो इसलिए है कि आज से 50 साल पहले हम किसी बच्चे को कोई नॉलेज देते थे तो उस नॉलेज को गेन कर कर अपना पूरा जीवन यापन उसी क्षेत्र में और उसी टेक्नोलॉजी, उसी प्रोसेस के साथ निकाल देता था। आज की तारीख में हम शायद इस बारे में, एडटेक को जो मैं कहना चाहता हूँ, हम इस बात पे प्रोसेस पे जा रहे हैं कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से पढ़ाएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे आसानी से, इस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर 5 साल में हर प्रोसेस को करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, इनोवेट हो रहे हैं। तो एजुकेशन में ये एम्पावर करना जरूरी है कि बच्चे को नई चीज सीखकर, खुद से सीखकर अप्लाई करने की हैबिट होनी चाहिए। उसे हमने कोई आज एक ज्ञान दे दिया और 5 साल बाद बदल जाएगा, उसमें जरूरी ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो नई चीज सीखे और उसे अप्लाई करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एजुकेशन सेक्टर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी आने वाली नई पीढ़ी नई चीज सीख पाए, सिखा पाए और फिर उसको भी अप्लाई कर पाए। राइट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, राज्यवर्धन उसका नाम है। वो कह रहा है 12th के मार्क्स की क्या वैल्यू है? सारा फोकस एंट्रेंस पे है, हर जगह फ्यूचर एंट्रेंस पे डिपेंडेंट है। अब ये 12th के बोर्ड के नंबर हैं, क्या करें इनका? और इसके लिए अलग मेहनत है, इसके लिए अलग है, और वो एंट्रेंस, आई मीन व्हाट इज योर व्यू? आई मीन आई नो यू आर नॉट रनिंग द CBSE ICSE, तो एक्चुअली मेरा इसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको देना चाहूँगा। कई बार हम बच्चे हमसे बहुत तर्क करते हैं, हमसे भी रोज करते हैं, बोलते हैं कि ये क्यों पढ़ें, ये तुम्हारे काम आएगा ही नहीं। कई बार हमें वो भी करना होता है जिसकी मान्यता है। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, लाल पीला मिलाते हैं नीला निकल आता है, समझ तो कुछ आता ही नहीं है। अब ये लाल पीला मिलाते हैं नीला निकल आता है, ये सच्चाई है केमिस्ट्री की कि आपको रटना पड़ेगा। मुझे लगता था इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैंने उसे पढ़ा नहीं, फिजिक्स मैथ्स ही पढ़ी ज़्यादा, फिजिक्स में पहली बार 0 आए तो उसमें बहुत मेहनत करी। विश्वास मानिए मेरे केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आए क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। इस वजह से मेरी IIT में 3000 रैंक आई, पर वो पढ़ना जरूरी था। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि मान्यता है कुछ चीज़ों की। आज जो हमारे पास
जिसे हम मनी बोल रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि इसकी कोई मान्यता नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर आज उस पेपर की भी वैल्यू है क्योंकि उसकी मान्यता है। अगर बोर्ड की मान्यता है और पूरी दुनिया उसे पैरामीटर मानती है और देश हमारा पैरामीटर मानता है, तो आपको भले आज उसमें हो सकता है कुछ कम लॉजिक नजर आता हो कि मैं तो आईटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, बोर्ड से ऊपर का मुझे क्राइटेरिया समझ में आता है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 12th की परसेंटेज, उस 10th की परसेंटेज भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको उस क्राइटेरिया से देखती है। अगर आप उसमें उस मापदंड में खरे नहीं उतरेंगे तो वास्तविकता में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो जो मापदंड दुनिया ने सेट करे हैं, देश ने सेट करे हैं, उस क्राइटेरिया में आपको एक बार अपने को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं कम लॉजिक नजर आए, कहीं पे ज्यादा लॉजिक नजर आए, पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस चीज की मान्यता है जिसकी वजह से मेरा करियर आगे जाएगा। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि बोर्ड्स को भी पूरी प्राथमिकता दीजिए। अगर आपने वास्तविकता में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको मुश्किल से रोज 1 घंटे देना है और आपके बोर्ड में भी 95% से ज्यादा आएंगे और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपनी में, अभी थोड़ी देर पहले मैं नारायण मूर्ति साहब को सुन रहा था, जब उनकी कंपनी भी हमारे आईटी में आती थी तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया लगाती थी कि बच्चे की 10th में या 12th में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, भले उसने कैसा भी परफॉर्म करा हो आईआईटी में। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फेलियर की बात करेंगे। हाउ डज वन कॉन्कर फेलियर? और आपकी कई बार आप ये लाइन बोलते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं, तो इसका क्या मतलब है? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, ये कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं सभी बच्चों को बोलता हूं भाई आपको लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 110%। अगर आप कर्म नहीं करते हैं, कर्म नहीं कर सकते आप, तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम बच्चों को सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, कि जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये बच्चों को हम लगातार सुनाते हैं। और बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि, क्योंकि आपने पूछा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, तो वास्तविकता में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माय माइंडसेट। बहुत छोटे छोटे चेंजेस। जब मैं आईटी में गया तो विश्वास मानिए 2003 में मैं आईटी में गया तो बहुत मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। तो मेरे सीनियर ने मेरी रैगिंग ली और मुझसे बोला कि कंप्यूटर चालू कर दे। रैगिंग हुआ करती थी उस समय, वो एक अलग टॉपिक है। तो रैगिंग हुआ करती थी, मेरा कंप्यूटर चालू कर दे। विश्वास मानिए मैंने कंप्यूटर देखा नहीं था 2003 में, जबकि कंप्यूटर्स आ चुके थे, मैंने देखा ही नहीं था। अब वो जो मॉनिटर होता है उसी को जाके मैं दबा रहा हूं। तो जब मैं उसको जाके दबा रहा हूं तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा कि कंप्यूटर कहां से चालू होगा। तो वहां जाके मुझे पता पड़ा कि रियलिटी में कंप्यूटर ऐसे चालू होता है। खैर, मैं शायद माइंडसेट की बात अपनी बता रहा था। ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय जीवन जो बच्चा होता है उसके पड़ाव आते हैं, बहुत छोटे छोटे। शायद आपको बहुत छोटी सी बात ही लग रही होगी, पर एक बच्चा जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की डेफिनेशन अलग है। हम मध्यम वर्गीय परिवार मानते हैं, अगर आप ढंग से डेफिनेशन देखेंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार हम उसको मानते हैं जो महीने के 50,000, 60,000, 70,000 कमा रहा है। ये मध्यम वर्गीय परिवार नहीं है, ये अपर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास वो है जिसकी कमाई सिर्फ 10 से 15,000 रुपए महीने की है। ये रियल मिडिल क्लास है जिसमें 70 से 80% देश वास्तविकता में। उस बच्चे को अगर ऊपर ले जाना है तो आपको धीरे धीरे एक्सपोजर देना पड़ेगा और रियलिटी में उसके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जो व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद में भी देखा है। ठीक है एनवी सर, अब मुझे समझ आ गया आपका सीक्रेट क्या है। आप अपने रेज्यूमे में ना सिर्फ फिजिक्स टीचर मत लिखो, आप लिखो फिजिक्स टीचर भी हैं और कवि भी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ शेयर किया। दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। थैंक यू एनवी सर, बिग अप्लॉज फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच इंडीड एनवी सर। जिस तरह से आपने आज हमसे बात करी, वी कैन टोटली रिलेट। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा, हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Ideas of India co-presented by
डाबर वैदिक टी, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। को-पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। टेक्नोलॉजी पार्टनर क्रिएट टुडे एनरिच टुमारो पैनासोनिक। गोल्ड पार्टनर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स, डिजाइन ऑफ इंडिया फॉर यू। पार्टनर बीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस, गो गैस, क्लीन एंड ड्राई। नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज, सिडको, वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. आपकी जोड़ी होती थी सलीम जावेद, एक जोड़ी में आप जी और फिर then in the 80s you separated. Was it like one day or was it a built up? Because मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल काफी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, साथ में स्टार्टअप खोलते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं, फिर थोड़े सालों बाद अलग हो जाते हैं. Was it amicable? Was it like, do you want to talk about it? नहीं, अलग-अलग केसेस में अलग-अलग होता होगा. In our case it was totally amicable and extremely civilized. देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी की पार्टनरशिप में सीमेंट फैक्ट्री बनाई है या टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है या स्टील फैक्ट्री बनाई है, आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज ईजियर कंपैरेटिव. Professor Nandi, I think I'd like to jump straight into the conversation. You've been writing about violence for a very long period of time. You wrote a book on the Ram Janambhoomi Ayodhya movement and the destruction of the Babri Masjid. You've written extensively about partition violence. And 40 years ago, you wrote a book called The Intimate Enemy, The Loss and Recovery of Self Under Colonialism. This session itself is called Living with Violence, the Demons Within Us. Would you explain to us what you think are the demons within us? Who and what is the intimate enemy? Frankly, the title was not chosen by me. It has been imposed on me. Otherwise, I would have probably started at a different level, and I would have tried to ask you a counter question. Okay. I would like to ask you a counter question as to why do you think these inner demons are something we have to live with, or we try to somehow are driven by them? That's the question. I mean, I think in my imagination I have been very violent. I not only study violence, but in my imagination, I would like to kill quite a lot of people. But they are not my inner demons, however. You know, because most of them I find will die not from diseases or from natural causes, but by their sheer foolishness. Because they think that they can, by violence, get their way. Or if you ask me what has been my own learning about violence from my own work, I would say that it is the fact that I have come to be, I have become aware, very much aware, that violence itself takes an enormous toll of the killers.
if you see Oppenheimer's film on the killings in Indonesia in the 1950s, mid-50s, if I remember correctly, he, in his documentary on the subject, actually makes the killers play roles which they had played during the killings. And though Oppenheimer is not a psychologist or a psychiatrist, but without knowing his picture of his portrayal of the killers and the responses of the killers reveals in this documentary to be basically all psychologically disturbed, some of them heavily so. Similarly, in my study of the partition violence, we ran into several killers. And over the period of something like 20-25 years, I have met only one killer who seemed to me a normal, functioning individual. The rest are different variations of the kind of killers I would expect to I now expect to meet, who are themselves in the process of killing has lost their sense. I can give you some stories on that also, but I don't want to take that much of time. Only one person in the partition killing, because he had the attitude of almost like fighting a war. They were attacked and they hit back. They resisted and in the process killed. And he is the only one I have met possible can truly be classified as a normal person, human being after the experience. The rest are all psychologically bent. They are living they're living with their past, and many of them have not lived a very happy life. I mean, for example, everybody knows that about this case, that there was this Bajrang Patel or something who in Gujarat riots killed a lot of people. Now he is now in jail, but he has turned schizophrenic from the accounts I've heard already. So this is not abnormal. This is the normal record. If I can give you another example, Udayan Patel once told me in Bombay that accidentally he ran in Chopatti into a group of killers who had looted an electronic shop during a riot and killed the owner, who was a huge man. And the killer, so he got interested. I said, may I join? And he listened to this, and they were happily said, yes, why not? They didn't know that he was a psychiatrist. Let me just I want to finish this. He said to me that this man described in great detail how he killed this Ravan, whom we call Ravan, the owner of the shop, because he is also a huge man, so on and so forth. And then how he went home peacefully, and his sister had cooked his food and lived a started normal life. But while leaving and dispersing, he left his card to all of them. So in case you need me ever, do give me
one day, when he was getting out of his clinic in the evening, he came out and found this man, the killer, waiting, and said, "I want to talk to you." He said, "I'm going out today. Can you come another day?" He said, "No, I want to tell you what my problem is." He said that Ravan I talked about is taking his revenge, because I cannot sleep, I have lost my appetite, and whenever I'm about to feel, this Ravan now takes the form of some kind of insect and enters through my toes into my body. Anyway, I don't want to go into the details. So this kind of, the psychopaths are also psychotic often. And that's the way they learn to live for the rest of the life. Killing has its own costs. That's what I want to tell you. Yeah. So, but I think there are many ways in which one can think about the question of violence, and particularly the question of violence in India. And perhaps we can revisit in just a few minutes some of the ways in which the violence of the partition, for example, is very different than the violence of the Holocaust. The Holocaust was a form of social engineering, and what is remarkable about the partition, when you look at the testimonies of people, is that many of the people say that they can't really understand how it happened. It just happened in a way. They have really no explanation. People who were very close to each other suddenly turned upon each other. Right? So I think that there are different ways in which one can think about it. Let me just go back, however, to the question of colonialism for a moment. From my standpoint, at least, I think one of the most powerful books that has ever been written upon colonialism is your own book, The Intimate Enemy, to which I referred earlier, The Loss and Recovery of Self Under Colonialism. And this is really a book about the violence of colonialism. Right? Now, would you say that the violence that was visited upon us through colonialism is still with us, and that in some ways, perversely, we have actually improved upon it because we are now a nation state? And is it not the case that violence is intrinsic to the very idea of the nation state? Yes, the victims do have their way of internalizing what they are victims of. And it is our job to give this message to the victims that they are not only victims, they have in some sense become a carbon copy, if not a carbon copy, partial copy of the killers, of the oppressors. And until and unless they learn to be conscious of that fact, this chain of killing and passing on the idea of killing, whether it is in the form of a nuclear warfare or in the form of small term riots, there is no escape for paying the cost of killing. It doesn't have to come through law. It doesn't have to come through law. It comes through the inner processes within your body. Human beings are genetically not programmed to kill. In fact, it is very difficult to train a person to kill. Previously, in the American system, this is one example only. American system, they used to do target practice, which our army still does. You set up targets and you shoot at them. Now,
the Americans have found out, this is because European data now shows that a large proportion of soldiers, even in wartime, when a world war was being fought, even then, the moment the officers are absent there, and the moment there are other soldiers are not nearby, they do not fire to kill. They shoot, but deliberately they try not to kill. So they got scared. So the now American target practice is very different. They no longer set up targets and allow the people to see how close they go to the target and that kind of stuff. They have set up things where the cardboard or wooden cutouts of the target are set, human beings, and they come out. It's like a stage. They come out from the two sides and come, and you are supposed to shoot at them without seeing immediately. You are no longer given the time to think that you are practicing killing, or you are no longer given time to think that here is a human being there. So it comes and you have to hit. And that has been sophisticated now more and more, and you get better killers if you think. But I do not think that solves the problem of mental health of the soldiers beyond a point. Ultimately, you have to pay the cost of killing. Was there not a famous experiment that was conducted at Stanford several decades ago? I think it's the milligram experiment, where it was shown that the most normal people can be pushed into committing acts of violence very easily under certain circumstances. Right? Yes, that's right. That's right. So it is true that there are psychopaths who begin to enjoy killing. There are individuals who are psychologically disturbed enough to do that. But even amongst the Nazi Germans, there were soldiers who had psychological problems, had to be hospitalized. The Nazis were supposed to be ruthless killers, but even there, such cases exist. Let me ask you about violence with regards to an idea that you have put forward in many of your books. I want to ask you about the question of violence in relationship to what you call the imperialism of categories. In much of your work, you have described a very, what we might describe as a very strange kind of modern phenomenon under which certain terms acquire a new life and that the older terms become entirely obsolete. So therefore, social change becomes development. The oppressed become the proletariat, right? The cultures that were oral cultures become the cultures of the primitive. And I think that in much of your work you have argued that this also is in fact actually a kind of violence. Yes, that is also one kind of violence. And I think, let me put it this way, that one of the key factors, we all have lived through so many riots in India. There's no doubt in my mind that all of you have either experienced or seen or been told about or informed by newspapers about riots. Now, one thing I found out in my work, that it is the cruelest
cruelest and most violent forms of riots, and I would say also I should use the word cruel, I deliberately, cruelest forms of violence, of the kind which, for example, you hear of partition violence in Punjab particularly, not so much in Bengal, though there were huge riots, but not that cruelty which you saw in Punjab. This kind of cruel violence comes mainly when the two parties are not strangers, but are very close to each other. Like in Punjab, the Hindus and the Muslims were very closely intertwined. In Bengal, at least, there was a hierarchical difference. Most of the Muslims were poorer, and most of the landowners were Hindus. So, it was a slightly different story. But wherever this intimacy and closeness comes very close, that leads to more cruelty and leads to more violence. The annihilatory imagination enters the picture there. This is partly because I have a feeling this is the case with the German Jews, because German Jews were the most integrated Jews in Europe. They all spoke German, they were in many ways, they intermarried and so on and so forth. And yet they become the targets. And similarly, in Rwanda, for instance, the Hutus versus Tutsis, it is well known that these two communities were so close that anthropologists felt that they could not culturally differentiate them. There was a lot of intermarriage. Likewise, in the case of the violence in this is quite recent, you know. In the Balkans? In the Balkans? In Balkans. In the Balkans? So, but not Balkans. The Muslims were the targets there. Yeah, Kosovo, Bosnia. Kosovo. Yeah, that's right. Yeah. That. Right. Now, in Kosovo, the data was available that something like 10% of the Muslims were married. In the intermarriage of Serbs and Muslims were something like 10% of all marriages. But if you ask them about their relationships, they will say something like 30% of the people said that they have Serb relatives. And it was one of the cruelest and almost unprovoked violence that they had to face, the Muslims. Yes. This is because in this kind of thing, there is this other problem. In fact, one psychiatrist said that in the case of Kosovo, that we were lived happily, peacefully, and unaware that we were a divided people. Now the Serbs, some of the leaders found out that they could convince their countrymen that the other Serbs that they have been suffering because of the Muslims. This is one. I'm giving this example because this is very close to also our experience in many other places. You concentrate on the majority community over a period of time and convince them
that they have been discriminated against. And gradually the majority begins to think like a minority. And then this gives you a perfect alibi that you, first of all, mobilize the majority community as possible killers, but also in the process you ensure, suppose one of the questions nowadays many people ask me is, why are there so many countries becoming undemocratic, authoritarian? Erdogan in Turkey, Duterte in Philippines, and so on. So on and so forth. Yeah. You know, it's a long list now. One of the reasons for this is this, that once you have mobilized the majority community in this fashion, and they begin to think like a minority, but on the other hand, in the electoral system, they ensure your continuity. Right. So the democratic system, you have technically protect the democratic system, but you also ensure your survival in politics. So, it is perfectly safe. And but the other important point is this, that this kind of cruelty comes when the two, as I said at the beginning, that you are so close to each other that you are, on both sides, you feel, particularly by the dominant party, that you are contaminated by the presence of the other within you. And you, while killing the other, you are ensuring that the other within you is also eliminated from within you. You are purified by that killing. Many of the animosities that you have described were actually captured by Freud in a phrase which he called the narcissism of minor differences. That people who are very close to each other, in fact, are the ones who are very likely to actually be extremely hostile to the other. But you know, we have very little time remaining, and I had a number of questions which I'm going to have to skip, but I just want to get to the last set of questions very quickly. That is that you have written on a vast array of subjects, moving effortlessly from popular cinema, cricket, cuisine, to cultures of science, secularism, politics, genocide, Gandhi, the mathematician, the life of the mathematician Ramanujan, and so on and so forth. I mean, who else but you could have written a piece called The Philosophy of Coca-Cola? Or who else could have written a book on cricket called The Tao of Cricket, the very first line of which is that cricket is an Indian game accidentally discovered by the British. So what I want to ask you very simply is, what is your thought about thought? What is the nature of thought for you? I never thought that I thought. I've been always been challenged by looking for, by the idea of looking within, not without. Looking within a person. To me, everybody is a potential killer and everybody is a potential victim. There's this Prasanna, this Kannada playwright and theatre director. Yes. He used my work on the assassination of Gandhi
to make his group, everybody play in the same the role of both Nathuram Godse and the role of Gandhi. So making it clear that the two vectors, Godse as a vector and Gandhi as a vector, are within all of us. And this is a very different way of looking at the killers, because to some extent, in fact, Bruno Bettelheim, the psychoanalyst, takes a very strong position on this, that do not study these killers that much, because then you will come to the conclusion they could not but be what they are. So they are not responsible for their killings. They are responsible for, they are driven by their past. So that part of the story. This is the one way of looking at it. Okay. Last question, which is the following. In asking this question, it's got two small questions within it. In asking this, I am thinking of a conversation
આ નવા મેન્ટેનન્સ હેડને ઇન્ડીડ પરથી હાયર કર્યો? ના સર, તે મારા પડોશીનો ભાઈ છે. હવેથી ઇન્ડીડમાંથી હાયર કરજે. ઇન્ડીડ સર. पहन के जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका. बाय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का. चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है. सुन जरा मस्त ग्रूव है, मामला फूल प्रूफ है. सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली. लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका चमका चमका. शो मी द ठुमका. I'm a pro at riding a scooter. Yes. And now we'll just unveil these two scooters because they have a very nice color combination which you will know the moment we unveil them. So come, let's do it. Okay, the tricolor. Also, I need to give a few disclosures. Bhavesh is a friend of mine. Doesn't mean I'll go easy on you. Thank you. And I am actually the owner of an Ola scooter, but it was not gifted to me. No, you bought it. No, I bought it because I wanted to buy it, and I actually use it a lot. I've posted on Instagram. मैंने Instagram पे भी पोस्ट लगाए हुए हैं उसके बारे में. मेरे पोस्ट पे लिखा हुआ था, मैं बैठा हुआ था स्कूटर पे, मैं लिखा था ओला पे बैठा एक भोला. ओला पे बैठा है भोला? हाँ, और मैंने लोगों को कहा कि कविता कंप्लीट करो, और लोगों ने क्या पोएम्स लिखे. मैं भोला तो हूँ यार. मुझे तो नहीं लगता चेतन. तुझे नहीं लगता? I know you deeper. Bhavesh of Ola is the bhola. But it's amazing to be here, Chetan, with you. You know, when you messaged me about this, I was very excited, and I've seen you. You're a dear friend, and I thank the organizers for having me here. And Hindi में, हाँ. तो धन्यवाद. नहीं, thank you. भावेश, इतनी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर मैं तो काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन शायद लोगों को कुछ चीज़ें आपके बारे में नहीं पता है. लोगों को बस एक चीज़ पता है कि आप बहुत अमीर हो. मैं बहुत अमीर हो. मैंने चेक किया गूगल पे, कई बार गूगल सही भी नहीं होता. फिर मैंने चैट जीपीटी पे भी चेक किया है. चैट जीपीटी तो हेलुसिनेट करती है बहुत. वो तो कभी कुछ भी करता है. तो उस पे भरोसा नहीं करना है यार. और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई गो इनटू योर जर्नी, तब पता लगेगा कि क्या, यू नो, लाइक विच बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम. एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट कन्फर्म और डिनाई, बट गूगल पे आ रहा है कि आपके यू आर सो रिच. 11,700 करोड़ गूगल पे आता है. कितने जीरो होते हैं उसमें? मैंने भी नहीं गिने कभी तक चेतन. यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, और जब मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा बैकग्राउंड है, मैं लुधियाना से हूँ, स्मॉल टाउन. माय फादर एंड मदर बोथ आर डॉक्टर्स देयर, एंड यू नो, मी एंड माय यंगर ब्रदर, वी आर जस्ट द 2 siblings, एंड वी हैड अ वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग. तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा कि बहुत पैसा बनाना है या बहुत, पर ये जरूर था कि इम्पैक्ट करना है कुछ. अगर अपने लिए, देश के लिए कर सकते हैं तो वो करना है. एंड उसी विजन से और उसी इमोशन से हमने शुरू की थी ओला 12 साल पहले. एंड वो जीरो जुड़ते गए अभी, और होपफुली जुड़ते जाएंगे, बट वो कभी गोल नहीं रहा है और वो कभी काउंट भी नहीं किया है. बहुत ज़्यादा जीरो है, एक नॉर्मल कैलकुलेटर में फिट भी नहीं आते. लेकिन लाइक यू सेड, एक टाइम था जब आप सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थे. आप कोटा में पढ़ने गए थे IIT के लिए. कितने साल के थे आप? मैं 10th तक लुधियाना में था, और उसके बाद मेरी जर्नी थी कि पापा ने कहा कि बेटा इंजीनियर बनना है. मेरे को भी लगा कि ठीक है, चलो इंजीनियर बनते हैं. उस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ पता होता नहीं था, बट देन आई वेंट टू कोटा. और कोटा में सबको पता ही होगा, कोटा इज़ इवन टुडे द सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर फॉर इंडिया. तो हम गए कोटा, 2 साल रहे वहाँ पे, 11th और 12th.
और माँ बाप ने तो पढ़ने के लिए भेजा था, बट हमने पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया वहाँ पे। तो उसके बाद 2 साल बाद क्या किया सब कुछ? वो ऐसे फोरम में सब मैं बता नहीं सकता, बट मैं पहली बार ही घर से बाहर निकला था, एंड दिल तो बच्चा है, राइट? तो पहली बार ही 11th स्टैंडर्ड में मैं आई थिंक 15 years old, 16 years old, साइबर कैफे में जाते थे, हम मूवी देखते थे, गेम्स खेलते थे, कंप्यूटर गेम। कौन सी मूवीज देखते थे? अभी लेट्स ड्रॉ द लाइन देयर। एजुकेशनल मूवीज, वेरी एजुकेशनल मूवीज। देन वी यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स। मैं रोज रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक साइबर कैफे में ही होता था। मैंने सुना वीडियो गेम्स, कौन सी वीडियो गेम खेलते थे? एज ऑफ एम्पायर्स एंड काउंटर स्ट्राइक, एंड I can go into my gaming repertoire, but इसकी वजह से आपका नहीं हुआ फिर? हाँ, तो उसके बाद 2 साल बाद कोटा में मैंने कोट एंड कोट पढ़ाई करी, एंड I couldn't get through IIT. So I came back to Ludhiana for 1 year, locked myself in a room and studied hard and essentially taught myself the subjects, because Ludhiana में कोई coaching कुछ नहीं था. So I taught myself, and then I got through IIT Bombay with a rank of 23. You got 23 All India? मतलब आप वो जिनकी फोटो आती है, वो जब हम जाते हैं शहरों में, ऐसे वो बोर्ड पे फोटो लगी होती है, ऐसे घबराए हुए से बच्चे ऐसे, AR 23 भावेश ऐसे लिखा हुआ था। पर क्या 1 साल में क्या बदला? कोटा में आवारागर्दी के बाद ऐसा क्या हो गया लुधियाना में या IIT वगैरह? मतलब कम ऑन यार, लुधियाना है वो, वहाँ कौन पढ़ेगा ये सब? पर व्हाट हैपेंड? नहीं, उसके बाद जब कोटा में 2 साल में नहीं हुआ, घर आए वापस, तो पापा ने बोला बेटा अगर तुम्हें पंजाब में कॉलेज ज्वाइन करना है तो कर लो। तो लोग जो अच्छा Tier 2 कॉलेज, तो मैंने कहा नहीं पापा, मुझे 1 साल ढंग से कोशिश करनी है, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, और मैंने 2 साल कोशिश नहीं करी, वो इस बार करनी है। एंड वो 1 साल मैंने बहुत मेहनत करी खुद से। मैं रोज़ सुबह हर वीकेंड पे बस लेके लुधियाना से चंडीगढ़ जाता था, ST बस, वहाँ पे एग्ज़ाम देता था FITG का, वापस आता था, फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आते थे, and then through the year मेरी performance improve होती गई, and that whole journey I believe was one of the more foundational journeys for me even today, that the lesson of hard work and first principles thinking, and the fact कि अगर दिल में कुछ करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो, that I learned from that 1 year, and I feel that was a very foundational year for me in my life. तो फिर हो गया IIT में मम्मी पापा खुश, फिर आपने IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की, राइट? फिर आपकी फर्स्ट क्लास माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लग गई, जैसे लगनी चाहिए बच्चों की, राइट? पर आपने छोड़ दी 1 साल में, 1.5 साल में। क्यों? एक्चुअली IIT में भी 4 साल मैंने बहुत मस्ती करी। आउटसाइड पढ़ाई भी करी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी। आपकी वाइफ भी आपको बॉम्बे में तभी मिली? हाँ, मेरी वाइफ, और वो वाइफ यहाँ पे बैठी है, राज इज हियर नाउ। सी एवरीबडी इज मोर क्यूरियस अबाउट हर देन यू। अच्छा, देखो सबकी नजर वहाँ पे कौन है? That's the one in the maroon top. And yeah, I'll talk to you, Raj. इसकी हरकतें मेरे को आपसे बात करनी है वैसे। We met actually in Bombay at a rock climbing camp of all places. And पहाड़ी पे चढ़ के वो I saved the damsel in distress. गिरी है? नहीं, ऐसी वो ये नहीं थी। तू गिरा, इसने पकड़ा। मैं गिरा था, जिसने पकड़ा था। तो IIT में आखिरी 2 साल तो हमने I spent time with my then girlfriend and now wife, but उसके बाद फिर भी I got a good job, Microsoft. But as I was going through this journey, right, it was getting clearer to me that my own satisfaction was not there in just doing a job. I felt I wanted a more creative outlet to build what I wanted to build as in terms of a company. I had, even though I'm from a Bania family, but my parents are doctors, so sometimes they say these things skip a few generations. So I think it came into me कि तुम्हें धंधा खोलना है, right? था शुरू से धंधा ही करना है। शुरू से था कि कुछ खुद का करना है। हाँ। And फिर वो 2010 में मैंने नौकरी छोड़ी और ओला शुरू करी। ओला was not what Ola is today then. तब ओला क्या था, उसका क्या ऑफिस था, और मतलब it was a travel agency, क्या था? तो ओला starting में it started as a website to book tours. कैसे टूर? जैसे आप दिल्ली आए, आपको आगरा जाना है तो आगरा में टूर गाइड बुक करना है, तो इस टाइप का। तो उसका नाम था olatrip.com. ओला क्यों नाम रखा? Ola is a young, sexy, youthful brand name. Okay. Right? So Ola means hello in Spanish, but it's also young and nice. And सच बोलूं अगर तो उसका डोमेन नेम भी अवेलेबल था तब। हाँ, और कुछ था नहीं। जेब में पैसे तो थे नहीं। हाँ। तो उसका 1000 रुपए में 1000 रुपए में आपने ओला का डोमेन लिया। वाओ। अगर नहीं मिलता तो शायद कुछ और नाम होता है। तो लिटरली जैसे अगर मेरे को ऐसे आगरा जाना है, हरिद्वार जाना है, उसके लिए टैक्सी बुक करानी है, आप वो व्हाई दैट बिजनेस? It just felt like वो ऑनलाइन हम कर सकते हैं और कोई कर नहीं रहा था 2010 में।
बट देन वो जब शुरू किया, आई रिमेंबर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी तब दिल्ली में, तो दैट इज अ बिग इंसिडेंट. हाउ what your beginnings are, that moment has really touched me कि how he started marketing his business. So तो हमने वेबसाइट बनाई, हमने मतलब मैं ही था अकेला तब. It was one person. रात को बैठ के मैं वेबसाइट बनाता था और सुबह बैठ के मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जाता था और पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था ओला के. So this is how in the early days. कौन से स्टेडियम में? वो जो मेन स्टेडियम था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. हाँ, वहाँ पे. तो you would go there with these pamphlets की आगरा टूर, हरिद्वार टूर, एंड जो लोग गेम्स देखने आए थे उनका वो बांटते थे. बहुत ही कम लोगों ने बुक किया टूर. एंड दैट मेड मी रियलाइज, बट लोग बोलते थे यार टूर वो होटल हम फिगर आउट कर लेंगे, तुम हमारे लिए गाड़ी अरेंज कर दो. So that's how Ola Trip became Ola Cabs. Okay. And that's when I pivoted to only offering cabs. So Ola Trip became a website to book cab services for intercity. So that's how we first started with Ola Cabs, and then we added the services that you see now. के app में button दबा के गाड़ी लाओ anywhere, anytime, right? So that got added in due course. When did it start getting big? Because ऐसे टैक्सी सर्विस कंपनीज अगर आप गूगल करो तो बहुत होती हैं, right? Yeah. And IIT के बाद लड़का टैक्सी कंपनी चला रहा है. तो हाँ, घर वालों को मैं अगर आपके पापा होता था एक तो पर हाँ, तो मेरे घर, my father was very supportive, but he was anxious also, anxious but very supportive. But मेरे दादाजी थे तब, तो उनको समझ नहीं आया मेरा आइडिया क्या, तो बोलते तू ट्रैवल एजेंसी खोल रहा है. तो मैंने कहा नहीं दादाजी, दिस इज अ टेक कंपनी, दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो अच्छा है तो ट्रैवल एजेंसी ना. But when did you realize it's getting it, like when did it become big? When did Ola became the Ola we know today? So the first few years were very organic, and that has also held us in good stead because we have never tried to copy a Western model or copy any other model. We've always tried to build के इंडिया की जो रियलिटी हो और इंडिया के लिए क्या बिजनेस मॉडल बने, कस्टमर के लिए क्या प्रोपोजिशन बने. तो 2011-12 में हम ये ओला टैक्सी सर्विस, राइड शेयरिंग सर्विस, वी वर स्टेप बाय स्टेप स्केलिंग इट अप. And then in 2012 we raised our first capital from a venture firm. That changed our life because then we realized that this is a bigger opportunity. We can invest money and grow. उसके पहले मैंने सिर्फ एंजल राउंड रेज किया था, छोटे कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब एंजल इन्वेस्टर्स से. जब मैंने वो 40 लाख रेज किए थे तो मुझे लगा था आज के बाद और पैसा रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अब आप कितना 40 लाख आपने पहले रेज किया था, बट इफ आई मे बी रॉन्ग, आई रीड न्यूज़ रिपोर्ट्स, यू हैव रेज्ड अक्रॉस एवरीथिंग $5 billion. Yeah, around that much. Which is 42,000 crore. हाँ, तो few zeros got added. Zero और है. You have raised it. मेरे को एक बात बताओ, आप इतना पैसा मार्केट से उठा चुके हो, आपको रात को नींद आ जाती है कि यार हाँ दे देंगे कोई नहीं, ये कैसे सोते कैसे हो? नहीं देखो, हमारा एम्बिशन बड़ा है चेतन, एंड पैसा उठाया है बट पैसा ग्रो भी किया है. Businesses have grown, and today Ola Group is 3 businesses. Our ride sharing business and our consumer business is the first one we started with. That's growing very well. We are the leaders in India, number 1 in India. हमारे अमेरिकन कॉम्पिटिटर्स आए थे बट हम उनसे काफ़ी आगे हैं और वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी है बहुत. उसका मेरे को IPO करना था लास्ट ईयर, बट फिर अभी मार्केट्स ख़राब हो गए तो अभी नेक्स्ट ईयर करेंगे. देन मैंने 3 साल पहले ओला इलेक्ट्रिक शुरू करी. ओला इलेक्ट्रिक में हमारा मिशन है कि EV एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन होना है, दुनिया भर में होना है, इंडिया में भी होना है. बट अगर EV रेवोल्यूशन को ह्यूमैनिटी स्केल पे लेके जाना है, वो सिर्फ वेस्टर्न कंपनीज लाइक टेस्ला, रिवियन एटसेट्रा नहीं कर सकती. वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फॉर अ वेस्टर्न ऑडियंस, एंड विच इज़ गुड फॉर देम. बट इंडिया इज अ ग्रेट माइक्रोकॉस्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो EV रेवोल्यूशन ह्यूमैनिटी स्केल पर दुनिया के लिए तभी पहुंचेगा जब इंडिया इलेक्ट्रीफाई होगा. एंड विद इस गोल, इस मिशन के साथ हमने ओला इलेक्ट्रिक शुरू करी, एंड हमने कहा कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाएंगे. सो वी मेड द हम्बल 2-wheeler स्कूटर, विच इज़ actually it looks small but it's packed with technology, and today we are the number 1 EV company also in India. And अभी हमारी गाड़ी आएगी अगले साल, सबको टक्कर देगी, दुनिया में बेस्ट से बेस्ट गाड़ी को टक्कर देगी. and then अब हम कार, you mean a car? कार, हाँ, गाड़ी मतलब कार. हाँ, गाड़ी सर कुछ भी, हाँ, okay. But I've seen the video of the prototype and it is fantastic. Yes, and तीसरी कंपनी जो है चेतन, जो भी हम कर रहे हैं, which is lithium. तो इंडिया में हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बनानी है. द फ्यूचर इज अबाउट टेक्नोलॉजी इनोवेशन. फ्यूचर इज अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रियली क्रिएट अ लेवरेज फॉर इंडिया एंड लीप फ्रॉग अदर टेक्नोलॉजीज. हमने वो डिजिटल में किया, हमने वो ऑटोमोटिव में किया, अब हम वो लिथियम एंड सेल टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज में करेंगे. तो वी विल बी द लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर इन इंडिया.
be building world-class technology products for anybody in the world from India. मेरे को एक मतलब एज अ राइटर आई अंडरस्टैंड दीज कंपनीज आर बिग. पीपल से कि चलो एक कंपनी खोलेंगे, वो इतनी बड़ी हो गई, ओला कैब्स, द ओला ऐप, राइट? देन यू सेड नहीं यार, ओला इलेक्ट्रिक भी खोलना है, स्कूटर भी बनाना है, बाइक भी बनानी है, गाड़ी बनानी है. नहीं यार, लिथियम भी करना है. ये मतलब लोग तो एक दुकान खोल के खुश हो जाते हैं. Where is this coming from? And next question will be to Raj, so I'm giving you some time to prepare. When he works like this non-stop, how is it? How do you see it? How have you played a role? हाँ, but ये first you tell me कि क्या है, एक के बाद एक करते ही जाना है. मेरे ना 2 fundamental beliefs हैं. एक तो ये कि the next 2 decades or the next 10-20 years are going to be accelerating technology generation and convergence of technology. तो ये हमें इंडिया में बहुत ज़रूरी है कि हम कल की गेम खेलें, पुरानी गेम ना खेलें, राइट? तो फ्यूचर बनाएं. पिछले 20 सालों में कितना कुछ हुआ है. फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता था, सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सब पिछले 10-20 सालों में हुआ है. अगले 10-20 सालों में इसका 10 गुना होएगा. तो अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर अस टू बिल्ड द फ्यूचर. तो दैट्स वन कोर बिलीफ ऑफ माइंड. सेकेंड कोर बिलीफ इज दैट दिस इज इंडियाज मोमेंट इन द सन. हमारा टाइम आ चुका है और ये मेरी जनरेशन की डेस्टिनी है कि वो इंडिया का फ्यूचर बनाए बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड बाय बिल्डिंग फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ इंडिया. एंड दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग. एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, चेतन, एंड एंटरप्रेन्योर्स नेवर स्लीप. वाओ, बट यू आर ह्यूमन बीइंग आल्सो. ह्यूमन बीइंग्स नीड टू स्लीप. हम योगा करते हैं थोड़ा. योगा करते हैं. राज, what is it like being, can we have a mic for her? Yeah. I'm genuinely curious. What is it like being married to Bhavesh Agarwal? Well, I'll begin with saying that I'm still married to him, so it's great. But I feel there are very few people who have the kind of clarity of thought that he does, and the kind of drive and ambition that he does. And many people ask me this, and this is not the first time I'm saying this. Pulling him away from what he likes to do or enjoys doing is not going to help anyone, because then he'll make life miserable for everyone around him. So you might as well participate in supporting him in doing whatever he wants, because I mean, and I'm sure there's going to be great good that comes out of it. So we're happy to be and privileged to be on this journey. Yes, and you are helping. You run the Ola Foundation. Do you want to talk about that? What does Ola Foundation do? We started off very small as wanting to help the wives of our driver partners, and we run a small corporate gifting unit where the wives sort of participate. But now we're sort of taking it to the next level and learning from our inspiring parent organization and figuring how to use tech to make these programs scale and have the impact that we envision it to have. Okay, thank you. Thank you, Raj. Sorry, I caught you on the spot like that. चेतन, मेरा ना, सॉरी, हाँ, आई थिंक हर बंदे की एक वो अंदर से आवाज़ होती है. इफ़ यू फाइंड व्हाट यू लाइक, देन लाइफ इज़ अ ब्लिस. देन यू डोंट फील वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है. यू डोंट फील देयर इज़ अ कंटिन्यूम बिटवीन वर्क एंड लाइफ. इट्स नॉट लाइक देयर इज़ अ डिस्क्रीट साइलो बिटवीन वर्क एंड लाइफ. एंड आई हैव फाउंड दैट फॉर माई सेल्फ, राइट. एंड मेरा धर्म है कि मुझे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेसेस फॉर द फ्यूचर बनाने हैं, एंड वही मैं बना रहा हूँ. कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी चीज़ें अच्छी चलेंगी, कभी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बट हम लगे रहेंगे. वेरी नाइस. आप ओला यूज़ करते हो लाइक एज अ कस्टमर? बिल्कुल, ओला भी यूज़ करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक भी यूज़ करते हैं. आपको कभी ड्राइवर ने फ़ोन करके बोला नहीं जाना? सच बताना. नहीं, ये होता है और इसको हम फिक्स कर रहे हैं. नहीं, आपको जब करते हैं आप कहते हैं तेरे को पता है मैं कौन हूँ. नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ ये. अगर बोलूँगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, बट इट हैपेंस. नहीं, ऑब्वियसली होता है. एंड ये जो चैलेंज है कंज्यूमर्स को, ये कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोविड के बाद ड्राइवर्स में, उनकी लाइफ में भी डिस्रप्शन आया था. तो ये अभी जैसे पोस्ट कोविड नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ड्राइवर सारे गाँव चले गए थे, तो पूरी इंडस्ट्री में एक सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी. तो अभी वो वापस आ रहे हैं. हम उनके लिए फैसिलिटीज़ बना रहे हैं कि वो दे फील कंफर्टेबल कमिंग बैक इनटू द इंडस्ट्री. एंड यू विल सी दिस स्टार्टिंग टू इम्प्रूव. ऑलरेडी इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव. आवर मेट्रिक्स आर लुकिंग बेटर ऑन. आई वाज ओनली आस्किंग एज अ जोक. आप तो बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हो. ओला के कभी कभी कूपन आते हैं, 20 रुपीज़ ऑफ, 50 रुपीज़ ऑफ राइड में. आजकल नहीं आते हैं. आजकल नहीं आते, पर आप यूज़ करते थे? आप जब आपको कूपन मिलता था आप करते थे यूज़? मेरी वाइफ जरूर यूज़ करती थी. रियली? और ओला में कस्टमर्स की भी रेटिंग होती है, जैसे ड्राइवर की रेटिंग होती है.
आपकी रेटिंग क्या है? मैं बहुत ही वेल बिहेव्ड कस्टमर हूँ, मैं ड्राइवर को कभी कुछ गलत नहीं बोलता हूँ, so I have a 4.9 रेटिंग। अरे वेरी नाइस, ओके दैट्स एक्सीलेंट। ओके, यू नो इलॉन मस्क ने एक बार बोला कि I've seen and I always call you like the Elon Musk of India, or Elon Musk is the Bhavesh of USA. Tesla is for the West, Ola is for the rest. No, Ola is also going to be the best, I'm sure. But on a serious note, he said कि जो ये automobile business है is the toughest business to make it work, right? वो कहता है मैं 3 साल फैक्ट्री के फ्लोर पे सोया हूँ. He is world's richest man, and कई बार ऐसा मोमेंट आया कि टेस्ला बंद होने वाला था, हुआ भी है, ऐसे रिपोर्ट्स भी आते थे बंद है, and then it finally took off. It's a very, is it true? Is it a very tough business? And there is a like, you know, एक बात है कि हम कार बनाएंगे, ये बनाएंगे. Why have you chosen this, and what makes you feel कि you'll be able to pull it off? It is true. Automotive is one of the toughest industries, and not just toughest, it is also the cornerstone of an industrial society. आप देखो US में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बनी डेट्रॉइट में, और उसके अराउंड सारी वहाँ पे अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने. चाइना ने और जापान ने जब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री was the heart of that. Toyota, Honda, Nissan, and all other industries came around that. India में भी automotive industry is a reasonable industry, and India's industrial base depends on the automotive industry. So it is a core part of a future industrialized society, and it is very challenging. And हमें भी पिछले 12-18 महीने बहुत challenges रहे. हमने अपना प्रोडक्ट अनाउंस किया था August 15, 2021 को, 18 महीने हो गए, एंड उसके अगले 6-8-10 महीने तो बहुत ही क्रेजी थे. I was living in the factory, you know, factory is 100 kilometers from Bangalore. I used to come back once in a while to meet. मतलब you lived in the factory? हाँ, I was living in the factory. फैक्ट्री में हमने बहुत रोबोट्स लगाए, बहुत ऑटोमेशन किया, और वो रोबोट्स ने चलने से मना कर दिया. Really? रोबोट भी कहना नहीं मान रहे? हाँ, रोबोट को कहना मनाने थोड़ा प्यार से होता है. हाँ. तो उसके and we set up an all women's factory. So we also took up many more challenges. And the reason our factory is all women. We have 3,000 young women working in our factory. And the factory that we are building, we have built phase 1, which we constructed in record time, in less than 8 months. From buying the land in February 2021, 2 years ago, to making the first scooter in October 2021. And then उसके बाद भी बहुत challenges थे to scale up production. पहले दिन का 1 बनता था, फिर अभी हम दिन के 1000 से ज़्यादा बनाते हैं. तो वो दिन का 1 से दिन के 2 पहुँचने में मुझे 1 महीना लगा, फिर 2 से 10 पहुँचने में 1 महीना लगा. राइट, वो एक लेयर बाय लेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ी. बट अभी उस एरिया में हम 3 फैक्ट्री बना रहे हैं. हमारी 2-wheeler फैक्ट्री, इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-wheeler फैक्ट्री, कार फैक्ट्री एंड सेल फैक्ट्री. वाओ, वाओ. इट विल बी द लार्जेस्ट EV हब इन द वर्ल्ड इन वन लोकेशन. वाओ. हाउ इज द स्कूटर डूइंग? कैसे कर रहा है? स्कूटर से ही पूछ लेते हैं. नहीं, हाउ इज द सेल्स, हाउ इज द रिस्पांस? Sales, we are the number 1 EV company in India by sales and revenue. By far, हमारा next closest to combined is not equal to us. And you know, we were selling from pan India. We wanted to take this EV revolution pan India from day one, instead of only launching it in big cities, etc. तो हम पूरे देश में online बेच रहे थे from day one, which was also a challenge. किसी ने आज तक automotive पूरे देश में नहीं बेचा. वो गाड़ी पहुंचाने में challenge, फिर RTO में registration में challenge. But we solved all of those one by one, and today we are the largest. We have many more products coming out. हमारी bike आएगी later this year, गाड़ी आएगी end of next year. So we are very excited, and you know, this also is pulling the other people in the automotive industry to accelerate their pace of EV development, which is great for the country. Yes. एक चीज़ है, EV में you need this charger network. जैसे पेट्रोल पंप है इंडिया के कोने-कोने में. Of course, you can charge the car at home, but you know there are these supercharger networks, from what I understand, जो पेट्रोल पंप की तरह आप गाड़ी लगाओ, 20 मिनट चाय पानी पियो, गाड़ी चार्ज हो जाएगी. वो अभी इंडिया में नहीं है, और it's needed to make this EV a really mainstream big thing. Yes. And that's not, I mean, how will that happen? How do you see that happening? तो थोड़ा I agree with this notion के चार्जिंग नेटवर्क स्केल अप करना है. हम भी अपना चार्जिंग नेटवर्क इंक्रीज कर रहे हैं. हमारा हाइपर चार्जिंग नेटवर्क है. इट्स अ वेरी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क. पर थोड़ा सा यहाँ पे ना पूरे सोसाइटी का एक गैसोलीन या आइस व्हीकल्स का बैगेज भी है, क्योंकि हम 100 साल से हमारी गाड़ी को कहीं लेके जाके उसमें पेट्रोल भरते हैं. तो वो एक आदत बन गई है सोसाइटी की. ईवी में वो करने की जरूरत नहीं है. लाइक आप अपने फ़ोन को ले जाके कहीं पे पेट्रोल नहीं भरते हो, आप अपने घर में चार्ज करते हो. इमेजिन फ़ोन के लिए अगर चार्जिंग स्टेशन लगे हो सब जगह. बट तो ईवी आप अपने घर में भी चार्ज कर सकते हो, अपने पार्किंग स्पॉट में. ऑल यू नीड इज़ अ वॉल सॉकेट,
एंड हमारी 95% customers are charging their vehicles in their home, चाहे वो सोसाइटी में बेसमेंट में हो, just all you need is a wall socket. In addition to that, you will need some skeletal charging network. अगर आप बाहर जा रहे हो, बॉम्बे से पूना जा रहे हो, बैंगलोर से मैसूर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा कि चार्जिंग नेटवर्क मिल जाए, हाई स्ट्रीट्स पे थोड़ा सा मिल जाए. बट अगर आज देश में 70,000 पेट्रोल स्टेशन हैं या ऑफ द सेम सिमिलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्जिंग स्टेशन उसके 1/5 चाहिए होंगे. क्योंकि लोग घर में चार्ज कर सकते हैं. लाइक द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट्स, इट इज कॉल्ड द ग्रिड. यस, दैट्स ट्रू. अगर सरकार कोई रेगुलेशन बनाना चाहती है, आई एम नॉट आस्किंग यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर, आप कई बिजनेसेस में हैं, यू आर इन द ओला कैब्स बिजनेस, EV business, batteries business now. What regulations will help these sectors? देखो, एक ब्रॉडर पॉइंट मेरा ये है कि काफ़ी बारी हम इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हम एक देखते हैं कि यार गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम ना कर दे. हम एक बड़े हेजिस्टेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट से एंगेज करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होएगी. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है. मेरा एक्सपीरियंस है कि government has been a big enabler for industry growth. EV में, for example, I feel the Indian government is the most strategic in the world in setting up the right policies, encouraging EVs, putting an incentive structure for the customer and for companies like us. तो I think ये जरूरी होता है कि आप as a company जो कर रहे हैं वो society के लिए अच्छा कर रहा हो, और वो आप as a good salesman सबको educate करें उसके बारे में, especially government को. And अगर government machinery को समझ आ जाए कि आपका business society के लिए अच्छा कैसे है, so then all of them do whatever they can to help your industry grow, and that has been my experience in Ola Cabs also, where state by state initially it was very challenging, but as they understood the benefit to both the drivers and the citizens, they made enabling regulations. And government के भी कुछ focus areas होते हैं जो हमें as businessmen ध्यान रखने चाहिए, जैसे safety is a big focus. In both my businesses, safety is an important area of concern, and we engage with the government. We actually try and be ahead of the curve on safety. That's nice. Okay, I need to ask you this. There have been some articles about you. Only some? I only saw some. पता नहीं बहुत होंगे, हम तो सारे पढ़ते भी नहीं हैं. But let's say Bloomberg, which is a big publication, they had an article about Ola का culture and all coming to you. कि आप पंजाबी में डांट लगाते हो. अब पंजाबी हैं तो पंजाबी निकलेगी ना. हाँ, नहीं, but डांट लगाते हो, and like there's certain aggressive. I can understand because पंजाबी में ना डांट, प्यार भी डांट जैसा ही लगता है यार. मुझे वो बात पता है. हाँ, अगर पंजाबी में दोस्त एक दूसरे को गालियाँ ना दें तो वो दोस्ती नहीं है. But this was an article, while मेरे बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, so that's okay. So I'm not coming from that point of view. पर इस आर्टिकल में it talked about there is this certain aggressiveness, and I can understand आप पे इतना प्रेशर है, इतने 40,000 करोड़ को 80,000 बनाना है या जो भी करना है, you have to grow fast, you have to transform so many businesses. But I don't know. And how do you react to this जब वो कह रहे हैं कि भावेश अग्रवाल has a certain culture which is very बहुत पुश करते हैं ये वो, या उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, मैं नहीं बोल रहा, but I'm sure you've seen it. On one hand, you're trying to build India, you're trying to contribute. हम लोग तो सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, लिखते हैं कि इंडिया का सेंचुरी है, इंडिया विल ट्रांसफॉर्म, इंडिया में ये होने वाला है. आप कर रहे हो, पर लोग ऐसे लिखते हैं. What do you have to? Maybe you can use this platform to clarify some things there. मेरा जो मोटिवेशन है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ. मेरे को यहाँ पे कंपनी बेच के पैसा नहीं बनाना है. पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट पैसा इज नॉट द मोटिवेशन फॉर अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर, एंड ना ही मेरा वो मोटिवेशन है. मेरा सपना, मेरा मोटिवेशन है कि ऐसे कंपनीज बनाएं, फ्यूचर कंपनीज बनाएं जिससे देश को बहुत इम्पैक्ट हो और ट्रांसफॉर्मेशन हो. और वो आराम से बैठ के वर्क लाइफ बैलेंस करके नहीं हो सकता, राइट? सो ओला इज नॉट अ कंपनी वेयर यू कम फॉर अ 9 to 5 जॉब. We are very clear in that. Our proposition to employees or to potential prospective people who want to join us is, come join us and change the world. Change India, change the world, create a legacy for yourself. And that's not for the average person. That is for a certain kind of people who, and Ola इतनी बड़ी बनी है और हम जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं अकेला, I am the face of the company, I get the undue advantage and disadvantage. But there are hundreds of very smart people working with us in so many domains, creating this future, working with years with us, doing it because they believe in the mission and the dream that हमें
हमें ओला को यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, फ्यूचर बनाना है. But is it like, have you like changed your work style as age? जैसे मैंने अपने आप में देखा है, as I have gotten older, I've become little calmer, hopefully. Even in my writing and all, I used to write very angry. I used to be very angry and like, बस सब बदल देंगे. And then over time you feel, it's okay यार, हमें ही बदल ले अपने आप को, वही काफ़ी है. Do you feel like, I mean, how do you see Ola's culture? On one hand, you want to scale the Everest or whatever. Ola's culture is a culture of impact. Okay. You know, we focus on, and you know, I have another point of view here. Sometimes, you know, there is a conversation about business building which goes too much into the domain of culture. Businesses exist to create impact, and to create impact for all stakeholders, starting with society, then shareholders, then customers, employees, everybody, right? And the culture has to be an input towards that output of creating impact, and that's the culture we have. We have a culture of strong impact. We are a hardworking company. It is not an easy journey. आप ये बताओ मुझे, Virat Kohli, can he become the world's best batsman by doing 9 to 5 and then? I don't think and so. कभी-कभी वो भी पंजाबी बोल देता है. हाँ. So that's how it is. Is there stress though? Is there stress? Do you feel the stress, or is it mostly adrenaline, like excitement, or is it? Do you sometimes feel the stress कि यार मैंने कह तो दिया है, अब लोग इतने लोग ऑफिस में फैक्ट्री में लोग लगे हुए हैं, पता like do you feel the pressure or the weight on your shoulders? I don't. I'm not one to take too much pressure or stress, but I definitely have the feeling of responsibility towards all stakeholders who have believed in me, and who I am here because of many people believing in my journey, and I have to definitely deliver to all of them in the future and continue delivering, be it my customers, employees who have put their life's time and energy under my responsibility, investors, society at large. So we, you know, as a company and as an individual, we have to make sure we deliver on that. But stress नहीं लेता मैं ज़्यादा. I sleep well at night. I have fun. Yeah. Okay. But this massive success, this massive impact, which you have already had, has it come at a cost? Like, what do you have to sacrifice in life? I'm asking, जो लोग खुद life में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, they should have a realistic idea कि whatever it is, whether it's काम करना पड़ता है या क्या, has it come? What is the cost of achieving this? You need a very supporting family, and I have been lucky. My wife, she's been very supportive, and we were lucky that we dated for 7-8 years before we got married, and it's been 9 years since we've married. So we've lived more than half our lives together in that sense. So she's known my journey from day one. My parents have been very supportive. My extended family has been very supportive. So, you know, उसके बिना आपको space नहीं मिलेगा, then वो घर पे किचकिच होएगी, फिर then you know you are always ending up compromising your dreams with your like domestic realities, and it becomes better when your dreams and your domestic realities merge into one larger continuum. सब बोला है. Right. You talked of employees, people giving their lives, not just Ola, but I talk from the broadly tech sector. There's news of a lot of layoffs in tech sector across the world, even in India, startups में. In a sector जिसमें कहते थे इसमें तो growth ही growth है, इसमें तो नौकरियाँ हर साल है, यहीं जाओ, कंप्यूटर करो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, ये करो, वो करो, और उधर layoff हो रहे हैं. What's happening? What's your view? I think the software sector globally, not just in India, through the last 5-7 years, especially if you link it to the larger macroeconomic easy money available after the 2008 financial crisis, the software sector was one of the fastest growing sectors in the world. It was the fastest growing sector in all countries. And the exuberance became more institutionalized as a result, and everybody overhired, and the productivity in large big tech companies was low. And now, actually, COVID was a big boon for the sector also. So COVID, maybe while other companies and other sectors were facing a tough time, हम you know पूरे software ecosystem ने दुनिया भर में, not just India, ने overhire किया. Then अभी when at some point reality has to come in, right? तो अभी वो settle हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा shake out हो रहा है, but the fundamentals of this sector are still very strong. And even more so, if you take a future lens to technology trends like AI are going to be so disruptive. While on one hand you can think नहीं but AI से तो you know jobs को खतरा है, but I don't see it like that. I see AI as a massive technological tool for increasing productivity, and we in India as a economy and as all the stakeholders of the economy should really adopt AI with open arms. And हमारा एक बंदा
अगर AI को अडॉप्ट करे तो वो 10x काम प्रोडक्टिव करेगा कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. सो वी शुड बी द फर्स्ट अडॉप्टर्स ऑफ AI, become most productive in the world, and really it will have a significant impact to GDP growth. वाओ, ये जो लेकिन AI आर्टिफिशियल बताता हूँ कैसे. कैसे? हाँ, सबसे पहला, ironically, सबसे पहला sector which will get impacted by AI in a positive way, you can see it in a positive way, is the software developer. अभी software developer code करते हैं. You know, this is the irony because वही AI बना रहे हैं. हाँ. Right? And AI will, now AI is writing code. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एक दिन में लिखता था या एक महीने में लिखता था, वो एक दिन में लिख सकता है. बिकॉज AI will write 90% of the code and this guy can just correct the 10% and now he's 10x productive. Now he can make 10x the amount of work in the same time. Now this is how we need to think about AI. Will it be 10x या लोग कह रहे हैं कि AI आएगा, अभी चैट GPT आ गया, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, हम बर्बाद हो जाएंगे. ऐसे काफी आर्टिकल आते हैं कि अब AI आ जाएगा, वही चलाएंगे सब कुछ, हम तो बेरोज. देखो 30 साल पहले जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तब भी ऐसे आर्टिकल आते थे. हाँ. बट नेट न्यू जॉब्स गॉट क्रिएटेड. AI में भी न्यू टाइप ऑफ जॉब्स विल गेट क्रिएटेड एंड प्रोडक्टिविटी विल एनहांस फॉर द होल इकोनॉमी. एंड दैट हैज टू बी द जर्नी. वी शुड अडॉप्ट AI and just make sure we are the most productive economy in the world. And that's we don't have to go through the same linear curve that the other economies went through. We can leapfrog and be the first adopters of new technologies and be more productive than everybody else. Yes. My last question to you, what is the future of India, according to you? क्या आप कैसे देखते हैं future India का? I would say Vasudhaiv Kutumbakam is our ethos, and that is the future of India. India has always been a place where multiple ideas are welcome, where you can find the best idea because there is debate and because there is discussion about all formats of contribution to society, be it technology, be it science, be it humanities, and that's where I feel India's contribution to the world will be. And today when I see what's happening in our country in all domains, I feel we are at the early stages of a massive renaissance for India. And my own contribution in that would be in the technology and engineering sector. And I hope I can do my little bit and Ola can do its little bit in contributing towards accelerating progress. Thank you. भावेश, आपका नाम भावेश है, लेकिन आप भविष्य हो इस देश के. जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, उसमें आप रहोगे. हम लोग तो मैंने कहा हम बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, हम आइडिया बनाते हैं, पर एग्जीक्यूशन आप करते हैं, देश को आप बना रहे हैं. उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू. Thank you for contributing so much to my country, to our country. And I wish you all the best. And thank you for coming to this session and agreeing to our silly demands of driving the scooter and things like that. But hope you had fun too. And you are an inspiration for me and for my children and for a lot of people in India. Thank you. Thank you so much, Chetan. Your words are really very, very deep and personal. And I'll tell a small story and end. When I went to IIT Bombay, the first night I read Chetan's book. So you are an inspiration. Oh, thank you. Thank you so much, guys. Thank you. What an absolutely wonderful conversation. भाविशा बहुत तेज गैलेंट गति एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो. Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा, हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं. हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ. Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा. Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो. अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ. Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds. Design of India for you. Partner, Biko Vajradanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार.
Rummy bole to Jungly Rummy, India's most trusted rummy site. Get quick loans from Tata Capital. Badalte Bharat ki nayi gas, Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make cities. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner. Sharda University, the world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. आपकी जोड़ी होती थी सलीम जावेद, एक जोड़ी में आप जी 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 और फिर then in the 80s you separated. Was it like one day or was it a built up? Because मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल काफी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, साथ में स्टार्टअप खोलते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं, फिर थोड़े साल बाद अलग हो जाते हैं. Was it amicable? Was it like, do you want to talk about it? नहीं, अलग-अलग केसेस में अलग-अलग होता होगा. In our case it was totally amicable and extremely civilized. देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी की पार्टनरशिप में सीमेंट फैक्ट्री बनाई है या टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है या स्टील फैक्ट्री बनाई है, आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज ईजियर कंपैरेटिवली. इफ यू आर बेसिकली डिसेंट पीपल, यू नो रॉ मटेरियल कितना का है मार्केट में, यू नो इसे बनाने में, प्रोसेस करने में कितना एक्सपेंस होता है, यू नो मार्केट में इसका रेट क्या है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और हो रहा है. तो वो अगर आपका बहुत ग्रेट पर्सनल रेपो ना हो या ना रहे तो भी, इफ यू आर बेसिकली डिसेंट सिविलाइज्ड पीपल, यू कैन कंटिन्यू दैट पार्टनरशिप. देखिए, आप साउथ में जो फिल्में बनती हैं उसकी पटकथा एकदम डिफरेंट होती है. आप सोच भी नहीं सकते हैं, मक्खी बदला ले रही है, वो अलग किस्म की स्क्रिप्ट होती है. अब बहुत कम लोग यहाँ पर शायद जानते हैं कि बॉलीवुड साउथ की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर और यहाँ पर हिंदी में फिल्में बनाता है. आयुष्मान खुराना से इंस्पायर होकर साउथ में फिल्में बन रही हैं. ये कैसे हुआ? अब तक ये हुआ है. विकी डोनर, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और अब एक्शन हीरो के लिए लोग मांग रहे हैं उसके राइट्स. बट ओरिजिनलिटी मुझे पसंद आती है, लेकिन आपने एक साउथ को आई थिंक एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए. साउथ के सिनेमा को मैं मलयालम सिनेमा काफ़ी फॉलो करता हूँ. फहद फाजिल जो है मेरे बहुत चहेते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. उनकी जो सिनेमा है मुझे बहुत इंस्पायर करती है. तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, सो ये अलग अलग सुर हैं, इनके अलग अलग ग्रामर है हर एक इंडस्ट्री का. तो मलयालम सिनेमा मुझे बहुत एक इंस्पायर करती है. हाँ, वो एक कमर्शियली जो हम मापदंड हैं वो उसमें शायद कभी कभी वो आई थिंक इट्स मोर क्रिटिकल, एक स्लो बर्न होता है उसमें, तो मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ. वीर सांघवी, प्लीज जॉइन अस सर. Ladies and gentlemen, I don't think I need to tell you very much about my guest today, so I'm going to plunge right in. Nandita Das, I'm going to start with you. You were, when you burst on the scene, regarded as possibly the finest actress of your generation. Commercial cinema chased you. You had a huge, huge career ahead of you in art cinema. But you made what, 2 films in the last 10 years? Instead, you've shifted to direction, which seems to be a real passion. So tell us about that choice. I stumbled upon acting, so it was, neither a dream or an ambition. And I'd done my master's in social work, and I was working with NGOs, and I was quite happy with it. And then after doing FIRE, I realized that suddenly people were calling you to functions like this, and you had to speak about things. And I thought it was a good opportunity to talk about things you care for. So for the longest time, I remained an hesitant actor, an actor who thought that, films was more a means to an end. It just gave me opportunities through my films and through other platforms that it offered to talk about things. But I think when you're on various sets, and some sets where you think, I could tell that story better, I have to admit sometimes you feel that. And also there are stories that compel you to sort of tell them. So for me, Firak, my first film, happened after the Gujarat carnage in 2002, and it was the first time we were seeing images on television of that violence. And what I was more intrigued by was that when the obvious violence finishes, everything that lingers on.
you know, just the prejudice, the anger, the emptiness, and all these emotions is what I wanted to really represent. And that's how Firak was born in 2008. And it wasn't distributed very well. I was very disappointed, and I thought, God, I put everything into it, and I'm never going to direct again because I'm done with that. And then in 2012, it was Manto's centenary, and I read Manto, and I felt he was so relevant to our times, and I was just grabbed by him, and I kept reading him, and I said, no, I'm going to make a film on Manto. And in 2018, I made the film Manto. So both of them were very sort of organically were born, and the new one, Zwigato, was born during the pandemic, where you have these contactless deliveries, and I was just, you know, wondering that this whole gig economy that has made our life so convenient, we don't even know who they are, what their life is. They are not from the traditional working spaces. They are left on their own with their app and their phone. So it was that desire to kind of make these people who are hidden in plain sight more visible. So that's how Zwigato was born. So till now, it was just far more organic. But now, I mean, now literally now after Zwigato, I feel that maybe this is what I really want to do, is to tell stories and, you know, take filmmaking a little more seriously. You really should. Yeah, she should. Not a little Coming more from serious. Meera, I should. You are a real director. Oh, and thank you. I saw that in Firak and certainly in Manto, so you shouldn't be casual about it. That's praise, huh? Coming from Meera Meera. is somebody, obviously, I grew up, you know, watching, admiring. She's also a friend. We've met many times. So yeah, like coming from her, definitely it's something. I'm also born and raised in Orissa, which is so where we have this Nandita is Odia from. connection as well. Sorigola, Morigola. Meera, directors rarely become household names. Actors and actresses do. You're not just a household name in India, but if you ask Americans who Meera Nair is, and if they're interested in cinema at all, the chances are they will know. It's a very unique position for a director to be so well regarded in India and to be so well regarded in the most competitive film industry in the world in America. And you've done this pretty much on your own terms. You're still a director. She talked about doing things that she wanted to do. And you, like Nandita, have done things that you want to do. And your canvas has been pretty much the whole world, because you've made films everywhere from Africa to India to America to other places as well. So when you started out, was this what you wanted to do? No, I began as an actor, actually. Really? Also, I began as a stage actor, and I grew up in Orissa. I was born in Rourkela, and then lived in Bhubaneswar for most of my life. My father was a civil servant. It was theatre that propelled me to perform, mostly the theatre of originally the traditional jatra form of theatre, the mythological theatre that would come through Bhubaneswar. And I just saw how one could transform and transport an audience through a great oral storytelling, but very few props. In the case of the jatra, a little bit of hashish. And I was struck, and I was definitely taken. And that I pursued with Badal Sarkar. I worked with him, the great playwright in Kolkata, as well as Barry John, who was our director of the Theatre Action Group in Delhi. So I actually started as an actor, but then got a scholarship to come abroad to the United States, where I performed, but I had to get credits for things, so I stumbled into, literally without having a design, into filmmaking. But was taught by wonderful gurus of the cinema verite, of the truth tradition, the documentary truth tradition, by Ricky Leacock and Penny Baker, and then started making documentaries, all in India, and finally leading to my first fiction film, which was Salam Bombay, shot right here in the streets. I mean, to be in this hotel is very weird, because it was Bhaikala then, and this is where I did a lot of shooting just around here, in a film that now would be a period film. There's no longer the Bombay that I saw. It's not even called Bombay any longer. Yeah. It's not even called Bombay. It would be Salam Mumbai. But if there was no Salam Bombay, there would be no Slumdog Millionaire. Around the time when you made that film,
at least in Hollywood or the Oscars and places like that, India was an exotic place. They knew nothing about us. So what was that journey like, getting that film made? Salam Bombay was a life and death story. Seriously, it was not. No one knew me. No one had the money for me. I got a little grant of $150,000 from NFDC, the National Film Development Corporation, for which they sucked my blood dry, but they gave me the money, and went to Channel 4 in England, who matched that money, and that was the money with which I started the film. But the point was that I didn't want to apologize for the cinema. I didn't want to say I'm from the third world and that's why it looks out of focus and that's why it does this. I blew the entire 300,000 on 35mm cameras, on great diffusion, good lighting, but on the streets with street children. So, but having no money really to finish the film in post-production, which is where the French came in. I would shoot in the morning, and at night I would raise money on the phone because Europe was still 6 hours waking up. And that is how we made that film. It was really difficult, and I never knew from one day to the next whether I would be shooting, but we did. It was 52. There's a line at the end of the film, no guts, no glory, 52 locations, 52 days. What problem? No problem, which is what the kids would tell me. And and that was, I mean, like brutal, but also beautiful, because I got to tell it exactly my way, and also had the great stewardship and collaboration from my wonderful writer and close friend, Suni Tarapurwala, the streets of Bombay are her beat. She's the Bombay wala, I'm the Delhi wala. So, it was a very extraordinary film that we finished. And then we went to Cannes. I had never been to a feature film festival before, but they had invited it. And there we won all the prizes. And thankfully, one prize, the Camera d'Or, came with $50,000, which was the exact amount of debt that I had on my head after that film. But the beautiful thing about that film, which doesn't happen often, was the question that I had before making film, like Nandita said earlier to me, like, can art change the world? Can we do with our work something that makes you think of the world differently? And for me, Salam Bombay was a way always from the first day to honor street children, to give them back a childhood that they had fled from, but not to just clean them up and give them dinner and then forget about them. And so we formed from the profits of the film Salam Balak Trust, which is still thriving today, 38 some years later, a foundation for street kids. We have several centers for street kids. We house, we educate. We've brought the arts in a big way to Salam Balak Trust. So our kids are puppeteers, our writers, our screenwriters, our performers, as well as going to regular school. And that's extraordinary to change the government policy actually on street kids so many years later. So it's actually something I told Danny Boyle, the director of Slumdog, to get involved with us, because it's not easy to set up these things. We have staff of about 180 social workers now at Salam Balak Trust. He didn't do that route, but it's a route that we've proven has worked, and it really has changed their lives. It's made a difference, right? Yeah. Absolutely. Nandita, I wanted to talk about the new movie because I was fascinated by what you said, that we live in this convenience economy where things are delivered to our door, and sometimes we believe it happens by magic. Of course it doesn't happen by magic. There are real people who do it, and we don't even think about them. Now it intrigues me that you made a film on that, and the casting intrigues me even more, so tell us about it. Yeah, in fact, before people ask me about the film, they are like, how come you took Kapil Sharma, exactly. a comedian in your kind of a film? Either they think that finally I've succumbed and I'm now doing a commercial, some blockbuster type. But, well, yeah, like I said before, that, during COVID, this is when the story was born. And I was just also fascinated about this whole gig economy thing because, it's not the traditional working space. They are just with their phones. A lot of the people are not so literate. I mean, my generation or even slightly younger are grappling with the phone. There are new things coming up. How do you even deal with that app where the rules are changing?
And what are these rules? So the more I started reading about it, I was really fascinated. Initially, I wanted to put an anthology of 4 directors together to just talk about this new India that's kind of now emerging in the last few years. And unfortunately, the anthology kept sort of disintegrating with the other directors, had bigger projects to do. And then my producer, the people we had gone to, Applause Entertainment, their CEO, Sameer Nair, said, why don't you expand and make it into a feature film? And I was like, no, I don't understand this rating and algorithm enough to, go beyond the 20 minutes. But he kind of kept nudging me. And then it became not only about the food delivery rider, but his family, his wife, his children, and many other people who form our world that have remained so invisible. We have they're just there. It's like the watchman, the nanny. Sometimes we don't even know the names of the people around us. And so it's not a blame game on big companies, or it's not a blame game on the consumers. It's really a slice of life in 4 days. And I realized that by just telling a story of even one family in a span of 4 days, you can tell so much about the context. Whether it's the religious disparity, whether it's the caste disparity, whether it's the gender disparity, all these things without it sounding messagey or trying to tell something, you can just by laying that world, there is so much that you can tell. And I think that's what the film is about. The film is about these small losses of dignity that people face that we don't realize, but these small acts of indignations. So yeah, that's the film. And Kapil, I don't have a TV. I never watched his show, but something popped up, as they say, serendipitously. It popped up on my screen where he and Karan Johar were presenting some award function. And I looked at him and I thought, wow, he looks like such a normal person. In the film industry, either you have people who really look like actors, or there are a few who don't, but then you kind of know what they're going to do. There is a certain predictability that has come because they've been doing all these realistic roles. And there was something about him which was very vulnerable, real, and even though he's no more an ordinary man, the jokes he was making about ordinary people, they seem to totally connect. So I just found his number, reached out to him. He also asked me that, "Aapne mere bare mein kaise socha is role ke liye?" He also was like a bit shocked with this. And yeah, then we did a few rehearsals, and I said, I have to take out the Punjabiness out of you because you're supposed to come from Jharkhand. So he said, I used to be a serious actor before. So, everybody has a backstory. All of us get labeled so quickly. And there's always something nice and surprising when two people who seemingly come from very different worlds. I always tell him, I said, we would have never met all our lives and we wouldn't have missed each other. But sometimes it's interesting for two people from two different worlds to come, and that collision can bring something quite special. What was it like, now that the film is ready, what was it like seeing him on screen in this completely unfamiliar role? Not that you'd ever seen him on screen in familiar roles, but even so. Well, for me, obviously, it's not surprising because I see the journey, but when I see the response, we premiered it at the Toronto International Film Festival, and then we were in Busan, in Kerala. The few people who have seen it, I think the interesting part was that even his hardcore fans, like in Toronto, there are a lot of these South Asians who had never come to a festival. They had only come to see him. And I was worried that they might think that, oh, we are missing that comic element, or we want that. But they said after some time, we forgot it was Kapil Sharma. And I think that's the greatest tribute you can pay to an actor, isn't it? That's the good part, that they kind of got absorbed and involved in the story, and what he and Shahana Goswami, a wonderful actor who I worked with in Firak, who's also worked with Meera, and she plays his wife. And yeah, I think those little things that happen in our lives, it's not a dramatic, it's not an intense film like Manto, but it's a slice of life, and with a lot of these little nuances that we sometimes forget. And I feel once you watch it, I'm sure you will notice a lot of those invisible people in your own life. And if that happens, I would think the film has done its job. Talking about Kapil and the casting of Kapil Sharma, you're somebody who knows a bit about casting, right? You've been almost acting academy. I've lost count of the number of people I saw first in your movies, and now we hear about. We think of Indian actors, but Denzel Washington,
His second film was Mississippi Masala with you, right? You've hired people who the world didn't know about because presumably you saw something in them. Tell us about that process. Actually, it is something that gives me a unique sort of sense of joy to have seen, for instance, Irfan Khan at the age of 18 in a basement of the National School of Drama and looking at him and speaking with him and wanting to work with him, and he left the school to come and live with me while we were doing Salam Bombay. He was going to be one of the children and then was too tall to be a kid amongst a group of 5 because they were so malnourished. They only reached his torso. So he ended up with just one scene in Salam Bombay, but we acquired a very long friendship, and I said, I owe you. And then years later, 15 years later, I called him and I said, I have Ashok Ganguly in the namesake for him to play. It was really we thought of him right from the beginning. And it was the namesake and being in that film that gave Irfan the exposure in the West that then gave him all the big films that he consequently made. But we always worked together in even smaller films. I make a lot of short films, and he played dangerous roles for me, like a gay man in Migration. He played all sorts of roles. He had a sense of real fearlessness about him and a desire, curiosity. So Irfan was one of them. Riz Ahmed, who's now a huge star. I was in The Reluctant Fundamentalist, one of my films. Again, it was one of his first international film. And I held out for him because Riz had a kind of worldliness and an intelligence, a scathing intelligence, which is what I needed for the character of The Reluctant Fundamentalist, Mohsin Hamid's brilliant book about a young Pakistani who loves America and then ascends America, marries an American, the whole 9 yards, and then 9/11 happens and he's suddenly just a Muslim, and he begins to question that America. And it was Riz who, and in fact, it's a little side story, but Fawad, the wonderful Fawad, who was later in Khubsurat, he auditioned for that role for 6 months for me. And I loved him, Fawad Ali Khan. But he had never left, Lahore, and I didn't have that sense of worldliness in him, which is why I went to Riz. But now, of course, Fawad is a big star. And so this carries on. I have, I think, an instinct, being perhaps an actor before myself, working also as cinema verite, as a documentarian and living with real people, seeing how you get what, you can capture their worlds with your camera. I have a kind of instinct for that. And many times I've cast non-actors who then find a profession in acting. So many times. In Monsoon Wedding, it's full of either my family, or one time a woman didn't show up for her role, and I went walking in my park in Vasant Vihar, and there was a Punjabi auntie in her salwar kameez and sneakers walking along, and I said, she looks like somebody who could be that part. And I just walked with her home and asked her to read some lines, and she had brilliant comic timing, and I gave her the role of Shashi auntie in Monsoon Wedding, and that was Kamini Khanna, who was a housewife who had never done any of this. And then she moved to Bombay and she played the same role of Shashi auntie in about 10 Bollywood movies, and has, so it's a little bit, I think, coming from the streets like I do, coming from the documentary world, as well as working as an actor, that gives me perhaps some kind of instinct to know if you have the spirit for the role, and if you can be responsive also to the world and to direction, you could have the part. And the same with Sarita Chowdhury, who played opposite Denzel Washington in Mississippi Masala. She was a fantastically unvain girl on a bicycle that I saw. I loved her hair. I loved the fact that she didn't give a shit about how she appeared, and she was not vain. Vanity, I think, is a real enemy of an actor. And sadly, actors are sometimes consumed with vanity, and it prevents the ego. When the ego comes in front of you, it prevents you from entering a role in the way at least I work. So, so I cast Sarita Chowdhury, who's now actually pretty much of a household word in the States after many years of
struggling. So it's something that gives me great joy. It gives me great joy to work with people from the street also. Queen of Katwe is a movie I made in East Africa, in Kampala, very much like Salam Bombay, with street kids, a true story of a young girl who sells water and then becomes a grandmaster in chess and gets out of the slum. And these are all kids that are playing a reality true to themselves, but opposite Lupita Nyong'o, an Academy Award-winning Kenyan actor, and David Oyelowo, another Hollywood actor. And in fact, in those kind of equations, it's the professional actors who have to kind of learn the sense of truth from those who have actually living their lives. So it's that balance between those who actually live that life, opposite those who have to imitate that life, that is a very beautiful exchange. Sometimes it creates an alchemy that I love. So that's also some part of my signature in hindsight, is to be able to equate that world all the time. All the time I do it. Yeah. You've actually mentioned all of my favorite films of yours, Reluctant Fundamentalist, The Namesake, and a lot of them, you're right, have a lot to do with the casting. I can't imagine The Namesake without Tabu, for instance. It was just such a brilliant performance. But the other one you mentioned, Monsoon Wedding, I don't know how many people have seen it. It was a film, I think, that started with a collaboration between you and somebody you were working with or teaching, who was writing a script, and it's probably Sabrina Dhawan, one of the smartest students in the Columbia teaching class. I was teaching at Columbia University. And you spotted her then. And now when we think about the big Indian wedding, we think of diamond merchants and 8 days of celebration in Versailles or Florence. But the essence of an Indian wedding, the family dynamics, the family drama, I don't think any pictures captured the way you did in Monsoon Wedding. And I was intrigued because you're taking this very Indian story to the last show business bastion of whiteness, Broadway. How is that going to work? Oh my God. Yes, so I spent the last 12 years creating a big Broadway-bound musical of Monsoon Wedding, which is now going to open on the 13th of May in New York City, first off-Broadway, and then we hope to be on Broadway by the end of the year. It's been, again, a very long and seriously painstaking odyssey, because I didn't want to do it like the Broadway folks do. I wanted to do it the Desi way, our way. So I went to Vishal Bhardwaj, my friend and great music composer, to do the music for Monsoon Wedding, because it is a true musical, 21 songs, where the songs propel the story. And I, worked with Sabrina herself, Sabrina Dhawan, the screenwriter, and Arpita Mukherjee, two wonderful writers who could adapt the film into a stage musical. It has its own form, and the only way that one can really test a live musical with an orchestra and actors who sing, dance, and nothing lip-sunk about this particular play, and is to test it in audiences. So we opened in 2017 in California. We ran for 100 shows. We then went to Delhi and made it work in a factory just to see which songs work or not. And finally now, we just opened as the World Cup entertainment in Doha for 12 shows last November. And now we're opening in New York City, and I really invite all of you to come, but also know that my main goal is to open it in India, and we hope to come here by the end of this year or early next year, and to have so it's been a really hard journey. I thought I was nuts for a long time, but I was also tired of seeing just white folks on stage. I was tired of Fiddler on the Roof and all these great plays that tell their stories. And it's about time that our stories are told, but our way. And that is what I hope Monsoon Wedding will be for all of us when we open in a couple of months. Well, look forward to that. Nandita, I want to ask you a vaguely personal question about your work, because you're, of course, a very good director, and of course, as I said, probably the finest actress of your generation. And yet, in all of your work, there's been much more than just acting or directing. Almost everything you've done has focused on people at the margins of our society, people who are ignored, people who you feel should be brought to greater attention.
You've done things that make a difference to India as a whole, even early in your career, whether it was lesbianism, it was the condition of widows or whatever. You've always done things that are not popular, that are not necessarily the obvious things to do. Was that one of your motivations when you got into this field? Yeah. I mean, I don't know if it's a conscious choice, it's sometimes just an instinctive choice, the kind of projects that you get attracted to. Like I earlier said, that films wasn't something that I sort of consciously moved towards. And I think when you don't really have a goal, you don't really work towards it. You just, you're more invested in the journey, and you kind of, one thing leads to the other. And if you keep getting attracted to projects that are saying something that resonate with you, you just do it. You're not sort of thinking how this will make me do my next project, but you just do it because you believe in it. And I've been fortunate. I've worked with many amazing directors, some new films. Every time I meet Meera, I tell her, I said, I have to work with you before I die. So she's got that responsibility, and you all are the witnesses. But yeah, I've got 50 years. Absolutely. I'm waiting. No rush. But yeah, so for me, like I said, Veer, earlier also, that, it's more a means to an end. So for me, to see what the story is, who's the director, and then the role. As an actor, you should be probably looking at the role first. But for me, I just want to enter and be part of those stories. So I think it's more an instinct. And yes, it's true that sometimes I feel I'm not really a true artist, because art in itself doesn't excite me. Of course, when I'm watching a film as well, like sometimes, it's made very interestingly, but if the story is not engaging me, I don't get involved in it. So for me, the story and the form, like what they call the content and the form, both are important. And the form almost sort of, the story is what propels the form, even in the films that I have made. So yeah, so for me, I think they are not separate, whether it's my politics or whether it's my desire to talk about certain things, whether it's my concerns, whether it's what I write or what I direct or what I act, or I come here and talk. They may seem like different threads, but for me, they're all the same. This comes from a deep compulsion almost to share or to communicate or to find ways to do that. So I don't know if that answers your question. It does, in a way. It does actually answer what I was getting at. This is called an Ideas of India Summit. You clearly have a very clear idea of India. What would that be? Nandita first. Oh my God, that's a tough one. I know, that's why I kept it for the end. It's a tough one because, I mean, I don't know how to say and how much to say and what to withhold, and I'm not very good at all that. The thing is that India is not one India. I mean, it's such a cliche to say there's unity in diversity, but I grew up in an India which was so inherently diverse that there was no desire to put it in any one framework. I never felt the need to kind of even define it, because by defining, you're kind of limiting India. India is everything. You have the most progressive ideas here, and you will have the most traditional and bigoted ones. You will have anything, you pick up a cuisine to culture to music to anything that you pick up, there isn't any one India. And as long as we don't homogenize it or try to homogenize it, as long as we don't try to limit it in any one color, literally and otherwise, I think we'll be fine, because we don't have to, every day when you wake up, we don't say, I am an Indian. We don't, because we are in India. We have to maybe define it when we travel outside. So similarly, I feel we are diverse, and and it's okay. We are all very different. We have different ideas, and it's possible to have that churning with different ideas and to respect each other for who we are. So that idea of India, as long as it's preserved, I think we'll be fine. And is it going through its own ups and downs? You know it as much as I do, Veer. Very nice. Delicately put. Thank you. Meera, I was saying to you outside that when you first sprang to fame,
you were referred to in the American media as the Indian director, Meera Naya. You're not. You're just now international. You're just one of the world's best known, probably one of the world's best directors. You've lived in Africa. You've made films in Africa. You have Hollywood studios chasing you to make films for them. And yet there's something about you that's determinedly Indian. You've never sort of adopted an American accent or tried to be what you're not. So what does Indianness mean to you? Well, my belief is that, it's because my roots are strong that I can fly, that I can be fluid, and that I can work. I mean, Kampala, Uganda is as much my home as New Delhi, or in fact, New York City. So it's because I think I have a real strong sense of self, and it's a sense of self that comes from a lot of what Nandita has said, that we are a syncretic culture. We are a syncretic country, or we were more of one than we are now. And that ability to be and take and to absorb and to be fluidly encompass its culture, its language, especially for me, music is a very important source of just that inspiration that I feed myself with. It's very, very important to me. So it's because of that strength, which also emanates, of course, from family, is that I never went anywhere to become that place. Yeah. I went as myself to see what that place could do with me, or me with the place. That is how I've operated, really, not without much thought, but I never left India to be an immigrant elsewhere. That was never my thing, And I think that has manifested in my work. I always tell whoever wants to learn with me, is like, just refuse to pander, refuse to explain what the dot on the forehead might mean. Your story has to reveal these things, not to pander to what they don't know. Call them to your plate, educate them as you are manifesting your own vision. That's what I try and do, and I think that fierceness of being independent in vision is perhaps what people see in my work, and therefore when you want to have me, by the way, the Hollywood studios don't chase me. Come on. They chase me only with certain things. Vanity Fair, Amelia, these are not Indian themes. These are not Indian themes. But they know when they come to me that they're not going to get a cookie-cut sort of version of what they would get from other people. That's why they come to me, I suppose, for that sensibility. So I protect that sensibility. I'm not here a gun for hire for your sensibility. I'm here with mine. It's very hard in this business to have true originals. I think we're very fortunate today. We've had two originals on the stage. We have Meera Naya, who's one of the greatest directors of our time. And we have Nandita Das, who I've got tired of calling the greatest actress of her generation, especially as she wants to be remembered as a director, I think now, not as an actress. We'll have to work together, greatest actress of your generation. And is well on her way, I think, to becoming... well on your way to becoming one of the finest directors of your time. Please go and see her movie. It's out now, right? No, it's going to be out. Zwigato is out on 17th of March. Thanks, Veer, for plugging that in. I was going to tell you to plug it. Is it in cinemas or is it streaming? No, it's going to be in theaters. So do look out. What's the theater close to you? And go watch it, please, and spread the word. Independent cinema like this does need audiences. And I think in absolute numbers, we are enough of us who care about what's happening around us and, want to watch such films. And Monsoon Wedding later this year? Or? Yeah, Monsoon Wedding opens in New York City on the 13th of May this year, 2 months. And then we hope to bring it to India end of this year or early next year. Oh. And then I'll be going into my next film on Amrita Shergill in September this year, shooting it. Yeah. Wow. It's going to be amazing. Lots to look forward to. Two very remarkable people. A big hand for them. Thank you so much. Thank you. Thank you, Veer. What a beautiful conversation, and as Mr. Sanghvi said, two women with strikingly original voices, and I think a seed of a collaboration may just have been sown on this platform, and we do hope to see you both come together. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Meera Naya, Nandita Das, Veer Sanghvi.
May I request Rajiv Khandekar, Executive Vice President, News and Production, ABP News and ABP Maja, to join us on stage and present our guests with a memento. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? Gallant Advanced TMT. खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार.
Rummy bole to jangli rummy, India's most trusted rummy site. Get quick loans from Tata Capital. Badalte Bharat ki nayi gas, go gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI/UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vajradanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। Rummy bole to jangli rummy, India's most trusted rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई gas, go gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI/UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vajradanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। Rummy bole to jangli rummy, India's most trusted rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई gas, go gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI/UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vajradanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vajradanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vajradanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी।
गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic.
Gold partner Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner Vico Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner Create Today, Enrich Tomorrow, Panasonic. Gold partner Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner Vico Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner Create Today, Enrich Tomorrow, Panasonic. Gold partner Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner Vico Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer
to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University, the world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University, the world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University, the world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा
हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ।
को पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। टेक्नोलॉजी पार्टनर क्रिएट टुडे एनरिच टुमारो पैनासोनिक। गोल्ड पार्टनर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स डिजाइन ऑफ इंडिया फॉर यू। पार्टनर वीको दंती इंडिया का गम एक्सपर्ट मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस गो गैस क्लीन एंड ड्राई। नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज सिडको वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai। Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC। पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by डाबर वैदिक टी। चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। को पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। Technology partner create today enrich tomorrow Panasonic। Gold partner Senco Gold and Diamonds design of India for you। Partner वीको दंती इंडिया का गम एक्सपर्ट मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस गो गैस क्लीन एंड ड्राई। नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज सिडको वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai। Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC। पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by डाबर वैदिक टी। चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। को पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। Technology partner create today enrich tomorrow Panasonic। Gold partner Senco Gold and Diamonds design of India for you। Partner वीको दंती इंडिया का गम एक्सपर्ट मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस गो गैस क्लीन एंड ड्राई। नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज सिडको वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai। Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC। पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो।
where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site.
Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco. We make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner. Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco. We make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner. Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Vico Vachidanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco. We make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner. Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. Number 1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं। And then we've managed to persuade 3 of the 4 people on the stage to perform, and perhaps we'll be able to persuade the 4th person to do something or the other, but we'll give it a shot. The session is about the healing power of music. So I want you all to tell me, because all of you are musicians who take your music very seriously, all of you practice very hard, all of you have huge followings, and yet, does music have the power to heal? Shubha, let me start with you. Well, I know that we've all been through an extremely difficult time in the last 2 years, and the companionship of music has really kept me going through those very, very difficult times of enforced captivity and near-death experiences. Near-death? Yes, yes. I mean, I was really sick. Oh, really? Okay. Yes, but I think... You look fine, I'm glad to say that. Yes, I look more than fine, I think. No, you look fine. But I think it's the power of music that kept me going through these difficult times, and even otherwise. I think it is possible that the companionship of music of any kind, or any music that you prefer, really provides unconditional healing, support, and a kind of peace that rarely comes from anything else. So when you say music provides that companionship, is it your own music? Is it all kinds of music? It's all kinds of music, in fact. With your own music, you have moments of great struggle as well. Yeah. When you realize your limitations, your weaknesses, when you try and improve and it's not so easy to improve, you can't get through each time. But when you hear just let's say, bird song, Yeah. and you feel that, yes, there is hope for a better tomorrow. That's such a nice line, no? Every time you hear the birds going. But like when you listen to your own music on record, are you critical? Do you say, hey, I'm great? Or do you say, I can do better? To be a good student of music, you have to be analytical and you have to be brutal with yourself. Yeah. And you have to keep saying that, okay, despite the love and attention I've got from many, many music lovers,
I know that there are many, many weaknesses, and I need to try and improve on those. Without that, there is no journeying forward. So after all these years of being a top music star, you're still critical of yourself when you listen to it? You have to be. You have to be. You have to be able to see the wrinkles in your voice as well. Okay, all right. Vikram Ghosh, do you think music has the power to heal? Can I be a little rhythm specific? Rhythm is a Be part what of you music. Be what you like. Yeah. Well, if you see the power of rhythm all around you, microcosmically, rhythm is inside us. It's because of the heartbeat that we are alive. So if the heartbeat is good and solid, then we're well, we're not sick. I think the healing power of music, and hence rhythm as well, is extremely strong, because cosmically we're surrounded by rhythm. Everything is a rhythmic cycle. In the Indian rhythmic idiom, so to say, rhythm is a cycle. And if you see, there's a 7-day week, it's a cycle. The 12-month year, it's a cycle. 365 days a year, cycle. Halley's Comet comes back every 75 years. It's all a cycle. So in that cyclic scheme of things, we are connected to the cosmos through rhythm. And everything is powered by it to the extent that our bodies are beating to a rhythm. So yes, of course, there is a huge power that rhythm and hence music has to heal or to even sicken. So we have to use our notes and our beats very, very carefully so that it generates positivity and not negativity. So when you talk about music, and you're doing this from the perspective of a percussion person, I understand that. Do you think that a lot of the power just comes from the time, from the rhythm, from the beat? Yes, I do. I do believe that it comes from the beat and from the rhythm, but there's much more to rhythm than just the beat. So just to give you an example, suppose let's look at the premise of human communication. So there is a modulation in our speech, which is rhythm again. There is a tempo in our speech, which is rhythm again. So if I were to say, hi, Mr. Sanghvi, it's wonderful to be here, and I'm really happy to be at the ABP Live, then there is no modulation. But if I said, hi, it's so wonderful to be here, so that is a modulation which is an essential part of human communication. And then there's tempo. Somebody crossing the street and you see a car coming and you want to shout, watch out. You say, watch out. If you take that long, the car will run you over. Exactly. You have to shout, so you got the tempo wrong then. So if your tempo is right and your modulation is right, your communication skills are better and life in general is better. Yeah, okay. So can rhythm help you relax? Because we associate rhythm normally with getting you going, with dancing, with excitement. But do you think rhythm has the power to make us relax as well? Yes, of course, because if you think of what is the most powerful relaxation tool, that today for many people is chants. Yeah. And chanting is done to a rhythm. It is a cycle of rhythm, anything that you speak or you hear that relaxes you has a rhythm. The rhythm may not be overpowering, but the rhythm is there nevertheless. And I think that if you get the rhythm right and it vibrates to your heartbeat, there is something very calming about it. If you crank it up and make it like club rhythms, then of course you get excited. But otherwise you're sorted with a nice soft tempo going, a tick-tock, tick-tock, tick-tock. It calms you. So you're saying that when we talk about rhythm, as we often do in terms of bass lines or percussion or whatever, we're making a mistake. Rhythm is how we talk. Rhythm is how we chant. It's much more than, say, just drums. You're absolutely right. We are making a mistake by not giving rhythm its due credence. It is much, much more than just dancing to a beat. It is intrinsically woven into our lives on many, many levels. How interesting. I hadn't thought of it that way. Okay, which of you is going to go first? Okay. So do you think music can heal? And you're the right people to ask this because you've heard, from the time you left your mother's womb, you've heard music, right? So, firstly, namaskar and good afternoon. It's been an honor to be here. So, yes, I actually completely resonate with what was said just now. I think
music for us has been a way of life. We never looked at it as a profession. But then again, we were literally in the ocean and we were asked to swim because we had that atmosphere at home. The atmosphere at home was all music. The air we were breathing was music. So for us, we didn't know better. Yeah. So that's why it became a way of life. I didn't think we ever saw life outside of music or music outside of life. Yeah. It was the same thing. And, music is a reflection of who you are. Your nature reflects through your music. If you're a restless person, your music will convey that. Yeah. If you are built a certain way, your music conveys your nature. So that's why the emotions, what Bikram Bhai said, all of that, it's part of who we are, it's part of our DNA. And I think the journey called life kind of shapes you as who you are as a musician. You're a student in this field till the last day you walk this planet. But I think your breakups, your link-ups, your heartbreaks, your heartaches, everything is resonated through your music. That's interesting. Let me ask your brother if he agrees with you. All the time. Yeah. But anyway, namaskar. But you accept what he says, that music is not just music for people like you who've grown up with it. It's a language. What you express through music is your life, your mood, from heartache to happiness. It's a journey. It's completely a journey, and it's still going on. And I am proud to say that as musicians, music can never lie. We can't manipulate through music. Yeah. With words you can manipulate, but through music you cannot manipulate. And so what you just mentioned about the healing part, I think good music with good intention is healing. It can be the other way around also. Why is the intention important? Sir, वो पुरानी कहावत है, नियत साफ मंजिल आसान. So humility, what my father's taught us, he says, I asked him once, I said, there's so much of tabla, sitar, sarod, vocal happening, what's our future? Yeah. He said, well, your biggest competitor is not somebody who's better than you musically, but somebody who's more humble than you. So in our journey, we are taught about lifestyle first, try to be a nice person, Yeah. That's what I've learned from Shubhadi, Bikramda, with my seniors, that's what we learn from elders. That why is she loved? Why is he loved? More than the music, it's also your temperament that really matters, I feel. So this is probably just a very subjective question, but in my experience, great musicians like you guys with a background in classical are actually much more humble than people with a pop background or a rock background. Why is that? I think it's a culture. I think it's just a culture because our music is more about, what we've heard from the great ustads and the pandits, what we've learned from them. It's to do with spirituality, I think. Indian classical music is connected with spirituality. And Shubhadi, Bikram, if I'm going wrong, please interrupt. Please. And also, I think I'm smart enough to do my research. Yeah. The only thing that takes a musician or any creative person ahead in life is being grounded and being humble. Because I've seen enough examples just disappearing, unfortunately. So. And I wanted to ask you that. All of us, we've heard your music, we've heard your father's music, and it transports us to another dimension because it's so good. But that's us as listeners. I know how hard you guys work. I know what a hard taskmaster your father is. I know how he responds if at a concert he thinks you guys were not 10 on 10. So does that pressure ever come in the way? Or once you start playing, does the music just take over? You see, a guru or a mentor can just convey the path to you. But I think the realization or the sense of responsibility has to come from within. Yeah. I don't think that can be kind of thrown upon you. If you don't feel it, then don't do it. And I think that was his reverse psychology with us. He was, obviously, my father, I think he was more of a father, and the guru part happened later because we were so young when we were learning. But I think he always left the ball in our court. When we would go up to him and say, how did we perform? He would say, listen to the recording and work it out, sort yourself out. You know what you should do, or at least you should know the direction or the path you want to take. So he left the ball in our court, and that, I think, made us realize from within, or made us feel the pressure, which
happened organically rather than him imposing it. So that's why I think it was very important that he was someone who let us do what we wanted to do. Let us listen to all kinds of music and let us grow as musicians. I think because more you listen, the more you learn. And that's literally, and even today, I mean, there's so much going on. People like Shubhadi, Bikram Bhai, they have always done things outside the box. And they came, and they have been such purists as well. So it doesn't make anyone a lesser musician. But now, so much interesting work is happening. We all are doing all kinds of things. We recently did a track for Coke Studio with rappers. Yeah. Because rappers have become quite the thing in India. Did with rappers means you rapped? No, I didn't. We played. Okay, you did the music. We stuck to the sarod, and the group was called Seedhe Maut. Okay, all right, yeah. I can't see you rapping. I can see your brother rapping. I'm not sure I can see you rapping. Yeah, okay. Shobha, not only are you one of India's most distinguished classical vocalists, you're also somebody who's broken away from just classical music, has done popular songs, has had hit songs and hit records. You've spread joy to people who may not have been interested in classical music. You've made so many people happy. Is that healing for you as well? That you spread so much happiness? I think for any artist, it's always very, very reassuring to hear people come up to them and say, I heard this song and I was moved to tears, or that I just can't stop myself from dancing when I hear your Apke Savan, or something like that. And this is a song that is over 20 years old. So in a music industry where songs just last for a few weeks, it's wonderful to see that happened and that people are still listening to these songs. That gives me that little pat on the back and reassurance that yes, there are people listening. But at the same time, I must say that if eyebrows were to go into hairlines to say, oh my God, what has she done? I don't think I could still stop myself from trying to work with other forms of music. You would do it anyway? I would do it anyway. Why? Despite, I think as a student of music, I'm curious. And I am delighted at the fact that I'm getting opportunities to work with different kinds of disciplines and forms of music. Why would I not want to learn from that? So I feel that all of these experiences have been enriching for me, and I value those experiences. I don't consider them as experiences that have led to my straying away from what I set out to do in the first place. And experiences that have made millions of people happy, no? You've spread joy. That's true, and not just because of me, but because of the wonderful people who wrote these songs, composed the music. You're being humble, but basically it is your songs. Well, their contribution can't be denied. Yeah, sure, okay. Vikram, how much of this, when we talk about rhythm, I always wonder how much of rhythm is international and how much of it is Indian in our case, or does it cut across all boundaries? Because say you're playing the sitar or whatever, the rags are almost by definition Indian. But with rhythm, you have more rhythm. No? You have more space and more freedom to do things. There's that famous story about Allah Rakha going in the 60s to a club where Buddy Rich was performing, and he went there and he just blew all of them off stage. So sometimes I think we lack an understanding of how gifted our musicians are and how great our rhythm tradition is. Thank you. That's a wonderful question. Rhythm in its essence cuts across nations, cuts across pretty much anything. But Indian rhythm in particular has a tremendous tradition, has a fantastic history of understanding of rhythm as life. So the whole concept of the circular rhythm, which is the tala structure. Explain that, so I'm not sure everyone understands that concept. We as Indian percussionists, we think of rhythm as a tal. We are taught to think of it as a tal. Okay. Imagine a clock. So you have a 16-beat tal called teen tal, which is the simplest and the most popular. So you have a clock with a 1 at the top, and it goes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, back to the 1. And you keep going in rotation with that, which is why I said before that everything in the cosmos is in rotation, you know.
Indian rhythm was thought in that way, connecting it to the cosmos, because it's a very, very old tradition. And rhythm in India is a philosophy. It's not just a beat or a groove. So in that context, the way we see tala is so refined. And then we put syllables to tala. And syllables are like a language. Yeah. So in teen tal, you say tha, dhin, na, da, dhin, like that. And these syllables are all onomatopic. You can play those syllables identically. They are played exactly the way that you speak them. So that gives the tradition a great fillip. It gives the tradition tremendous power, because you can talk to somebody and just say, instead of saying, how are you? It's so wonderful to see you. You can say, Kardhati dhage na da, dhati dhage na tu na kena. You know? So that gives the versatility of the rhythm is huge. And I think in the West, when they see that, the depth of the tradition, and it comes out in an instant, like as you said, the great Allara Khan Sahib had done a small solo and they were blown away. Yeah. That happens because the tablas are just a pair of simple looking drums. It's not even like a drum kit where you have so many, parts to the kit. You play it with hand, but incredibly intricate technique. So you have to master this drum, you're looking at least 20 years of learning. So that, I think, is now slowly and over the many decades getting to the international audiences, and people are understanding that this is a monster drum. It's not just a little, fellow sitting there and kind of, it's a monster drum. So there's a lot of power in Indian rhythm, which I think the whole world is waking up to now. And a lot of talent. I remember George Harrison once said that he thought any great Indian tabla player could do what Ringo Starr does, but Ringo couldn't do what any of us people do. Interesting that you should say that, because I played with George. His last album I played on Brainwashed, and he always had that, it was not just rhythm. He felt that way about Indian music in general. Yeah. He thought that the sitar had incredible power. Yeah. And that is why he was playing the sitar and learning from Panditji, from Ravi Shankar ji. Yes, there is incredible power in the drumming tradition. Just imagine two hands with two completely different techniques as to play the tabla and the baya. And the right hand is like this and the left hand is like this. And each finger is a unit, unlike, say, for a conga player, where the whole hand is a unit. Yeah. So this intricacy gives it a lot of depth, and the subject matter and the literature, the sahitya of tabla is huge. Yeah, absolutely. Is your throat okay? You'll do one stanza, one of your songs? Not right away? All right, okay. I'll push you into the next time. You guys want to perform? You have something? Sure. Yeah. They can give me a lead and I can play with them. And then all right, okay. So this is the magic. This is the magic of Indian classical music, that we've all met after ages, and we don't know what we are going to do, but it'll all happen here as we play for all of you. We're cooking it here as you listen and watch. So we'll play with a tribute to the great iconic poet and composer, the great Rabindranath Tagore ji. And Bikram Bhai will do something interesting, and then we'll sum it up with a fast composition. Great. Thank you. Take it away. Let's go. एक सेकंड का ट्यूनिंग कर लेते हैं.
discussed the heartbeat and how it's relevant. So here goes.
the power of music. I think we are very fortunate today to be in the presence of brilliance and geniuses. What you've done is astonishing. I think you've blown us all away. And more than anything you could have said, I think your performances have illustrated the point. Music can heal, music can harmonize, music can excite, and music can make us all admire you. Thank you guys. Brilliant. Thank you all for watching. Let me thank the great Shubha Mudgal, who I could not persuade to sing this time, but who I will next time. Always my favorite. And the Bangash brothers and Bikram, really, we're very fortunate. Thank you so much, guys. Thank you. Absolutely. We are healed, we are revived, we were absolutely spellbound. Thank you for the privilege of your words and your performance. Requesting you to please stay on stage. Shubhaji, requesting you all to please stay on stage for just a moment as I Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner Create Today Enrich Tomorrow Panasonic. Gold partner Senco Gold and Diamonds. Design of India for you. Partner बीको वचरदंती इंडिया का गम एक्सपर्ट मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस गो गैस। क्लीन एंड ड्राई। नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज। सिडको वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. आपकी जोड़ी होती थी सलीम जावेद, एक जोड़ी में आप जी और फिर then in the 80s you separated. Was it like one day or was it a built up? Because मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल काफी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, साथ में स्टार्टअप खोलते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं, फिर थोड़े साल बाद अलग हो जाते हैं. Was it amicable? Was it like, do you want to talk about it? नहीं, अलग-अलग केसेस में अलग-अलग होता होगा. In our case it was totally amicable and extremely civilized. देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी की पार्टनरशिप में सीमेंट फैक्ट्री बनाई है या टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है या स्टील फैक्ट्री बनाई है, आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज ईजियर कंपैरेटिवली. इफ यू आर बेसिकली डिसेंट पीपल, यू नो रॉ मटेरियल कितना का है मार्केट में, यू नो इसे बनाने में, प्रोसेस करने में कितना एक्सपेंस होता है, यू नो मार्केट में इसका रेट क्या है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और हो रहा है. तो वो अगर आपका बहुत ग्रेट पर्सनल रेपो ना हो या ना रहे तो भी, इफ यू आर बेसिकली डिसेंट सिविलाइज्ड पीपल, यू कैन कंटिन्यू दैट पार्टनरशिप. देखिए, आप साउथ में जो फिल्में बनती हैं उसकी पटकथा एकदम डिफरेंट होती है. आप सोच भी नहीं सकते हैं, मक्खी बदला ले रही है, वो अलग किस्म की स्क्रिप्ट होती है. अब बहुत कम लोग यहाँ पर शायद जानते हैं कि बॉलीवुड साउथ की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर और यहाँ पर हिंदी में फिल्में बनाता है. आयुष्मान खुराना से इंस्पायर होकर साउथ में फिल्में बन रही हैं. ये कैसे हुआ? अब तक ये हुआ है. विकी डोनर, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और अब एक्शन हीरो के लिए लोग मांग रहे हैं उसके राइट्स. बट ओरिजिनलिटी मुझे पसंद आती है. लेकिन आपने एक साउथ को, आई थिंक, एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए साउथ के सिनेमा को. मैं मलयालम सिनेमा काफ़ी फॉलो करता हूँ. फहद फाजिल जो है मेरे बहुत चाहिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. उनकी जो सिनेमा है मुझे बहुत इंस्पायर करती है. तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, सो ये अलग अलग सुर हैं इनके, अलग अलग ग्रामर है हर एक इंडस्ट्री का. तो मलयालम सिनेमा मुझे बहुत एक इंस्पायर करती है. हाँ, वो एक कमर्शियली जो हम मापदंड हैं वो उसमें शायद कभी कभी वो, आई थिंक इट्स मोर क्रिटिकल, एक स्लो बर्न होता है उसमें, तो मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ. फेलियर्स हम सबके जीवन का हिस्सा होते हैं. सक्सेस होती है, फेलियर्स होते हैं.
जब कोई फिल्म नहीं चलती है, मेहनत तो बहुत करते हैं और सिर्फ course. एक्टर्स नहीं, डायरेक्टर, पूरा एक लंबा चौड़ा क्रू, 100%. कैसे उस इमोशन को कैसे हैंडल करती हैं, क्या करती हैं सारा उस समय जब फिल्म रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पे नंबर नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो मतलब कैसे क्या करती हैं उस समय? एक तो हार नहीं मान सकते हम, ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन जो आप अंदर महसूस करते हो उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और वो शायद मैं सीख रही हूँ वक्त के साथ। तो जैसे अगर मेरी कोई फिल्म नहीं चली तो इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि ये क्यों नहीं चली, ना कि जस्ट वॉलोइंग इन सेल्फ पिटीज, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। तो आई थिंक ये जानना चाहिए कि ये फिल्म क्यों नहीं चली, जनता को क्या चाहिए, और अगर आप सचमुच ईमानदारी और शिद्दत और मेहनत से काम करो तो कहीं ना कहीं सब ठीक हो ही जाएगा। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो क्या आप अमृता जी से, सैफ जी से डिस्कस करती हैं, पूछती हैं, उनके साथ चर्चा करती हैं कि ये स्क्रिप्ट मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप एक्सपेरिमेंटल कि चलो यार ये करके देखते हैं, क्योंकि उम्र तो आपकी वही है इस समय? जी, दो चीज़ें हैं। एक तो ऑफ कोर्स चर्चा करती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली एज एन एक्टर मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो दी ओनली थिंग आई रियली हैव टू रिलाई ऑन इज इंस्टिंक्ट। तो अगर यहाँ से फीलिंग आए कि यार ये फिल्म करनी है, तो ये फिल्म करनी है। सच्चाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो उसको मैं ज़रूर प्राथमिकता देती हूँ मोर देन एनीथिंग। आपने एक और चीज़ पूछी थी इसके साथ साथ, पेरेंट्स के साथ, नहीं, किसी के साथ आप चर्चा करती हैं? उसके बाद हाँ, और अलग अलग फिल्में। हाँ। तो जी, तो एक्सपेरिमेंटल हैं आप? तो ये दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई होनी चाहिए उस कहानी में, मुझे लगना चाहिए कि ये किरदार दर्शाने में मुझे मज़ा आएगा, या ये कहानी मुझे जनता तक पहुंचानी है, ये एक अंदर वाली फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन जी हाँ, ज़रूर मैं चाहती हूँ कि मैं हर तरह की फिल्में करूँ, क्योंकि यही उम्र है अलग अलग फिल्में करने की। जैसे मैंने ए वतन मेरे वतन की शूट कर रही हूँ, जहाँ पे पहले जो आपने सेशन देखा उसने हमें एक म्यूज़िकल तरीके से स्टिमुलेट किया, और अब जो हम बातचीत करने वाले हैं वो आपको स्टिमुलेट तो करेगा ही करेगा, पर एक एडमिरेशन और हैरानियत से भी भर देगा इस शख्स के लिए। वेलकम टू दिस कॉन्वर्सेशन संजीव जी, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हैविंग इट। 2003 में आपकी शुरुआत हुई और आपने इतने ब्रांड्स बनाए, केश किंग, डॉक्टर ऑर्थो, सच्ची सहेली, टू नेम अ फ्यू। उनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पर आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। देखिए, जर्नी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी की बात करूं, तो 2003 में अंबाला में एक कंपनी संजीव फार्मास्यूटिकल, वहाँ से काम शुरू किया गया, और आयुर्वेदिक कुछ क्योंकि मेरे फादर BMS डॉक्टर थे, GMS डॉक्टर थे मेरे फादर, तो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमने बनाए। अब प्रोडक्ट बना लिए, बट प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता, सेलिंग के लिए कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। तो उसके बाद जैसे मैं खुद रिटेल टू रिटेल गया, तो यूजुअली मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल आपको सिखाता है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। आपको मालूम नहीं होता, ये सब चीज़ें प्री डेस्टिन्ड हैं, और उस टाइम आपकी जो ग्रूमिंग हो रही है वही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। सो 2008 तक ये ग्रूमिंग स्टेज थी। 2008 तक सिर्फ बाजार को देखा, सीखा, जाना, और इवेंचुअली जो हमें रिकॉग्नाइज किया गया वो किया गया 2010 के आसपास, जब हमारा पहला ब्रांड केश किंग जो बड़ा पॉपुलर हुआ, और वहाँ से बस ये सफ़र इस तरह से डॉट से डॉट मिलते गए और तस्वीर बनती गई। आपने स्ट्रगल की बात की, जब आप और मैं कल बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप एक अपनी खुद की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में खुद गए, और जो स्ट्रगल आपने फर्स्ट हैंड विटनेस की
कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाए, कैसे उसकी प्लेसमेंट की जाए. आई थिंक दैट वाज फैसिनेटिंग कि जो आप अभी कह रहे थे कि प्रोडक्ट तो बना लिया पर उसे बेचने का तरीका सीखना पड़ा. आपने इनफैक्ट एक नया तरीका इन्वेंट किया और फिर इन्वेंट भी किया एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो केश किंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में बहुत प्रोडक्ट्स थे, पर स्पेसिफिक कैटेगरी जो आपने बड़ी कैटेगरी के अंदर ढूंढी, उसके बारे में कुछ बताइए. कि एक वो स्ट्रगल का फेज़ कि आप कैसे जाते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ओन कंपनी. आप नहीं कहते थे कि मैं फाउंडर हूँ, आप कहते थे कि मैं संजीव फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम करता हूँ. और कैसे आप अलग अलग जगह गए, वो स्ट्रगल का फेज़ जो आपने टच ऑन किया, और फिर कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस हेयर कैटेगरी में आपको कौन सी कैटेगरी के पीछे जाना है, सब कैटेगरी के पीछे, मैजिकल कैटेगरी जो बन ली आपके लिए. देखिए, मुझे लगता है कि जो सक्सेस का रास्ता है, आपको ना पहले स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप पे जाना चाहिए. अगर आप आखिरी पायदान पे पहला कदम रखना चाहेंगे तो वो जो जर्नी ने आपको सिखाना है आप वो सीखेंगे नहीं. तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग से बेटर है कि आप रास्ते से जाएं, उसका मज़ा अलग है. और दूसरा सवाल जो आपने किया हेयर केयर सेगमेंट के बारे में, अगर आपने किया, 2010 में उस टाइम ज़्यादा जो बातें थी वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की थी, फैशन की थी. अगर हेयर केयर में बात करें तो देखिए, हमेशा आपको अपना मौका ढूंढना पड़ता है. उसमें हेयर हेल्थ की बात इतनी अवेयरनेस से नहीं होती थी, इतनी मजबूती से नहीं होती थी. जबकि हेयर प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक के हेयर फॉल होता है और हर कोई चाहता है कि किस तरह से हेयर हेल्थ को इंश्योर किया जाए. और आयुर्वेदा में बड़े फैसिनेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को लाना और बताना, ये रास्ता थोड़ा मुझे लगा आसान है कि बजाय अब कैटेगरी साइज गिने और उस कैटेगरी में अपना शेयर ढूंढें. तो मुझे लगा कि एक कैटेगरी जो शायद आज उतनी बड़ी नहीं है, बड़ी आने वाले टाइम में बड़ी हो सकती है, तो वही आज के एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं कि अब नई कैटेगरी बनाएं, नए बिजनेस बनाएं, तो नया हिंदुस्तान बनेगा. बिल्कुल, और यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है कि हम नई कैटेगरीज ढूंढें, और यही एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं मानती हूँ एक आप जैसे शख्स एक प्रेरणा का प्रतीक हैं. मैं वापस केश किंग की बात करना चाहूँगी बिकॉज इट हैज़ बिन सच अ फिनोमिनल सक्सेस एंड आई वांट टू कम बैक टू दैट इन अ लिटिल बिट. पर एक तरीके से आप खुद एक डॉक्टर हैं, इनफैक्ट मुझे आपको डॉक्टर संजीव जुनेजा कहना चाहिए, खुद एक BMS की डिग्री आपने हासिल की है. पर जो केश किंग का आपने आइडिया, एक माइक्रो कैटेगरी क्रिएट की जो अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी बन गई हेयर हेल्थ की, उसको मार्केट आपने कैसे किया? बिकॉज रियल जीनियस तो वहाँ पर भी है. उसका मेरा एक अगला सवाल भी है. और आप मुझे कल जब आप और मैं बातचीत कर रहे थे चाय पर चर्चा, आपने कुछ उसके नाम के बारे भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बताया, उसके बारे में आप और बात करना चाहेंगे? केश किंग नाम कैसे चुना गया? जो गर्ल्स हैं वो थोड़ी जेनरस होती हैं, गर्ल्स किंग को एक्सेप्ट कर लेती हैं. बॉयज़ जो हैं वो केश क्वीन शायद लगाने में उतना, उनका बॉयज़ का थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है कि केश की क्वीन अगर उन्हें लगाना पड़े. तो मैं कुछ इस तरह से आपको बता रहा था. तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है, दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि आपका प्रोडक्ट सेल्फ एक्सप्लेनरी हो, और आपने कहा कि वाई हेयर केयर एंड वाई दैट स्पेस. तो मुझे लगता है कि आपका जो गैप है, आपको अपना गैप ढूंढना है, आपको अपना गैप देखना है, और गैप को कैसे पोजीशन करना है, आपको प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करना है, आपका TG क्या है, उसका MRP क्या है, उसका पैकेजिंग क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन क्या है. तो ये कई चीज़ें हैं, सब चीज़ों के रेशो से चीज़ें बनती हैं कि आप हर चीज़ का ध्यान रखें. माइक्रो से मैक्रो बनेगा. आपने कहा कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो जेनरस होती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि असली किंग तो वो हैं. घर में तो किंग वही हैं और दुनिया में भी किंग्स महिलाएं हैं. अब नाम बेशक आप जेंट्स का लगा दें, पर असली किंग तो हम जानते हैं महिलाएं, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. बट आई वांट टू कम बैक टू बिजनेस. संजीव जी, आपने बहुत सारे मैजिकल ब्रांड्स बनाए हैं. आपको कहा जाता है कि यू हैव द माइडास टच,
कि आप जिस चीज़ को टच करते हैं वो गोल्ड बन जाती है, पर ये बाहर से लोगों को लगता है, एक्चुअली अंदर से कितना परिश्रम, कितना हार्डवर्क, कितनी स्ट्रैटेजी लगती है, उसके बारे में थोड़ी सी आप अगर हमें इंसाइट्स देंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस। क्योंकि ब्रांड्स को शिखर तक ले जाने की एक जर्नी होती है और आप बहुत से ब्रांड्स को उस जर्नी तक लेकर गए हैं, पर उन्हें उस लेवल पे सस्टेन करने की स्ट्रैटेजी, उस पर भी कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। देखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट जो है, आप ब्रांड को पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड में कन्वर्ट हो, आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स ही ब्रांड बनेंगे, ये मूल मंत्र है। अगर आपके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो जितनी आप मेहनत करेंगे वो प्रोडक्ट उतनी जल्दी किल होगा। सो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आपका प्रोडक्ट जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो मासेस में एक्सेप्टेड है। उसके बाद आपका गैप क्या है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, उस कैटेगरी में आपका हीरो ब्रांड क्या होगा, क्योंकि कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपका एंट्री आपको एक प्रोडक्ट से करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने 50 प्रोडक्ट्स इकट्ठे लॉन्च किए और आप एक हीरो ब्रांड से आप आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट से आगे जाना और बाद में उसके साथ बाकी प्रोडक्ट्स का रेंज खड़ा करना वो ज़्यादा बेटर है उसके आधार पर, क्योंकि आपका एक ब्रांड एक्सेप्ट हो गया, पसंद आ गया लोगों को। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और हाँ, जब आपने कहा कि शिखर तक या सक्सेस के पीक तक कैसे रहना, उसके लिए मैंने कहना है कि कंसिस्टेंट एफर्ट, ये एक एफर्ट या कंसिस्टेंट एफर्ट, आपको रोज एफर्ट करना है। प्रोडक्ट जो है ये डेवलप होता रहता है, आपको प्रोडक्ट को डेवलप करते रहना है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करते रहना है, उसके पोजीशन के ऊपर काम करते रहना है। आई थिंक आपने, मैं वापस केश किंग की बात करना चाहूँगी, बिकॉज दैट वाज योर कॉलिंग कार्ड, उससे आपकी पहचान बनी और फिर क्योंकि आपने एक इतना फैंटास्टिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको सक्सेसफुली डिलीवर किया, उसके आधार पर मल्टीपल ब्रांड्स जो उसके बाद आए, डॉक्टर ऑर्थो से लेकर सच्ची सहेली एट्सेट्रा, और इनफैक्ट केश किंग की जब एक्विजिशन हुई वो एक रिकॉर्ड प्राइस पर हुई, एक बड़े जानी नामी कंपनी द्वारा। ये पहलू हम सब देख चुके हैं, आपकी केश किंग से डॉक्टर ऑर्थो तक की जर्नी हम देख चुके हैं। एक सवाल था कि कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे जो शायद आपने बनाए जो उस शिखर तक नहीं पहुंच पाए, कि सारे आपके ब्रांड्स जो बने वो वहाँ तक पहुँचे, ब्रांड मेकर जैसे आपको कहा जाता है। देखिए, हमारे जो ब्रांड्स हैं, डॉक्टर ऑर्थो हमारा पेन सेगमेंट में है, पेट सफा हम लेग्जेटिव कैटेगरी में है, रूप मंत्रा हम स्किन कैटेगरी में है, सच्ची सहेली, आई मंत्रा, इचकू, एंड बैटमैन, सर अब आज बैठे हैं, बैटमैन ग्रूमिंग रेंज है। और आई एम ए फॉर्चुनेट वन कि मुझे लगता है कि, और ये चीज़ मैं आप सभी को ये कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो आपका प्रोडक्ट है आप हमेशा पहले एक पायलट रन करें। आपने भी कहा कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो प्रोडक्ट आपके सक्सेसफुल नहीं हुए, जो उतनी पब्लिकली एक्सेप्टेड नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक पहले छोटा पायलट रन करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सबसे पहले अगर एक स्मॉल, मेरा जो मानना है और मेरा जो बिलीव है वो ये कि हमेशा प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को लेकर इंश्योर रहे, प्रोडक्ट को एक पायलट रन करें, एक छोटे शहर से, सिटी से, स्टेट से, जो गलतियां होनी है वो गलतियां हो जाने दें, उनसे सीख लें और उससे सीखते हुए फिर आगे बढ़ें। और जब आपको पूरा बिलीव हो जाए कि हाँ अब यहाँ पर किसी तरह से गलती नहीं हो सकती और ये हर तरह से प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेड है और इसके बाकी जो माइक्रो चीज़ें हैं वो भी एक्सेप्टेड है, तो आप उस पर अपना पूरा एफर्ट करें, फिर आप उस पर पूरा इन्वेस्ट करें, उसे बड़ा बनाएं। उसी से मेरा एक और सवाल है संजीव जी, वो ये कि यू आर द ब्रांड मेकर, यू हैव द गोल्डन टच। अब एक सीक्रेट तो आपको बताना पड़ेगा कि अब इसका आंसर मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या उसकी मार्केटिंग?
क्योंकि वो भी आपने बखूबी की है, उस बात में कोई शक नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी पोजीशनिंग स्पॉट ऑन रही है, आपकी मार्केटिंग स्पॉट ऑन रही है, आपके जो एम्बेसडर्स हैं उनकी चॉइस बहुत ऑन पॉइंट रही है। तो अब अगर बताना हो, ऑफ कोर्स अ बैड प्रोडक्ट एंड ग्रेट मार्केटिंग इज ऑफ नो यूज़, पर अगर आपको चूज़ करना हो, कैसे आप चूज़ करेंगे, प्रोडक्ट या मार्केटिंग? देखिए, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपका, मैंने अभी कई बार ये बात दोहराई कि अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे उतनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को किल कर देंगे। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग भी उसके बाद। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में लोगों को बता सकें, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा हो। जिस मॉडल में आप हैं, ई कॉमर्स में हैं, जनरल ट्रेड में हैं, मॉडर्न ट्रेड में हैं, आपका प्रोडक्ट आसानी से मिले लोगों को, पहुंचे लोगों तक, तो मैजिक होता है। इंडीड। आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे यहाँ बैठे हैं ऑडियंस में ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ब्रांड मेकर डॉक्टर संजीव जुनेजा हैं, वो इन पर्सन कैसे हैं। मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली कल आपसे रूबरू होकर बातचीत करके आपको थोड़ा जानने की, पर मैं यहाँ पे ऑडियंस को बता दूँ कि संजीव जी इज़ अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स एंड आई थिंक व्हाट ही टोल्ड मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कल आपने मुझे बताया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्राप्ति आपका बैलेंस है। ज़िंदगी में जिस तरीके से आप प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम कभी किसी बिजनेस को करते हैं या पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो हम उसमें एक वेट तय करते हैं कि सर्टेन परसेंट इस चीज़ का, सर्टेन परसेंट इस चीज़ का, सर्टेन परसेंट इस चीज़ का। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में, अगर दिन में हमारे पास 18 घंटे हैं, तो उन 18 आवर्स को मुझे लगता है कि बैलेंस करना चाहिए कि इतना टाइम जो है ये मेरे प्रोफेशन के लिए है, इतना टाइम मेरी फैमिली के लिए है, इतना टाइम मेरे फ्रेंड्स के लिए है, सोसाइटी के लिए है, इतना मेरा मी टाइम है, ये मेरे लिए है। तो ये चीज़ें आपको हैप्पी रखेंगी। आप हैप्पी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो काम करते रहेंगे। हैप्पीनेस और हेल्थ में रोमांस का कितना बड़ा योगदान रहा है। मैं एक खुलासा करना चाहती हूँ, थोड़ा सनसनीखेज खुलासा होगा। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने 3 शादियां की हैं एक ही महिला से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये मैं देखिए आयुर्वेदा से हूँ, तो मैं इंडियन ट्रेडिशन में बड़ा बिलीव करता हूँ। और वो पहली जो शादी थी वो इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं भूल गया। और अब बिजी भी थे ना अपना करियर बनाने में। आई मीन उस तक तो आपका स्ट्रगल का भी फेज चल रहा था, तो मैं आपको माफ कर सकती हूँ। तो उस वक्त आप भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मुझे लगा कि मेरी वाइफ भी जो है वो मुझे माफ कर दें आने वाले टाइम में, तो मैंने उनसे एक बार दोबारा शादी की 2015 में। और यकीन मानिए कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। देखिए, और इतनी खूबसूरत लगी, फिर दोबारा की और दोबारा भी करूँगा। मुझे लगता है कि अपने हिस्से की खुशियाँ छीन लेनी चाहिए, इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। जो जायज़ है, जो एथिकल है, जो नैतिक है, खुद से मोहब्बत करें, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करें, पॉजिटिविटी में बिलीव रखें और अपने हिस्से की ज़िंदगी जिएं। दिस इज़ वन लाइफ, एक बार मिलनी है, बहुत छोटी है। सुबह उठें, शाम तक का गोल तय हो, और रात को अगर वो अचीव कर लिया तो मज़े से सोएं। क्या बात है। ऑडियंस में गुलशन ग्रोवर साहब बैठे हैं और कुछ कहना चाहेंगे। कैन वी गेट अ माइक अक्रॉस टू हिम प्लीज? और थैंक सो मच। थैंक यू राधिका। Good afternoon. Hi. Hi, Gul. Hi, Sanjeev. I've known Sanjeev for about 3 years now, and I've had the great pleasure of, knowing him, doing some business with him.
तो मैं पहली बार आपको ज़िंदगी में रोज़ बातचीत होती है, और पहली बार मैं आपको मंच पर आपके विचार सुन रहा हूँ और आपकी इस ग्रेट सक्सेस को अपलॉड कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो शायद इस कॉन्वर्सेशन में नहीं है, कि आपकी कंफर्ट जोन है आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स दैट आर बेस्ड फॉर नीड, कि आपके अगर पीठ में दर्द है तो आपने डॉक्टर ऑर्थो लगाया, पेट खराब है तो पेट सफा किया, वगैरह वगैरह। नहीं, बैडमैन का भी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहली बार आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ग्रूमिंग प्रोडक्ट लॉन्च की है, बैडमैन, which is like it's got saffron soap, it's got face wash, it's got shaving cream, it's got oud perfume and various things. I was just sharing it with Veer Sangvi when I walked in. He said, "Are you speaking?" I said, "No, I came here to listen to my brother, my friend Sanjeev Juneja." And I said, "He's launched a men's grooming product." He says, "That's great. All men use it but never admit it. All men need it." I said, "That's what he said when he launched this, Badman grooming products, that मर्द इस्तेमाल करते हैं, एडमिट नहीं करते कि मैं रात को फेस क्रीम लगाकर सोया था, या मैं बहुत बार फेस वॉश से धोता हूँ, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर अगर वो प्रोडक्ट हर्बल हो, आयुर्वेदा हो, तो और भी अच्छा है। तो क्या आपको अलग तरह से थिंकिंग, अलग तरह से स्ट्रैटेजी, पहली बार मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइवेट में भी नहीं पूछा, अलग तरह से स्ट्रैटेजी, अलग तरह से थिंकिंग करनी पड़ी कि ये सब प्रोडक्ट्स मैं आसानी से उनको हिट करा सकता हूँ, चला सकता हूँ? ये अलग प्रकार का प्रोडक्ट विच इज़ नॉट इन योर कंफर्ट जोन, विच इज़ नॉट इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? थैंक यू। सो गुलशन भाई, जब भी हमारी बात हुई, हमारी कई घंटे बात हुई हमारी, और आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि देखिए, बैडमैन इज सच ए ग्रेट पोजीशन, और आपको देखते ही लग्जरी याद आती है, आपको देखते ही निश टीजी के लिए प्रोडक्ट्स जो है ध्यान में आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हीरो ब्रांड जो है हमारा, वो मिस्ट स्प्रे से हमें करना चाहिए। और अभी इस पूरी जर्नी में 2 साल का एक्सपीरियंस में आप देखिएगा कि जो चीज़ें हमने आपसे शेयर की, जो साझी की, वो आपको लगती होंगी कि बड़ी रेलेवेंट थी, जो हमने तब आपको कही होंगी। थैंक यू वेरी मच संजीव, दिस वाज फैंटास्टिक। जाते जाते मैं एक बात बता दूं, संजीव जी लिखते भी हैं, ही इज़ अ पोएट, और अगर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सबके लिए इनफैक्ट जो वर्क लाइफ बैलेंस तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल। सपनों की बात की थी आपने। हाँ जी, मैं क्योंकि कल जिक्र हो रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सपने देखना बड़ा ज़रूरी है, और सपनों को पूरा करने के लिए एक जिद रखनी भी बड़ी ज़रूरी है, पर थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाए। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मध्यम मार्ग सबसे उत्तम है। ट्राई टेस्टेड ट्रस्टेड है। तो मुझे लगता है कि आप सपने देखें, सपनों के लिए पूरे एफर्ट्स करें, बट इतनी ऊर्जा और इच्छा बचा के रखें कि अगर दोबारा ये जर्नी करनी है, दोबारा ये करना है, तो ऊर्जा भी रहे और वो इच्छा भी रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि कभी भी पहले से बनाए रास्ते पे चलने की गलती ना करें, हमेशा रास्तों के दरमियान रास्ते तलाशें। हर रोज एक नई सुबह है, हर रोज एक नया विचार है। थैंक यू सो मच संजीव जी, इट्स बीन फिनोमिनल लिसनिंग टू यू। थैंक यू। Thank you very much for having me. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Juneja, for those wonderful words that would definitely inspire entrepreneurs all around. Software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds.
design of India for you. Partner, Vico Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? ये जो मौजूदा पार्टियां हैं, ये अच्छा काम कर लें. मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते? एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते? लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम? अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. बचपन से मेरे को याद है 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं. केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है. सुन रहे हैं बचपन से, है ना? अगर केरला में इतने अच्छे तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहाँ से सीख के कर लेना चाहिए था. केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है. तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया? समझ नहीं आता. उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते? मेरे को तो समझ ही नहीं. तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है. जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूं. और आप सीखो, वोट लो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब. आपने 1984 में 1 लाख का लोन लेकर ये कंपनी शुरू की. उस वक्त आपके पास एक एम्प्लॉय था, योरसेल्फ, और आज आपकी कंपनी लिस्टेड है और 5000 से अधिक लोग गैलन फैमिली का हिस्सा हैं. उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए. आपसे चर्चा शुरू करें इसके पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए, उसके पहले कभी संसद नहीं गए थे. हमारे मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए, उसके पहले कभी विधानसभा नहीं गए थे. उसी तरह से हम भी ऐसी किसी कॉन्क्लेव में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है और आपने सीधे मुझे यहाँ ला के बिठा दिया है. तो ये वो लोग तो मजे हुए लोग थे, तो हमारे साथ थोड़ी रियायत बरतिएगा. और ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, तो मुझे उस रूप से मेरे बारे में वैसा कुछ मत सोचिएगा. कुछ हल्की फुल्की चर्चा इनके साथ कर लेंगे. थोड़ा बहुत अनुभव जो है, मेरी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो प्रश्न भी हल्के ही रखिएगा. अब आते हैं उस सवाल पे. गैलन ग्रुप की जब स्थापना 1984 में हुई, उसके पहले हमारे यहाँ पेरेंटल बिजनेस फूड ग्रेन के ट्रेडिंग का था. तो थोड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ के निकला ग्रेजुएशन करके, तो मुझे कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि साहब मुझे अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो कुछ हम छोटी मोटी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की. वो उनके लिए एक बड़ा सब्जेक्ट था 1 लाख रुपए देना उस समय, बट समहाउ उन्होंने हमारे लिए मैनेज करके दिया. और एक छोटी सी 9 वोल्ट के एक्सपेलर्स की एक तेल मिल मैंने लगाई. और वो जर्नी, एक आदमी, एक कर्मचारी, वही मेरा मैनेजर, कैशियर, लोडिंग इंचार्ज, सुपरवाइज़र, ऑल इन ऑल वही होता था. 2-4 लेबर साथ में होते थे. तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई. और मुझे खुशी है कि आज गैलन ग्रुप में 2 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 1 मिलियन कैपेसिटी के, 129 मेगावाट पावर का जनरेशन है. 5000 लोग उसमें काम कर रहे हैं. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे पिछले 15 सालों से लिस्टेड है. तो ये जर्नी यहाँ तक हम पहुँचा सके, ईश्वर की कृपा है और हमारे लोगों का, परिवार का, सबका उसमें सहयोग रहा है. जर्नी बहुत लंबी है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है. बट आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड एंड थैंकफुल टू गॉड.
थैंक यू अग्रवाल साहब। ये कोई मामूली जर्नी नहीं है। 1984 में जो शुरू हुई, 15 साल पहले जो लिस्ट हुई, आप वन मैन आर्मी से कंप्लीटली सेल्फ मेड हैं। और ये मैं मानती हूँ आप सबके लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, आप सबके लिए प्रेरणा का एक प्रतीक है। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब और भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ इस मंच पर, जो आपकी पहली बार मंच पर है, मोदी जी और योगी जी की तरह, मैं अपने आप को भाग्यशाली और बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे साथ मैं आपके साथ बात करने की मुझे ये बहुत खूबसूरत एक अपॉर्चुनिटी मिली। नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा माइक ऊपर रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर जी। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है। मेरी स्टोरी आपके सामने है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमारे देश में है। बहुत से लोगों ने ग्राउंड से शुरू करके स्काई तक अपनी यात्रा पूरी की है, और ये जर्नी है अभी गैलेंट की जर्नी। इट्स गोइंग ऑन, वी आर स्टिल वर्किंग। अब फ़र्क यही है कि पहले मैं सेना भी खुद ही था, सेनापति भी खुद ही था। अब मेरी भूमिका सेनापति की हो गई है, सेना बहुत बड़ी हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है हमारे रोल में। बट स्टिल जिन प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग गैलेंट ग्रुप में, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग आगे इसको ले जाने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इसको निश्चित रूप से और अच्छी जगह तक पहुंचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आपके तजुर्बे के अनुसार मैं आपसे उसको मद्देनज़र रखते हुए, इनफैक्ट मैं आपसे एक 2-3 बहुत क्रिटिकल सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, नए भारत के निर्माण की बात है, कुछ हद तक नव निर्माण की बात है। $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो एक लक्ष्य, जो एक अचीवेबल लक्ष्य है, आप बताना चाहेंगे उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है और उसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पर क्या होगा? देखिए, जैसा कि हम जानते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, बट हम सब ये भी जानते हैं और हमें समझना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर के रास्ते से जो ग्रोथ होनी है उसकी एक लिमिटेशंस है। तो हमारी ग्रोथ अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक 2025 में पहुंचना है, तो इंडस्ट्री के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। इंडस्ट्री का ही उसमें मेजर रोल है। और जहाँ तक उसका लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न है, अगर हम आज देखें, हम लोग जनरली ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लोगों का जो जीवन स्तर है वो कंपैरेटिवली बेटर है। रीज़न एक ही है कि उन्होंने वो ग्रोथ पहले हासिल की जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि वो इसका इम्पैक्ट लोगों के जीवन स्तर के ऊपर उठने में होने ही वाला है। उसी तरह से हमारे देश में भी होने वाला है। तो लोगों के जीवन स्तर में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की, और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी आई, इसलिए उनकी जीवन का स्तर उठा। आप बताना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रोल कितना मायने रखता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सी पोर्ट्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, पावर जनरेशन, ये सारी चीज़ों का, सी पोर्ट्स का, इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल है। रोड के बारे में तो हमको लगता है कि हम लोग जिस स्थिति में हैं 10 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज गडकरी जी हम लोगों के बीच में होंगे, ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, बट स्थिति संतोषजनक है। और आने वाले दिनों में जो हमारी आवश्यकता है उसके अपेक्षानुसार इसमें प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रही है। रेल के मामले में भी सरकार के पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वंदे भारत वगैरह की स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई है, दूरी घटी है, संसाधनों का उपयोग बढ़ा है। लेकिन अभी गुड्स ट्रैफिक के मूवमेंट में, गुड्स ट्रैफिक के हैंडलिंग में अभी स्थिति हमारी संतोषजनक नहीं है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लोड गुड्स मूवमेंट पे आने वाला है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुड्स मूवमेंट की स्थिति है वो भी उतनी संतोषजनक नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेलवे कहती है कि 15% आप एडिशनल प्रीमियम दीजिए और प्रायोरिटी पे आप रैक पाइए। हम इसको सिंपली ऐसे लेते हैं कि हम अपनी एंट्री टिकट को खुद ही ब्लैक कर रहे हैं। वही हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, हम उसको
ज़्यादा से ज़्यादा रैक का मूवमेंट बढ़ाएं। वाई नॉट भारत वंदे भारत स्कीम इन गुड्स ट्रेन, अगर हम इसके ट्रेवल टाइम को आधा कर पाते हैं तो उसी स्टॉक से रेलवे के हम डबल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो इस दिशा में थोड़ा रेलवे को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये एक समस्या है जिसके निदान की तरफ और फोकस करने की ज़रूरत है। पैसेंजर मूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन ये गुड्स मूवमेंट भी हमारे इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। सी पोर्ट है, सी पोर्ट्स में भी हमारी हैंडलिंग अभी बहुत पुअर है। अभी भी जहाज़ वेटिंग लिस्ट में रहते हैं जो विदेश से सामान लेके आते हैं। तो अगर इसमें और प्लेयर्स आएँ और कंपटीशन इसमें बढ़े तो ये फैसिलिटी और बेटर हो सकती है, और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर इसका कहीं मोनोपलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली उसमें जो है सर्विस उसकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उसी तरह से हमारे यहाँ स्किल लेबर की बात करना, हमारे यहाँ स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, पूरी दुनिया को आज इंडिया के लोग चला रहे हैं। तो ये साधन हैं हमारे पास, नेचुरल मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कोयला है, सब कुछ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोल है वो भी उसी तरह का है कि हम विकास की बात करें और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो विकास के बारे में बात करना, विकास के बारे में सोचना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा ही है। तो हमें गुड्स ट्रेन के लिए गुड्स मूवमेंट के लिए गुड्स ट्रेन वंदे भारत के रूप में चाहिए, और ये आप समझते हैं हमारे लिए अनिवार्य है। यस। चलिए, मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय में आपकी बात पहुंचे और वंदे भारत पर गुड्स ट्रेन शुरू हो जाए। सरकार की बात करते हुए दो सवाल, एक्चुअली दो अलग सवाल हैं, पर क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं एक में दो भागों में पूछना चाह रही हूँ एक ही सवाल। पहला, जीएसटी। अब आप वन मैन आर्मी का एक हिस्सा रह चुके हैं, खुद ही आर्मी थे। आपने जब अपना बिजनेस अडॉप्ट किया 1984 में, आप स्क्रैप डीलर्स के साथ भी डील करते थे, जो एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी के दृष्टिकोण से ख़ासतौर में जब आप स्क्रैप डीलर्स की बात करें, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? एक तो जीएसटी पे सवाल था, और एक थोड़ा हल्का सवाल वो ये है कि आपकी बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, सरकार तो क्लाइंट है ही आपकी, उस पर भी थोड़ी सी लाइट ज़रूर डालिएगा, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वर्सेस सरकार। पर पहले जीएसटी पर देखिए, जीएसटी एक्ट आने के बाद से जो मल्टीपल कंप्लायंसेस थे, मल्टीपल रिटर्न्स थे, निश्चित रूप से उसमें सरलता हुई है। एक रिटर्न से एक कंप्लायंस से काम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो मल्टीपल स्लैब्स हैं ये थोड़े कम होने चाहिए। ये 3 स्लैब में आना चाहिए, ये तो एक बेसिक इशू हो गया। अब आपने स्क्रैप के बारे में कहा है, इसमें बड़ी समस्या है। अब जीएसटी में जैसे हम लोगों के रॉ मटेरियल में करीब 85% तो आयरन और कोल ये सब है, 10-15% के करीब में स्क्रैप का भी उसमें प्रयोग होता है। अब स्क्रैप हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, छोटे छोटे व्यापारियों से वो सप्लाई होती है, वो फैक्ट्री में आता है। जीएसटी विभाग उनको रजिस्ट्रेशन देता है, उस रजिस्ट्रेशन की स्ट्रेंथ पे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जनरेट करते हैं। हम जब किसी सप्लायर को अपने यहाँ एंगेज करते हैं तो उसका केवाईसी करते हैं, उसका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड एक्सेट्रा सब करके कि हाँ ये बोनाफाइड सप्लायर है। उसका माल आ गया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, जीएसटी का फंड हम रिटेन करते हैं। फिर वो 20 तारीख को रिटर्न फाइल करता है। वो जब रिटर्न फाइल करता है तो वो जो जीएसटी उसने हमसे रियलाइज की है थ्रू बिल, वो इनका पोर्टल ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट को क्रेडिट दे देता है, और जब वो क्रेडिट दे देता है तो हम उनको पेमेंट कर देते हैं। अब उसके कुछ दिनों बाद विभाग जागता है कि साहब वो जिन लोगों से आपने माल खरीदा उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ मैनिपुलेट किया, या आपको माल बेचने के बाद वो भाग गए, तो अब इसका पैसा आप जमा करिए, क्योंकि वो तो भाग गया। मेरा ये कहना है कि आप हमसे दोबारा जीएसटी की बात करते हो कि दीजिए जो जीएसटी का अमाउंट हम दे चुके और जिसको सरकार वसूल नहीं पा रही है, तो सरकार अपनी असफलता या इन अदर वर्ड्स इनकॉम्पिटेंसी को हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस इशू को 4 बार, अगर आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर जी तक मेरी बात पहुंच सके भारत सरकार में, उन 2021 से मैं लिख रहा हूं, 4 रिमाइंडर उनको भेज चुका कि ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है,
अगर हमारे प्रोसेस में कोई डिफेक्ट है तो आप हमको गाइड कर दीजिए, उसके अनुसार हम काम करें ताकि हमारी आईटीसी में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकार कोई नियम नहीं बनाती, कोई गाइडलाइन नहीं देती, सरकार अपने एसएससी से पैसा नहीं वसूल पाती और हमसे कहती है कि आप जमा कर दीजिए। ईजीएस्ट मोड ये है कि हम अपनी फैक्ट्री को उखाड़ के भाग नहीं सकते, कि कहाँ जाएंगे? तो दिस इज नो वे, देयर मस्ट बी सम रिड्रेसल सिस्टम इन द गवर्नमेंट। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम जिस सिस्टम में बार बार लिख रहे हैं उसमें तो हमने पूरे अथॉरिटीज़ को, राइट फ्रॉम द सेंट्रल टू स्टेट, मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, डीएसटी चेयरमैन, एवरीवन, 14 लोगों को मैंने लिखा। प्रॉब्लम सलूशन तो छोड़िए, किसी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। तो अगर यही रिड्रेसल सिस्टम है तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर है ये तो टोटली इनइफेक्टिव है, और इसका टोटल रिजल्ट ये आने वाला है कि जो लोग ऑनेस्टली टैक्स देना चाहते हैं वो डिस्करेज होंगे। अगर उनके साथ ज़बरदस्ती आप टैक्स वसूलेंगे तो वो उसी सिस्टम में से कहीं चोरी करके निकाल के उस टैक्स को भरेंगे, क्योंकि 2 बार टैक्स दे करके इंडस्ट्री चलाना ये पॉसिबल नहीं, कमर्शियली वायबल नहीं होगा। तो ये इस प्रॉब्लम का एक रिड्रेसल सिस्टम जरूर एक स्ट्रॉन्ग ऐसा होना चाहिए। आप विजिलेंस कर रहे हो, आप छापे मार रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, अरे आपका एसएससी भाग गया तो मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप अपने एसएससी से वसूलो ना, जिसने हम आपको एविडेंस दे रहे हैं कि हमारे यहाँ माल आया, आपने उसको रजिस्ट्रेशन दिया, जिसकी स्ट्रेंथ पे वो एम्पावर्ड हुआ कि वो ई-वे बिल जनरेट कर रहा है, बिल जनरेट कर रहा है, हमसे टैक्स वसूल रहा है, और आप उससे नहीं ले पा रहे हो सरकार होके। हम ही एक निरीह प्राणी मिल गए हैं, गरीब आदमी, हमको आप डंडा किए हुए हो। दिस इज नॉट द वे, देयर मस्ट बी सम प्रॉपर सिस्टम। थैंक यू सो वेरी मच। एक आपकी क्लाइंट लिस्ट के बारे में बोल दीजिएगा। देखिए, क्लाइंट लिस्ट वाले में ये है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डील करने में सबसे बड़ी सुविधा प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या है कि कोई रेट्स का नेगोशिएशन है, पेमेंट की बात है, कुछ आपको करना है तो आप किसी से बात करके उनके यहाँ जो भी आपका बायर है आप उसको सेटल डाउन कर सकते हो। गवर्नमेंट सिस्टम में एक सेट नॉर्म से उनकी कोई पॉलिसी है या कोई रेट 1 महीना पहले तय हो गया, उसी रेट पे लेंगे, उसी पॉलिसी से लेंगे। कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को वो कंसर्न ऑफिसर या डिपार्टमेंट ठीक भी करना चाहे तो इतना बड़ा चैनल है कि वो चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि आपका पेमेंट वगैरह गवर्नमेंट सिस्टम में पड़ा है, इतने देर से आता है, तब तक आप एनसीएलटी पहुंच जाते हैं। वो हो भी रहा है, जी बिल्कुल। तो उस समय ये लगता है कि अगर आ भी गया कभी, तब तक आपकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज कंफर्टेबल एंड बेटर टू बी डील विद प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब। जाते जाते एक संदेश आपको बता दूं, अग्रवाल साहब कवि भी हैं, लिखते भी हैं, और आपने मुझे जो बात कही थी वो ज़रा प्लीज़ पढ़ के बताइएगा। और ये मुशायरे और सम्मेलन कम से कम 2 बार अटेंड करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं। जाते जाते एक संदेश। जी देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सबको समझ लेना चाहिए, इजी टास्क नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत, लगन, समर्पण के साथ काम करना है। आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए और आपका लक्ष्य के प्रति वही अर्जुन वाला रवैया होना चाहिए कि मछली की आंख में ध्यान लगी हुई है, उसी तरह से आपको काम करना चाहिए। और असफलताएं रास्ते में आएंगी, ये नहीं हो सकता है कि आप वन वे ट्रैफिक की तरह चलते चले जा रहे हैं और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा। असफलता आएंगी, उनसे घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए 2 लाइन मैंने लिखी थी, वो इस औद्योगिक सफ़र में डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद एबीपी न्यूज़ को, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को यहाँ आने का अवसर दिया। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने मुझको झेला, सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टेज पर बने रहिए। I'd like to invite Munish Atre, head. Where the software engineer meets the smart market analyst, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? Ideas of India co-presented by
डाबर वैदिक टी, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। को-पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। टेक्नोलॉजी पार्टनर क्रिएट टुडे एनरिच टुमारो पैनासोनिक। गोल्ड पार्टनर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स, डिजाइन ऑफ इंडिया फॉर यू। पार्टनर बीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस, गो गैस। क्लीन एंड ड्राई, नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज। सिडको, वी मेक सिटिंग्स। MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. आपकी जोड़ी होती थी सलीम जावेद, एक जोड़ी में आप जी 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 और फिर then in the 80s you separated. Was it like one day or was it built up? Because मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल काफी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, साथ में स्टार्टअप खोलते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं, फिर थोड़े सालों बाद अलग हो जाते हैं. Was it amicable? Was it like? Do you want to talk about it? नहीं, अलग-अलग केसेस में अलग-अलग होता होगा. In our case it was totally amicable and extremely civilized. देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी की पार्टनरशिप में सीमेंट फैक्ट्री बनाई है या टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है या स्टील फैक्ट्री बनाई है, आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज ईजियर कंपैरेटिवली. If you are basically decent people, you know raw material कितना का है मार्केट में, you know इसे बनाने में, प्रोसेस करने में कितना एक्सपेंस होता है, you know मार्केट में इसका रेट क्या है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और हो रहा है. तो वो अगर आपका बहुत ग्रेट पर्सनल रेपो ना हो या ना रहे, तो भी if you are basically decent civilized people, you can continue that partnership. देखिए आप साउथ में जो फिल्में बनती हैं उसकी Thank you for joining us. Pleasure is all mine. Thank you. You know, I had the opportunity to sit and chat with you yesterday over a cup of coffee, and I found the journey fascinating. And I'm going to read this from here because I don't want to get the number wrong. 100 crore turnover 15 years ago, and 4 stores. And today, it's a 3,500 crore turnover with 130 plus stores. I mean, the number is staggering. From 100 crores 15 years ago to 3,500 crores. Tell us about this journey. So, you know, the journey as it begins starts with a vision, with a thought. So after finishing my education, finishing my MBA from IMT Ghaziabad, when I joined business along with my father, as the turnover was 100 crore, you start thinking big. You start having a goal in mind and say that let us work towards achieving the goal. But that is a part of the vision. But then what is important is the execution. And what are the processes that you move towards achieving the numbers? So it starts with, you know, reaching out to more and more customers. Customers used to come from various parts of the country trying to buy your kind of jewelry. Why? Because, Bengal, where we originally belong to, is famous for its handcrafted jewelry. The karigars working all across the country comes from the villages in and around Bengal. You know, skill, craftsmanship, this is something that is very inherent to India. And I must tell you that it is not just in the country, but all over the world. 90% of the diamond, cut and polished diamonds are done in India. We are the second or the third largest jewelry manufacturers for the world. So it is a skill that is inherent with us in our country, in our part of the country for more than 5,000 years. So it was only but natural that you reach out to more and more customers. And then, along with your stores, how do you reach out to them? So today we think of online model, there is a whole platform. But at that point of time, it was through the franchisees that we started entering, not only the bigger cities, but also into tier 2, 3, 4 cities of the country. So the growth of the country as we see currently is not only the urban India, but it is also the rural Bharat. So together, we reached out more. And then when you deal with precious jewelry, how do you deal with them? You need to have a very strong backend, a very strong tech-oriented backend that helps you to control. So implementation of processes, audits, ERP systems, so that you're tracking the data, you're ensuring that you're getting the right kind of product to the right kind of customer. So there is a whole lot of back-end thinking, and finally the execution, and then the brand building. And that's where you see that with all the effort of the full team,
you reach a number and then there's more to achieve in the future. And I hope that number goes higher and higher with all the things that you have planned in Whatever the coming year. we've been hearing about the India story, I think we as entrepreneurs are extremely optimistic and positive that with the growth of India in the coming 10, 15 years, if we continue to focus on the cheaty story that everyone has been talking about, that keep working towards it, you will achieve the goal. I'm sure we will achieve higher. Speaking of the India growth story, do you want to talk about what the role of the jewelry industry is in India's growth story? So see, jewelry industry plays a very integral role. First, we have heard of the Indian population, right? We are employing almost 75 to 80 lakhs of people in our industry, be it at the Karigar level, at the store level. So productive employment of the new generation is very, very critical, and we are working really, really hard to work on the skill. Because what we have seen is that people who have been working in the industry, the new generation are sometimes feeling that, oh, why should I get into this industry? There is so much skill and effort needed. The tech industry is so much more glamorous. So as an industry, we are working towards skilling them, using more technology along with the handcrafted part, so that there is much more easiness, productivity, efficiency that we bring in. So that is one. Second is in terms of exports. So today, with the India growth story, the $5 trillion economy, the $7 trillion economy, we are contributing with more than 7% in the total GDP of the economy as an industry. Our exports, that counts to about 10 to 12% of the overall exports. So what is the formula of GDP? It's consumption, it's investment, it's the government infrastructure spending, and the exports. So as an industry, we have been working very closely with the government to ensure that the consumption goes up for the new generation customer, which is very, very critical. Because after all, these precious jewelry, gold, diamonds, it is a real asset. And there's a saving that happens for the family as well. Yeah. Speaking of the new generation customer, and also for all those entrepreneurs out there who are looking for that gap that Dr. Sanjeev Juneja spoke about earlier, to identify what is the space where they need to go in with laser focus. Do shed some light on how the collaborative effort of trying to bridge both Bharat and India from a delivery standpoint, from a targeting standpoint, how does that sort of measure in your scheme of things, and what kind of lessons can people take from that? So it all starts with the use of technology in all aspects. So let's say, as I was mentioning, the production aspect of it. Initially, people were doing handcrafted. The karigars were not so tech-enabled. But as an industry in manufacturing, it's called computer-aided design, computer-aided manufacturing, where the perfection of the jewelry to make it much more international standard is being worked towards. The quality of the jewelry, hallmarking as a process. So the industry along with the government is ensuring that the consumer gets the right kind of product. So that is some kind of machineries that are being used for manufacturing. The second part is in terms of service. So the industry is working towards like using of CRM, the customer, what kind of jewelry they are buying, and to address them, their needs. So that if someone wants to buy jewelry for office wear, you're providing that based on the need of the customer. For marriages, you have the data, you're providing it accordingly. So that is in terms of service. In terms of product, digital gold. That's something which is very, very interesting, where for the new generation, you don't have the risk and the headache of storing gold in your almirah. It might get lost. So as an industry, as a brand, we've made something called a mydigigold.com, where for as low as rupees 250, one can buy the gold, and we will store it on the behalf of the customer. And as you keep accumulating it, when you feel like going and buying a jewelry or gifting it to your loved one, you can just go to the store or go online and redeem it. So this is how the service and the thinking to help the young generation save in gold, save in jewelry. These are the new kind of products that are being kind of implemented. So be it manufacturing, be it service, be it kind of products that we're coming out with, then the whole concept of lab-grown diamonds. Now I must tell you that worldwide, what are the ways in which not only in the domestic consumption, but internationally, in the US, there's a very, very need of such products which is environment friendly. So you're not having to mine
to get your diamond out, but you're creating in labs. And in our country, we've become almost the second largest exporter or the largest exporter of lab-grown cut and polished diamonds. Now, jewelry is going to be created. In 5 years, things will be different. So these are the new kind of products that will help the young consumers to save their money, to buy jewelry, to enjoy jewelry. And that's how I think as a country and as an industry will help to moving forward. I think that's very interesting. I mean, I first heard about the concept of lab-grown diamonds from you, in fact, when we spoke yesterday. I mean, I have to admit my ignorance. I had no idea. I knew at the back of my head that there was something like this happening. But, thank you for shedding light on the role that lab-grown diamonds are now going to play in the jewelry industry. But I also want to take up something that you just spoke about, that the machinery that is now used to manufacture jewelry and how it is of international standards, and also maybe catering to international taste. Do you want to talk about Indian brands going global? How do you see that panning out? So, see, India has always been a manufacturer. But what I think as an industry and the government need to work towards is building a brand India. So brand India, made in India jewelry should stand for quality, should stand for design. We have a very long culture of art, of craftsmanship, as I mentioned. Now it is like the way we are now the G20. We are leading the world. We are showing the world in so many aspects. It's a matter of time that the world starts looking at India for its design and quality. And I think we have one of the largest diamond jewelry companies in our country for the world. Even amongst, if you say, top 20 jewelry companies in the world, then there will be quite a few Indian jewelry companies that will feature there. But now it is time that Indian jewelry brand starts expanding, which I think the process has already started. And then soon, I think the world will want to own a piece of made in India jewelry. And that will really, really take things forward. No, that'll be incredible. In fact, I also like what you just said, that the craftsmanship, the karigiri that one sees in India, and the world over, it's acknowledged as one of the finest craftsmanship examples available. And how what you are doing actually supports karigars, how it gives them sustainable lifestyles. Right. Do you want to talk about what Senco has done in terms of securing the livelihoods and futures of these craftsmen, of these karigars? So we are working very closely with the karigars. Today we hear of ESG, right? The environment, the social part, and the governance part of it. Now, when it comes to the social part, we have spoken of what? That growth is important. But what is important is inclusive growth. You grow with everyone along with you, be it your partners, your franchisees, your employees. And which is also the Bharat in India story you spoke about. Exactly. Collaborative growth. The growth cannot happen by a few, it has to happen overall. And through such models of franchisee, working with the karigars, training them, enabling them with technology, upskilling them so that they are ready, because they have it in their blood, but it is about adoption of technology. The government has been investing in something called common facility centers across the country, and working very closely with the industry. There is a concept of mega common facility center that is being spoken about. Jewelry parks are being built all across the country, in which it will become an ecosystem which will be much more organized. So these are such initiatives where we are being able to bringing the technology as big organizations, and then helping the karigars use those technology and creation of jewelry. And I think that it is this helping of the karigars. Also, when the last 2-3 years, everyone has been facing problem. The pandemic was there was no work. So as an industry, we went out of our way. As a company, we supported the karigars. We took care of their health, of the family, going out of their way. When it comes to, we're working, training women to be a part of the manufacturing process in the workforce. There have been cases also that we have tried to do, I think, which has really, really helped, because we are in the business of design and art, that members of the LGBTQ community, because there is a lot of, I would say, artistry that is there in them, the flair is in them. So we as an industry are trying to make them a part of our industry, working, special quotas are being created, and that is how, as an industry, it's not just about wealth, it's not about gold, it's not about diamonds, it's about the wealth of the mind.
and to make the world a better place and a better society. And that is how we are all working together as an I think industry. those are really noble thoughts. I really enjoyed this conversation, the fact that you talk about bridging Bharat and India, not just from a word play base, but the fact that you're targeting your TG, you've gone from metro cities and also found customers in tier 2 and tier 3 cities, and that's how your growth story is largely built as a result of bridging Bharat and India. And again, through the Karigars, also resonates with the same theme of bridging Bharat and India and future. You know, on a closing note, if there's one thing that you'd want to say, how do you see your future? And how do you see the future of India? And what role could technology and the digital interface play in that? And if I could get your thoughts on that. So see, digital and technology has opened up the world. People, whether they're in the city, the young generation, or in the tier 2, 3, 4 cities, their aspirations are equal. Their exposure is equal. You know, they want to get the best of the world. And I think as a country and as an economy, it is our responsibility that we work towards excellence and providing the best kind of product to our consumers. Gone are those days when we can think of chalta hai attitude and expect that the consumer will accept. No, everyone has their personalized needs, their personalized wants. And it is, as an industry, we need to go into the minutest of last mile requirements of the consumer and especially the young generation. So working on products which are not only to be kept in the locker, but the everyday wear jewelry, which people can actually wear and enjoy, and also it will work as a savings and investment for the consumer. So this is where I think technology will be used to reach out to new people, and with the exposure, with the economic development at the base level, I think that as a responsible brand, it is our responsibility to provide that best of designs and best of services to each and every citizens of the country. And I think that the support we've been getting from the government is that, you know, through digital gold or through such initiatives, the World Gold Council has also been working on ensuring that everyone should be part of not only buying gold, but a saving economy. So this is how I think any kind of risk that we see. Saving while consuming, which is the best of... saving while consuming. And we have all seen unexpected changes, the climatic changes, the pandemic. So risks are a part of life, and it is this product that will enable you to hedge against risk and to be your friend and your family for all good times and the difficult times. I wish you all the very best. Thank you for sharing your thoughts with us. Thank you very so much. much. Thank you. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Sen. And of course, Senco has played a big role in bringing organization to what has largely been an unorganized sector. So thank you very much for your thoughts. Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea. चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ. Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा. Gallant Advanced TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो. अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ. Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vajradanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner. Sharda University, the world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. ये जो मौजूदा पार्टियां हैं, ये अच्छा काम कर लें. मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते? एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते? लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम? अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. बचपन से मेरे को याद है, 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं, केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं. केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा. सुन रहे हैं बचपन से, है ना? अगर केरला में इतने अच्छे तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहाँ से सीख के कर लेना चाहिए था. केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया? समझ नहीं आता. उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते?
मेरे को तो समझ ही नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है। जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूँ। और आप सीखो, वोट लो, शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो। जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने, बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा। आप लो वोट, आपको मैं वोट दिलाने मैं आ रहा हूं, आपको वोट दिलाने काम कर लो। कोविड में जो सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम आई इकोनॉमी पे, उसको बाकी देशों ने कैसे टैकल किया और हिंदुस्तान ने कैसे टैकल किया, बिकॉज दिस ऑल कनेक्ट्स विद व्हाट हैज बीन सेड बिफोर। रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट, कल गडकरी साहब आएंगे, वो हाईवे के बारे में बताएंगे, किस तरह से हाईवे। Ladies and gentlemen, good afternoon. I want to start by saying that I feel especially privileged to engage Professor Mamdani in conversation, not only because he is a scholar of great distinction and a very fine thinker, but also because, if I may say so, and I think that there may well be some of you here who might not agree with my observation, but I think that in India, the vast majority of our conversations are only about India. I think there is a certain insularity in our media. I'm always surprised by how little coverage there is of the rest of the world in the Indian press and Indian newspapers. And Professor Mamdani has, of course, as has been mentioned, written about the question of citizenship, sovereignty, violence, genocide, the nation state in Sudan, in South Africa, in Rwanda, in Uganda, Palestine, Israel, and the whole question of settler colonialism. So let me begin on a personal note. Let me begin by asking you that you grew up in Kampala, in East Africa. What vantage point do you think you might have possibly derived from having grown up there in looking into these questions? Thank you first for inviting me to this fascinating conference the last 2 days. I grew up in Uganda. I was third generation of Indian descent in East Africa. One of the things about being a migrant is that you're never completely an insider. You're always both an outsider and an insider. And that gives you a privileged position. That privilege is to be both self-critical and to take all insider claims with a pinch of salt. So that's what I grew up with. At the same time, of course, I was an Indian in East Africa. I had grown up during the colonial period, where East African Indians had enjoyed a degree of petty privilege if you compared us to the natives of the country, what were called Africans. And so we looked at the world through racially tinted glasses. We tended to assume that we were better off because we were smarter, and they were not because they were lazy. This is standard racist stuff coming out of colonialism. So one of the questions for me as I look back is, how does a kid coming out of that kind of a context develop the capacity or get the opportunity to rise above it and to see through your own act? African Americans say the hardest act to understand is your own. You can critique other people, but wisdom is when you begin to see what's wrong with your own claims. So let me also ask you, before I move into the subject of your book, of your most recent book, and please feel free to ignore this question, and you'll see why I'm adding that caveat right at the beginning. That, you know, for someone of my generation, the first
awareness I had of there being Indians in Africa was not through history books, it was through V.S. Naipaul. And I'm thinking in particular, of course, of A Bend in the River. Now, we all know that Naipaul has been derided, critiqued, many would say entirely justifiably for a certain kind of racism. But do you think, given the fact that he is a writer of extraordinary distinction and that he has certain powers of perception, do you think that some insights are to be derived from his writings, and did you derive any insights from his writings in particular on Africa? Of course, Naipaul is a writer who cannot be ignored. He's a writer who has a very acute sense of the present. He can cut through it, but he doesn't have much of a historical sense. He critiques the present as if all the actors in the present had the powers to define themselves differently. Now, I don't believe that we are prisoners of history, but I don't think that history is unimportant. I think we're shaped by history, but there are choices. I'll give you an example. South Africa. In South Africa, you had anti-apartheid organizations. You had the African National Congress. You had the Indian National Congress, Gandhi's. You had the Colored People's Congress. And you had the Congress of Democrats. But the interesting thing is that all of them organized only their own particular race. They accepted as natural the political architecture of apartheid. And that was true until the 1970s. It's only in the 1970s that Steve Biko comes with black consciousness, and he says, black is not a color. Black is an experience. If you are oppressed, you are black. And Steve Biko breaks down the racial walls between Indians, coloreds, Africans, and creates a student movement that now overturns the apartheid architecture. And it is in the 70s that you begin a process which ends in the 1990s. So, to return to Naipaul, Naipaul could critique with a razor's edge, but Naipaul could not provide you with the glimpse of an alternative world. The real challenge is not simply to critique, is to arrive at an alternative. That's my view of Naipaul. Well, apropos of that, I found it very interesting that you said that black is not a color, as it was related to you, it's an experience, much in the way in which white is not a color, it is a privilege. And then it's, of course, the rest of us, who are just people of color. But I leave that aside for the moment, because as you know, there is a very interesting politics of what we might describe the people of color. Let me move on to the subject of your most recent book, which is called Neither Settler Nor Native, The Making and Unmaking of Permanent Minorities. I'd like you to explain what the subject matter of the book is. But in explaining that, I also wonder if you might be able to comment on something that has struck me in my study of history, which is that I think that the concept of majority and minority, both, are a form of modern political arithmetic, which is to say that I think for centuries, over nearly every part of the world, people seldom thought of themselves as majorities or minorities. I wonder whether the Jews in India, a very small number, and what is very distinctive about the Jews of India is that it is one country where every scholar of world Judaism admits there has never been any instance of anti-Semitism in the history of Jews in India.
Now, the Jews never thought of themselves, it seems to me, as a minority, at least in India. Now, they may have thought of themselves as that in the Ottoman Empire in various ways, but nonetheless, I'm saying in totality, it seems to me that this concept of majority and minority is a certain way of thinking which really derives from a kind of political modernity. So I wonder if that might have been, whether you, number one, you would agree with that, and whether that has in any way informed the subject matter of your book. Well, you're right that majority, minority are not, in a political sense, they are not trans-historical. They are modern terms. But by modern, I do not mean contemporary terms. For me, modernity begins in 1492. It begins with the establishment of the Castilian Empire in Spain. It begins with the claim of one country, one religion, one people, and the expulsion of Jews and Muslims from Spain. The Jews expelled from Spain are welcomed into the Ottoman Empire. If you look at the Jewish experience globally, the Jewish experience in Europe is very different from the Jewish experience in Middle East or in Asia. In Middle East and Asia, the Jews were part of society. You take the example of the Middle Eastern Jews who came into Israel, known as the Mizrahim. The Mizrahim wrote in Arabic, spoke Arabic, their language was Arabic, their culture was Arabic, their religion was Jewish. When they first came in, the Ashkenazi leaders in Israel looked at them and said, "What is this savage rabble?" And one of the biggest social projects in Israel was to de-Arabize the Mizrahim. Right? And the Mizrahim then took possession. They provided the muscle for religious Zionism and the religious Zionist parties which have today taken over Israel. And for the Mizrahim, there were two enemies, Palestinians, but also the Ashkenazi, the European Jews. And that's the fight you are seeing in Israel today. Israel has had a problem it has not been able to solve, which is, who is a Jew? How do you define a Jew? There are still today two definitions of Jew in Israel. One is a broader definition, which is contained in the law of return. The other is an extremely narrow definition in religious law, because personal law, if you are a Jew, your personal law will be Jewish. In halakha law, the Jew is defined very differently from how it is defined by the state. Now, the problem is this, that if Israel is to be a Jewish state, it has had to homogenize the Jews and destroy the diversity of the Jewish experience globally. That is the crisis you are seeing in Israel today. What you say reminds me of an extraordinary anecdote that I read in a book written by a colleague of yours at Columbia University, Mark Mazover, who wrote a book called Salonika. This is also the city which is known as Thessalonica. And he narrates that during the time of World War II, so Salonika came under Nazi occupation. And when the Nazi commander arrived in Salonika, he asked, "Where is the ghetto?" Because the experience in the rest of Europe, particularly Western Europe, large parts of Eastern Europe as well, was Jews generally lived in ghettos. Germany was actually somewhat of an exception, but they lived in ghettos, particularly Eastern Europe. And he was told, there is no ghetto for the Jews here, because on the same street, you would find an Orthodox church, a Greek Orthodox church, a Syrian Orthodox church, a Protestant church, a mosque. And this Nazi commander writes home to his boss back in Berlin saying, these people are uncivilized. They don't realize that you have to put the Jew in a ghetto. I mean, it's just chilling
when you think about it, right? So I'm kind of reminded when you're talking about Israel as well, in a sense, because there is a certain kind of, if I may put it here, I'm doing it metaphorically, a certain kind of ghettoization of Jewish identity. But I would caution us to exceptionalize the Nazis. What was the Nazi project? The Nazi project was to purify Germany, to rid Germany of all minorities. And the first minority were the Jews, but the Jews were not the only one. Not the only there were one. also others, right? Yes. When the Nazi Party was defeated, and the Americans came in, and the Nuremberg trials were held, there was no questioning the project, the political project of the Nazis. All they did was to start identifying individual Nazis who had committed war crimes, right? Tens of thousands of them, right? But never what was the political project. And they reproduced the Nazi political project in Eastern Europe by throwing out ethnic minorities, and in Germany itself by not reintegrating Jews in Germany, but now supporting the project for a homeland for Jews outside Europe. The Nazi project continues, in my view, right? But the Nazi project, in my view, is also global in this sense. Permanent minorities today exists everywhere the nation state is considered to be a worthy goal. Yes. I'll give you an example from India. Although my book is not about India, but since the audience is Indian, I'll give you an example from India. The debate between Gandhi and Ambedkar in the 1930s in Pune. Ambedkar basically made a demand that Dalits should have what Muslims have got, which is special seats, special electorate. Gandhi said no. Why not? Because Gandhi said, Muslims are a minority, Dalits are not a minority. Why not? Because Muslims are not Hindu, but Dalits are Hindu. Ambedkar was not convinced at all. Ambedkar writes in his book that actually he was blackmailed by Gandhi because Gandhi put Ambedkar in a situation that if Gandhi fasted until death, Ambedkar would be held responsible for Gandhi's death. Now, I derived the point that is of interest for me, which is how are minorities defined in India? Minorities are defined as religious groups which are not Hindu, okay? Meaning religion is politicized. There are hundreds of minorities in India, not just religious minorities, all kinds of minorities. But the rest of them are not of significance politically. It's only the religious minority that is of significance. Now, this is not just an Indian thing. You can look at the whole of Asia. You can look at the China, the Uyghurs, Tibetans. You can look at Turkey, the Kurds. You can look at Iran, the Shias. You can look at Pakistan, the Shias, the Ahmadiyas, etc. The whole of Asia has got a minority question which is becoming a burning political question. Here in this conference, I mean, for me, for the last 2 days, it's been an amazing experience to hear and witness the incredible self-confidence, enthusiasm, determination of the economic class in India. When they talk of business, industry, gold, all of these things, right? But the thing is, the economy is not the only thing. We are at a crossroads.
It's as if two trains are running and whether they will collide or not, because the other train is the politics. The economy is opening, the politics is closing. That needs a discussion. Well, you know, the communal pact to which you had referred is a matter of great debate. And I won't really get into that question of the differences between Gandhi and Ambedkar and how to interpret the whole question of minorities with regards to their views. But I just want to see if I might rephrase some of the things you have said in a very simple sentence and see whether you would agree with that, because that might be a way for people to get a grasp on some of the issues that you're tackling. Would it be correct to say that the question that or at least one of the questions that fundamentally animates you is a question of who belongs to the nation state and who doesn't? Would this be the simplest way of characterizing it? Of course. Yes. All right. So what is the distinction then between immigrants and settlers as you see it? Because that distinction, I think, is important to your book. So this question has two parts to it. Yes. Okay. Of course, who belongs to the nation state and who doesn't is kind of the central question here, right? Because to me, I begin with a commitment to democracy. Yeah. Okay. Democracy presumes that majorities and minorities are the result of the democratic process. They don't pre-exist. Before the democratic process, there is no majority and there is no minority politically, right? And therefore, majorities and minorities are temporary. As they move from one political cycle to another, every minority can expect to become a majority tomorrow. And every majority is cautious that if it doesn't deliver, it may become a minority. But with the nation state, you have permanent minorities which pre-exist the democratic process. That's the problem. The nation state compromises the democratic process. Okay. So that's the first part of your question. The second part of your question, sorry, please just remind me. The second part of the question was, what are the differences between immigrants and settlers? Settler, yeah. Now, immigrants have existed time immemorial. If you go far enough, all our ancestors came from Africa, right? Actually, they came from East Africa, right? And then they spread around the world, right? Those are immigrants. Immigration is in the human DNA. Right? Settler is a very different thing. Settler is a very modern phenomenon. The settler arrives, and the settler is not willing to accept the political arrangement in the community to which he or she has moved. The settler wants to create his and her own state. That's a settler. If you look at the history of Palestine, the first Jewish aliyah which arrives has no ambition to create a state. It becomes part of the society. It moves too. Right? Jews from time immemorial have been natives of Palestine and have immigrated into Palestine. But it's only with the second and the third aliyah that the Zionist immigrants have the ambition to create their own state. Their own state. Israel is Jewish and democratic, not democratic. Yes. Democracy only for Jews. There's the problem. Yes. Right. So it seems that one of the arguments that is intrinsic to this book, and perhaps to much of your work, is a certain argument about the nation state, the problem of the nation state. Historically, we have had many ways to imagine the idea of a political community. It appears, whether one goes back to 1492 or whether one goes back to the Treaty of Westphalia, we won't get into that distinction for the moment, but let's just suppose that the idea of the nation state is 300, 400, 500 years old. Would it be correct to say that the nation state is what has really captured and encapsulated the idea of political modernity
And that the fundamental problem is that the nation state is, in fact, a very impoverished thing, that it is incapable of accommodating the kind of difference that is so critical to human experience. Let's take the example of America, because I think that expresses the problem at its most acute. On the one hand, America has been a society that has shown amazing capacity to accommodate difference, to take in immigrants. Okay. On the other hand, America lives with an original sin. The original sin is conquest in 1492, which is the conquest of the natives, the American Indians. The American Indians had two kinds of a fate. One was genocide, then there were those who remained. Those who remained, Lincoln devised a solution for them, which was reservations. American Indians in reservations do not enjoy the liberties that citizens in the US do. In 1964, the US passed a Civil Rights Act. The Civil Rights Act did not apply to Indians in reservations. In '68, they passed another act, the Indian Civil Rights Act. But the civil rights in that act could not be enforced. They were advisory. Why? Because even today, the reservations are run by a colonial bureaucracy. They are not, the Indians in the reservations are guardians of US Congress. Okay? So there you are. On the one hand, America, with this amazing capacity to absorb. On the other hand, Indians in the reservations who remain colonized, continuing today. For me, the lesson is this. America has historically two groups of people on which America has been built. One is the Indians, who lost their land, and the other are the Africans, who were enslaved and whose labor built America. Right? But they were in two different political situations. The Africans, now we call them African Americans, were part of a single polity called USA. They were part of a single state. The Indians were part of a two-state system. A sovereign state, USA, and a protectorate, the reservations. And the Indians have remained fragmented. They have remained weak for centuries. The Africans have been able to mobilize, build alliances, even though they are only 15% of the population. Today they are in the leadership, think of Black Lives Matter. They are in the leadership of political reform. They have provided an agenda for political reform. It's not about numbers. Numbers is not the most important thing. Right. It's about the structural context in which these numbers find themselves and the vision with which they put together a future. Yeah. Well, thank you very much, Professor Mamdani, for your enlightening views. I've been told that the time is up, so thank you very much. Thank you. What an engrossing exchange of ideas to hear. Thank you both very much for that conversation. Presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। Co-powered by डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachirdanti, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, India's most trusted रमी site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. आपकी जोड़ी होती थी सलीम जावेद,
एक जोड़ी में आप जी 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 जी। और फिर देन इन द 80s यू सेपरेटेड, वाज इट लाइक वन डे और वाज इट बिल्ट अप? बिकॉज मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल काफी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, साथ में स्टार्टअप खोलते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं, फिर थोड़े साल बाद अलग हो जाते हैं। Was it amicable? Was it like, do you want to talk about it? नहीं, अलग अलग केसेस में अलग अलग होता होगा। इन आवर केस इट वाज टोटली एमिकेबल एंड एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड। देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी की पार्टनरशिप में सीमेंट फैक्ट्री बनाई है या टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है या स्टील फैक्ट्री बनाई है, आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज ईजियर कंपैरेटिवली। इफ यू आर बेसिकली डिसेंट पीपल, यू नो रॉ मटेरियल कितना का है मार्केट में, यू नो इसे बनाने में, प्रोसेस करने में कितना एक्सपेंस होता है, यू नो मार्केट में इसका रेट क्या है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और हो रहा है। तो वो अगर आपका बहुत ग्रेट पर्सनल रेपो ना हो या ना रहे तो भी, इफ यू आर बेसिकली डिसेंट सिविलाइज्ड पीपल, यू कैन कंटिन्यू दैट पार्टनरशिप। देखिए, आप साउथ में जो फिल्में बनती हैं उसकी पटकथा एकदम डिफरेंट होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, मक्खी बदला ले रही है, वो अलग किस्म की स्क्रिप्ट होती है। अब बहुत कम लोग यहाँ पर शायद जानते हैं कि बॉलीवुड साउथ की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर और यहाँ पर हिंदी में फिल्में बनाता है। आयुष्मान निकालते हैं फेलियर का डर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर विकास दिव्यकीर्ति सर। भाई, विकास सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी काफी ज्यादा है मुंबई में आकर, तो सर थैंक यू सो मच उसके बावजूद भी हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए, आइडियाज ऑफ इंडिया में आने के लिए। मोस्ट वेलकम। विकास सर, लाइफ में ना प्रेशर बहुत है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। मेरे ऊपर प्रेशर इस बात का है सर कि जितने व्यूज आपके वीडियोस पर आते हैं, कम से कम उतना ही ट्रेंडिंग ये सेशन भी बने। तो सर, लेकिन आप आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, वो कितना बड़ा प्रेशर है? क्योंकि बच्चों का भविष्य तो आपके हाथ में है ही, पर वो आईएएस के हैं तो देश का भविष्य भी इनके हाथ में, वो कितना बड़ा प्रेशर है? मतलब मेरा ख्याल ये है कि खुद को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। मैं किसी का फ्यूचर बनाता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर मैं ऐसा सोच लूँ तो। मैं तो पढ़ाता हूँ, उनमें से जिन बच्चों में मेहनत करने का जज्बा हो, इंटेलिजेंस का ठीक लेवल हो, मेहनत करते हैं, थोड़ा किस्मत का मामला भी होता है, तो वो आईएएस बन जाते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मुझे एकदम नहीं है कि मैं देश का भविष्य बना रहा हूँ या मैं बच्चों को आईएएस बनाता हूँ। वो खुद बनते हैं, मैं तो सिर्फ इनेबलिंग तरीके से कुछ हेल्प उनकी करता हूँ, इतना ही है बस। और प्रेशर तो है ही, आप जो भी काम करते हैं आप पर प्रेशर है कि व्यूज़ अच्छे आएँ, मुझ पर प्रेशर है कि बच्चे जिस उम्मीद से मेरे पास आए हैं उन्हें वो ज़रूर मिल जाए, तो वो हम हैंडल करते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं। विकास सर, इस प्रेशर में पेरेंट्स का कितना प्रेशर है? क्योंकि लोग बच्चों पर प्रेशर की बात करते हैं, मैंने आपके ऊपर प्रेशर की बात कर ली। क्या आपको लगता है कि ये जो आईएएस की जो कोचिंग होती है उसमें कम से कम एक दिन, शायद लास्ट डे हो, पेरेंट्स की भी कोचिंग होनी चाहिए कि भाई इतने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कम से कम रिजल्ट के बाद कैसे हैंडल करना है? मेरे ख्याल से पेरेंट्स की कोचिंग तो उसी दिन होनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं, और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं भी इस बात को समझता हूँ। एक अजीब सा भय बच्चों के मन में रहता है। उनको, मैंने कई बच्चों को देखा, एक जिक्र करूँगा आज एक एग्जाम्पल का भी, जैसे मैं हल्का जिक्र करता हूँ फिर वापस आता हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहाँ मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया, बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी और मैंने जब अपनी माँ को बोला तो मेरी माँ ने मुझे डांट के भगा दिया।
और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी ज़िंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहाँ है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की ज़रूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है। और मेरे ख्याल से हमारे देश में कोटा में जो सुसाइड्स इतने सारे होते हैं, दिल्ली में तो क्योंकि बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन कोटा में तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और यदि बच्चे सुसाइड करते हैं तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक लाइन है, दिखाई दे या ना दे पर शामिल ज़रूर होता है, हर खुदकुशी में दरअसल हत्यारा शामिल होता है। खुदकुशी खुदकुशी नहीं होती, हत्या होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक आदमी ने मर्डर नहीं किया, समाज ने मिलकर किया है। और जब समाज मर्डर करता है तो वो खुदकुशी उसका नाम है। और समाज एजेंट बनाता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स पे अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा है सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को टांग दीजिए, पेरेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ। तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, न कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। सर थोड़ा सा आपके टीचिंग स्टाइल की बात करते हैं। विकास सर, मैंने सुना है कि आप इंग्लिश में भी कोचिंग लेते हैं, पर उसमें आप 40% हिंदी बोलते हैं। ये क्या बात है? मतलब इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी, इंग्लिश में पढ़ाना इतना ज़रूरी, अगर हिंदी फिर भी बोलनी पड़ रही है तो, या कोई और कहानी है इसकी? नहीं, इसकी दूसरी कहानी है। मतलब हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं है, हम 3 घंटे की क्लास इंग्लिश में लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आईएएस के लिए पढ़ने आते हैं हमसे, उनमें से 90% वो हैं इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश उनके लिए लिखने का मीडियम है, समझने का नहीं है। और कम से कम जोक्स का तो एकदम नहीं है, हंसी मजाक का तो एकदम नहीं है। So when I took the first class in English medium, I continued in English for almost 3 hours, and then one of the students asked me, "Sir, you are speaking in English." मैंने कहा, "That's what I'm supposed to. This is an English medium class." तो बच्चों ने मुझे कहा, "नहीं सर, इंग्लिश मीडियम का मतलब हम जो समझते हैं, आप लिखवा इंग्लिश में दीजिए, टर्म्स इंग्लिश की यूज़ कीजिए, पर बोलिए हिंदी, क्योंकि हमें समझ हिंदी में आता है। एंड दिस इज गुड। We are using English as a cognitive language, language of learning. Why should we use English as the mother tongue? Why should we use English as the language of jokes and humor? हम अपने तरीके से यूज करेंगे भाषा को। पर सर, इंग्लिश स्पीकिंग वालों का कोई एज है क्या हिंदी बोलने वालों के ऊपर? जरूरी नहीं है। इज्जत तो उन्हें ज्यादा मिलती है। हाँ, ये है, हमारे समाज में यदि कोई इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो। और हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम आईएएस के इंटरव्यूज जब लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज, अगर किसी बच्चे की बैकग्राउंड में लिखा हो कि उसने इंग्लिश ऑनर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत समझदार बच्चा होगा। कई बार गलत भी साबित हो जाता है। और अगर कोई बच्चा संस्कृत से या उर्दू से या अरेबिक से पढ़ के आया हो, हमारी प्रिजम्पशन होती है कि उस बच्चे के पास बहुत कम चीज़ें होंगी, विजडम कम होगी। गलत प्रिजम्पशन है। उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगते हैं कि नहीं, मैं भी समझदार हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है। ये सोशल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी। और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा। समझदारी और भाषा कोई ऐसा
नेसेसरी लिंक थोड़ा ना है कि समझदारी एक भाषा में ही आएगी, किसी में भी आ सकती है। सर, यंगस्टर्स को पढ़ाने के लिए आप भी ह्यूमर का सहारा लेते हो, बहुत सारे लोग अब ह्यूमर का सहारा लेने लगे हैं। पहले तो सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ही सेंस ऑफ ह्यूमर का सहारा लेना पड़ता था, अब पढ़ाने के लिए भी लेना पड़ता है। जब मैं छोटा था, मैं हरियाणा से हूँ, तो जो बात आपने कही, हमारे स्कूल में कहावत थी लड़कों के बीच में कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना, उसे हंसाओ, और एक कथन चलता था, हंसी तो समझो फंसी। तो हम तो उसी जनरेशन से सुन सुन के बड़े हुए। पर मैंने पाया पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस काफ़ी लंबी होती है, 3 घंटे की एक क्लास होती है, और कभी कभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर सिचुएशंस में, वैसे 3 घंटे की। एक जनरल स्पैन ऑफ अटेंशन किसी इंडिविजुअल का 1 मिनट के आसपास होता है। बहुत एक्सटेंड करें तो एकेडमिक्स में 40 मिनट 50 मिनट का हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऑन एन एवरेज। हमें 3 घंटे पढ़ाना होता है। तो एक ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को बार बार रिफ्रेश करते रहें। रिफ्रेश का बटन तो है नहीं कंप्यूटर की तरह से आपने दबाए और रिफ्रेश हो गए। तो हमारा मैकेनिज्म है रिफ्रेश करने का कि हंसी मजाक करें, और मजाक के थ्रू उन बच्चों को वो ज़ोर से ठहाका मारें, थकान दूर हो जाए, फिर से बात शुरू कर दें। लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो हंसी मजाक इतना ना हो कि मेन कंटेंट छूट जाए, ऐसा भी कई बार होता है। और दूसरा, सैडली हंसी मजाक करने की एक तमीज़ होती है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हंसी मजाक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को और वल्नरेबल बना दें। हमारा सारा ह्यूमर औरतों पे ही हो, हमारा सारा ह्यूमर कुछ जातियों पे हो, हमारा सारा ह्यूमर LGBT पे हो, थर्ड जेंडर पे हो, तो हम मजाक के माध्यम से समाज को और गंदा बनाते हैं, समाज को अच्छा नहीं बनाते। ह्यूमर ऐसा हो जो इंसान को और बेहतर इंसान बनाए और साथ में हंसा भी सके। सर, कहते हैं कि IAS इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है। अब वही IAS ऑफिसर्स जब आपसे मिलते हैं, आपके स्टूडेंट्स जो पुराने, वो आकर आपके पैर छूते हैं, तो आपको कितना पावरफुल लगता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी लगता है आप उन्हें भगवान है, मतलब ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं आती? पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है कोई अगर मेरे पैर छूता है तो, कोई भी। सिर्फ मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पैर छुए, मेरे ना छुए, सबके छूता रहे। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे पैर छुए, इसलिए कि उसको ये आदत रहे कि झुकना सीखना है। सिर्फ इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के पैर ज़रूर छूता हूँ। मुझे इस बात में बहुत आस्था नहीं है कि आशीर्वाद मिलने से बहुत कुछ होता है जीवन में। मैं बहुत ही साइंटिफिक माइंड का आदमी, और मुझे बहुत संदेह होता है बातों पे। मैं बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि आशीर्वाद से कुछ होता है जीवन में, सिवाय इसके कि अच्छी फीलिंग होती है। अच्छी फीलिंग से आप सच में कुछ अच्छा कर लेते हैं, इस सेंस में होता है। पर ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, इसलिए पैर छूना मुझे अच्छा लगता है। कोई IAS मेरे पैर छुए, मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ, मैं उनसे हाथ मिलाना पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ये तो लगता ही है कि ऐसे ताकतवर लोग मुझे जानते हैं। पर शायद मुझे साल 2 साल में एक आध बार किसी बहुत छोटे मोटे काम के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो भी अपने काम के लिए नहीं, किसी जेन्युइन रीज़न से, तो काम हो जाते हैं। मतलब कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई काम चाहूँ और ना हो पाए, पर मैं चाहता नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ IAS बनने में ही पावर नहीं है, IAS बनाने में भी पावर है। बहुत पावर है, IAS बनाने में बहुत पावर है। और अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 साल में जो नया, जब से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी बढ़ी, मैं बहुत एक्टिव हूँ नहीं मेरी कुछ क्लासेस लीक हो गई तो कई हज़ार लोगों ने उसकी क्लिप बना बना के शेयर करनी शुरू कर दी अपने चैनल्स पे। करीब 15-20 हज़ार चैनल्स हैं, जिनमें से मेरे केवल 2 हैं, और हम क्लिप शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, पर उनकी वजह से हुआ ये कि अब मैं जहाँ जाता हूँ तो पर्सनल कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या हुआ, इस बीच में कुछ बहुत सीनियर किस्म के लोग, इंक्लूडिंग ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंटर, इंक्लूडिंग ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ वन स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किए और कहा कि हम रोज़ आपकी क्लास देखते हैं एंड वी हैव बिकम योर स्टूडेंट्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मुझसे 10-20 साल बड़े हैं, इतने ऊंचे पदों पे हैं,
जब वो ऐसी बात कहते हैं तो जब मिलते हैं तो पैर मैं ही छू लेता हूँ उनके, लेकिन कहते वो हैं कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सर अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, थोड़े से नालायकी के लगे तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये मैंने लिखे हैं, ये स्टूडेंट्स के ही हैं। पहला सवाल है सर, रट्टा लगाने का टैलेंट आईएएस क्रैक करने के लिए कितना जरूरी है? बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कुछ बातें तो आपको रटनी ही पड़ती हैं, कुछ भी आप मीडिया में वहाँ भी रटना पड़ता होगा कुछ बातें। जैसे यहाँ आपका ऑप्शन है कि आप कार्ड लेके आ सकते हैं, यूपीएससी में ऑप्शन नहीं होता ये वाला, तो उनको याद करना पड़ता है। अब जैसे मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया के लेफ्ट में पाकिस्तान है, ये कोई लॉजिक की बात तो है नहीं, तो याद ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान याद ही करना पड़ेगा। तो अब हिस्ट्री में किसी किंग के बाद दूसरा किंग आया है, याद ही करना पड़ेगा ना। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी मार्क्ड अप, लेकिन रटना इज ओनली 10-15% ऑफ हाईएस्ट प्रिपरेशन, बाकी अंडरस्टैंडिंग का मामला है। सर अगला सवाल है कि पढ़ाई करते करते मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? मिल लो क्योंकि अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो याद में ज़्यादा समय खराब करेंगे, और 2-4 बार मिल लेंगे तो मिलने की इच्छा वैसे भी कम हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई करेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द गर्लफ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अबाउट द बॉयफ्रेंड्स। इट्स ए जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट, क्योंकि ज़्यादा याद इसलिए आ रही है कि कम मिले हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत सामान्य सा नियम है। 10-20 बार मिल लीजिए, फिर कम मिलेंगे। मनी डजंट मैटर, ये लाइफ में कितना पैसा कमाने के बाद कहा जा सकता है? लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है। नहीं, आपका भी तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, संत किसको बोलते हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कहीं कि संत वो नहीं है जो दुनिया के कंपटीशन से हार जाता है, संत वो है जो दुनिया के हर कंपटीशन में जीत सकता है, पर उसमें एंटर करने से पहले ही उसको पता है कि इसमें जीत के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है कि चूहों की दौड़ में सबसे इंटरेस्टिंग है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। तो ये रियलाइजेशन किसी किसी को पैसा कमाने के बाद आता है, किसी को उसके बाद भी नहीं आता है, और किसी किसी को उसके पहले भी आ जाता है। एक एग्जाम्पल है कबीरदास। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हों तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। और कबीरदास के अंदर ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले आ गया था। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे, पर वो क्या बोलते थे, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर जाए और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर जाए। उन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कभी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कमा सकते थे। बाकी लोग भी हैं, कमाते हैं और कमाते हैं, गलत तरीक़ों से भी कमाते हैं, स्कैम करके कमाते हैं। तो कुछ लोगों की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ की एक लेवल पे ख़त्म होती है, कुछ शुरुआत के समय ही ख़त्म कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अभी ये सवाल मुझ पर टारगेटेड था तो मैं अपने बारे में जवाब दूँ। बताइए सर। मैं अब जनरली पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, एक लेवल के बाद आप कुछ भी करते हैं तो पैसा आ ही जाता है, लेकिन मैं पैसे के लिए अब काम नहीं करता हूँ। मेरा मोटिवेशन अब वो नहीं रहता। मेरा मोटिवेशन कुछ अलग किस्म का है जिसमें पैसा बड़ा फैक्टर नहीं है। बट येस, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण जीवन भर कर सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं कह पा रहा हूँ ये बात। और इससे पहले कहना बेवकूफ़ी भी है। जब तक आप इतना न कमा लें कि आप खुद का पेट भर सकें, परिवार को सम्मान की ज़िंदगी दिलवा सकें, उसके पहले ये कहना कि पैसा नहीं चाहिए एक बेवकूफ़ी भी है। या तो संत हो जाइए, और यदि सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो ठीक से निभाइए उसको। फिर सर कई बार ना रिश्तेदार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितनी सैलरी है, तो इसका क्या जवाब देना होता है? अगर इतनी है कि उनको डरा सकते हैं तो बता दीजिए। अगर इतनी नहीं है तो बताइए कि वो पैकेज है और इतना तो हर महीने मिलता है, बाकी बोनस वगैरह अलग से मिलता है। घुमा फिरा के बोल दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दबाव बनाना ही है, थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिए, कौन चेक कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपसे कंपेयर करना चाह रहे हैं।
और जो इतना कंपेयर करता है उसको थोड़ा सा दुख देना लाजमी है, थोड़ा सा बढ़ा के बोल दीजिए, इतना लाजमी है। एक क्वेश्चन है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस में क्या ज्यादा खतरनाक है? अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का पीएम ओवर कॉन्फिडेंस में बम फेंक दे भारत पे तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन यदि आप नॉर्मल लेवल पे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंस ठीक है। हाँ, उस केस में अंडर कॉन्फिडेंस ज़्यादा घातक है, पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा घातक हो जाएगा। सर इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि 3 गलतियां जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। पहली गलती, अपना प्रश्न किसी और का बता के नहीं पूछना चाहिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अपने सीने पे रख के बोलिए कि मेरा सवाल है। यानी कि छिप के बंदूक क्यों चलानी है, खुल के चलाइए, ऐसा क्या है। मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो इंसान है, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो IAS बन जाओगे, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, ज़िंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म ज़रूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पें ज़रूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये ज़िंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। और मुझे एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसफर 20th सेंचुरी के हैं, एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया, जॉन डेवी, शायद आपने सुना होगा। सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ। इसको समझ लीजिए कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। जिंदगी भर जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए। रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा, कोई भी सिखा देगा, बस नज़र खुली रखिए, सीखते रहिए। एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा हमारे पास होता है, कभी रुकता नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। इंडिया को प्रेजेंटेड बाय डाबर वैदिक टी, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ। को पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो, अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी, टेक्नोलॉजी पार्टनर क्रिएट टुडे एनरिच टुमारो पैनासोनिक, गोल्ड पार्टनर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स, डिजाइन ऑफ इंडिया फॉर यू। पार्टनर बीको वचरदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। रमी बोले तो जंगली रमी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट। गेट क्विक लोन्स फ्रॉम टाटा कैपिटल। बदलते भारत की नई गैस, गो गैस, क्लीन एंड ड्राई, नंबर 1 एक्सपर्ट इंटीमेट केयर रेंज। सिडको, वी मेक सिटीज। MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. ये जो मौजूदा पार्टियां हैं ये अच्छा काम कर लें। मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते, एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते, लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, बचपन से मेरे को याद है 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं। केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा, सुन रहे हैं बचपन से, है ना। अगर केरला में इतने अच्छे तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहाँ से सीख के कर लेना चाहिए था। केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया, समझ नहीं आता। उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते, मेरे को तो समझ ही नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है। जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूँ, और आप सीखो, वोट लो,
शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो। जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने, बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा। आप लो वोट, आपको मैं वोट दिलाने मैं आ रहा हूं, आपको वोट दिलाने काम कर लो। कोविड में जो सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम आई इकोनॉमी पे, उसको बाकी देशों ने कैसे टैकल किया और हिंदुस्तान ने कैसे टैकल किया, बिकॉज दिस ऑल कनेक्ट्स विद व्हाट हैज बीन सेड। So picking up from where the last session left, given that they've truncated our session, given that we're running late, I want to dive straight into the ongoing tug of war that currently is very, very visible between the idea of India as a 5,000-year-old civilization versus a modern nation state. You want to start with that? I mean, I did attend your session with Professor Mamdani, and it was enlightening, and I really want to pick up from where that session ended. All right, well, I'm going to answer the question in two ways. First is to make a distinction, which is self-evident to some, but may not be self-evident to others. That's a distinction between a nation state and a civilization. And the secondly, I'm going to attempt to do it by telling you a story from Rabindranath Tagore. Let me begin with Rabindranath. So in 1923, Tagore visited China, and his lectures were published as a book called Talks on China. And there he narrates two stories which are really extraordinary, really remarkable. He says that he had gone motoring one day, he had gone on his motor car, and about 100 kilometers away from Calcutta, the engine stalled. The car was going through a drought-ridden area, and the engine had overheated, so he had to get some water. Now, the villagers had very little water, but when they realized the issue that he had, they gave him some water. He was able to proceed for another 5 kilometers. Then the same problem occurs repeatedly. And he says that in all such instances, they absolutely refused payment, even though they had an acute shortage of water, and in some cases, not enough to even drink the water. The second episode he narrates, and he links up the two, is he says that he read a report in an American magazine which is still published called The Nation, where it was stated that the British had been bombing the Northwest Frontier Province, and they had bombed a Masood village. Now, when they were bombing this Masood village, the fighter jet, the fighter craft, the aircraft, caught fire. And so they had to do a crash landing, and as soon as the plane landed, it almost burst into flames, and just in the nick of time, the very people who had been bombed by these pilots escorted the pilots out of the aircraft, the two pilots out of the aircraft. They were slightly injured. They nursed them to health, and they sent them back. Now he says, what explains this kind of hospitality? What is that ethos of hospitality? And he says, it is our dharma. It is the dharma of our civilization. Now that is a civilization. A nation state is a very different thing. And I think the first critical thing to understand, of course, I mean, it's self-evident, but we have to understand what the project is today. That the project in which the present government is engaged. And that is that India as a nation state is a very young entity. As a nation state, it can only be like any other nation state. There can be cosmetic differences, but there is only one way of being a nation state, being muscular, being protective of your borders, being intolerant of immigrants, and so forth and so on. And maybe the distinction between immigrants and settlers. Sorry? And maybe that distinction between immigrants and settlers. Well, you see, look, I mean, I just want to, I want to elaborate it in this sense, that when I say that the present project, because I want to move to that instantly, because there is a Government of India project, actually. It's a project not just to
trace back our civilization to 5,000 years. It's to trace it to 12,000 years and to suggest that this civilization has been essentially a Vedic civilization right from that period of time. Right? This is a stated ambition of this government. And there are people involved in trying to counter this particular narrative. Right? But what the project also involves is the following. What it involves is the collapse of civilization into the nation state. Because fundamentally, there is a realization that it is only as a nation state that you can earn any kind of capital in the world. You can no longer earn any kind of cultural capital by proclaiming yourself a great civilization. This is the awareness, and this is the awareness that, if I may say so, the assassin of Mohandas Gandhi, Nathuram Godse, had, because if you read his speech at the time of his defense, he made it very clear that one of the reasons that Mohandas Gandhi had to be eliminated was because he was an obstacle to the emergence of India as a muscular nation state. Because he was very aware of the fact that that is the only kind of political entity that earns respect in the world, which is, of course, one reason why India and Pakistan as well both had to become nuclear states. Right? So that's the way, essentially, I look at it. So the conflict or the tug of war between the idea of a nation state, a modern nation state, which was formed, you can debate whether it was formed in 1947 when it became independent or when the Constitution came into effect in 1950. And that of it being a 5,000-year-old civilization. But the crux of it, as I understand from what you just said and what you were discussing with Professor Mamdani before this, is essentially that the idea of the modern nation state in its Western construct, derived from, say, the Treaty of Westphalia, may not necessarily apply to us because of the uniformity and the homogeneity that it imposes, yes, and the loss of diversity and pluralism that comes from its imposition, disregarding the civilization backbone that we have. In that thought, and taking that thought forward, my question really is, how do you reconcile the idea of pluralism, of diversity, of multiple nations within a state, yes, to today's modern nation state that we are? So Kurds are a nation without a state. Kurds are a nation that is spread across Turkey, Syria, Iran, and Iraq. The Palestinians are a nation without a state. It's possible, and it could be argued, that India could have multiple nations within it. Yes. And yet, our civilization background is diverse and plural and supports that theory. Would you talk about that? Yes. So you're entirely right that one can think of India as a nation state within which there are many nations. And I think the two instances that you've given are the classic instances of a people who are a nation without a state. This distinction is, in some ways, an elementary but important distinction, the distinction between a nation and a nation state. So, for example, in 1881, Ernest Renan, a French scholar, wrote an essay. It's a classic essay. It's called "What is a Nation?" And he says, well, sometimes people say that people who speak a common language are part of a nation. But English is spoken, for example, in New Zealand, in Australia, in Canada. They're not all one nation, necessarily. They're certainly, and they're, of course, distinct nation states. They're distinct nation states. People might share a certain religion, but that doesn't mean that they constitute themselves into one nation state. Islam and that's the example Professor Mamdani gave of the Jewish nation. Yes. It comes from multiple backdrops. Right. And the homogenization was actually the destruction of the Jewish multiple diverse and cultural ethos. Right, My apologies for interrupting. Right, but the question is whether the experience of India is necessarily that distinct, because one qualification we have to add at the outset is that even in Europe, the project of the transformation of people into the proper subjects of a nation state was a very bloody process. Take the example of France. There's a book written by Eugene Weber. The book is called Peasants Turned into Frenchmen. If you look at what is now France in the
early part of the 19th century, French was not the dominant tongue. The dominant tongue was Breton. And what Eugene Weber demonstrates is how these people had to be cajoled, railroaded, bludgeoned into becoming proper Frenchmen. Okay? So, in fact, the conditions in Europe were also conditions of plurality. The problem that we have to think through, why we are at a moment which is a moment of extraordinary peril, is that the present project in India is to turn us both into proper Indian subjects of the nation state and into proper Hindus as well. We can talk about that. There's a relationship between that as well. But this is what I'm suggesting is, in a sense, the project that we have to think through. But I'm suggesting that we shouldn't think that the experience of India is necessarily distinct, although, of course, I grant you that there is an extraordinary kind of linguistic diversity. India is not alone in that linguistic diversity. Indonesia is another remarkable example of extraordinary linguistic diversity, as much diversity as you have in India, for example, right? And so then we can look to the experience of places such as Indonesia to see whether they have the same kind of problems as we do. You know, I want to use the time that we have very judiciously, and I do have 3 things I want to discuss. The first one is the distinction between Hinduism and Hindutva, and my corollary to that question is, do you think, as with reference to what you just said before this, the idea of the homogenization and the uniformity that is desired by some sections to be imposed on what the idea of India is. Do you think Indian secularism is under threat? So Hinduism and Hindutva, and is Indian secularism under threat? Well, so these 2 questions are certainly related, but I'll take them as 2 separate questions. Let me speak first to the question of the distinction between Hinduism and Hindutva, and why I think this distinction is an important distinction. I'll begin with a story narrated very briefly. About 15 years ago, a bunch of American students came to India, and I was with them in the city of Madurai. These were both white American students and Indian American students, or what are called heritage students. So I take them to the Meenakshi Mandir. Now, one of these great examples of temple Hinduism. Hundreds of thousands of glorious sculptures, all of that. All these students are thrilled, especially the heritage students. This is our religion, this is our faith. And then they say, well, are we done? I said, no. Now I'm going to take you to a place called Pandi Koil. Koil is the Tamil word for temple, which is 10 kilometers away from the Meenakshi Mandir. We arrive there. What we see is, we see a temple perhaps the size of this room, no more than that. None of the gopurams, none of these glorious sculptures. And in one corner of this complex, chickens are being slaughtered. There are murtis there. You know it's a temple. There are women who are undergoing a kind of a trance. Now, these students are horrified, and they say, what is this? I said, this is Hinduism too. Hinduism is like a banyan tree. It's very capacious. It's very, very capacious. And this is exactly what the ideologues of Hindutva do not like. They do not like its capaciousness. What they want is, they want a Hinduism which will look very much like the religion of their adversary. They want a religion that will look much more like a monotheistic religion, a religion which has one book, in some respects, a religion which has precepts that everyone can understand. And perhaps one language? And perhaps one language? That can very well be, but then we'd have to speak about the whole question of India as a linguistic civilization. And is it the case that all of the Hindutva project is, I'm not entirely convinced that this is also a project. They may want one national language, which is an Indian language, right? But that's not to say that they are necessarily in favor of the elimination of linguistic diversity, right? So here what I'm suggesting is that this is one
way in which one might want to think about. Very often when people think about Hindutva, they immediately turn to an ideologue such as Savarkar, the whole discussion on motherland and all of that, but I'm giving a different framework and a way for understanding what is the distinction between really the two. And I'm suggesting that there is a kind of capaciousness which is the very strength of Hinduism. This is what has made it distinct entirely. Now when we get to the question of secularism, I think it's very important to understand again, among scholars of secularism, there is a very clear awareness, there always has been, that in India, when we speak of secularism, we have never really spoken of it strictly in the sense of separation of church and state. Whether such separation was actually achieved in the West itself is a different question. I won't take that up, right? That's a different question. But in India, that was never our understanding of secularism. The understanding of secularism here was very different, which would include such things as the fact that if the state is giving money, for example, to support Hindu education or Hindu-educated schools where Hinduism might be taught, then it would have to do the same for the adherents of other faiths, right? That would be one way to think about Indian secularism. I'm going to suggest, and this is in fact, Professor Nandi has written extensively on this. There are others, including myself, who have also been thinking about this question for a very long period of time. That the way we want to think about secularism here is far from divorcing it from religion. We should be thinking of how our secularism is itself derived from our practice of our own respective faith. Mohandas Gandhi, the liberals like to believe, was a secular, but they have turned him into a secular in a very modern sense, which he never really was. Mohandas Gandhi was always a devout Hindu, and he held himself to be one throughout. But he derives his secularism from his Hinduism, much like Maulana Azad was a devout Muslim, but he derived his secularism from being a devout Muslim. And I think that that is a very distinctive kind of Indian experience and speaks, once again, to the richness of the civilizational motif in our lives. So the diversity of our faith and where we derive our own individual perception of secularism is really what you're saying. And the interesting part here, though, is that I'm trying to reduce everything that we're saying to uniformity and homogeneity versus diversity and pluralism. Yes. And the way I understand this, and do correct me if I'm wrong, that Hinduism is in itself pluralistic and diverse, whereas Hindutva is uniformity and homogeneity in some way. I entirely accept that, and that's the tenor of what I've been talking about. What I've been talking about. This is probably our last question, and I'm going to make it a little complex one so we can address two, three pieces within that. The last 2 days, yesterday and today, a conversational theme that has reoccurred again and again, starting with Madam Liz Truss, who was the opening speaker yesterday, who spoke about how free market and capitalism doesn't necessarily enable democracy. And that's a learning that she said she had, and her country believed that they were wrong to assume that ensuring free market and enterprise and capitalism would automatically pave the way for democracy. Now, that thought on one hand, and the thought that democratic values as perceived from the West, interpreted with the beginning of the modern nation state from the Treaty of Westphalia, and transplanted into, say, our ethos. Does it work? And is democracy in the manner in which the French and the Americans and the British have sort of put on a pedestal, is that applicable as it is to us? After all, their democratic perspective changed entirely with Hamas being democratically elected in Palestine. Yes. So could you share some light on that? Yeah. Well, there are several discrete questions. Yes, they all are. rolled up into that. So I'll just very briefly address each of them, very, very briefly, because one question has to do with the question simply of whether democracy would work for us. Is it for everyone, so to speak?
The second question has to do with the relationship between democracy. And that kind of democracy and those ideals that were sort of brought in from the American and the British and the French ideals. Yes. Well, you see, I am not of that school of thought which says that if ideas are coming from abroad, they are to be necessarily rejected, right? This is, again, apart from the question of whether there are historically speaking, traditions of republicanism. For example, in the ancient Indian past, there was a whole debate on that back in the 1920s, which most people aren't aware of, right? And of course, we have to be extremely wary of this line of thinking, because the present line is, well, everything, like democracy, it's all rooted in Indian soil. You know? I mean, from aeronautic surveillance to surgery to every possible thing, the roots are right here. Why even think that it's coming from abroad? No, I'm not of that school of thought either. But I am certainly of that school of thought which says that when there are certain ideas which suggest the aspirations of a people, then it's very clearly the case that yes, something like democracy can very well work here as it has worked elsewhere. Although one could, of course, ask the question to what extent democracy has really worked in the West itself. One could certainly ask that question with any kind of legitimacy. I mean, I was telling her earlier in the afternoon that the greatest and only revolution that really took place in the Western hemisphere of the world is the only revolution that no one talks about, and that is the Haitian Revolution, which created the first free black republic in the world in 1800. And the Haitians had to pay reparations to the French for 175 years. For 175 years, right? So there are certainly questions about whether democracy really worked in the West either. And certainly I think the sorry state of affairs in countries such as the United States suggests that we will need to revisit some of these kinds of assumptions. Nevertheless, it is very clear to me that I don't think that it is a fertile way to think that democracy is something that is foreign. What Mohandas Gandhi said, I think, is very apt. He said, I want the winds from every place to come into my home, but I don't want to be blown away by any one of them. And I think that is a way for us to think about some of these things. I think that's beautifully captured. That's the essence of diversity, and that's the essence of the diverse civilization we come from, one where majorities and minorities are transient, whereas, as Professor Mamdani said, the nation state and modern democracy creates permanent majorities and permanent minorities. Something for us to think about, something for us to remember and derive power and strength from, that we are a civilization that is very, very old, that is plural and diverse, where we absorb everything from everyone without getting blown away in the wind ourselves. Thank you so very much for that enlightening session. Thank you very much. Thank you, Mr. Lal. You know, I was asking my colleagues here, how do we sum up... Ideas of India co-presented by Dabur Vedic Tea, चाय का वही लाजवाब स्वाद अब सेहत के साथ. Co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा. Gallant Advanced TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो. अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ. Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Partner, Biko Vachdanti, India का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार. Rummy बोले तो जंगली Rummy, India's most trusted Rummy site. Get quick loans from Tata Capital. बदलते भारत की नई गैस, Go Gas. Clean and dry. #1 expert intimate care range. Sidco, we make sittings. MMRDA rebooting Mumbai. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. ये जो मौजूदा पार्टियां हैं, ये अच्छा काम कर लें. मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते? एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते? लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम? अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. बचपन से मेरे को याद है, 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं, केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं. केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा. सुन रहे हैं बचपन से, है ना? अगर केरला में इतने अच्छा, तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहां से सीख के कर लेना चाहिए था.
केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया, समझ नहीं आता। उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते, मेरे को तो समझ ही नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है। जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूं, और आप सीखो, वोट लो, शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो। जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने, बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा। आप लो वोट, आपको मैं वोट दिलाने मैं आ रहा हूं, आपको वोट दिलाने काम कर लो। कोविड में जो सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम आई इकोनॉमी पे, उसको बाकी देशों ने कैसे टैकल किया और हिंदुस्तान ने कैसे टैकल किया, बिकॉज दिस ऑल कनेक्ट्स विद व्हाट हैज बीन सेड बिफोर। रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट, कल गडकरी साहब आएंगे, वो हाईवे के बारे में बताएंगे, किस तरह से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम, सब में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे कि आप सबकी ज़िंदगी में एक मूलभूत डिफरेंस आए, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस आए। पीएम साहब ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी लगाई। देखो, किसी भी देश की पूंजी लिमिटेड होती है, जैसे अपनी खुद की पूंजी, घर में अगर हम बात करें, फैमिली में बात करें, पूंजी लिमिटेड होती है। उस पूंजी को कोई कैसे यूज़ करता है, कोई कैसे यूज़ करता है। एक तरीका है कि खाए पिए उड़ा दिया, राइट। वेस्टर्न रिच कंट्रीज, उन्होंने जो किया इसमें, दे सेंट आउट चेक्स। चेक से कोई 3rd मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है, 5th टीवी स्क्रीन खरीद रहा है, राइट। दैट वॉज वॉट इट वॉज। काम करना बंद कर दिया लोगों ने। तुम भी सुनो, लेट्स टॉक fearless and free, फिर गूंजे अपनी यूनिटी, सर उठा के। By the way, I'm looking like some gold award today, waiting to be presented to you. Okay, तो अब हमारे साथ है सिनेमा की एक परम 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 सुंदरी। खूबसूरत तो बहुत है ही, लेकिन बात खूबसूरती से अब बहुत आगे तक जा चुकी है। 9 साल पहले इन्होंने अपनी जिस फिल्म से डेब्यू किया था, उस फिल्म से ही एक स्टार किड भी डेब्यू कर रहे थे। हर किसी की नज़र स्टार किड पर थी, लेकिन जब लोग मूवी देखकर बाहर निकले तो जितने भी नौजवान थे वो इनके दीवाने होकर निकले। आने वाले सालों में इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से, परफॉर्मेंस से एंड ऑफ कोर्स अपनी लंबी हाइट से हर किसी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत है, टैलेंटेड है, इंजीनियर है, एक्टर है। ओ माय गॉड भाई, इनके तो नाम का मतलब ही क्रिएशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृति सेनन। थैंक यू। ये सब मैंने बोलने को नहीं कहा था, जस्ट सेइंग। सो कृति, हीरोपंती से शहजादा, 9 साल का आपका जो सफ़र है, अगर आप उसको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब कर सकें। माय गॉड, 9 साल हो गए। पहले तो ये 9 साल सुन के ऐसा लग रहा है इतना टाइम हो गया है। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि पता ही नहीं चलता कितना वक्त गुजर गया। इस सफ़र को मैं एक्चुअली मैजिकल ही बोलूँगी, क्योंकि ये किसी सपने से कम नहीं रहा है मेरे लिए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। आई थिंक सिर्फ जब मैं शायद 5 साल की थी और मैं माधुरी दीक्षित के गाने टीवी पर देखकर वो स्टेप्स कॉपी करती थी और उनके एक्सप्रेशंस कॉपी करती थी, सिर्फ तब दिमाग में था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ चलती गई और वो एक्ट्रेस से कभी टीचर हुआ, कभी कुछ और हुआ, फिर इंजीनियर हुआ। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर होंगी, मैं एक्टिंग कर रही होंगी, मैं बड़े पर्दे पर होंगी। सो वो खुद में ही एक सपने जैसा लगता है। बट ये जो पूरा सफ़र रहा है, आई फील मेरे लिए ये बहुत ही सपने जैसा, पर एट द सेम टाइम एक बहुत ज़्यादा सिखाने वाला सफ़र रहा है। आई रियली फील कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे करना पसंद है, और वो काम की तरह महसूस नहीं होता है। और एज एन एक्टर आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप दुनिया को एंटरटेन करें, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आएँ। आपको इतने लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं वो इतना प्यार देते हैं
आई डोंट थिंक ये हर किसी के नसीब में होता है. और एज एन एक्टर आपको इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है. वेदर आई ऑलवेज से दिस दैट वी गेट पेड फॉर सो मेनी थिंग्स दैट वी एक्चुअली लर्न, लाइक हॉर्स राइडिंग हो गया, नाच गाना हो गया, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग. मैंने क्या क्या नहीं सीखा. कुछ लैंग्वेजेस, कई बार कोई डायलेक्ट सीखने का मौका, थोड़ी बहुत मराठी सीखी. सो ये सब सीखने का मौका, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हर रोज़ उठकर एक नया किरदार प्ले करने का मौका, ये बहुत कम लोगों को मिलता है. एंड आई ट्रूली फील ब्लेस्ड. आप सबके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं और जर्नलिस्ट सबके माथे पर बल लेकर आते हैं. बट आई थिंक ये जो मूवी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसमें आपको होना चाहिए था, नहीं? लेकिन मैंने वो मिमी में कर लिया, जो वो पोस्टर्स, फिल्मी पोस्टर्स लगाकर और वो फिल्मी एक्टर की तरह बातें करना, वो सब मैंने उसमें कर लिया, क्योंकि मिमी का सपना भी वैसा ही था. तो माधुरी दीक्षित का आप कह रहे थे कि मैं एक्सप्रेशंस वगैरह भी काफ़ी कॉपी करती थी. कौन सा सबसे फेवरेट एक्सप्रेशन है आपका माधुरी दीक्षित का? मैंने हम आपके कौन पता नहीं कितनी बार देखी है. तो एक तो वो ओहो ओहो, वो तो मैं बहुत करती थी. एंड अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ में बहुत डांस करती थी उस पर. मतलब वो मेरा ऐसा गाना था कि कोई भी पार्टी में जाए हम बच्चों की, तो कोई भी बोलता था अच्छा चलो चलो बेटा डांस करके दिखाओ. पेरेंट्स का बेस्ट होता है ना कि कोई घर पर अगर आता है, रिश्तेदार वगैरह, तो चलो चलो बेटा नाच के दिखाओ. तो एंटरटेनमेंट तो हम शुरू से बचपन से ही कर रहे होते हैं ना. दैट्स ट्रू. अच्छा, इंजीनियर से एक्टर और फिर एंटरप्रेन्योर. मतलब बचपन से ये था कि भाई मैं एक ऑलराउंडर बनूंगी, मेरे को शर्मा जी की बेटी बनना है जो सब कुछ करती है. नहीं, ऐसा सोचा नहीं था. मैं हमेशा अपनी दिल की बात सुनती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बस सपने बड़े देखने चाहिए और देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखोगे तो उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे. उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे तो आप जीवन में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे. सो आई ऑलवेज से ड्रीम बिग एंड नेवर गेट सेटिस्फाइड. तो मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होती हूँ. मैं हमेशा ऐसी हूँ कि मैं खुश रहती हूँ. ऑफ कोर्स जो चीज़ें अचीव कर रही हूँ उनमें खुशी मिलती है, बट कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस होती है कि अभी बहुत कुछ करना है. सो एक्टर बनने के बाद ऐसा क्यों है कि खाली एक्टर ही बन सकते हो? मैं एक्टिंग के साथ साथ कई चीज़ें कर सकती हूँ जिनमें मेरा इंटरेस्ट है. एंड पैशन से निकलनी चाहिए बस हर चीज़. आपकी ऐसी एक पैशन से चीज़ निकली है, ट्राइब. सो आप थोड़ा ट्राइब के बारे में बताओ. हाउ आर यू सो पैशनेट अबाउट इट? सो एक्चुअली ये भी मिमी से ही शुरू हुआ था सफ़र. मेरी लाइफ में बहुत कुछ वहाँ से शुरू हुआ. नाम बदल के मिमी रख लो. मुझे एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो हैं लक्ष्मण सर, वो मिमी ही बुलाते हैं. वो मेरे साथ एक और फिल्म शूट कर रहे हैं जिसमें वो डीओपी हैं, और वो सेट पे मुझे मिमी ही बोलते हैं. तो आधे लोग मुझे इस सेट पे भी मिमी बोलना शुरू हो गए हैं. बट कमिंग बैक टू ट्राइब, मैंने मिमी के लिए करीब 15 किलो वेट गेन किया था. रोल के लिए किया था. कभी लाइफ में इससे पहले वेट गेन नहीं किया था. आई एम टचवुड ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म. तो मैं सब कुछ खाती हूँ. ऐसा लगता नहीं है कि मैं खाती हूँ, पर मैं खाती हूँ और मैं बहुत खाती हूँ. तो इससे पहले मैं सब खाती थी और मॉडरेशन में खाती थी. एंड मिमी के लिए 15 किलो जब वेट बढ़ाना पड़ा, तब मुझे पहली बार बहुत ज़्यादा अनफिट फील हुआ, क्योंकि मैंने 3 महीने से ना स्ट्रेचिंग की थी, ना योगा किया था. मुझे सब मना था, बिकॉज मेरी डाइटिशियन ने बोला था मैं तुम्हें इतनी कैलोरीज दे सकती हूँ, अब तुम कुछ भी करके वो कैलोरीज बर्न कर दोगे तो मैं और नहीं दे पाऊँगी. सो आई स्टार्टेड फीलिंग अनफिट. मैं ज़मीन पे बैठती थी तो उठने में नीज क्लिक होना शुरू हो गए थे. ज़्यादा तेज़ चल रहे हो तो हाफना शुरू हो गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अनफिट फील हुआ था. एंड जैसे ही मिमी ख़त्म हुई, लॉकडाउन हो गया, तो हम घर पे थे, सब जिम्स वगैरह बंद हो गए थे. एंड आई वाज लाइक ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊँगी, मुझे कुछ ना कुछ करके आई हैव टू गेट बैक टू बीइंग फिट. और तब मैं एक ट्रेनर से मिली, रॉबिन भेल, जिनसे मैं ऑनलाइन वर्चुअली वर्कआउट करना शुरू कर दिया मैंने. और अपने रूम में जो भी एक योगा मैट, थोड़ा कुछ टावल, कोई बैंड्स या कोई 4-6 किलो के डंबल मैंने मंगवा लिए थे. तो वर्चुअली मैंने वो पूरा 15 किलो जो है वो लूज़ किया. और इससे पहले मुझे फिटनेस या वर्कआउट करना बहुत ही बोरिंग लगता था, क्योंकि मुझे लगता था, नहीं हाई फाइव नहीं, मैं बता रही हूँ आगे क्या हुआ. सो इससे पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बट आफ्टर दैट आई फेल्ट कि वर्कआउट कैन ऑल्सो बी फन. और ये जो एनर्जी है, ये 3 मेरे जो को फाउंडर्स हैं द ट्राइब के, करण, रॉबिन एंड अनुष्का, ये तीनों जो हैं वो बहुत ही पैशन से आते हैं, बहुत यंग हैं, और
वो वर्कआउट को जो है बहुत ही मज़ेदार भी बनाते हैं, क्योंकि हम सेम चीज़ नहीं कर रहे होते हैं हर बार. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिस्क्राइब वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए. हर एक की बॉडी को अलग किस्म का वर्कआउट चाहिए. एंड आई रियली फेल्ट कि ये मैंने वर्चुअली किया है, अपने घर पे बैठे बैठे. देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू बी फिट, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो जा नहीं पाते हैं, कोई ट्रेनर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है. एंड आई रियली फेल्ट दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड फिटनेस को मैं दुनिया भर में लेके जाना चाहती हूँ, भारत भर में लेके जाना चाहती हूँ सबसे पहले तो. तो आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आप अपने फ़ोन पर वीडियोस देखकर वर्कआउट कर सकते हो. अगर आप निकल रहे हो, आपके पास खाली 20 मिनट हैं, आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत वर्कआउट करके निकल सकते हो. As long as उन वीडियोस में आप हमें सिखा रही हैं कि कैसे करना मैं है. भी होंगी उन वीडियोस में. और ये ऐप हम चालू करें, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है. सो राइट नाउ देयर इज अ स्टूडियो इन जुहू, बट वी विल होपफुली सून स्टार्ट एन ऐप. So Kriti, we were talking about Mimi. आपने अभी मिमी के बारे में बताया. Do you think it takes a role like Mimi for the industry to see कि आप एक कितनी अच्छी एक्टर है, to get recognition कि as a serious actor? Does it take a movie like Mimi? I don't like the word serious actor, because actor तो actor है, serious क्या होता है? नहीं, कहने का मतलब है कि अच्छा चलो इसने अब लोग ये seriously लेना शुरू कर देते हैं, वो अगर आप बोल रहे so, हो. मतलब कि अच्छा इसने अब ये रोल क्रैक कर लिया है, now we can get to that serious subject kind of characters. No, honestly, I don't want to get serious. I think serious can also be a little boring. Sometimes, yes, going serious is good. लेकिन it takes a role like Mimi to get the talent out. मतलब अगर आप मुझे इतनी बड़ी कटोरी देंगे तो मैं उसमें इतना ही पानी भर सकती हूँ. अगर आप मुझे उससे बड़ी देंगे तो मैं उससे ज़्यादा भर सकती हूँ. तो अगर आप मुझे छोटा रोल या ऐसा रोल जिसमें ज़्यादा गहराई नहीं है, नॉर्मल सीन है, तो मैं नॉर्मल ही कर पाऊँगी. मैं उसमें कुछ तड़कता भड़कता नहीं डाल सकती. तो मिमी एक ऐसा किरदार था जिसमें बहुत रेंज थी. वो एक बहुत ही नादान कह सकती हूँ मैं लड़की है, जो पोस्टर से बातें करती है, जिसको हीरोइन बनना है, जो अपने वहाँ की सबसे अच्छी नाचने वाली है, और वो जाना चाहती है मुंबई. उसके पास पैसे नहीं हैं और वो सरोगेसी के लिए मान जाती है. और फिर उसकी जर्नी जैसे वो चेंज होती है, उस तरह के सीन्स जब आपको मिलते हैं ना, जिनमें आप घुस सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, वो ज़रूरत होती है हर एक्टर को. सो यू ऑलवेज नीड अ प्लेटफॉर्म टू शाइन. मेरी लाइफ में आई थिंक मिमी वो एक प्लेटफॉर्म था, वेयर पीपल सॉ मी एंड दे फेल्ट कि यार ये तो इतना कुछ कर सकती है. सो आई थिंक एक प्रॉब्लम भी होती है उसके साथ साथ कि जब आप इतना कुछ कर लेते हो ना, तब आपको थोड़ा करने में प्रॉब्लम होती है. तो फिर आपको सारे रोल ऐसे ही चाहिए होते हैं कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँ उसमें. आपके जितने भी मूवीज़ आई हैं, उनमें कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंडियन सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सेरोगेसी. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज अ होल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं. लेकिन वो पिक्चरें चली हैं. हाँ, लिव इन रिलेशनशिप, लुका छुपी. देखो लिव इन रिलेशनशिप होते ज़रूर होंगे, तो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन देख रहे हैं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग करते हैं बट अभी तक ओपन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है. जैसे अभी आप एक्टर हो, इससे पहले जब आप स्टूडेंट थे, अगर आप तब अपने पेरेंट्स को बोलते कि मुझे आई वांट टू लिव विद दिस मैन एंड देन सी इफ आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम, आई एम श्योर एज अ मदर, एज अ पेरेंट, उनके भी एप्रीहेंशंस रहे होंगे अबाउट द सेम. मैं स्टूडेंट थी क्या? मैं अभी भी बोलूँगी तो शायद एप्रीहेंशंस रहेंगे. तो सो आई नो व्हाट यू मीन, बट तभी तो इम्पॉर्टेंट है कि कुछ मुद्दों पर एक अलग तरह की रोशनी लाई जाए. जब हम सिनेमा के तौर पे दिखाते हैं कुछ मुद्दे, तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव भी दिखाते हैं. तो सरोगेसी का एक अलग पर्सपेक्टिव था मिमी में. इट्स नॉट सेइंग सरोगेसी इज गुड, सरोगेसी इज बैड. इट्स नॉट सेइंग एनीथिंग, बट इट्स शोइंग अ साइड टू इट. इवन इन लिव इन लुका छुपी में लिव इन रिलेशनशिप्स, हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत अच्छे होते हैं या बहुत ख़राब होते हैं. हम कुछ नहीं बोल रहे हैं. हम दो पर्सपेक्टिव्स दिखा रहे हैं, जो बड़ों के पर्सपेक्टिव्स हैं, और इन बच्चों का पर्सपेक्टिव क्या है. एट द एंड ऑफ इट, वो दो किरदार जो हैं, जो लिव इन में रह रहे थे, दे आर एक्चुअली डाइंग टू गेट मैरिड इन द फिल्म. सो समवेयर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिनेमा के थ्रू हम कुछ मुद्दों पर
एक अलग रोशनी डालें, कोई एक ऐसी बात कह जाए जो शायद आपके अंदर जहन में रह जाए? एक नोशन है कि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको फर्स्ट ब्रेक मिलने में बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत हो सकती है। आपका कोई गॉडफादर नहीं था। इनफैक्ट आपके जो पेरेंट्स हैं सीए हैं, प्रोफेसर हैं। आपको वो पहला ब्रेक कैसे मिला जब आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था सिनेमा या बॉलीवुड से? तो ये नोशन करेक्ट है। ऑनेस्टली अगर आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं तो पहला ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहला अच्छा ब्रेक मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके बाद पिक्चर चल जाए तो बस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिन्हें अब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सो आई डू फील ब्लेस्ड। आई थिंक it's always a combination of talent, hard work and luck. You know, it's always there. I do also believe that the harder you work, the luckier you get. So I do also believe that. तो मेरी पहली फिल्म, मैं एक्चुअली बहुत लॉस्ट थी उस टाइम पर जब मेरी पहली फिल्म मुझे मिली। उससे पहले मैं कोई एक और फिल्म साइन करने वाली थी, एक बड़े स्टूडियो के साथ 3 फिल्म डील होने वाली थी, और सडनली वो नहीं हुई। तो आपके पास इतने सारे ऑफर्स थे? आई थिंक कहीं ना कहीं मैं अब सोचती हूँ शायद अच्छा है कि वो नहीं हुई, क्योंकि ऑफर्स होना इज़ नॉट दी ओनली थिंग। अच्छे ऑफर्स होना या ऐसे ऑफर होना जो आपको लगे कि यार ये डेब्यू हो सकता है मेरा। मुझे हमेशा लगता है आपकी डेब्यू फिल्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर का ग्राफ जो है वो सेट करती है। एंड मैं कई महीनों से भी ऐसे गुजरी हूँ। मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया जितना बहुत लोगों ने किया होगा, बट इंजीनियरिंग के बाद यहाँ आकर मैं कई ऐसे महीनों से गुजरी हूँ जब ऑडिशंस ही नहीं हो रहे थे, या ऑडिशंस होते थे रिजेक्ट हो जाती थी, या फिर नई लड़की ढूंढ रहे होते थे और फिर सडनली कोई एस्टैब्लिश एक्टर कर रहा होता था वो फिल्म। सो ऐसे बहुत मौके हुए जहाँ पहुँचते पहुँचते रह गया, और मैं बहुत मायूस भी हो गई थी। और एक फिल्म होने वाली थी, ऑलमोस्ट अनाउंस होने वाली थी, एंड सडनली वो पूरी डील ही चली गई। तो फिर सडनली मुझे एक साउथ फिल्म का ऑफ़र आया। ऑफ़र क्या, उन्होंने बोला हैदराबाद आइए और आप ऑडिशन कीजिए, और मैंने उस फिल्म के लिए ऑडिशन किया, और महेश बाबू के साथ वो फिल्म थी। एंड आई गॉट, आफ्टर सीरीज ऑफ ऑडिशंस आई गॉट सिलेक्टेड। और जब मैं वो फिल्म शूट कर रही थी तो उसके बाद एक 2 महीने का गैप था। उस गैप में मैंने अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि मैं जीमैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एक अच्छा स्कोर लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्हें था कि भाई ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोफेशन है, तुम्हें पिक्चर मिलेगी नहीं मिलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, चल गई उसके बाद दूसरी मिलेगी या नहीं, सो इट्स वेरी अनस्टेबल। सो यू हैव टू गेट अ जीमैट स्कोर विच इज़ वैलिड फॉर 5 years। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट यू कैन गो बैक टू दिस। तो वो 2 महीने में मैंने जीमैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और मुझे साबिर खान जो कि हीरोपंती के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मेरी ऐड देखी और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। और जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने बहुत ही मतलब तामझाम एकदम प्रॉपर फिल्म कैमरा है, मेकअप, कॉस्ट्यूम के साथ ऑडिशन था। एंड आई वाज लाइक ओके, ये नॉर्मल ऑडिशन नहीं है, थोड़ा कुछ ज़्यादा है। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ लुक टेस्ट। एंड टाइगर भी था, और आई थिंक वो हम दोनों को साथ में देखना चाहते थे। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पर कुछ भी होगा। पता था कि टाइगर कौन है? ऑफ कोर्स पता था। आई हैड सीन हिज पिक्चर्स, आई हैड सीन हिज नेम वाज देयर, उनका लॉन्च आ रहा है हीरोपंती, ऑफ कोर्स आई न्यू दैट। और हमने एक सीन किया, वो सीन ख़त्म हुआ, और मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हम अभी साजिद नाडियाडवाला सर के ऑफिस जा रहे हैं, तुम 10 मिनट में ये फिल्म साइन कर रही हो। तो मुझे मतलब मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ये होने वाला है। पूछी थी कि नहीं पूछी थी? कौन फीस पूछेगा, साइन कर रही हो, बहुत बड़ी बात है। सो आप फीस मतलब आई वाज लाइक ओके, आई एम गेटिंग माय डेब्यू, लाइक आर यू सीरियस? मैं 10 बार उनसे बीच में क्वेश्चन किया, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ? एंड आई जस्ट कॉल्ड माय पेरेंट्स एंड आई सेड मैं ये फिल्म साइन कर रही हूँ, एंड दे वर ऑल्सो वेरी लॉस्ट कि ये क्या, कौन सी फिल्म है। एंड या बट यू नो समटाइम्स जब होना होता है तो एकदम चुटकी में होता है। कई बार आप बहुत जगह पे मायूस हो रहे होते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन
I always believe that everything happens for a reason and everything happens for good. So जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए नहीं हुआ. तो कृति तब तो नहीं पूछी साइनिंग फीस, अब तो मूवी साइन करने से पहले आप पूछ लेते हो ना? Of course, मतलब अभी थोड़ा वक्त और है. अच्छा, हम गॉडफादर की बात कर रहे थे और इनफैक्ट अभी आपने बोला कि कुछ ऐसे ऑडिशंस थे जो आपने दिए लेकिन आपको मिले नहीं. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप बोल रहे थे कि जब ऑडिशन के लिए बुलाते थे तो बोला था कि एक फ्रेश फेस चाहिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी स्टार किड या किसी नोन पर्सन को चला जाता था. नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आपका क्या अब व्यू थोड़ा सा बदला है? आई मीन डू यू रियली थिंक इज इट नॉट फेयर कि अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो आप किसी ना किसी अपने रिश्तेदार की या अपने बेटे की या अपनी बेटी की अगर आप हेल्प कर रहे हो, सो इज इट लाइक गुड, ओके? बिकॉज एज अ पेरेंट तो आप करोगे ही ना. Of course, we're talking about nepotism again. Yeah, we're talking about nepotism. We're talking about nepotism. I was just trying to avoid the word. Yeah, but I think ये एक लौता फील नहीं है. यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी है. बट ऑनेस्टली ये हर फील्ड में होता है. डॉक्टर्स की फील्ड में भी होता है, बिजनेस की फील्ड में भी होता है. सो ये हर फील्ड में होता है. लेकिन अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. It's not wrong. Actually, the debate is not about it being wrong. It is only about having equal opportunities for people who are not belonging to the film family, and that's it. अगर आप यहाँ भी opportunity दे रहे हो, वहाँ भी opportunity दे रहे हो, कोई गलती नहीं है. Eventually, it is going to be about talent. Eventually, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म बैकग्राउंड से आए हैं और उनका करियर इतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि इवेंचुअली ऑडियंस चूज करती है कि आप किसको देखना चाहते हो. आपको किसकी फिल्में अच्छी लगती हैं, आपको किसका टैलेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको स्क्रीन पे कौन देखना पसंद है. लेकिन वही बात है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द फिल्म फैमिली, उतनी आसानी से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. तो अगर आप दरवाजे दोनों तरफ खुले रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई डोंट थिंक इट्स द डिबेट इज एवर अबाउट राइट और रॉन्ग. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्या अब आपकी फीलिंग थोड़ी बदली है? क्योंकि तब आपको नहीं पता था इनसाइड इंडस्ट्री, आप यंग थे, तब तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगा होगा कि किसी भी स्टार किड को चला गया वो प्रोजेक्ट या फिल्म. लेकिन अब क्या आपका पर्सपेक्टिव बदला है बिकॉज नाउ यू आर इनसाइड द इंडस्ट्री? नो, आई थिंक इट्स द सेम. मुझे पहले भी ये लगता था कि अपॉर्चुनिटीज़ एक तरफ इजीली मिल जाती हैं, दूसरी तरफ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. लोगों को आपका नाम भी पता नहीं रहता है, एंड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई करियर, कई बार वो हीरोपंती जब रिलीज़ हुई थी तो एयरपोर्ट पे अगर घूम रहे हो तो कई बार लोग बोलते थे अरे वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म में आई थी. तो लोगों को आपका नाम भी नहीं पता है. अभी तो हम तैमूर को भी जानते हैं, तो वो जब तक बड़ा होगा तो उसको सब जानते होंगे. सो आई फील ऑडियंस ही है, इट्स नॉट सम वन पर्सन्स थिंग. ऑडियंस, मीडिया इवेंचुअली सबको जानती है जब आप फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं. और जब आप नहीं आते हैं आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है लोगों को अपना नाम उनके दिमाग तक पहुंचाने में. सो वही है. बट इवेंचुअली मैंने ये भी देखा है कि मैं आज यहाँ हूँ और मैं अपने टैलेंट के बलबूते पर हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी मैंने अकेले तय की है. मेरे रास्ते में, मेरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझ में बिलीव किया है, मेरे टैलेंट में बिलीव किया है, उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. सो आफ्टर योर थर्ड फिल्म आई थिंक इट डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम. यू माइट हैव टू वर्क अ लिटिल लॉन्गर, बी अ लिटिल मोर पेशेंट, टेल योर सेल्फ हो जाएगा. लेकिन आप काम करते रहो अपने आप पर, ग्रो करते रहो, लर्न करते रहो, तो पहुंच जाओगे किसी ना किसी दिन. एक जब मूवी बनती है, स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिख ली, डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर दिया, प्रोड्यूसर ने पैसे लगा दिए. एक एक्टर एक्टिंग के अलावा और भी बहुत कुछ करता है. एक होमवर्क होता है एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव टू जस्टिफाई द ह्यूज पे चेक दैट दे गेट. किस टाइप की होमवर्क एक्सपेक्टेड होती है फ्रॉम एन एक्टर? I mean, obviously, knowing your lines is the basic. I don't think that's even homework. But research? हर कैरेक्टर पे रिसर्च की ज़रूरत होती नहीं है.
ऑफ कोर्स आप खुद प्रिपेयर होकर जाएं, जब आप सेट पे जाएं आप टाइम पर जाएं, आप दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें, आप जब कैमरा के सामने हो तो आप परफॉर्म अच्छे से करें, आप हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जो है वो कभी भी एक इंसान से नहीं बनती है, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, सो यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव, आप सबके साथ मिलकर एक अच्छी कहानी बना सकते हैं. सो जस्ट टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर सेल्फ इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब वो बेसिक है कि आप मेहनत करें. अगर आप सॉन्ग शूट कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स अच्छे से आने चाहिए. आपको कितना टाइम लग रहा है वो स्टेप सीखने में, वो आप पर है, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपना काम स्क्रीन पर करो. दैट्स द लीस्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेड. Of course, being there on time, treating people politely, this is expected from everyone, not just actors. Let's talk a little bit about pandemic. Do you think cinema in general has seen a downfall post-pandemic? I won't say downfall. I think what has happened, pandemic में हम बहुत used to हो गए वो remote के. वो जो हमारे हाथ में रिमोट होता है, जब हम बोर हो रहे हैं हम आगे कर देते हैं, जब हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अब मैं रात को देखूंगी, तो हम पॉज कर देते हैं और हम चले जाते हैं. हमारा अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत ही कम हो गया है, और हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं OTT पर देखने के लिए कि हम बहुत सिलेक्टिव भी हो गए हैं अब. और एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदत नहीं रही है थिएटर जाने की, जो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ऑफ कोर्स वापस आ रही है, कंसिडरिंग पठान डिड व्हाट इट डिड, यू नो. सो आई एम हैप्पी, क्योंकि मतलब मेरे बचपन में तो सिनेमा थिएटर जाना हमेशा एक वो इवेंट होता था कि हम लोग तय करते थे इस वीकेंड पे जाएंगे और सारे टिकट्स लेके आते थे, कभी कभी रिश्तेदारों को बुला लेते थे, कभी दोस्तों के साथ जाते थे. लग्जरी ऑफ कोर्स, बट इट वाज एन आउटिंग. सो वो थिएटर में सबके साथ एक फिल्म देखने का जो मज़ा है वो रूम में नहीं आ सकता है अकेले. सो आई थिंक वो चीज़ कभी भी जाएगी नहीं. हाँ, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थिएट्रिकल कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि अब लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, तो मीडियोकर काम जो है वो चलेगा नहीं. यू नो, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. अनदर थिंग दैट इज़ हैपेंड इज़ कि स्टोरी जो है फिल्म की, that's the king, that's the star. You know, it's not anymore about the actor, which is a good thing. Yeah. Absolutely. अभी आप रिश्तेदारों की बात कर रहे थे कि सबको लेकर मूवी हॉल में आप जाते थे. जब आप इंजीनियर से एक्टिंग करने लग गए तो रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिश्तेदारों को हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा बोलना होता है, तो तब उन्होंने क्या बोला था? कुछ लोग सपोर्टिव थे, कुछ लोग इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, कोई जानता नहीं है इसको, कोई कनेक्शन नहीं है, बिना कनेक्शन के यहाँ काम नहीं होता है. ऊपर से इंडस्ट्री की एक इमेज बहुत ही ख़राब थी, पता नहीं क्यों. वो एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, अच्छी दुनिया नहीं है, लड़की है, यू नो, कैसे ख्याल रखेगी, शादी नहीं होगी, एक्टर बन जाएगी तो फिर शादी नहीं होगी. एक्टर्स की शादी बहुत लेट होती है. आप जल्दी कर लेना. हाँ, अरे शादी की क्यों पड़ी रहते हैं यार सबको, मेरे को समझ में नहीं आता है. इतना अच्छा मैं काम कर रही हूँ, वो देखो ना. शादी मतलब शादी इज ऑल्सो, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन मैरिज एंड आई वुड लव टू गेट मैरिड, बट व्हेन आई फील इट राइट हियर, यू नो, दैट्स द मेन थिंग. एंड ऑफ कोर्स मैंने ये सारी चीज़ें सुनी, और शादी नहीं होगी वाली चीज़ मैंने कुछ तो अपने एक आधे पेयर्स से भी सुनी थी, और मैं बहुत शॉक्ड रह गई थी कि यार मेरे जनरेशन में भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम. बट वही लोग जो पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना लग रहा था, यू नो, किसी ने किया नहीं था मेरी फैमिली से, यू नो, एंड एज दे सेड कोई जानता नहीं था मुझे यहाँ पर. तो वो बहुत बड़ा सपना कई बार हमको डरा देता है, और हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो नहीं हो सकती हैं, जो गलत जा सकती हैं, लेकिन आपको बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि यार हो भी सकता है, पॉसिबल है. सो दैट्स ऑल्सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि इट्स पॉसिबल एंड आई कैन डू इट. Very nice. I just have like few most Googled questions about Kriti. They're going to be small and very quick. सबसे पहले, how rich is Kriti Sanon? How rich? ये लोगों ने पूछा हुआ है. How rich am I?
I see richness from the heart, so very, very rich. Wow, that's nice. अच्छा, कृति सेनन एक मूवी करने के कितने पैसे चार्ज करती हैं? ये आपको क्यों जानना है? कृति सेनन का निकनेम क्या है? मेरा कोई निकनेम नहीं है, मुझे कुछ मेरे टीम के लोग, मिमी तो खाली मुझे लक्ष्मण सर बुलाते हैं एक्चुअली, बट मेरे टीम के लोग मुझे कृत्सु बोलते हैं कई बार. मेरा बचपन में मुझे जब मेरा नामकरण नहीं हुआ था तो मुझे गुच्ची बोलते थे. गुच्ची नहीं, गुच्ची. 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 तो वो अब कोई नहीं बोलता है वो. कृति सेनन का फोन नंबर क्या है? 100. अच्छा, ज्यादा गोरा कौन है, टाइगर या कृति? टाइगर. सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सच में ज्यादा गोरा है. वो अच्छा. बहुत गोरा है, वो बहुत खुद को टैन करता है मेकअप के साथ. तो आपको भी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है. आई लाइक माई कलर. कृति का बिगेस्ट फियर क्या है? Biggest fear, of course, losing my loved ones. I think that is the biggest fear. And also मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार एक दिन अगर मैं कैमरा के सामने हूँ और मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही है, like हो ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगी? तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं वो डर लगता है कि यार what if one day I wake up and I'm not able to act at all. You know, I think that little bit, I don't know why I have this fear, but I do. लास्ट है, कृति सेनन की हाइट कितनी है? 5'9". Oh God, मेरी 5'4". और अभी ये 4 इंच के बाद कुछ 6'1" हो गई है. Amazing, Kriti. So time की कमी है. I'm really sorry, but that was the very talented, very beautiful Kriti Senan. And जैसे मैंने starting में बोला था, परम सुंदरी. So Kriti, what do you say? परम सुंदरी पे एक डांस हो जाए? अब आपने बैकस्टेज सीख तो लिया है मुझसे, तो फिर कर लेते हैं. सीख लिया एक्चुअली. बैकस्टेज पहले ही सीख लिया था before making fool of myself. So let's do it. Of course. Let's have the music. Let's talk fearless and free. फिर गूंजे अपनी यूनिटी. सर उठा के, सोच घुमा के. We'll be the change we wanna see. Ideas of India. Yeah, ideas of India. Ideas of India. Ideas of India. ABP Networks, Ideas of India. Arise, awake, अपने अंदर. What a wonderful note to end this session on. Ladies and gentlemen, a louder round of applause for this wonderful actress in such a sport. Thank you so much, Kriti. And I'd like to invite on stage Mayank Agarwal, CEO, Gallant Group, to present Kriti with a token of our gratitude. Thank you for being here, Kriti. What a wonderful session. Thank you very much for being here, and thank you, Shagun, for conducting the session. Bye bye कर रही है, एक बार तालियां तो सुना दीजिए, come on. Thank you everyone. तो हम नए भारत की बात ऑलरेडी कर चुके हैं कृति के साथ, पर जब हम नए भारत की बात करते हैं तो सोशल मीडिया की बात करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है. YouTube हो या Instagram हो, इन प्लेटफॉर्म्स से हम एकदम हुक्ड हैं, you know that. और सबसे अहम बात यह है कि अब देश के कोने कोने से टैलेंट हमारी उंगलियों पर है. But it's not just, you know, comedy and song and dance and laughs. The Indian influencer marketing industry's value is estimated to reach 2,200 crore rupees by 2025. Not very far from now. Now, one of the reasons for this sharp growth is that social media reflects our society,
our regions, our customs, हम लोगों का essence हमें creators में दिख जाता है, अपनी एक झलक उनमें दिख जाती है। तो चलिए अब ऐसी 3 हस्तियों से मिलने का समय आ गया है जो बहुत ही छोटी ही उम्र में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी दिग्गज बन चुकी हैं। We have a small AV for them, so we'll play it out to give you a sense of their talent online. Can we have the AV please? रिश्तेदारों, ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि मेरी मम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती है, इस बात को बोतल पे लिखो और समंदर में फेंक आओ, क्योंकि एक बार को मेंढक को चूम के राजकुमार बनाना संभव है, पर मेरी मम्मी तुम्हारे आने पे खुश हो जाए, ये चीज संभव है। अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो। बाबा ये चाइना कैसे नहीं मान रहा है? नहीं मतलब चिपचाप लिए जा रहे हैं तो कुछ भी भेजे जा रही है। पहले अपना अजीनोमोटो वाला खाना बेच के हमारी आते खराब कराई, फिर सस्ता फोन और टिकटॉक बेच के हमारा यूथ बर्बाद कर दिया, फिर ये कोरोना बेच के पूरा देश बंद करा दिया। काट लो बेटा, आप केक काट लो, बड़ों का क्या काम केक वेक काटना। मेरे तो वैसे शुगर हो रखी है, मैं तो खाती नहीं केक वेक। तालियों की आवाज नहीं सुनी, कब का केक काट लिया उन्होंने। अब याद आ रही है इनको, चतुर समझते हैं खुद को। मेरी छोटी वाली बेटी, मेरा छोटा वाला बेटा, दोनों 1 महीने में एक बारी यहाँ मामा जी को फोन लगाएंगे। यहाँ देख लो उनके बच्चे। That's how we welcome them. Please welcome on stage RJ Karishma and Meethika Dwivedi, and we'll have Saloni joining us in just a bit. Sania Hussain को भी बुलाना चाहूंगी. Sania, please join us to conduct this session. Saloni is also here. Welcome all 3 of you, and we look forward to this session. कृति की इस परफॉर्मेंस के बाद आई एम गिविंग ऑल द प्रेशर टू देम। ये अब एंटरटेन तुम लोग को करना है इनको, ठीक है? Okay, so I want by the end of this session I can make all of you believe कि आप लोग भी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। कितना कूल होगा ना if I go to the CEO and say sir इस बार 60% हाइक दे दो। And he says छोटी बच्ची हो क्या? खैर ये जो 3 लोग हैं वो इतना रोस्ट और इतना रैंट करते हैं कि गलती से ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए तो ये बोलेंगे फिक्र मत करो यार कुछ ठीक नहीं होगा। So Saloni, Karishma and Meethika, welcome to Ideas of India. Yeah, it's on. Hi everyone. हेलो। यार नाश्ता वगैरह तो मिला होगा, I'm sure, है ना? Be louder, मत guys, पूछो, दिखाओ ये सब किसी शायद की- नहीं मिला है उन्हें। I want to know, सब लोग रील्स बना रहे हैं, शादियों में जाओ आंटी बच्चे सब रील्स बना रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं, चाहे आंटी की पीठ ने जवाब दे दिया हो। मुझे बताओ जब सब कंटेंट बना रहे होते हैं और सब कुछ कंटेंट होता है, आप लोग कैसे ढूंढते हो कि मेरा कंटेंट क्या है, क्या वायरल जाएगा? नहीं, मैं तो जोक ही मारने वाली थी कि इनके घर में तो खुद 3-4 लोग बना रहे हैं। आई थिंक जब आप ओरिजिनल होते हो ना, जब आपको पता होता है कि जो आप हैं और वो आप अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो वो आपको अलग करता है सबसे। तो कंटेंट जैसा आपने कहा सब बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं जितना भी लोग कंटेंट बनाते हैं। बट जब आपकी वो आप जो ओरिजिनल जैसे दिल से होते हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने वीडियोस में, आई थिंक वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको अलग से स्टैंड करती है। मिथिका, व्हाट अबाउट यू? हम तो बचपन से छोटे बच्चों के बुली रहे हैं, तो हम पकड़ के बुली कर देते हैं लोगों को कि अच्छा ये स्नैपचैट स्ट्रीक बना रही है भाई, अब अगली वीडियो तुम्हारे ही ऊपर आएगी। तो जब हम बहुत मतलब 15-16 ईयर्स के थे, जब हमने स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, तो हम अपने साथ की लड़कियों को पकड़ते थे कि भाई तुम कमिटेड हो गई हो, अच्छा। तो मेरे खिलाफ ना एक गैंग बन गया था मेरे स्कूल में कि ये हम ही लोगों के ऊपर वीडियोज़ बनाती है। तो स्टार्टिंग हमने बुली करने से ही किया था, और इसके बाद धीरे धीरे बाहर के लोगों को बुली करना चालू कर दिया। मतलब अब जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले तो हम सब पे कंटेंट बनने वाला है फॉर श्योर। नहीं, हम सुंदर लड़कियों पे कंटेंट नहीं बनाते हैं। मुझे लगा वो बोलेगी हम सुंदर लड़कियों पर ही बनाते हैं। सलोनी, मुझे आप नेक्स्ट आंसर जो है कंगना की आवाज में देंगे। नहीं, ये हर बार लास्ट टाइम मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था तब भी यही कराया था। क्या सान्या, कुछ तो प्रिपेयर करना था। पसंद है या नहीं तुम लोगों को? मुझे बताओ क्या डिजिटल दुनिया में कुड़ियों का है जमाना? ये क्या है, ये कोई गाना है क्या? हाँ यार। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल कुड़ियों का जमाना है। मुझे सॉरी ये गाना नहीं पता, कौन सी फिल्म का गाना है ये? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं याद ये कौन सी मूवी। ओके, 2022 में इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री जो थी उसकी वैल्यू थी 12 बिलियन रुपीस।
मुझे बताओ आरजे करिश्मा, आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो और इन्फ्लुएंसर बन के भी पैसा कमा रहे हो, तो क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? ये लाइव है ना, हम लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते यार वैसे। बट यार टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये धनराशि आ रही है तो मुझे उस चीज़ की खुशी है। मैं बचपन से ही ऐसी थी। अभी मैं थोड़ा सा लंबा बोलने वाली हूँ क्योंकि यू नो मेरा जेन्युइनली जब भी मैं कोई इंटरव्यू देती हूँ, मैंने अपनी स्टोरी कभी शेयर नहीं की है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो आपकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, बट मैं वहाँ बाद में आऊँगी। जब मैं मतलब ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे कि सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, या तो उनके बच्चे इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने। तो मेरी फैमिली में भी यही था कि सब लोग इंजीनियर थे, तो सबने यही बोला कि तुमको भी मैथ्स लेके, पीसीएम लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑब्वियसली, तुमको इंजीनियरिंग करनी है। पर मुझे नहीं करनी थी, फॉर श्योर मुझे नहीं करनी थी, और मैंने मास कॉम किया। उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ और मुझे आरजे बनने की अपॉर्चुनिटी मिली। पर मुझे पता था कि जो एक्टिंग का कीड़ा है ना मेरे अंदर है, वो कैसे भी निकालना है। तो आरजे जब आप होते हैं तब आपके पास सिर्फ एक माइक है और उसके पीछे आप हैं, तो उसमें एक्टिंग करने का आपको ऑब्वियसली मौका नहीं मिलता है। तब मैंने स्टार्ट किए थे अपने वीडियोस बनाने। बहुत पहले की बात है, मैं महीने में एक वीडियो बनाती थी और पोस्ट करती थी। और फिर सबकी तरह जब मुझे लगता था लाइक्स और व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मुझे लगा यार ये कुछ भी हो रहा है। बट फिर भी क्योंकि मुझे इच्छा होती थी, मतलब मैं चाहती थी मैं वो वीडियोस बनाऊं और लोगों को हंसाऊं, तो मैं बनाती रहती थी। अब जब पैंडेमिक के टाइम पे सब लोग घर पे बैठे हुए थे और सब लोगों ने शुरू किया कुछ ना कुछ, कोई शेफ बन गया उस टाइम पे, कोई पेंटर बन गया, कोई डांसर बन गया, सभी लोग निकम्मे बन गए। सबका एग्जैक्टली सबका टैलेंट जो है बाहर आया। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो 2021 की बात है, जून में जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज ऑन 45K इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि मैं एक आरजे थी, तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर इवेंट्स के लिए जानते थे, तो लोग मुझे जानते थे। बट जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ सिर्फ वो लोग जानते थे। उसके बाद मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ, वो एक वीडियो जो मैंने बनाया था, दैट वाज ऑन सास बहू, जो कि वायरल हुआ था। वो मैं पहले पोस्ट भी नहीं कर रही थी, मैंने कहा यार लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट पोस्ट इट। तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है उसने मेरे को बोला इट्स वेरी फनी, यू शुड पोस्ट इट। तो मैंने उसको सेल्फ रिजेक्ट पे डाल दिया था कि मैं तो बिल्कुल ऐसे पोस्ट नहीं करूँगी। दैट वॉज माई फर्स्ट वीडियो विच गॉट ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन व्यूज़ इन 3 days एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया यार। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो, और जब भी मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है ना कि आप एक फुल टाइम आरजे भी हैं और आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो मैं ये कहूँगी वो इसलिए दोनों मुझसे हो जाता है। या जैसा मैंने कहा कि धनराशि का तो पता नहीं, बट पैशन है मेरा। मतलब मैं अगर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, मैं सिर्फ वीडियोस बनाऊंगी, मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपके वीडियोस देख के जो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है ना, वो अलग ही होती है। तो ऑब्वियसली मेरा अवार्ड, मेरी धनराशि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ही है, जिनको मैं हंसाती हूँ। और जो आरजेइंग है वो इसलिए साथ साथ चल रही है क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए, जहाँ से चढ़ के मैं आगे पहुँची हूँ। तो उसको छोड़ने का भी बिल्कुल मन नहीं होता। मेरी बॉस इतनी खुश हो गई ना, मस्त अप्रेजल होगा मेरा कि भाई बहुत अच्छा बोल लिया इस लड़की ने। सो या आई गेस धनराशि का तो पता नहीं, ऑब्वियसली हाँ यार कमाई तो सबकी होती है, बट मेरी कमाई वो मेरी ऑडियंस का अप्रिसिएशन है जो मुझे हमेशा देते रहता है। सो या बट वो पूछ रही है पैसे वाली कमाई का क्या? पैसे वाली कमाई का मुझे क्या करना है? आई थिंक यार कोई मानेगा नहीं, बट मैं बड़ी इमोशनल तरह की इंसान हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं कोई आश्रम खोल दूँगी। अभी सपने वैसे हैं, बट आई डोंट नो कि उनको कितना आगे तक मैं ले पाऊँगी। बट अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मेरी माँ के लिए बहुत कुछ करना है। तो अभी कभी होता है ना, आप कहीं जाते हो तो आपको प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर आपकी मॉम को कुछ पसंद आ गया और आपको कुछ पसंद आ गया तो जस्ट पिक इट अप और बोलते हो मैंने आपके ले लिया। तो मुझे लगता है मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, उनको खुश करने के लिए धनराशि का यूज़ करने वाली हूँ मैं। सो या फॉर श्योर। मेथिका, आपकी स्टोरी हाउ यू स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट वो सबको बताओ प्लीज़।
तो आपको कौन सी वाली कहानी सुननी है, जब मम्मी ने मेरा अकाउंट पकड़ा या फिर जो हमने स्टार्ट किया था एकदम बनाना? जब मम्मी ने अकाउंट पकड़ा। तो हम बहुत ही उजट खानदान से आते हैं, मतलब मेरी घर पे कोई इज्जत नहीं थी कभी से। अब बच्चा है बैक बेंचर, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं भाई पढ़ाई लिखाई से। 10वीं का रिजल्ट आया था, मेरे घर पे जूते चप्पल चल रहे थे मेरे ऊपर, जबकि मेरी शक्ल देख के अनुमान लगा सकते हैं आप कि इस लड़की के ज़्यादा नंबर नहीं आए होंगे। मेरी मम्मी को भी पता था, पर फिर भी अब भाई माहौल ख़राब था घर का। उसके पहले हम आईडी बना चुके थे। धोखा क्या दिया था मम्मी को कि मम्मी इस आईडी पे हम गाना गाएंगे ताकि ये आईडी बंद ना कराई जाए, तभी इस आईडी का नाम साउंड ब्लेस पड़ा। फिर हमने स्टोरी हाइड कर दी। स्टोरी पे भाई जोकराई मचा रखी थी हमने एकदम, रिप्लाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और एक दो स्टोरी कभी कभी मम्मी को दिखा देते थे, तो मम्मी कहती थी बेटा ये तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कहते थे ग्लिच है ग्लिच। और इंडियन मदर्स इतनी अच्छी होती है, इन्हें कुछ भी पढ़ा दो ये पढ़ लेती हैं। तो भाई पढ़ा दिया हमने। फिर एक दिन ये आई मेरे पास और कह रही हैं ये जो तुमने हाइड कर रखी है ना, इसे अनहाइड कर दो वरना घर से निकाल देंगे। हमने कहा ठीक है अनहाइड कर दी। फिर उन्होंने देखा वेखा अकाउंट, तो कहा इतना कुछ गलत काम तो कर नहीं रही है। फिर जब इन्होंने मेरी हाईलाइट देखी जाके, तो कह रही हैं ये क्या जोकराई मचा रखी है तुमने, हमने इतने अच्छे से तुम्हें पाला था और तुम ये सब करोगी अब। तो फिर भाई दुखी तो बहुत हुए थे हम कि ये क्या बोल रही है मम्मी, पर फिर बेशरम बच्चा क्या ही करता, लॉकडाउन का समय था, बोर हो रहे थे। फिर बनाया कंटेंट, बुली किया लोगों को इंटरनेट पे, बस बुली हुए किया। अब मम्मी खुश है? अब पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो अब तो बहुत खुश है मेरी मम्मी। सलोनी, आपकी जर्नी एक हॉस्टल की सीलन वाली वॉल से शुरू हुई थी। मुझे बताओ कैसा था वो सफर, क्या पता था कभी इतनी वायरल हो जाओगी? उसका तो पढ़ाई से रिलेटेड था, मेरा ये था कि पढ़ाई के बाद भी मेरे पास इतना टाइम बच जाता था कि कुछ तो करना ही था। खाली मैं भी बहुत थी वहाँ पे, और मेरी फैमिली भी रोकने वाली नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भाई जब इतने भले इंसान मिल ही गए हैं परिवार में जो कुछ मना नहीं कर रहे, कोई रोक टोक नहीं है, तो क्यों ना एक्सप्लॉइट ही कर ले उनको थोड़ा। तो मैंने कहा देखते हैं इनका कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये सह पाएंगे मेरी जोकरी। तो मैंने किया वही सब। और क्या था दूसरा क्वेश्चन, क्या था आपका? कि आपने स्टार्ट कैसे आई वो पहली वायरल वीडियो? वो तो हाँ टॉपिकल वीडियो थी, वो दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर बनाई थी। तो मैं कहूँगी कि आप सबका सहयोग था उसमें, दिल्ली वालों का, जिसने देश में इतना पोल्यूशन फैलाया और मेरे दिमाग में वो आइडिया आया। और किसी को सांस नहीं आ रही थी, बट मेरी वीडियो पे व्यूज़ भरपूर आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है पोल्यूशन से भी। और ऐसे ही वो वीडियो चली। फिर मैंने सोचा कि अब जब चल गया है तो और वीडियोस बनाते हैं। मैंने वहाँ पे आलस नहीं दिखाया। फिर मैंने सोचा कि यही मेरा मौका हो सकता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही थी, मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। तो वो ऐसा था कि मेरी एकदम कॉलेज से निकलते ही मेरी प्लेसमेंट नहीं होने वाली थी कहीं पे भी। उसमें तो फिर ऐसा ही होता है कि या तो आप और पढ़ो और फिर PhD वगैरह करके कुछ आपको लगेगा, या आप दूसरों को पढ़ाओ। दोनों ही मेरे बस की नहीं थे। तो मैंने कहा जो जहाँ से मिल रहा है अभी लपेट लो, बाकी आगे तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। हाँ, जब रिश्तेदार जो थे जो पहले ताने देते थे कि क्या कर रही है आपकी बच्ची, अब जब वो पूछते हैं कि एक आपकी सफलता का सफ़र का रास्ता बता दो, आप उन्हें बता देते हो कि आगे होके भाड़ में चली जाइए? यार मेरे रिश्तेदार ना हमेशा हमसे दूर ही रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद तो इज्जत थी नहीं। तो मेरा ये मकसद रहता था कि खुद की नहीं है तो किसी की मत करो। तो होता क्या था, हमें कोई बुलाता नहीं था। जैसे मेरे मम्मी पापा को कोई बुलाता था कहीं इवेंट में कि शादी है, तो मेंशन करते थे मिथिका को मत लाइएगा। तो हमें तो कभी रिश्तेदारों ने भी इज्जत नहीं दी कि ये लड़की कुछ कर रही है। फिर जब फेमस हो गया तो ग्लैडली हमने कभी अपने रिश्तेदारों से आईडी छुपाई नहीं, क्योंकि हम उनके लिए भी वीडियो बनाते थे कि आंटी घर पे आई हैं, आंटी ये कर रही हैं, आंटी वो कर रही थी। तो पकड़ लिया किसी आंटी ने एक दिन, तो कह रही है ये तो हम ही गए थे उस दिन तुम्हारे घर से। हमने कहा यार गई तो आप ही थी। तो फिर कह रही है मेरे लिए ही था मतलब। तो हम मुस्कुराए फिर। तो कह रही है ठीक है अब करो जो कर रही हो, क्या ही बोलेगा कोई। तो वही बात है, देखिए कंक्लूजन। तो फिर चाहे रिश्तेदार कोई कुछ बोले, चाहे कुछ हो जाए, मेरे ना घर वाले फिर पॉइंट आउट किया। स्टार्टिंग में बोला था उन्होंने भी कि बेटा ये क्या कर रही हो, खानदान में नाक कटा रखी है, सरेआम नीलाम कर रही हो खानदान की इज्जत, जबकि उन्हें पता ही नहीं है हमारे खानदान की इज्जत ही नहीं है कोई। नीलाम क्या करेगा बच्चा, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से जाके रिश्तेदारों को काम डाउन किया था समवॉट कि हाँ भाई बना रहे हैं वीडियो, आप ही के ऊपर है, क्या ही करेंगी अब आप। तो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक था नहीं। Meethika is by the way 18, has bought her own house, her own car, so huge round of applause for that.
क्या बोला हमने? पैसा बोलता है। किसी की हिम्मत नहीं है इसके बाद तो इससे कुछ बोलने की। गाइस, आप दोनों के साथ रिश्तेदारों का क्या रिलेशनशिप है? मेरी तो भाई मम्मी, अगर मैं अभी कुछ बोल दूं किसी रिश्तेदार को तो वो अभी मेरा कान खींच के बाहर फेंक देंगी, उनका अभी भी इतना है। और ऐसा है कि पहले जब मैं वीडियो बना रही थी तो उनके घर पे कॉल आते थे कि ये पढ़ने गई है, क्या कर रही है। मेरी मम्मी तब भी सुन लेती थी, अब भी सुन लेती हैं। उनका हमारे घर में नहीं बोलता पैसा वैसा। मेरी मम्मी तो भाई उन्हें रिश्तेदारों से बना के रखनी है। अभी मेरे भाई की शादी हुई, वहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके साथ फोटो खिंचाऊं। भैया को भाव ही नहीं दे रहे हैं वो। मतलब सोचो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे और वो हम मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मैं खाना नहीं खा पाई तो मैंने मम्मी को कंप्लेन किया। मैंने कहा मम्मी मैं तो अपने ही भाई के रिसेप्शन में खाना नहीं खा पा रही हूँ इनकी वजह से, और यही घर पे पहले बुराई करते थे। तो मम्मी कह रही है कोई दिक्कत है इसमें? अगर 2-4 हंस के फोटो खिंचा लोगे, किसी से 2-4 बोल लोगे हंस के, तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? वो अपना इसी में खुश हैं कि हर रिश्तेदार को बेडशीट का डब्बा चला जाए, मिठाई का डब्बा चला जाए। तुम बदतमीजी से मना बोलो, मेरे बच्चों को हाय ना लगे, सारे रिश्तेदार खुश होके जाएं। मैंने कहा बच्चे चाहे उदास हो जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। What about you, करिश्मा? यार आई थिंक मैं काफ़ी सेफ खेलती हूँ। अपने रिश्तेदारों को छोड़ के मैं दूसरे के रिश्तेदारों पे बनाती हूँ, तो मैं काफ़ी सेफ होती हूँ उस मामले में। बाकी मुझे लगता है हर किसी का रिश्तेदार एक ही हरकत पटकता है, तो यहाँ पे किसी को ऐसे नहीं लगता है कि अच्छा ये हमारे लिए बनाया होगा, तो इसलिए कोई झंझट नहीं है। मतलब बाकी सब सॉर्टेड है। हम आइडियाज़ ऑफ इंडिया पे यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड लीडर्स भी हैं। आप बताओ, ब्रांड्स के से कोई कंप्लेन है तो अभी कर दो। कोई बोलता है आके ऐसे एक वायरल वीडियो बना दो। हाँ बोलते तो हैं, पर जैसा उसने बोला जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है फिर हम भी पिक जाते हैं कि हाँ ठीक है आप मालिक जो बोलेंगे हम कर देंगे। बॉलीवुड ने ये इनग्रेन कर दिया हमारे दिमाग में कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं। तो अब आपको कैसा लगता है व्हेन यू आर एट द ड्राइविंग सीट ऑफ कॉमेडी इन इंडिया? दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हाँ मैं तो उन्हीं लड़कों के पीछे जाऊंगी जो हंसा सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली बॉलीवुड ने ये तो सही बोला है, बट हाँ इट फील्स ग्रेट। पहले तो यही होता था कि मतलब ये तो आज भी होता है कि हाँ लड़कियां फनी नहीं होती हैं, 1-2 कमेंट्स तो आ ही जाते हैं ऐसे, बट फिर कॉमेडी सब्जेक्टिव है और जो लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं उनका अप्रिसिएशन से अच्छा लगता है कि हाँ दिस इज़ चेंजिंग नाउ। आज लड़कियां भी एकदम फुल हाउस शो देती हैं अपना, अगर स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। करिश्मा ने जैसे बोला कि कहाँ से कहाँ शी हैज़ रीच्ड इन नंबर्स, तो वही है ना, लोगों को हमारी कॉमेडी भी पसंद आ रही है, तो इट फील्स ग्रेट। हमें तो यार मतलब वही लड़के थोड़े ठीक लगते हैं जो मेरे जोकों पे हंसते हैं। तुम हंसो, इठलाओ, खिलखिलाओ, लाल हो जाओ, तो इससे सुंदर चीज़ क्या होगी? और भाई ये होता है ना, हम जोक मार रहे हैं तो सामने वाला भी फनी है तो वो हंसता नहीं है, फिर वो दिमाग लगाने लगता है हम भी इसको और फनी करते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि हम जोक मार रहे हैं, तुम वो सुनो, तुम उस पर हंसो, ज़्यादा बोलो मत। तो ये वाला सीन है। मुझे बताओ, कस वर्ड्स, गालियों पे आपका क्या टेक है? बहुत सारे लोग गालियाँ यूज़ करते हैं। जब एक आदमी देता है गालियाँ कंटेंट में, लोगों को लगता है हाँ हाँ बहुत फनी है, बट औरत देती है तो स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये इस टाइप की वीडियोस बनाती है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन कस वर्ड्स? यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपका क्या टेक? यार आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किससे केटर कर रहे हो। गालियाँ तो सबको पड़ती है यार। नहीं आई एम सेइंग कि सामने कौन है जो आप आपने कहा ना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ। उस बात में कह रही हूँ कि आप अपना कंटेंट किन्हें सर्व करते हैं। तो अगर मैं अपने कंटेंट की बात करूँ तो मेरे कंटेंट में सब लोग ऐसे हैं कि अगर मेरे मुंह से कभी पागल भी निकल जाए ना तो वो हाय तौबा, करिश्मा ने पागल बोल दिया, तो मैं वहाँ पे नहीं सोच सकती कि मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे यूज़ करूँ। मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि आप किसे अपना कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं। और जैसा कि कहते हैं कि लड़के गाली देते हैं तो काफ़ी कूल लगता है, या लड़कियां गाली देती हैं तो काफ़ी कूल लगता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो शायद मिथिका का जवाब उस चीज़ के लिए कुछ अलग होगा कि क्या तुम्हें लड़के कूल लगते हैं गाली देते हुए? नहीं, हाँ या ना, यू हैव टू से। नहीं, अगर बता दो सच सच यार मिथिका। भाई मैं सच बोल दूंगा, मैं निकाल दिया जाऊंगा यहाँ से। नहीं हाँ बोल। अगर देखिए हाँ। अगर अच्छे मतलब डिसेंट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही विभत्स गाली दे दी, पर हाँ अगर मौका लगा और दे दी तो खराब भी नहीं लगता है। बस मौके की बात है कि आप दे कहाँ रहे हैं, आप मम्मी के सामने दे रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? मैंने तो कभी गाली दी ही नहीं है, तो मतलब आप ऑन कैमरा सलोनी? नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं दी है मैंने कभी। मैं शरीफों में से आती हूँ, जो गाली देते हैं वही आ गया ना, जो गाली देते हैं वो भी शरीफ। हाँ मतलब मैं यही कहूँगी कि ज़रूर यहाँ पे इतने लोग बैठे होंगे, किसी का पैर भी टेढ़ा हो जाता है तो मुंह से कुछ निकल जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो इट डिपेंड्स कि
सामने कौन है, किसे केटर करना चाहते हो, और मुझे लगता है उसे कोई वैसा करने का नहीं है कि मतलब गाली देकर आपका कंटेंट चल रहा है या बिना गाली के आपका कंटेंट चल रहा है। वो लोग का भी कंटेंट चल रहा है ऑब्वियसली, जो अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं उन लोग का भी चल रहा है, जो नहीं करते हैं। अगर आप मेरा कंटेंट देखेंगे ऑब्वियसली, या सलोनी का देखेंगे और मिथिका का देखेंगे, आई डोंट थिंक कि हम लोग कभी भी ऐसे गाली का यूज़ करते हैं। एंड आई हैव 5.6 मिलियन फॉलोअर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। व्हाट अबाउट यू? सॉरी, आई हैव 1.1 Still, yeah, million. man. I mean, हाँ, हम लोग मिलियन में खेल रहे हैं ना बिना गाली दिए। तो आई थिंक अभी जो दे रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यार बहुत गलत बात है, मत दो। मतलब मुझे मम्मी नहीं बनना है ऑब्वियसली। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को वैसे, आपकी टारगेट ऑडियंस वैसी है तो आप उन्हें वैसे सर्व कीजिए। सो नो कमेंट्स। बट एक वो भी इसमें मुझे लगता है, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि इसकी वीडियो तो इसीलिए चल रही क्योंकि ये गाली देता है। नहीं, वो जैसे करिश्मा ने बोला, वो टाइमिंग पे देते तभी फनी लगता है। पूरी वीडियो में गाली गाली देते रहोगे तो नहीं हंसेंगे लोग। वो हंस रहे हैं क्योंकि वो सही टाइम पे दिए और वहाँ ज़रूरत थी गाली देने की। और ये लड़की है तो इसका कंटेंट चल रहा है, थोड़ी बहुत ठीक दिखती है तो इसका कंटेंट चल रहा है। अभी आपने मुझे यहाँ पे देखा, कोई पहचान ही नहीं पाता है मुझे कि मैं ये हूँ कि वो साड़ी पे। लाइक कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप 40 साल की लगती है जब आप वीडियो में दिखती है। तो आई डोंट थिंक कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप लड़की हैं, जेंडर बायस्ड है। आई गेस आपका जो कंटेंट है वो दिखता है और वो काम करता है। मेरे लिए तो मतलब यही लर्निंग है और वही चल रही है। सो आप लोग जो सब वो कॉमेडी कंटेंट बनाते हो, मुझे बताओ जब सैड होते हो तब क्या करते हो? कंटेंट नहीं बनाते या फिर भी अपने आप को फोर्स करते हो कि नहीं यार बना लो? मैं तो भगवान की कृपा से कभी सैड होती नहीं हूँ। अभी टच वुड, अब आगे भी ना हूँ मैं। पता नहीं, मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी ही है। मतलब मैं तो खुशी रहती हूँ वैसे तो। दिल टूटने पर भी? नहीं, मेरा दिल विल नहीं टूटा है अभी तक। ओहो। भाई मैं तो गायब हो जाता हूँ, मेरी 1-2 महीना रील ही नहीं आएगी अगर मैं सैड हो गया तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं करते भाई कि वीडियो बनाना है, कंटेंट जाना ही चाहिए। जब तक मन नहीं है नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे तो आप बहुत लिमिटेड टाइम तक वो चीज़ कर पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। बट मुझे लगता है मेरी आर्जिंग ने काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ के लिए। यू नो, आपको लाइव शोज़ करने पड़ते हैं। आपकी लाइफ एकदम ऐसी हो रही होती है, कभी कभी आपका ब्रेकअप हुआ होता है, कभी आपको आपकी मम्मी से इतनी डांट पड़ी होती है कि आपको लगता है कि मैं क्या करूं। बट लाइव शोज़ के टाइम आपको लिटरली यहाँ से आंसू पोंछने होते हैं और यहाँ पे आप अपनी लाइव लिंक डिलीवर कर रहे होते हो। तो मेरे लिए, मैं रो भी रही होती हूँ तो मुझे कॉन्टेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बना लेती हूँ रो रो के। सो आई डू इट। यार मुझे बताओ, व्हाट आर सम मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको लगता है ऐसी तो नहीं होती लाइफ? क्या इन्फ्लुएंसर्स आसानी से पैसे कमा लेते हैं? ये तो नहीं, आसानी से तो मतलब अगर कंपेयर किया जाए बाकी फील्ड से, लोग इतने साल पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर प्रमोशन होता है, फिर उन्हें पैसे मिलते हैं, हमें ब्रांड डील आ जाती है, हमें मिल जाता है। तो कंपेयर किया जाए तो थोड़ा ईजी है कह सकते हैं। पर मिसकंसेप्शन ये है कि यार पैसा, जैसे मेरे साथ तो ये है कि लोगों को लगता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, मेरे घर वालों ने हथियार लिए हैं पैसे, मुझे टूटे मिलते हैं, जो 10-5 रुपए बचते हैं वो मुंह पर मार दिए जाते हैं। तो हाँ। करिश्मा, व्हाट अबाउट? सॉरी, क्वेश्चन क्या था? मिसकंसेप्शन यू हर्ड अबाउट इन्फ्लुएंसर जो आपको लगा ये तो बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, सी मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो हम अपनी फील्ड की नहीं बात करेंगे क्योंकि हम सब तीनों कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं और काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। बट कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जो ऑब्वियसली सिर्फ डांस करते हैं, या अच्छा इनको देख लो भाई ये यही कर रहे हैं। भाई वो उनका काम है और उसकी मेहनत लग रही है। अगर ये व्हाट वाज नज़मा अपी ना, हाँ, अगर वो बन रही है तो उसके लिए भी शायद उन्होंने 2-3 घंटे निकाले हैं जिसमें वो अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर रही हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे कजन्स आते हैं, वो पार्टी करने के लिए जाते हैं और मैं बोलती हूँ नहीं मुझे वीडियो बनाना है। वो दुख भी होता है मुझे कि यार वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मुझे नहीं करने को मिल रहा है। आई गेस हर फील्ड में ऑब्वियसली हार्डवर्क तो है। जैसा मिथिका ने कहा कि इतने साल पढ़ाई करके और फिर बॉस की खिटपिट सुनना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, अगले तुम क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों से हम बचे हुए हैं। ये सब हमारे ऊपर ये हैमरिंग नहीं होती है, उसमें वी आर ब्लेस्ड। बट आई थिंक हार्डवर्क तो लगता है यार। मतलब ये कहने की बात है कि हाँ ठीक है, एक खड़े तो हो जाते हैं एक वीडियो बना के और मिल जाता है इनको पैसा। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स रियली नॉट ट्रू। ओके, एक व्यूअर क्वेश्चन है कि पहले मैं सैड थी, फिर मैंने इंग्लिश सीखी। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया ये जोक, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ। व्यूअर क्वेश्चन है कि पहले मैं दुखी थी, फिर मैंने इंग्लिश सीखी, मैं सैड हो गई। तो मुझे बताओ, बायस है क्या जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं और जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं? मैं तो दोनों में बना लेती हूँ, डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है।
तो पर अगर आपको लगता है जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं उन्हें ज़्यादा इज्जत मिलती है जो हिंदी में बनाते हैं उन्हें? अच्छा, इज्जत के हिसाब से मेरे को लगा ऐसे व्यूज़ के हिसाब से मेरे इंग्लिश कंटेंट पे नहीं आते। मैंने इतना हिंदी बना लिया कि मेरी ऑडियंस ही अब हिंदी कंटेंट की हो गई है। बट मुझे नहीं लगता अब कोई बायस रह गया है ऐसा। सबकी अलग अलग ऑडियंस बन गई। जो हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं वो सबटाइटल्स दे देते हैं तो उतना ही चल जाता है वो। और आई डोंट थिंक अब ऐसा कोई बायस है। जैसे मैं अगर इसे स्टैंड अप कॉमेडी से करूँ तो पहले काफ़ी ज़्यादा स्पेस वो इंग्लिश कॉमेडियंस का ही था। कैनी थे और ये बाकी सारे लोग, कनन वनन, सब इंग्लिश में कर रहे थे। फिर लेकिन आए ना जाकिर खान वगैरह, ऐसा तो नहीं था कि बायस था, लोग उन्हें नहीं सुनने गए। फिर तो सब अपना अपना स्पेस बना लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब लैंग्वेज के हिसाब से कोई बैरियर रह गया है। मिथिका, पहले तो आपने जो जोक मारा है यार लैंड नहीं हुआ यार, जरूरी नहीं है मैं थोड़ी कंटेंट मेरा मन क्रिएटर। किया मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से, ठीक है? सॉरी। पर ये है कि हमें लगता है कि हिंदी में कंटेंट ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं क्योंकि मतलब लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं उससे। मदर टंग से भाई हर कोई रिलेट करता है, चाहे वो भले कम रिलेटेबल हो, पर फिर भी सबने इंग्लिश का चोला ओढ़ रखा है, पर अंदर से तो सब मतलब हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी समझ में आती है। वेरी ट्रू। आई थिंक ये हम ऑलरेडी इस चीज़ का प्रूफ दे चुके हैं कि हम लोग तीनों कंटेंट हिंदी में कंटेंट बनाते हैं और हम तीनों लोग यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इंग्लिश में कंटेंट बनाता है। आई थिंक इट्स प्रूव बाय इटसेल्फ। बट ये ज़रूर कहूँगी मैं कि जैसा मिथिका ने कहा और जैसा सलोनी ने कहा कि डिपेंड्स कि आप किसके सामने वीडियो बना रहे हो और क्या टॉपिक है आपका, और लोग जज करते हैं, पर वही जो अंदर से जो है वो हम हिंदी है तो वो हिंदी ही निकलती है और उसी में हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। बट हाँ, पीपल डू जज, आई से दैट पीपल डू जज, बट ठीक है, डजंट मुझे तो लगता है उल्टा कम जज करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक हमारा शो आया था तो उसके लिए पीआर के लिए जो कुछ वीडियोस बनवाते तो उसमें वो करना था, डम शरेड्स खेलने थे। तो वहाँ पे हमें उन्होंने सिखाया। अब हमने ज़्यादा खेले नहीं थे तो उन्होंने बताया कि हिंदी के लिए आपको ऐसे करना है, इंग्लिश के लिए आपको ऐसे करना है। हमें आधी गाली तो इसी पे पड़ गई कि आपने हिंदी को थम्स डाउन क्यों कर दिया। तो आई थिंक अब तो हिंदी बोलने पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है आपको। Okay, now I have some situations and you're going to react in your own element, okay? When men say women are not funny, Meethika, what's your reaction? तो हम उस लड़के से बोलेंगे कि सबसे बड़ा जोक तो तुम्हारी मम्मी ने ही मारा था तुम्हें, तो तुम तो मत ही बोलो। करिश्मा, जब लोग ब्रांड्स बोलते हैं आप बहुत पैसे चार्ज कर रहे हो, क्या जब ब्रांड्स बोलते हैं क्या आप बहुत पैसे चार्ज कर रहे हो? औकात है भाई। ओके सलोनी, when parents say कि जो करना है शादी के बाद करना, तो मैं तो शादी कर लूँगी। ओके, जब रिश्तेदार पूछे कितना कमा लेती हो? नहीं तो हम तो बस कहते हैं अरे आंटी खर्चा पानी निकल जाता है बस इतना, चाहे जितना अमीर हो जाओ बने गरीब रहो भाई, मेरी सलाह मानना। When people say शादी कब कर रही हो? क्या? When people say शादी कब कर रही हो? When people ask you that. Okay. बहुत ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए। ओह, काफी लोगों के दिल टूटे, इधर से आवाज आई मुझे। ओके, द लास्ट वन, व्हेन पीपल से इन्फ्लुएंसर कोई रियल जॉब नहीं है। हाँ नहीं है, मतलब ऐसे ये वो होता है ना, हमें बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाया गया था कि प्रोफेशन अलग होता है और ये कुछ ऐसे 2 टर्म्स थी कि प्रोफेशन वो होता है जिसे आप डिग्री लेकर हासिल करें, ऐसा करके कुछ। तो आई थिंक वो सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट हाँ, इफ़ यू आर अर्निंग देन इट्स अ जॉब। Okay, thank you so much guys for coming on Ideas of India and giving us time. Thanks a lot. Thank you for having us. Thank you. Maza aa gaya. What a refreshingly honest conversation with young Indians. Please remain with us on stage. I'd like to invite on stage Deepak Ranjan, GM Himalaya and Wellness, to please join us. I'd also like to invite Mr. Chakravarti, Business Head from Himalaya Wellness, and also Mr. Sarfaraz, General Manager, Himalaya Wellness. Kindly please make your way to the stage as we present some mementos to the lovely ladies who have been making us laugh online. Thank you. Please go ahead. It'll be lovely if you can all be together for a photo opportunity.
you very much. Karishma, Meethika, Saloni, and Naya, thank you guys. दोस्तों, what a wonderful session that was. और अब जिस हस्ती से हम मिलने वाले हैं, I personally have been really looking forward to this session because मुझे लगता है that it's just so difficult to encapsulate a personal and professional journey that has its roots in pre-partition India. It's a journey that took an individual to England as a chartered accountant and then brought him into our lives as a once-in-a-generation filmmaker. Shekhar Kapoor is known best for his brave, creative experimentation and an unyielding commitment to his artistic vision. चाहे आप मासूम की बात कर लीजिए, Bandit Queen की बात कर लीजिए, his work has always been ahead of its times, and it's always challenged the societal norms and the craft of filmmaking itself. As an entrepreneur again, he has been ahead of the curve. He actually invested in a platform that supports online creators who we just met back in 2012. एक बार फिर वो समय से काफी आगे थे. So who can be better to talk about what the future holds for creativity and culture than a man who transcends generations and he has seen it all. Please give your warmest reception to Shri Shekhar Kapoor. Please join us on stage, sir. Let's talk fearless and free. फिर गूंजे अपनी unity. सर उठा के, सोच घुमा के. We'll be the change we wanna see. Ideas of India. Yeah, ideas of India. Ideas of India. Ladies and gentlemen, good evening. I've known my guest for longer than either of us would care to remember, but what has always struck me about him is that yes, he's in the business of dreams. He's made blockbusters, he's made films like Mr. India, which have got everyone dreaming, but he is also himself essentially a dreamer. I don't know how many of you know this, but he had a really successful and prosperous career in London. His uncle, Devanand, sold him the dream of becoming a movie star. He gave it all up, came to India, became a star, acted in films, decided that what he really wanted to do was directing, followed that dream, made big hits, then decided perhaps he would do it abroad. He went abroad, made even bigger hits. He now works at his own pace. He does what he wants, but he never ever forgets that he's a dreamer. Is that fair? I'm not a filmmaker. You're not a filmmaker? I'm not when I was 24 as a chartered accountant, yeah, I realized that there was one word that I was going to drop for my life. And that was? Well, Delhi mein all the middle class people, he's doing very well for himself. So when they said he's doing very well for myself as a chartered accountant, I said, that's not what I want. So I dropped the word career. I've never ever followed a career, ever. I said, that's one word. I'm just going to go on an adventure of self-discovery. So how many people in this room have been on an adventure of self-discovery and give up everything else? Anybody? Oh, there's one hand. Come on, guys. One brave person. You see? So go on an adventure of self-discovery and, no, that word I can't use, everything else. Use it. Right? Okay. So, yeah, no, that's particularly that's what people say, but you haven't made a film for some time. What have you been doing? I said, I've been discovering myself. Yeah. True. But that's your career, no? You walked away from money, you walked away from security. It's been just an adventure, and you do what you want to when you want to. That's fair? You know, Meera, you won't remember, once we were sitting in London, I was going to buy this very expensive house, and I was going to borrow a lot of money. Yeah. So she looked at me carefully, because Meera has known me for years. And she said, if you borrow that kind of money, you take that kind of debt, you won't be a free man. Do you remember? He said, don't do it. And so I didn't do it. Right.
I would have been a very rich man. That house is worth about 200 times what it was. Meera, you made me poor, right? Okay. Yeah. You followed your own heart and your own dream, but you've always, because I think you have an international perspective and an Indian perspective, a filmmaker's perspective, and yet an outsider's perspective, you've always been, it seems to me, one of the few people who's been right about the direction in which the entertainment industry is going globally. I'm trying to remember which city it was. We were at an IFA Awards symposium, and I was moderating, and I said to you, what's going to happen? And you said the future of cinema is not Hollywood, it's not India, it's global cinema. A day will come, and I remember this quote exactly, when Spider-Man will swing from his web, come down, take off his mask, and it won't be the kind of Peter Parker you're used to. It'll probably be an Asian guy. And at that stage, the idea of a superhero who had an Asian origin seems so unlikely. It may not have happened with Spider-Man, but it's come to pass. The whole Marvel universe is full of people from all over. Black Panther, which has taken black superheroes who we never thought were possible, is the highest grosser of these superhero films. So tell us where you see the world going. I think the winds of change are coming, and they're coming harsher and stronger than we believe they are. I think even now, when we talk about Marvel movies, we talk about Black Panther, it's still a white man's point of view. Yeah. It's still a Western point of view because the white man has controlled us for so long. What we're going to happen in that context is that Asian films, African films, all of them will come from a different narrative. The narrative has to change. In this world, in many, many ways right now, the narrative is still Western. That's where the winds come from. When the narrative changes, the true change will happen in culture, right? Of course, we'll come to a global culture. That's what I said to you at that time, 20 years ago. That we'll still be making Spider-Man, but Spider-Man, when he takes his mask off, will be Chinese. He won't be white. Yeah. Right? And that's happening now. But where are we going now? I think we'll talk about that. I want somebody to challenge me. Technology, you see, storytelling is the same thing. Right? You tell a story, it'll never change. We're always telling stories. Somewhere the moralities of story change. Yeah. Meena Kumari showed her ankle and everybody said, hi, kya kar rahe ho? Everything, that changes. The sense of morality of what it is, that changes. But what changes constantly is technology. And technology is the way that we disseminate stories to the rest of the world. And that's becoming huge. But see, when you talk about technology, there are two senses in which you can use that word. You can use it in terms of the way in which you shoot, and you can use it in the way in which that content is distributing it. Yeah. Are you using it in both senses? Both sense. So just elaborate on that. Yeah, well, if you say the way we shoot, the digital has made films much cheaper. I can do my visual effects in camera. You know, when I was making Mr. India, we used to run the negative with little... we used to call the old Mitchell cameras, जो कभी use ही नहीं होते. Yeah. So we used to get them. Then my DOP would go back and then mask a bit of the frame. We used to mask the same piece of film 4 times. Really? And I used to have puppeteers coming with the whip that used to beat up Sri Devi. That was actually a puppeteer with a whip that went around like that. That's how we made Mr. India, you know? Yeah. Now I don't have to do anything of that. The digital has allowed me to do anything that I want on screen. And the digital has allowed me to do it while I'm filming. Yeah. So my latest film that I did, I actually had people, I could see what was going on constantly without having a green, I never had a green screen. Those of us that actually understand technology of filmmaking know what a green screen is. Yeah. So we don't, it's so much cheaper, but it's in the way that we're going. The metaverse is the way we're going. The metaverse for our business in India can be $1 trillion business if we get it right. How much? $1 trillion. $1 trillion? $1 trillion. You watch. How much is that in crores? I can't even think about Yeah, it's about so much in crores that we can buy the GDP of India, right? But it's something I said on the first time that I got on to FICCI, I said, Indian film business is worth 10 billion. सबने कहा पागल हो गया यार ये ठीक है, you're a filmmaker and people will really, ठीक है. Then I remember Mukesh Ambani calling me, how did you work that out? Yeah.
And I said, how it worked out. So the very next year, he was the keynote speaker. He said, it's 100 billion. I'm saying it's a trillion. It's a trillion because of the way we can disseminate and analyze. Analyze and break up our content. So it's not just film. Film is going to be a small part of it. It's the creation of content. You know, there is this K-pop group. The biggest pop group in the world is Blackpink, this Korean pop group. And they BTS. created avatars for the metaverse. So I was watching an interview with them. They said, look, I have to sleep, I have to eat, I have a private life. My avatar doesn't have a private life. They're there 24 hours, they can be performing, they can be answering questions. So there's a different world coming in which we have to catch the tsunami of. And that's worth content. I'm not just saying film, I'm saying content. The creation of content is going to be worth $1 trillion. I'm saying that, and it will be. Okay, so let's take the general way in which we understand cinema or entertainment. A director hires a crew or a producer does it. He shoots a film. That film is then edited. And then it's disseminated either in cinemas or on streaming or on television or in the old days on DVDs. You're saying that that model may continue, but it's going to go far beyond that? Say it again, sorry. You're saying that that model will continue, but the future will go far beyond that? Yeah. Explain I mean, that. you know, Mr. India, how many of you did not see Mr. India? One? No, just one? One? Okay. When everybody says to me that Mr. India was India's first superhero film, it wasn't. It was a kind of a superhero film, but the thing that keeps Mr. India being popular, it was a universe of characters. Yeah. People we forget. There was Daga, there was Teja, there was Mogambo, there was Hawaii, there were like 20 characters. There was Calendar. In fact, if you go to Bangalore, there's a restaurant called Calendar Khanalo. Really? Okay. You know, yeah. I don't know that. So it was a universe of characters. So what we have is what Marvel is doing is creating a universe of characters. Each character then becomes an avatar of its own. Each character develops a personality of its own. So we are heading in a different way where we take a certain story, like Mahabharat. Like what? Mahabharat. Yeah. Mahabharat is a universe of characters, right? Mahabharat in itself can be a huge business. If I was making Mahabharat today, or if I was making something like this today, I would open the world I create, I would open it up to anybody. You take this world, you create a world upon my world, but as long as you let others create a world upon your world. And then what you're doing is you're following nature, you're creating a rainforest. Out of that rainforest, it starts to grow on its own. Yeah. And just, you know, I was at a conference of IP and somebody asked me, what do you tell your lawyers these days? I said, in the future, can you get me IP for 15 minutes? That's all I need, 15 minutes. That's it? Not 75 years, 15 minutes. If I cannot disseminate my product in the metaverse in 15 minutes, then somebody else will take over. Okay. Okay. We're talking about the idea of a metaverse, of a family, of a universe, and we're talking about India. As far as I know, it's never been done in India. Has anyone taken like a character from, say, Mr. India or any other film and built another film around him? I don't think so. Too much echo. Yeah, I know, the audio is not great. I don't think anyone has built a universe around characters in India before, have they? No, it's easy to do. If you make Mahabharat, you got to... So let's take Mahabharat as an example. Assuming I came to you with an unlimited budget, and that's, I'm not going to be able to do it, but maybe Mukesh Ambani can do it. There are a lot of people who can do it. And we gave you the Mahabharat and said, create a universe around it. What would you do? I would just create a platform called Mahabharat. Yeah? Yeah, and I would tell individual stories. In streaming, in cinemas, what else? Streaming, cinema, multiverse, any new technology that comes. And I would allow people to create their own Mahabharat. You know, we can go back. There was no one Mahabharat. The Gutenberg press came in, and the moment you had to publish it, you had to create one Mahabharat. Usse pehle, Mahabharat was a spoken idea. Yeah. There was a million Mahabharats. Everybody would have their own interpretation of the Mahabharat. So now we have that opportunity in the metaverse, in the new technology, of opening Mahabharat out to people telling the Mahabharat in their own way. There was no one way. There were a million ways to tell Mahabharat.
till we had to compress it to telling a story in 1 book or 2 books or 3 books. Now it's open again. When you say that we can become a $100 billion industry, what do we have to do to get there? You know, the great thing about India is, A, free our minds. Yeah. Right? 2, what we have to do is we have the technology, we have the technologists, we have all of that here in India. My guess is we'll do it. We'll do it. We just have to free our minds. You That's think what we'll do it? creativity is about, is freeing your imagination. You've worked all over the world, so you're the right person to ask this question to. How does creativity in the Indian entertainment industry compare to the world? Compared to the rest of the world? Compare to the rest of the world? Well, I think we're very creative people. We are Really? a land, we are a land of great storytellers, and we tell stories all the time. Constantly, you pick up the newspaper and you think you're reading news. No, you're reading a story. You pick up the next paper, you know, everything is a story. We are amazing storytellers. But from a filmmaker's point of view, from the time that I say action and I say cut, I'm in the zone of a filmmaking. The politics of what goes on before you can get to action and the politics of what happens after you say cut is different all over the world. So it's politics and organization that's different. If you talk, I mean, look, we're all becoming very similar to each other. Yeah. But I used to say this, that making a film in the West is like going to the supermarket. It's Yeah. all organized. You pick up thing here and you pick up this here, pick up this here. This is my film. Making a film in India was like going to the Chor Bazaar. You never quite knew what you were getting, but there's an adventure in the chaos of Chor Bazaar. So when I went to the West, I missed that adventure. I missed the chaos of creativity, because ultimately it's out of chaos that creativity arises, Yeah. not out of structure. So sometimes I find the structure of working in the West too constricting, Yeah. boring. Right? There's a story, you can tell me if it's true or not. You did The Four Feathers, which I don't think anybody thought of as a commercial subject, though you had Heath Ledger. But from what I understand, you did it because you'd never shot a cavalry charge before. You thought it was an adventure, it was going to be a lot of fun. That's fair, that's true, right? There was another reason for me doing Four Feathers, because Four Feathers was one of the most colonial stories ever told. It was, yes. Four Feathers, the 2 versions of films that I saw were the most colonial films. They was irritated. They used to call the Arabs fuzzy wuzzies. Really? Yeah. Actually call them that, yeah? Yeah. So I thought, could I take their most colonial story and make it anti-colonial? Ah, okay. So that was it. Because it was based in history when the British troops went to save Gordon. Gordon was in Sudan. This is Gordon of Khartoum, who later became famous, yeah? And I thought, well, he wasn't supposed to be in Sudan. What was he doing? What were British troops doing in there? What were they doing? They were a colonial troops. So I just wanted to turn a very colonial film into an anti-colonial film. Which you did. But also, people, again, you can tell me if this is wrong, say that unlike most Miramax movies, you went in and started shooting even before the script was ready, but you were able to do it because you knew how to improvise, having worked in India. Is that true? Yeah. It is true. Yeah. But I can tell you something about Four Feathers. It was about a big battle, but it was a battle between me and the studio heads also. Yeah, I was going to say that. Yeah, and you one must of the have studio followed. heads is now a person of disrepute, so we won't go. I remember sitting with the studio heads and disagreeing with them. Yeah. And they said, Mr. Kapoor, if you go on like this, you'll never work in this town again. I just started to laugh. And they couldn't understand why I'm laughing. And I said, you know, guys, take care of your own destiny. Yeah. My destiny will take care of myself. So don't ever make those statements. And that was to Harvey Weinstein. Yeah, I was going to say that. So where is he now? You were dealing with the biggest bully in Hollywood. Yeah, I know. who bullied bigger actors, bigger directors, and you apparently stood up to him and told him to coin a phrase, to FO. Is that accurate? Yeah, that's true. I love my actors though. But so when I went from here to do Elizabeth, and we didn't know who to cast Elizabeth. So on one little thing I saw Kate Blanchett. And I said, yeah, she should be Elizabeth. So I went to my producers and said, she should be Elizabeth.
And my agent called me and said, Shekhar, every big actress in Hollywood wants to play Elizabeth. Yeah. And there's this girl called Kate Blanchett that nobody knows. And you know what? If you keep insisting on it, they'll fire you. I got a little scared. यार पहली फिल्म है, कभी फिल्म की नहीं. Yeah. हाँ अभी मैंने कहा I'll call you tomorrow. In the morning, you become who you are. Punjabi sher. Got up in the morning, picked up the phone and said, let them fire me. Really? Yeah. And this was like, the film ultimately became your big break. And you were ready to walk out. Yeah, and I refused to take any other actress. I said, I won't do the film, you have to take this girl. And they just bought my confidence. And I used to wonder how she got cast, because generally when you cast someone as Elizabeth, you go with a Shakespearean actress, somebody very English looking, somebody very British looking. And here you are finding an Australian who nobody's heard of. No, that's not true. Nobody heard of in the film business. She was a big theatre actor in Australia. In Australia, yeah. But you were casting the film not in Australia. Yeah. And her face is not like a classical Elizabeth face. It's frankly slightly pixie-like. So it was an odd decision. And yet, such is the power of your film that now when we think of Elizabeth, we think of Kate Blanchett. I've always been good at casting actors. I've actually given a lot. I can think of six or seven major actors today who got their first break with me. Tell me. Eddie Redmayne. I didn't know that. What was he in? Oh, all these fantastic beasts. He won 3 Oscars. Yeah, I know who he is. I mean, which of your movies was he with? He was a small bit role of an assassin in Golden Age. And I still remember talking to Eddie Redmayne. He said, Shekhar, I'm not a good enough actor. The producer's telling me, isko nikal do, ye acha actor hai. Maine kaha, bhaiya, bahut acha actor hai. I had a big fight casting Heath Ledger in Four Feathers, because he wasn't that well known at that time. And he became, I mean, A Knight's Tale, I think, was released when you were still filming, and he became a big star while you were filming. Yeah, but I filmed before that our Bond, Daniel Craig. Daniel Craig was in Elizabeth. I didn't know that. Yeah, I can't Daniel remember. Craig was in Elizabeth. He played the assassin who comes to shoot the Queen. He was there in Elizabeth. Yeah. Really? The girl that plays Mrs. Presley in Elvis, plays his wife, right, was in my series Will. That was her first break. Wow. So it's like there's an adventure in casting people that nobody knows and exploring them and giving them a chance. But you come from India, your background, at least when you did Elizabeth, was mainly Hindi cinema. What gives you the confidence to go in there and tell these guys who've been doing this all their lives, this is the right person? I know you've never heard of such and such person, but I think he or she is right. Where does that confidence come from? Meera Naya. She did it before I did. So she was there, right? Yeah. No, it's just, if you believe in something, you might as well believe in something. That's what I say. If I had believed in having a career, I may not have done it. Yeah. I've never, ever been scared of losing. I've never been scared of losing. ठीक है. But I've been afraid of doing somebody else's bidding and losing. At least let me lose in something doing something I believe in. Then I don't mind losing. But to lose because somebody else is telling you what to do, and then you do that, and then you lose, you'll never forgive yourself. True. How spontaneous are you as a filmmaker? I've mentioned the Four Feathers experience, but people who shot with you say that when you go in, you have an idea, and the script is there, of what the scene should be, but you shoot it many different times in many different ways, and they're not sure which version will end up in the final cut. Is that accurate? I've never done that. Here's what I do. I am like anything else, I plan like I'm going to war, as if the bullet can come from any time, like a general going to war. And then when I get to the set, the moment must give me the first idea. The moment has to play itself, because the moment makes the film. So I find any which way to put myself into chaos. I panic. I tell myself, today, Shekhar, today they'll all find out that you were a con man, right? So I keep telling myself all of these things so that when I get to do my first shot,
I have absolutely no idea. Despite days of planning, I have absolutely no idea what to do. Because panic to me is the fundamental driver of creativity often. So when you panic, you don't know anything. All you're doing is getting your ego out of the way. Yeah. You're getting your mind out of the way. And then things start to emerge. So Kate and I used to have this joke. And I say, okay, Kate, so what do you think you want to do with this shot? She says, Shekhar, you're doing it again. You're panicking yourself. I say, yeah, I don't like, because we all believe that structure works. Yeah. There is no structure. Structure is our greatest illusion. Control is our greatest illusion. There's only chaos. Everything that arises that actually makes sense and becomes huge is chaos. Creativity arises out of chaos. So for all the planning, I have to throw myself constantly into, it's what you and I are doing right now. Yeah. You ask me what are we going to talk about? Let's throw it into chaos. Yeah. Something will come out of that. Creativity, life comes out of chaos and ends in chaos, right? How much of the chaos is really chaos? You said that you plan them in some ways before you go on. It's other people to whom you say there is nothing ready. So is there a calculated element to the chaos? Yeah, it has to be. You have to create it because you are spending $500,000 of somebody else's money every hour. In a big film, that's what you're doing. True. So you have to create the illusion of control. Yeah. So when people say, what are you doing? You have to make sure that people think you know what you're doing. And you have to make sure that you don't know what you're doing. Right? So no wonder all of us die So it's a of sort of schizophrenic double people. bluff. Yeah. Yeah, because if I know, did Picasso know the painting that he was going to paint? Yeah. Right? Now, if he knew the painting that he was going to paint, why would he paint? You only paint because you don't know. Right? You don't know. That first, each brush stroke is a moment of self-discovery. So why do art? Why leave chartered accountancy when I used to do it, if there's no moment of discovery in every moment that you are creating? That's what it's all about. Okay, interesting. It's an interesting process. I don't know any other director who works with that process. So that's pretty much your own style, huh? I don't know, but I do. And it works. Yeah. Okay, couple of questions that I didn't think you wanted to talk about. I'm going to ask them anyway. The first is, you're the first person I've interviewed, and you say to them, you've had this film released, and everybody's talking about it. Let's mention the film. And you say, I don't want to talk about it. No, So well, why don't you want to talk about your new movie? Well, it's doing really well, but nobody here has seen it, right? Yeah, but I think they're curious about it. We're now, like, as you said, in a global information age, so everyone knows Jemima Khan is involved. Everyone knows the film has created a great sensation. It's all over Twitter. My friend Satnam Sanghera, the British journalist, tweeted, I cried after seeing the film. So we're not in such a backwater in India. Right. We do see this stuff. No. What's love got to do with it? The reason I wanted to do it, because the main character is a girl addicted to Tinder. Yeah. And I was always wondering, because all of us, all our lives, we are looking to find love. It's this great mystery that we think exists. It may not, but intimacy, the need for intimacy exists. From the time that we were born and we put on a mother's chest, that's an intimate moment. And till the way we die, we want to hold somebody's hand. That's an intimate moment. It's a lifelong search for intimacy, and we just confuse ourselves. So it was... Hang on, I'm going to stop. You're saying that when we say that everyone is searching for love, it's not necessarily love they're searching for, it's intimacy. It's intimacy, yeah, because we have a fundamental desire to share. The fundamental desire of all human beings is to be intimate with something, or somebody, or with your environment. And so I was very keen to explore the story of a girl that is looking for intimacy in constant casual sex. Can you find intimacy? Can you find in love? The main character is that, as reflected against her best friend who's getting an arranged marriage. So for me, that arranged marriage became a reflection of the modern world. Yeah. Because I wouldn't dare be on Tinder. सब पूछेंगे मुझसे शेखर कपूर Tinder पर क्या कर रहा है? So I wouldn't dare be on Tinder, but that's why I got attracted to that script. And that's become What's Love Got to Do with it. And presumably you're as happy with the film as it's turned out the way everyone else is? Are you as happy with the way the film has turned out as everybody else seems to be? I'm never happy with any film that I've ever done. I thought you would say that. Turned out. Ever. You can't be.
And it's only when I convince myself that I can only watch my film again when I've convinced myself that I didn't make it. Yeah. It's not my fault. Then I can see it dispassionately. Otherwise, you're still looking at every film, every cut, and saying, "Oh, this was wrong. That's not how I should have done it." That's the process of evolution. The process of creativity doesn't stop with the end of the film. Yeah. You know? Well, even with Van Gogh, when he painted the sunflowers, I'm told they had to snatch the painting away from him because he wanted to start off all over again. So that's the nature. Your nature as a creative person is, your creativity cannot, there's no end to the creativity. There's no end point. And the second question, which I didn't tell you I was going to ask, but which everybody wants to know the answer to, is are you going to make a Hindi film? Am I going to make a Hindi film? Yeah. Do you have a Hindi film? Is there a Hindi film in your future? Are there any producers here? See, not one hand went up saying, "Shekhar, come make a Hindi film." How many of you want me to make a Hindi film? Well, there you are. Eh? Really? Okay, then I'm going to make a Hindi film. I promise. I promise it. Yeah, absolutely. That's something to look forward to. Ladies and gentlemen, Shekhar Kapoor. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kapoor. Just the sheer range of your filmmaking is unmatched, unparalleled. And I think if anybody can pull off Mr. India in the metaverse, it's going to be Shekhar Kapoor. I'd like to invite on stage Rajesh Agrahari, founder of Rajesh Masale, to kindly hand over a memento to our honorable guest. We'll have help to carry it for you. A massive round of applause for a once-in-a-generation filmmaker. Thank you so much for your time today. Thank you very much. Thank you, Veer sir, once again. Thank you. दोस्तों, अब फिल्म मेकिंग से हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की तरफ. हम लोग मुंबई में हैं. It's the financial nerve center of the country. In fact, the state of Maharashtra is the critical industrial and commercial center, as you all are very well aware. But अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो it has made headlines for a political tussle that's going to go down in history. And in fact, that political friction is very much continuing. In the face of a general election as well as BMC polls, this is a very important year for the state. So it's only right that we ask the question how the government is preparing. Joining us to talk through this topic is the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde. Kindly welcome the Honorable Minister with a loud round of applause. बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत है श्री एकनाथ शिंदे जी. Namaskar sir, kindly join us on stage. Ladies and gentlemen, we'd like to invite Mr. Shinde on stage. Namaskar sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Kindly grace the stage for us. और रूबिका लियाकत से दरख्वास्त है to join us to chair this session. Rubika, please take over. Namaskar, sir. अगर आप चाहें तो आप कुछ दिन बोलना चाहें. आप सबको नमस्कार. और इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं. जिस धरा पर, जिस नगरी में, जिस सिटी में मुख्यमंत्री जी हम बैठे हैं, यहाँ पर बॉलीवुड का बादशाह है, यहाँ पर बिजनेस के बादशाह हैं. और अभी जो राजनीतिक उठापटक हुई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आपको राजनीतिक रणनीति का बादशाह भी कहा जा रहा है, पॉलिटिकल बादशाह.
मतलब अब 3 अलग अलग बादशाह हर कैटेगरी के यहाँ? नहीं, मैं बादशाह वगैरह नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे बादशाह वगैरह नहीं बनना है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कल भी मेरा काम ऐसे रहेगा। सुना है कि मुख्यमंत्री निवास बंद ही नहीं होता है, उसके दरवाजे 5-5 सुबह 6-6 बजे तक खुले ही रहते हैं। दरवाजे बंद करूँगा तो मुझे बंद कर देंगे लोग। इसलिए देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद या पहले भी मेरी काम करने का जो तरीका था वो मुझे मैंने वैसे रखा है, क्योंकि कल तक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मुझे लोग जानते थे, मुझे मिलते थे, मैं उनका काम करता था, उनकी सुनवाई करता था और कुछ हो सकता है उतना मैं उनके लिए कोशिश भी करता था। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे काम के तरीके में बदलाव करूं तो लोग बोलेंगे अरे कल तक तो अच्छा था, ये अभी आज बदल गया है क्या। तो इसलिए जो है वैसे ही शुरू रखा है और काफ़ी लोग आते हैं। देखिए, हर एक आते हैं, उनका 100% तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन जो आते हैं उनकी सुनवाई तो कर सकते हैं हम, उनको सुनने का काम करता हूँ मैं, और जो हो सकता है उतना रिजल्ट मेरा देने का तरीका है वो तुरंत आओ, देखता हूँ, करता हूँ, पढ़ता हूँ, वैसा नहीं करता मैं। हो सकता है सुनवाई कर देते हैं आप? हाँ, बस वहीं पर फैसला तुरंत जितना हो सकता है उतना करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके मन में जितने भी सवाल हैं वो सब मैं पूछूंगी, लेकिन चूंकि मंच है आइडियाज़ ऑफ इंडिया का, तो मुख्यमंत्री जी, मैं एक सूबे का मुखिया होने के नाते एकनाथ शिंदे का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए? महाराष्ट्र द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र हमारे देश का ग्रोथ इंजन है। और आप जानते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ा हुआ है। और ये महाराष्ट्र की प्रगति जितनी तेज़ी से होगी उतनी देश की भी प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी सर, उनका जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसमें हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। इसलिए $1 ट्रिलियन जो है वो अचीव करना है, उस टारगेट को तो काम करना पड़ेगा और वही हम कर रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में जो रुके पड़े थे प्रोजेक्ट, उसे हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। जैसे मुंबई का मेट्रो का काम हो, आर्य कॉलोनी का हो। देखिए, इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी आए थे, समृद्धि हाईवे जिसका नाम हमने बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग रखा है, उसका शुभारंभ हो गया शिरडी तक। मुंबई में मेट्रो 2A, मेट्रो 7A का शुभारंभ हुआ। और ऐसे कई प्रोग्राम जो है, वंदे भारत की 2 ट्रेनें यहाँ से शुरू हुई, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी आए थे। तो जैसे राज्य की प्रगति हो रही है, जितनी भी प्रगति करनी है, जो रुके पड़े जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, उसमें से जितने भी स्पीड ब्रेकर थे, हर्डल थे, सब हम लोग ने दूर करने का काम किया है। ईगो रख के काम नहीं होता है। हम राज्य के हित की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक सहयोग वाली भूमिका हमें लेनी पड़ती है और केंद्र सरकार के साथ अच्छी वेवलाइन है हमारी। और प्रधानमंत्री जी को हम बहुत ही हमारे राज्य के लिए सब सहयोग करो ऐसी विनती करते हैं हम लोग, और वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ये इसी सपोर्ट को लेकर सवाल है कि पिछली जो सरकार थी वो ये कह रही है कि कहा करती थी कि भाई विकास के काम में केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, और जैसे ही एकनाथ शिंदे आए तो दे दनादन प्रोजेक्ट
38,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको केंद्र से मिल गए, 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपने कुछ नाम गिनाए और मैं भी देख रही थी, मुंबई सिंदुर्ग, मुंबई ट्रांस हार्बरिंग, नागपुर गोवा कॉरिडोर, पुणे नासिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जब ये मेट्रो शुरू हो जाएगी तो 50-60 लाख गाड़ियाँ तो सड़क से यूं ही गायब हो जाएगी। तो ये ऐसी कौन सी जादू की झड़ी कि केंद्र से फौरन आपके पास इतना पैसा आने लगा? जादू वादू नहीं है। देखिए, हम लोग को, हम जैसे बर्ताव करते, बिहेव करते सामने वाले के साथ, केंद्र सरकार के साथ, देखो राज्य का मुखिया होने की वजह से हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। केंद्र के साथ आपके कैसे संबंध है, अपने ताल्लुकात कैसे है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड किया होता है सब कुछ। अहंकार को हमें त्याग करना चाहिए, ईगो को हमें छोड़ना चाहिए, और हम केंद्र सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करना चाहिए। उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो बड़ी ताकत है, और महाराष्ट्र के ये विकास के लिए हमें क्या प्रॉब्लम है उनको रिक्वेस्ट करने, विनती करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। जो हम कर रहे हैं, पिछले सरकार में मैं भी था, लेकिन थोड़ा सा जो ईगो वाली प्रॉब्लम थी तो वही मार दिया हम लोग को, और वो उसके वजह से पैसे नहीं आ रहे थे। क्योंकि हम मांगेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, तब तो देंगे। क्या घर में लाके देंगे? हमारे घर में बैठ के नहीं होता कुछ भी, फील्ड पे उतरना पड़ता है। नहीं, पर घर के दरवाजे बंद कर ले मुख्यमंत्री ऑनलाइन जी और तो कैसे फेसबुक पे नहीं चलता काम। सुना है इस रिश्ते का, इस मजबूती का केंद्र और आपके बीच में फायदा दावोस तक पहुंच गया। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि दावोस में जब मैं गया था तो वहाँ पर लोगों के मन में था कि क्या है अभी, और सरकार को हमारे 6-7 महीने ही हुए थे, और लेकिन हमारे स्टेट में, राज्य में पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत है। ह्यूज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, स्किल मैन पावर है, ज़मीन है, और ये सब होने के बावजूद लोग नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं अभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो कई लोगों ने मुझे पूछा, कई देशों के प्रधानमंत्री मुझे मिले, प्रमुख मिले, मंत्री जी मिले। उन्होंने कहा कैसे केंद्र सरकार, मोदी जी, आपका कैसा राज्य के साथ ताल्लुकात है? मैं बोला बहुत अच्छा है, और हम लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, सब कुछ बातों के लिए कर रहे हैं। तो बोले नहीं, फिर उन्होंने 1,37,000 करोड़ के MOU साइन हो गए वहाँ पर, और अभी उसकी शुरुआत भी हो गई, एग्जीक्यूशन की शुरुआत हुई। सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए, आंकड़े गिनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ उनका जो बहुत ही सीरियस थे वो, क्योंकि उनको हमने कहा कि ये हमारी सरकार जो है आपको सहूलियत देगी, वहाँ पर जो बेनिफिट है वो देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, आपके इंडस्ट्री को रेड कारपेट देगी, कैपिटल सब्सिडी देगी, GST में वो आपको फ़ायदा देगी। क्या चाहिए आपको, आ जाओ। तो देखो, अगर एक मुख्यमंत्री अगर किसी इंडस्ट्री को बोलता है कि आप आ जाओ, हम सपोर्ट करेंगे, तो उनको भरोसा हो जाता है। और मुझे एक फ़क्र है, और मुझे बहुत ही खुशी भी है, क्योंकि ये 6-7 महीने गवर्नमेंट के हुए हमारे, लेकिन इसके बावजूद कई देश के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपोर्ट है हमें। तो निश्चित रूप से आगे देखेंगे आप लोग कि बड़े पैमाने पे यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पर पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लाखों लोगों को काम मिलेगा, और क्या चाहिए। पर महाराष्ट्र और मुंबई के लिए एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी प्राथमिकता क्या है? आप यहाँ बैठे मुंबईकरों को और महाराष्ट्र की जनता को यहाँ से क्या भरोसा देंगे? देखिए, कोई भी राज्य हो, देश हो, उसकी प्रगति कब होती है? क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, और ये सब जब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जो अभी हम लोग समृद्धि हाईवे जो नागपुर से मुंबई 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे लगते थे, आज शिरडी तक 4 घंटे में लोग आते हैं। शिरडी तक अगले साल में मुंबई तक पहुंच जाएगा वो। मतलब जहाँ 12-16 घंटे की जगह पे अगर आप 6-7 घंटे में अगर पहुँचते हैं,
अब एक किसान वहाँ से उसका जो भी उगाया हुआ जो अनाज है या जो भी है, वो आज सुबह गाड़ी निकलेगी तो 3 दिन के बाद मुंबई पहुँचता था, अभी वो सुबह निकलेगा तो शाम को पहुँच जाएगा। और सिर्फ वो समृद्धि हाईवे सिर्फ हाईवे नहीं है, वहाँ पर हम लोग वो ग्रीन कॉरिडोर है, 30 लाख पेड़ वहाँ लगा रहे, ट्री प्लांट कर रहे हैं वहाँ पर हम, 250 से 400 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे। वहाँ टाउनशिप होगी, वहाँ लॉजिस्टिक पार्क होंगे, वहाँ इंडस्ट्री आएगी, पूरी तरह वहाँ डेवलप हो जाएगा। सिर्फ हाईवे नहीं है, और 20 जगह पे हम लोग नोड डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या चाहिए? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे MTHL का जो हाईवे देखा अभी, यहाँ शिवड़ी से लेके रायगढ़ तक जाता है, ये सीलिंग सिंगल लॉन्गेस्ट देश का सबसे बड़ा 22 किलोमीटर का है, ये सी ब्रिज है। वहाँ से अगर हम अभी निकले तो रायगढ़ पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि उसको हम लोग वर्ली को कनेक्ट कर रहे, कौशल को कनेक्ट कर रहे। ये नरीमन पॉइंट से निकला हुआ हमारा जो भी नागरिक है, वो जहाँ 1.5-2 घंटे लगते हैं, सिर्फ 20 मिनट में पहुँच जाएगा। यही तो जादू है, 20 मिनट में, और 1 साल भर में ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। अभी कुछ दिन पहले मैं नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू ले रही थी। अभी आप शिवसेना के गडकरी लग रहे हैं मुझे। गडकरी साहब तो हमारे ही है, क्योंकि आपको बताऊंगा, आपने नाम लिया तो अभी मेरी मुलाकात भी हुई। जैसे मुंबई पुणे पहले देश का सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल रोड हुआ, पहली बार। जब हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, अरे भैया ये 7-8 घंटे पुणे को जाने को लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, अभी इसको कुछ करो। एक्सेस कंट्रोल रोड बनने के बाद अभी 2.5 से 3 घंटे में पुणे पहुंच जाता है। पुणे से आदमी यहाँ आता है, डेली अप डाउन करने लग गया। पुणे में हिंजवड़ी में IT सेक्टर डेवलप हो गया, इंडस्ट्री हो गई, सर्विस इंडस्ट्री आई, रियल इस्टेट बूम हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ये एक हाईवे क्या कर सकता है, इसका उदाहरण जो है ये मुंबई पुणे। अभी उसमें मैं मिसिंग लिंक कर रहा हूँ, जहाँ घाट सेक्शन पूरा अवॉइड हो जाएगा। दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल हम लोग कर रहे हैं, अभी 1 साल में वो खत्म हो जाएगा। मुंबई पुणे आधे घंटे पहले पहुँच जाओगे। ये हाईवे पर 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाना, समृद्धि हाईवे, आपके मंत्री रहते वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मुख्यमंत्री जी। हाँ। ये हाईवे जितना जल्दी बना उससे तेज तो आपका पॉलिटिकल सफर रहा। अभी वो 150 के स्पीड से चल रहे हो। मैं खुद ड्राइव भी किया है, और मैं बताऊंगा कि मेरे समय मैं जब भी MSRDC मिनिस्टर था, और तभी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भैया ये नागपुर मुंबई को हमें करीब लाना है। बोले चलो लाते हैं हम, और मुझे जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी। बहुत विरोध हो गया, बोले काफ़ी लोगों ने विरोध किया, करवाया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं फील्ड में उतर गया और काम शुरू हो गया। मुझे खुशी है कि मैं MSRDC मिनिस्टर था, अभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उसका शुभारंभ हो गया, मोदी जी आए थे। तो ये 150 की स्पीड में चलने वाला हाईवे है। वैसे तेज रफ्तार से हमारी सरकार भी। और आपका पॉलिटिकल सफर किस रफ्तार से चल रहा है? ये 150 तो 250 आपका। देखिए, जैसा जैसा समय आता है वैसी गाड़ी फास्ट भगानी पड़ती है। कभी कभी कुछ है तो स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड कम गाड़ी का करना पड़ता है। हाईवे मिल जाए तो उसको भगा जोर से। तो अभी आप हाईवे पर हैं? हाईवे पे अभी हम लोग 5000 किलोमीटर के हाईवे बना रहे राज्य में। एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो वसई विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, मुंबई गोवा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड है, नागपुर से गोवा ग्रीनफील्ड रोड कर रहे हैं, पुणे रिंग रोड ग्रीनफील्ड कर रहे हैं। ऐसे 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल रोड हम राज्य में कर रहे हैं, ताकि ऐसे बहुत समय लगता है जैसे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे, ऐसे नहीं, जाओ सीधे फास्ट बिल्कुल, और समय पे पहुंच जाओ, समय की बचत होगी। नहीं मुख्यमंत्री जी, हाईवे का एक्सेस कंट्रोल तो समझ में आता है, आपने तो पार्टी का भी एक्सेस कंट्रोल ले लिया है। देखिए क्या है, ऐसा कोई कंट्रोल वगैरह लेता नहीं, मैं काम करते रहता हूँ। और डेमोक्रेसी में, लोकशाही में मेजॉरिटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, और मेजॉरिटी का सरकार बन गया। चुनाव आयोग ने फैसला दिया, उसका मैं स्वागत किया है। देखिए कैसा है,
इसमें ये सब चुनाव आयोग हो, न्याय व्यवस्था हो, ये उनका एक अलग अस्तित्व है, उनके अधिकार है। जब हमारे पक्ष में अगर फैसला होता है तो वो न्याय व्यवस्था अच्छी है, वो चुनाव आयोग अच्छा है। हमारे खिलाफ अगर फैसला होता है तो बुरे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वैसे हम लोग नहीं कहते, जो भी है वो जो फैसला देते हैं वो हम स्वीकृत करते। लेकिन अभी तो क्या क्या हो रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जिस मंच पर बैठे हैं, और आप ये जानते हैं कि सिर्फ मुंबई वासी ही नहीं, देश की एक एक जनता जो है वो जो कुछ इस वक्त मुंबई में हुआ है और पार्टी को लेकर हुआ है उसके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से उन सवालों के जवाब देंगे और आप कतराते भी नहीं हैं। मैंने आपके बहुत से इंटरव्यू देखे हैं और हिंदी में भी बहुत शानदार आप वार्तालाप कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप पर आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे कि आपने उनकी विरासत छीन ली, आपने उनके पिता की मेहनत छीन ली, उनके लोग छीन लिए। आप पर चोरी का, गद्दारी का, दगाबाजी का, धोखेबाजी का, आप शब्द समझ रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे वो जो कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत तुम छीन गए? देखिए, ये शिवसेना पार्टी जो है वो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई और उसमें मेरे जैसे कई हजारों लाखों कार्यकर्ता जो है, मेरे से काफ़ी सीनियर लोग भी मेरे साथ हैं अभी, गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम, बड़े बड़े लोग हैं जो सीनियर है, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। आज 13 MPs, 13 सांसद, आज शिवसेना पार्टी के 40 + 10 MLA, 50 MLA, लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता लोग, हजारों पार्षद, कारपोरेटर, कितने लोग हैं, क्यों आए मेरे साथ? ये सोचने वाली बात है। देखिए, आरोप लगाना तो सीधी बात है, छोटी बात है, कोई गद्दार है, चोर है, ये है, बोलने को तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा नहीं किया है, उनके संपत्ति पे दावा नहीं किया है। जो बाला साहब के विचार थे वो विचार को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया। जो हमारे बाला साहब हमारे दैवत थे, हम उन्हें बहुत ही पूज्य मानते थे, हम लोग उनके साथ काम किया हुआ है। अभी अगर हमारी पार्टी के नेता प्रमुख हमारी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर रहे, बाला साहब के विचार को बेच डाल रहे, हमारे सब विचार जो है उसको तोड़ मरोड़ डाल रहे, जो 2019 को जो शिवसेना बीजेपी के लोगों ने वोट दिया, यहाँ पर एक तरफ बाला साहब का फोटो लगाया, दूसरी तरफ मोदी जी का फोटो लगाया, हम वोट मांगे लोगों के पास, लोगों ने भी भर भर के वोट दिए, शिवसेना बीजेपी को मैंडेट दिया और ताकि पूरी मेजॉरिटी दे दी दोनों पार्टी को, शिवसेना बीजेपी को। तो सरकार किसके साथ बनना चाहिए था? जो हमारा अलायंस पार्टनर है उसके साथ बनना चाहिए था। लोगों की भावना वही थी कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन स्वार्थी भावना से, कुर्सी की लालच से सरकार जो पार्टी कांग्रेस एनसीपी, मैं टीका टिप्पणी, आपने पूछा सवाल इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा दूर रखने का बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको रखा था उनके साथ सरकार बनाए। क्यों? सिर्फ कुर्सी के मुंह में, कुर्सी की लालच में। अच्छा, बना दिया, लेकिन उसके बाद वो दोनों पार्टी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जिस पार्टी का है उसका, उस पार्टी का हर चुनाव में 5वें नंबर पे हम जा रहे हैं। जो हमारे साथ आए, जो पार्टी खत्म होने जा रही थी, उनको संजीवनी दे दी और वो 1 नंबर पे जा रही है। तो कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मैंने बार बार 5 बार कोशिश की, मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं था, मैं बोला आप ही बनो, लेकिन जो हम 2019 को आपने गलती की हुई है, अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो जो गद्दार कहते हैं, तो 2019 को उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने पार्टी के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात किया है, अपने पार्टी अलायंस के साथ विश्वासघात किया है। जिन लोगों ने वोट दिया शिवसेना बीजेपी कहकर, उनके साथ विश्वासघात किया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन आज तक मैं बोला नहीं। आरोप लगाने से पहले 1 उंगली उधर तो 3 उंगली अपनी तरफ है। लोग जानते हैं गलत किया है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहते थे अरे शिवसेना पार्टी का नाम मिल गया आपको, धनुष बाण मिला, आप क्या करोगे, उनकी प्रॉपर्टी लोगे, उनकी संपत्ति लोग।
बिल्कुल हम लोगों ने कहा हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए। हम कोई दावा किया नहीं, ना करेंगे। उनकी प्रॉपर्टी उनके पास, हमारे पास तो बाला साहब के विचार जो है वही हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाह रही हूं। एकनाथ शिंदे ने कभी किसी का लिया नहीं है। एकनाथ शिंदे ने अभी तक देते ही आया हूं मैं। ये देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो खाता है उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, हमारे क्या करने का है हमको, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमें बाला साहब ठाकरे जी के विचार ही काफ़ी है और उनकी विचारधारा पे हम जा रहे हैं। उनकी विचारधारा क्या थी? जैसे अडवाणी जी, अटल बिहारी जी, ये सब जुने सब जो लोग थे, मोदी जी, ये इनके मतलब देखिए सीधी बात है कि जो लोग चाहते थे ये भाजपा शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, 2019 को नहीं बनी, उसे हमने जो गलती की थी उसको सुधारने का काम किया है। जो धनुष्बाण और शिवसेना नाम जिनके पास गिरवी रखा था उनको छुड़ाने का काम हमने किया है उनकी तरफ से। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, आपको खबर भी मिली होगी, वो मुलाकात करने के लिए गए थे उद्धव ठाकरे और आदित्य खबर ठाकरे तो मुझे से। रखनी पड़ती है सबकी, ऐसे कैसे खबर? नहीं बिल्कुल, ये मुझे पूरी अरे की जानकारी। खबर, मुख्यमंत्री तो खबर तो रखता हूँ, कहीं पे हो तो सबकी खबर रखता हूँ मैं बोलता कम हूँ लेकिन काम ज्यादा करता हूँ। खबर रखने तक तो ठीक है सर, खबर लेना मत शुरू कीजिएगा। लेकिन वो मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। यहीं पर मेरे सहयोगी दिबांग ने उनसे सवाल पूछा, यही पार्टी सिंबल को लेकर, पदाधिकारी जो आपके साथ आ गए हैं, नाम जो आपके साथ आ गया है। कोट शुरू कर रही हूँ। उन्होंने कहा उनके पिता शेर थे, यानी उद्धव ठाकरे, उनके पिता शेर थे, शेर का बेटा है वो, उसका सारा सामान चोरी कर लिया इन्होंने। पार्टी चोरी कर ली, सिंबल चोरी कर लिया, झंडा चोरी कर लिया, पर चोर तो चोर होता है, शेर थोड़ी हो सकता है, शेर तो शेर का बेटा ही बनेगा। ये शब्दशः मैंने पढ़ा। अभी केजरीवाल अभी उनको बराबर से जानते नहीं, उनको बराबर से जानते नहीं वो। मैं और महाराष्ट्र के कई लोग उनको जानते हैं। क्या है देखो, सिर्फ इनोसेंट बनकर नहीं चलता है। अभी एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसा भी कुछ गाना है ना, मैं सुना है आप? हाँ हाँ। तो कई लोगों का, गडकरी साहब देखो आ गए। सर आप सुन रहे थे या नहीं? ये हूबहू आपकी तरह साउंड कर रहे थे। हाईवे पर हाईवे, हाईवे पर हाईवे। आपका जिक्र उन्होंने निकाला। मैं बोला महाराष्ट्र में सबसे पहला एक्सेस कंट्रोल रोड गडकरी साहब ने बनाया और बाला साहब ठाकरे जी की संकल्पना थी भाई ये बनाओ, तो उन्होंने बना दिया। फिर मैं, उनका जो डिपार्टमेंट था MSRDC, वो उसी डिपार्टमेंट से के माध्यम से उन्होंने पुणे मुंबई बनाया और 55 फ्लाईओवर बनाए थे इधर। तब लोग कहते थे अरे पीस का क्या ज़रूरत है, लेकिन वो भी अभी कम पड़ रहे हैं। अभी वो MSRDC का डिपार्टमेंट मेरे पास है तो उसके माध्यम से हम लोग समृद्धि हाईवे बनाए। तो मैं उस हाईवे से आपको वापस एग्जिट करवा रही हूँ और वो पॉलिटिकल हाईवे पर ला रही हूँ। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वर्ली आकर चुनाव लड़ें, आप जाएंगे? वर्ली से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कौन क्या सवाल पूछता है, सभी सवाल को जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, पहली बात। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, सब लोगों ने, आपको जब हम गुवाहाटी में थे, वर्ली तो आना ही है, मुंबई में तो आना ही है, कहाँ जाओगे आप? मैं वर्ली भी आ गया, मुंबई भी आया, सब जगह आया, सरकार भी गठन कर दिया, वो सब कर दिया। मैं बोलता कम, करता जास्ती हूँ। तो अब आप क्या करने वाले हैं 2024 में? देखिए आप करते बहुत ज़्यादा है, ये बात तो सच है। एक्स CM को आपने डिप्टी CM बना दिया। देखिए आपको मैं बताऊंगा, इस सरकार में मोदी जी का, अमित भाई का और देवेंद्र जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा हमारे गडकरी साहब का भी शुभेच्छा आशीर्वाद था, लेकिन पार्टी का आदेश, उसका पालन करना, ये अनुशासन जो है, ये देवेंद्र जी ने जो दिखाया है, एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री मुझे बनने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब पार्टी कहती है
आप डिप्टी सीएम बनो तो ये आदेश का पालन करना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। नहीं तो सर, और बहुत बड़ा दिल उन्होंने बताया, दिखाया। हाँ। और आज हम लोग, वो जब मुख्यमंत्री थे तब तो सब विपक्ष को भारी पड़ रहे थे, अभी तो 2-2 जन है हम लोग, डबल इंजन है। डबल इंजन है। तो ये हुआ कैसे? ये जो आपने सब किया, सरकार बना दी, जेम्स बॉन्ड बन के आप रात को मुलाकात करने जाते थे हुड वुड डाल के ये सब बात ये आप में ये सब बताने वाली बात नहीं रहती है। तो 2024 में भी आप ही सीएम होने रहने वाले हैं? देखिए, ये सब जनता के हाथ में होता है, सब जनता तय करती है किसको बिठाना, किसको उतारना। हम लोग काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सब सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर का विकास हम लोग करना चाहते हैं, हम करेंगे। महाराष्ट्र ये देश में बहुत नंबर 1 वाला स्टेट है। हमारा जीडीपी 15% है, हमारे एक्सपोर्ट 25% है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 17%, 20% है। ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान देश के प्रगति में है। तो हम लोग काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी हमारे साथ में है ना? नहीं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी मतलब पोस्टर पर आप हैं, हाँ, पर स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, हाँ, सिनेमेटोग्राफर सब वहाँ हेडक्वार्टर में। भाई देखो, वो लोग तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी कितना 15,000 करोड़ दिया नगर विकास, 13,500 करोड़ दिया रेलवे के लिए। गडकरी साहब तो कितने पैसे दे रहे रोड के लिए, बहुत पैसे दे रहे। तो पैसे देखिए, हम लोग अगर एकदम बहुत कड़क सिंह बन के रहेंगे, हम अहंकार रख के रहेंगे, तो कौन देने वाला है? घर में आके कोई, मैं पहले बताया जो ये तो घर में लाके कोई देने वाला नहीं। हमारे को बहुत ही नम्रता से हमारे राज्य के लिए, विकास के लिए हेल्प मांगना, मदद मांगनी, ये सब करना, ये हमारा फर्ज है, ये करना चाहिए। वो कितना सपोर्ट कर रहा है केंद्र सरकार, कोविड में भी किया, सब जगह पहले भी किया है। लेकिन ये केंद्र सरकार का सपोर्ट के अलावा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पार्टी को लेने के लिए आपने भी खूब सारा सपोर्ट लिया, 2000 करोड़ का सपोर्ट लिया। आरोप लगा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए में आपने सबको खरीद लिया, सीधे आरोप आप पर लगा। देखिए, अभी आपको मैं, एक ग्राम पंचायत सदस्य रहता ना, मेंबर, उसको भी पार्टी छोड़ने के लिए 10 बार सोचता है। या 40 से 50 MLA, 13 सांसद, हजारों कारपोरेटर, ऐसा कोई पैसे से आता है क्या कोई? ये अभी बोलने के लिए क्या उनके पास कुछ है ही नहीं, 2-3 शब्द ही है। इसलिए मैं आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देता हूं, मैं आरोपों का उत्तर काम से दूंगा, इस राज्य का डेवलपमेंट करके दूंगा मैं। मुझे लगता है ये जो आपने आखिरी लाइन कही है, इसी पर मुझे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। आपने कहा कि जो आरोप है उसका जवाब आप काम से देंगे, उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एबीपी न्यूज़ के इस मंच पर आए और आपने अपना वक्त दिया और खूब सारी खबरें भी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। मैं राजीव खांडेकर जी से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे साथ स्टेज पर जुड़े और मुख्यमंत्री जी को एक टोकन दें हमारे ग्रैटिट्यूड का। बहुत बहुत आभारी हैं आपके सर, आपने महाराष्ट्र की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखी और आशा है कि ये तस्वीर जल्दी ही एक रियलिटी में बदलेगी। A huge round of applause for the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, ladies and gentlemen. Thank you, Rubika. Thank you, Rajiv ji. Namaskar, sir. तो कुछ वक्त ना ज़ाया करते हुए हमारे सामने यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी आ चुके हैं। पहले तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। हमारे साथ दूसरा एडिशन है आइडियाज़ ऑफ इंडिया का और हम बहुत बहुत आभारी हैं नितिन गडकरी जी के कि ये दूसरे साल भी
इस मंच पर आने के लिए राजी हुए और गडकरी साहब आपको आमंत्रित करती हूँ, प्लीज हमारे साथ स्टेज पर जुड़िए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। और दिबांग जी, आपसे भी दरख्वास्त है, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। Please show your appreciation for the Honorable Minister. Thank you very much. नमस्कार, मैं हूं दिबांग। गडकरी जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो ये है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, उसमें इस बार देखें तो बजट में बड़ा उछाल है। 2,70,000 करोड़ का आपके पास बजट है। ये हम देख रहे हैं कि 27 फरवरी को आप एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हाईवे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो 2024 का रास्ता है वो आपके हाईवे से होके जाएगा संसद भवन? देखिए, पहली बात तो ऐसे भी कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार को 5 साल काम करने का मौका मिलता है। वो जनता आशीर्वाद देती है और 5 साल के काम का जो परफॉर्मेंस होता है वो जनता के सामने जाता है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हमारे पार्टी का, हमारे नेतृत्व का, हमारे मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस ऑडिट कार्ड है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 75 साल देश के लिए हो रहे हैं, पर इस 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, उसकी तुलना अगर पिछले 60 साल की कांग्रेस की राजवट के साथ करेंगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। ये परफॉर्मेंस जो हमारा है, यही हमारी ताकत है, शक्ति है, और यही लोगों की हमसे अपेक्षा है। तो मेरा सवाल वही है कि तो आप कह रहे हैं कि ये जो आप हाईवे बना रहे हैं उसी से रास्ता खुलेगा अगले चुनाव? मैं अगर ये पूछूं आपको कि आपकी टीआरपी बढ़ाना है तो ये आवश्यक ही है, क्योंकि आप धंधा करने आए हो तो आपके मीडिया में आपकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। तो हमारी टीआरपी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? अगर जनता में जाएंगे तो हमारा काम से अगर हम लोग लोकप्रियता हासिल करेंगे तो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और देश के लिए हमारी पार्टी में 3 बातें थी। जब मैं अध्यक्ष था तो भाजपा कार्यालय के बाहर दिल्ली में एक अटल जी और अडवाणी जी की फ़ोटो के साथ वो लिखा था, राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है, और अंत्योदय जो व्यक्ति शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग हमारा उद्दिष्ट है, और हम कोई छुपाते नहीं है। हमारे विचारों को लेकर हम उद्दिष्ट के अनुसार गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता का भी हमारे से यही अपेक्षा है। अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। 3.4 लाख करोड़ रुपया उसका कर्ज है। उस हालत में आप कैसे जगह बनाएंगे काम की संभावना? देखिए, ये अच्छा हो गया मुंबई में प्रश्न पूछ रहे हैं आप। अभी मुख्यमंत्री चले गए, जो MSRDC है उसका संस्थापक अध्यक्ष मैं था, और मैं उस समय मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, और मैं दिल्ली मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर बना रहा था। तब तो मेरा रेटिंग भी नहीं था, कुछ नहीं था। तब धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा, जब पहली बार मैं बॉन्ड्स को लेकर कैपिटल मार्केट में गया था, तो 500 करोड़ की जगह, मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ, आज वो 20 गुना ज़्यादा होगा पैसा, 500 करोड़ के बजाय मुझे 1100 करोड़ मिले, ओवर सब्सक्राइब। और आज आपको बताता हूँ
कि ये सब काम में पैसे भी कर्जा वापस हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे हाईवे बेचकर 8,000 करोड़ रुपए मोनेटाइज किए। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई आया था स्टॉक एक्सचेंज। इनविट मॉडल में हमने हमारे बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया था। 10 दिन की मुदत थी और मेरे कार्यक्रम में 10 दिन के बाद वो घंटी बजाकर उसको क्लोज करने का एक पद्धति रहती है। और एक पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मैं गोवा में एक कार्यक्रम के लिए गया था, वहाँ से छोड़कर मैं दूसरे सुबह मुंबई आया और हमने उसको क्लोज किया। तो ये बात सबसे गलत है कि हम लोग ये जो लोग हमारी इकोनॉमिक्स को नहीं समझते हैं वो ये लिखते हैं अखबार में। अभी मेरा टोल का इनकम 40,000 करोड़ है और 2024 जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारा टोल का इनकम 1,40,000 करोड़ है। हमारा हर प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 13 और 14 है। और इसलिए हम जितने रोड बना रहे हैं वो तो सरकार का 2,70,000, उसमें 3 लाख करोड़ मैं मार्केट से खड़े करके पैसे डाल के 5 लाख करोड़ के काम हर साल करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, AAA रेटिंग है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज NHI है। और हम कोई कर्जे को, ये 3 लाख कर्जा है, भूरका है हमारे लिए, भूरका। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हमारी फाइनेंशियल स्टेक जो फाइनेंस समझता है, एक मेरा इंटरव्यू इस पर रख देना, मैं अच्छा उसका दूसरा अर्थ निकलेगा कि गडकरी रोड कमा के पैसा कमा रहे सरकार के लिए, इसलिए मैं संकोच से बोलता हूँ। कोई चिंता मत करिए, वी आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। AAA रेटिंग और मार्केट में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मैं आपको आह्वान करता हूँ, पत्रकारों को, पुलिस वालों को, सरकारी नौकर को, इंश्योरेंस पेंशन को, सबको, कि पैसा NHI में इन्वेस्ट करो। मैं आपको 8.2% पर ईयर बैच दूंगा और बैच हर महीने में तुम्हारे अकाउंट में जमा करूंगा। अब मुझे बताओ, तुमको कोई 8.2% बैच देने वाला है? मैं देखता हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं आता हूँ आपके पास। मैं पर एक बात पूछ रहा हूँ गडकरी जी, इस पर आपको सफाई ज़रूर देनी चाहिए। ये खबर छपी कि आप जिस तरह से सड़क नापते हैं, यानी अगर आपने 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, 2 लेन की बनाई तो आप उसको 12 किलोमीटर मान लेते हैं, 4 लेन की बनाई तो वही 6 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो 24 किलोमीटर हो जाती है। कैसे नापते हैं? इस पर एक सफाई ज़रूरी है आपकी तरफ से। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। मैं कुछ नए नियम मैंने नहीं बनाए, वर्ल्ड के नियम है। और कांग्रेस के UPA के सरकार में भी वही नियम था, फिर हमारे NDA के सरकार में यही नियम है। जब 1 लेन होती है तो उसको 1 किलोमीटर कहते हैं और ये हिसाब अनेक सालों से चल रहा है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। उसी के प्रकार से हमारा एवरेज है। पिछले साल हमारा 38 किलोमीटर था। अब इस साल मार्च तक कितना होता है, थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी कितना होता है मैं बता नहीं पाऊँगा, पर मेरा टारगेट है 60 किलोमीटर पर डे। और मैं जब मंत्री बना तब एक समय ऐसा था कि 2 किलोमीटर पर डे तक UPA की सरकार में सड़क निर्माण का कार्य उस महीने में आया था, पर अभी उस समय 12 तक था। आज हमारा करीब हुआ और हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 6 पहली बार इस देश में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे रोड मिनिस्ट्री ने बनाया, जिसका क्रेडिट मुझे नहीं है, हमारे इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर सब ने मिलकर किया। एक और बहुत गंभीर सवाल है गडकरी जी की सड़क दुर्घटनाओं का और सड़क पर मौतों का। अगर NCRB का आंकड़ा देखें तो करीब 1,50,000 लोगों की मौत सड़क पर होती है सालाना। हाईवेज़ पर, नेशनल हाईवेज़ पर 1/3 मौतें होती हैं। और अगर आप देखें तो ग्लोबली जो मौतें सड़क पर होती हैं, 11% मौतें भारत में होती है, जबकि वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि हमारे पास केवल 1% गाड़ियाँ हैं। इस पर आप कितने चिंतित हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं पूरी तरह चिंतित हूँ और मेरे डिपार्टमेंट का यही ब्लैक स्पॉट है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कबूल करने में संकोच नहीं कि इसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट में 60% लोग मरते हैं। नए नए इंजीनियर, डॉक्टर, लड़के लड़कियां, उनका देहांत होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर बदलना चाहिए। अगर रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आज ही आपको बताता हूँ, मैं 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी में बैठा हूँ, नाम नहीं बताता। तो आजकल वो अमेज़ॉन पे एक ये मिलता है, वो क्लिप। आज भी मैं था, वो क्लिप लगी
सरकारी गाड़ी में, मैंने उसको डांटा, बोला निकल क्लिप, और खबरदार फिर से लगाई तो, और मेरा लगा वो बेल्ट लगा, पीछे बांध के रखा था, बेल्ट लगाया। और ये देश में बेल्ट लगाना अब ये बहुत आवश्यक है। अभी पीछे में बेल्ट लगाने हमने अनिवार्य किया है। और दूसरी बात, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, कहीं स्पीड की लिमिट्स के बारे में नियम है, हेलमेट पहनना चाहिए। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसको बदलने की आवश्यकता है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। दूसरी बात, ये 5 बातों में है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमने सुधार किए, एयर बैग्स लाई, क्वालिटी सुधराई, जो जो करना है उसमें सुधार किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड पैरामीटर के साथ पहुँचे। फिर रोड इंजीनियरिंग, इसमें बहुत गलतियाँ थी। मैंने केवल 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जो DPR बनाते, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इनकी बहुत गलतियाँ हैं। और मैंने उनकी मीटिंग लेके उनको कहा कि अगर इसके बाद कोई मरेगा तो 302 तुम्हारे ऊपर लगा के साले जेल के अंदर तुमको डालूंगा। इतना मुझे को गुस्सा आया कि एक भी मिस्टेक रोड इंजीनियरिंग में नहीं हुई, उसमें गलतियाँ है, हमने उसमें सुधार किया। तीसरी बात जो है कि एजुकेशन, जो छोटे बच्चे 5वीं 6वीं से, उनको हमको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करके सिखाना चाहिए। देखो, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था में हमें है। तो एजुकेशन है। दूसरी बात इमरजेंसी है। अभी हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं और उसमें हेलीपोर्ट और ड्रोन पोर्ट बना रहे हैं। अभी वो दिन दूर नहीं है कि 4 लोग ड्रोन में बैठेंगे, उड़ेंगे और हवाई एयरपोर्ट उतर जाएंगे। अभी मैंने एक लॉन्च किया, 200 किलो का माल उठाकर जाता है। अभी चेन्नई का एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट करता है। वो एयरपोर्ट पे लंग्स और हार्ट आने के बाद ट्रांसप्लांट करने के लिए वो ड्रोन से उठ के उनके हॉस्पिटल में जाता है। तो पहली बात, हम लोग इमरजेंसी जो है वो करनी चाहिए। फिर इन्फोर्समेंट जी, अब कानून पे फाइन भी बढ़ा है, नया हमने एक्ट भी लाया। अब लोगों का फिर भी ऐसा बिहेवियर है, कोई चिंता ही नहीं करता, कोई बेल्ट नहीं लगाता, कोई हेलमेट नहीं लगाता, ऐसी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो मुझे लगता है हम सब मिलकर, ये बात बिल्कुल ज़रूरी है और आपकी सही है कि वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जी, और 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 3.42 GDP का नुकसान इसके कारण होता है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो तय किया था कि 2024 तक हम 50% एक्सीडेंट और डेथ कम करेंगे, पर दुर्भाग्यवश उसमें ज़्यादा कुछ कमी नहीं हो पाई। हम जरूर कोशिश करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो। पर गडकरी जी, ये तो विपक्ष बोलते हैं, आप तो प्रचार प्रसार में बहुत माहिर हैं, फिर इस पर क्यों नहीं प्रचार प्रचार पर पूरा दौड़ लग रहा? मेरे बारे में ऐसा कहता है कोई? विपक्ष, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ सर। मैं कभी अपना कटआउट नहीं लगाता, पोस्टर नहीं चिपकाता और कई पब्लिसिटी, मेरा PR नहीं। जो मन में आता वो बोलता हूँ और पब्लिक को भी कह देता हूँ, तुमको ज़रूरत होगी तो मत देना, वोट देना, नहीं देना तो मत देना। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, इसमें हम लोग अभी बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स को हमने एम्बेसडर बनाया, सेलिब्रिटीज़ को। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, आप इस पे प्रोग्राम करिए, बच्चों को बुलाइए, लोगों को बुलाइए। आप आएंगे इस प्रोग्राम? हाँ, मैं आऊँगा। ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर को बदलना ये मीडिया के सहयोग के बिना नहीं। ये ज़रूर करूँगा। एक जो बड़ी शुरुआत हो रही है और ये दुनिया भर में शुरुआत हो रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। एक आंकड़ा है कि 2030 तक भारत में प्राइवेट गाड़ियों की बात करें तो वो 30%, कमर्शियल व्हीकल्स में 70% जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी। क्या ये लक्ष्य है और क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, ये लक्ष्य 2030 वाली बात हमने कभी कही नहीं। मैं पब्लिक को सवाल पूछता हूँ कि आपके पास अगर गाड़ी है और उसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा आपका 25,000 रुपये महीना है और कल उससे कंफर्टेबल गाड़ी आपको उसी प्राइस में मिलेगी और आपका खर्चा 2,500 रुपये होगा, तो आपको कोई मार्केट करने की ज़रूरत है? ई स्कूटर, ई ऑटो रिक्शा, ई बाइक, ई बस, अब ई कार। आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हम लोग 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे प्रदूषण का कारण वो है। और हमारे देश में हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन रहा है। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन किसान बनाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक में इतना हुआ कि मैं जब कहता था, आज मैं नाम नहीं बता सकता आपको, ये बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मुझे कहते थे कैसे संभव होगा, कैसा होगा, आप एकदम कह रहे हो, समय लगता है।
एक बड़े उद्योगपति ने मुझे कहा, ऑटोमोबाइल ने पहले 5 में है, कि आप जब ये ई व्हीकल की बात करते थे हमने आपको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमारा विश्वास था कि ये हो नहीं सकता, पर अब हमको लगता है कि वी मिस द बस। और आज इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी दे रहे, फैक्ट्री 4-4 हज़ार करोड़ पे इन्वेस्ट करके लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री डाल रहे हैं और उसका जो सेल है वो 350% बढ़ा है। और आने वाले समय में ई व्हीकल इतने बढ़ेंगे, अभी हाइब्रिड आ गया, ये मालूम है टोयोटो की एक कैमरी करके गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल और 40% इलेक्ट्रिक तैयार करती थी। अब टोयोटो की पूरी गाड़ियाँ आ रही जो 100% इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल का रेट 60 रुपये, पेट्रोल का रेट 120 रुपये, और फिर वो 40% बिजली तैयार करेगी तो पेट्रोल का रेट आएगा 25 रुपये लीटर। फिर मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी है घर पे, ग्रीन नहीं है, हाइड्रोजन की गाड़ी है। जी जी। हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। हमारी रेलवे के इंजन, हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी इंडस्ट्री उस पर चलेगी। और आने वाले समय में हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, उसको निर्यात करने वाला भारत देश बनेगा, ये मेरा विश्वास है। इसमें एक जो अभी हाल में खोज हुई जम्मू कश्मीर में, करीब 60 लाख टन लिथियम अच्छी क्वालिटी का मिला है, लेकिन सवाल है कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास पैसे हैं कि उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि 70% ये हम चीन से मंगाते हैं, उस पर कोई काम हो रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि लिथियम आयन बैटरी कॉस्टली है, उसकी कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर $150 थी, आज वो कॉस्ट $115 हुई है। और 1 साल के अंदर, ये मेरा अजम्पशन है कि उसकी कॉस्ट $100 पे आएगी, तो पेट्रोल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत, इलेक्ट्रिक बस और डीजल बस की कीमत सेम होगी। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में 400 स्टार्टअप है। अब आप आश्चर्य करोगे कि बजाज, टीवीएस और हीरो ये 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। अब लखनऊ में, कानपुर में छोटे छोटे 400 स्टार्टअप, यंग टैलेंटेड इंजीनियर, और वो बनाते, उनने क्या किया होशियारी कि बजाज, टीवीएस के मैं सबके स्कूटर में लॉन्च करता हूँ नई बनने के बाद, प्रोत्साहन देने के लिए। तो अभी उन्होंने 125 किलोमीटर की लिथियम आयन बैटरी लगाई, तो ये जो स्टार्टअप तैयार हुए उन्होंने 60 किलोमीटर की बैटरी लगाई। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक अध्ययन किया कि हर व्यक्ति दिन में, पूरे दिन में मैक्सिमम 24 to 26 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 60 की ज़रूरत है, तो कॉस्ट कम कर दी, तो 70,000 में जो छोटे सफाई कामगार, कांस्टेबल, गरीब लोग वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने लगे। तो 400 स्टार्टअप शुरू हुए। हिंदुस्तान में टैलेंटेड यंग इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है, इतना अच्छा स्टार्टअप काम कर रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई देश का नाम नहीं लेता, पर आप मेरी बात को समझ लेना। हिंदुस्तान इसके बाद वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 7.5 लाख करोड़ से है, और मैं 5 साल के अंदर उसको 15 लाख करोड़ रुपए करना चाहता हूँ। वर्ल्ड की सब ब्रांड, एक आधे को छोड़ दो, सब ब्रांड हिंदुस्तान में है। और आज मैं शिपिंग मंत्री था, ये मुंबई में रो पैक्स चालू हो गया, इसमें एक जहाज आता था, चेन्नई से गाड़ियाँ यहाँ आती थी और मारुति की गाड़ियाँ कांडला से उधर जाती थी। तो अब बड़े प्रमाण पर हिंदुस्तान ट्रैक्टर, बसेस, स्कूटर, मैंने जैसे बताया टू व्हीलर 50% एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा। अभी एक छोटी सी बात, 2 मिनट में, पहले इसमें चाइना था, चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर जापान और चौथे पे इंडिया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जापान को पीछे डाला है, हम तीसरे नंबर पर आए और जापान हमसे पीछे गया है, और जल्दी ही हम नंबर 1 पर जाएंगे। और ये इंडस्ट्री जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और जब ये 15 लाख करोड़ की होगी तो 9 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेगी। तो मुझे लगता है कि अब इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में और प्रदूषण को कम करने में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देगी। तो इसी में जो नेशनल बस प्रोग्राम जो आपका है, जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस आएँ, और 50,000 बसेस की आप बात कर रहे हैं, दूसरा अभी टेंडर निकला 6,400 बसेस का, और उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, उसने हिस्सा तक नहीं लिया। तो अगर इस तरह से प्लेयर्स छूट जाएंगे
मतलब पैसा उनको ठीक नहीं मिल रहा या कुछ? ऐसा है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर है, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है वो यूडी डिपार्टमेंट के अंडर है, और टेंडर निकाला वो पावर मिनिस्टर निकाला है। अब उसके साथ मेरा भी संबंध है, पर मैं आपको एक अच्छी बात बता दूँ, इसी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का लॉन्च किया था। अब इलेक्ट्रिक बस में हमने जो टेंडर निकाला वो नॉन एसी इलेक्ट्रिक बस की पर किलोमीटर कॉस्ट 39 रुपीज़ पर किलोमीटर है, और एसी बस की कॉस्ट 41 रुपीज़ पर किलोमीटर है, और ये बेस्ट की बस जो मुंबई में चल रही है उसकी कॉस्ट 115 रुपये पर किलोमीटर है। लंदन ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल है, उसमें 9 ऑपरेटर है, प्राइवेट व्यक्ति ही बस खरीदता है और उसको 250 किलोमीटर की गारंटी मिलती है। तो 250 किलोमीटर अगर मुंबई में हमने ये लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल लाया तो ड्राइवर उनका, कंडक्टर हमारा। और 2 बातें बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। बस में अब टिकट लेने वाली ज़रूरत नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए। सामने वाले जहाँ कैमरा लगेगा वहाँ से लोग जाएंगे तो कार्ड दिखाएंगे, अब ये आ गया अपने पास, कार्ड दिखाएंगे, उतरेंगे तो कार्ड दिखाएंगे, उनके बैंक अकाउंट से टिकट के पैसे जाएंगे, इसलिए टिकट के पैसे लेना ये मामला बंद। और दूसरी बात, डीजल में सुविधा होती है, फूंक करके निकालते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक में कोई सुविधा नहीं है, तो दोनों में अगर हमने बचाया तो ये प्रॉफिटेबल है, और ये 50,000 बसेस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। मैं भी बैठा हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मॉडल को, सरकार के पास उतना अनुदान नहीं है, 50,000 नहीं, इस समय देश में 1,80,000 बसेस है, और आप यूरोप में जाओगे तो डबल डेकर एयर कंडीशन बसेस। वैसा मेरा, अभी हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे एक्सिस कंट्रोल, तो मेरा सपना ये है कि इस देश में 10 लाख बसेस होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लोग बढ़िया, अभी मैंने एक वॉल्वो कंपनी की बस लॉन्च की बेंगलोर में, वो 15 मीटर के बस में लोग सो के जा सकते हैं, एयर सस्पेंशन है। फिर एक बिजनेस क्लास की बस है। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना, और ये जो ऐसे मैंने कहा कि अभी हम लोग रोड बना रहे हैं कि मुंबई से बेंगलोर ये 6 घंटे में हो जाएगा, पूना से बेंगलोर 4 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा। और आज ही मैंने अभी घोषणा की मराठवाड़ा में कि नांदेड़ से पूना 4.5 घंटे में, और वाशिम से 4 घंटे में। और अभी इतना फास्ट हुआ कि अगर मुंबई से नागपुर आने के लिए हमको 24 घंटे लगते थे, अब 5-5.5 घंटे लग रहे हैं। अब ये दिल्ली से अमृतसर हम 4 घंटे में ले जाएंगे, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और तुम्हारा देहरादून और हरिद्वार 2 घंटे में। तो मुझे लगता है कि अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से इससे लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे और कंफर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। जी, मंत्रालय के तो सारे जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। पर 24 की जैसे बात करें तो उसमें अलग अलग उसमें भी मॉडल है। एक तो मॉडल है जो ये कहता है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स चलेगी और उससे वोट मिलेंगे। एक मॉडल है जिसमें कह रहे हैं कि नहीं साहब, अडानी और अंबानी पर हमला कीजिए और उससे वोट मिलेंगे, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। एक है जो जाति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप कैसे ये जो अलग अलग मॉडल हैं विपक्ष के, कैसे उसका जवाब देंगे? देखो, हम उनका जवाब नहीं देंगे, देने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। हमें जो अवसर मिला है उसके आधार पर हमने जो जो काम किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, आयुष्य योजना हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, 100 एयरपोर्ट हो, एग्रीकल्चर में नैनो यूरिया से लेकर परिवर्तन किया। हम अपने काम के भरोसे पॉजिटिविटी के साथ लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करी हमने किया है, और आगे चलकर इसी बात पर जाएंगे कि हमने ये काम किया है। और आपने जो देखा वो केवल ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। आप हमको साथ दो और इसी काम के ऊपर अगले इसमें हम ज़्यादा काम करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ हम जीतेंगे। अब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं ही सीरियसली नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, तुम काहे के लिए लेते हो? ये तो ठीक है, ये भी एक जवाब देने का तरीका है। अब मैं इसी पे पूछ रहा हूँ कि देखिए, कल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल थे, वो उद्धव ठाकरे से मिले और उन्होंने कहा कि असली शेर वही हैं और वही असली शेर हैं, और जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो उनके परिणाम बीजेपी का जो गठबंधन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। आप महाराष्ट्र के हैं, आप कैसे आंकते हैं इस पूरी लड़ाई को? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो सब अपोजिशन पार्टी के लोग मिलते रहते हैं, और मैं ऐसा नसीबवान सांसद हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई
तो सभी पार्टी के 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने विचार रखे और 75 लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे अभिनंदन किया। तो मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स में अब कौन किसको मिलता है, मिल सकता है लोकतंत्र में, कोई कहीं भी जाए कुछ भी बोले बोले, जनता की अदालत में जो होगा वो होगा, आप चिंता क्यों करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहानी रहती है और बेचारे सपनों में खुश है, तो उनकी खुशी आज क्यों, उनको दुख क्यों पहुँचाते हो आप। जब तक चुनाव होगा तब तक खुश रहने दो, चुनाव होने के बाद हम ही जीत के आएंगे और फिर से एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी, महाराष्ट्र में भी आएगी, देश में भी आएगी, और जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। शिवसेना में जो ये असली नकली का खेल हो रहा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मेरे लिए तो सवाल है गडकरी जी, असली नकली का जो खेल हो रहा है, क्या आपको लगता है इससे उद्धव को फायदा होगा, एक सिंपैथी मिल रही है उनको जिस तरह से उनसे सब कुछ छीना जा रहा है? आपको एक पता होगा, व्हेन मैटर इज सब जुडिस, तो कोई टिप्पणी पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं की जाती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मेरे से क्यों बुलवाते हो? जो दम है वो चलते रहेंगे, जो होगा सो होगा, आगे आगे देखो होता है क्या। एक ये कहा जाता है कि जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब बड़ी मेहनत की राहुल गांधी ने, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर चल लिए वो, क्या आप लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा की कोशिश थी उसका फ़ायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए साहब, पसीना कितना भी निकालने से कोई पहलवान नहीं होता। जब सिस्टमेटिक वे से जब व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो पहलवान होता है। अगर यही बात होती तो लकड़ी तोड़ने वाला ही भारत श्री बन जाता था, हिंद केसरी। तो ऐसा है, उनको मेहनत करने दो। अब मेरा वजन कम हो गया बेचारा, वो भी करते होंगे, अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि परिश्रम हो और सतत हो तब कुछ फायदा होगा? सर, परिश्रम करने वाले बहुत होते हैं। हिंदी के एक कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, शरद जोशी, हास्य व्यंग्य कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कहते थे, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वैसे राजनीति ऐसी है कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। तो इसलिए जिसको बेचारे को मेहनत करना करने दो। आप सीधे जवाब तो नहीं दे रहे हैं, पर आप जवाब दे जरूर रहे हैं। पर इससे भी मैं हट जाता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि गडकरी जी, जब आप देखते हैं अपना कार्यकाल, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा काम आपने क्या किया? देखिए, मैं एक सोच रखकर, मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ, मैं पावर ओरिएंटेड नहीं हूँ। मैं जब 11वीं में था तो जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था और उसी समय मैं उस आंदोलन के साथ विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के साथ मिलकर राजनीति में आया हूँ। और मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। अब मैंने बड़े बड़ी टनल बनाई, रोड बनाए, ब्रिज बनाए। वर्ली बांद्रा उस समय का है, मुंबई पुणे बना, अभी तो ऐसे 50 हाईवे में बना रहा हूँ। पर मेरे लाइफ का सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो मैं बचपन में मेरी माँ के साथ, बहनों के साथ रेलवे स्टेशन पे जाता था। तो एक साइकिल रिक्शा में हम 4 लोग बैठते थे और चढ़ाव पर वो रिक्शे वाला हमको खींच के ऊपर लेके जाता था। तब मुझे बड़ा उसका पसीना निकलता था, बेचारा थक जाता था। तब उसको देखकर आंखों में आंसू आते थे। और मुझे खुशी है कि आज मुलायम सिंह जी नहीं है, यादव। मैंने जब एक बिल लाया था तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, ये मानवीय शोषण का प्रतीक है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ये कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मेरे मन में बहुत कमिटमेंट थी इसके बारे में, और मंत्री बनने के बाद मैंने इसके लिए स्पेशल बिल लाया। सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चली। एक समय ऐसा हुआ कि मैं इतना टेम्प्टेड हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने के लिए जाने के मूड में था, पर हम जीत गए। मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, ये बिल आया, और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग इस देश में, बिहार, यूपी, सब नॉर्थ ईस्ट, आदमी आदमी को धोने का काम करता था। ये बिल मैंने लाया, ई रिक्शा लाई, ई ऑटो रिक्शा आई, और आज मुझे खुशी है कि करीब आज लगभग आदमी आदमी को खींचने वाला रिक्शा आज कहीं दिखता नहीं। अगर बोरा कोई ले जाना है तो ई कार्ट पर ले जा रहा है, वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो मेरे जीवन में बहुत से काम मैंने किए हैं, पर एक मानवीय दृष्टिकोण से
ये वाकई में 1 करोड़ लोगों को जो मुक्ति मिली है, ये वाकई में बड़ी बात है। ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। जी, ये वाकई में बड़ी बात है। आखिरी सवाल ये है, और ये सवाल बाकी नेताओं से जुड़ता नहीं, आपसे ज़रूर जुड़ जाता है, और सवाल है खाना और गाना। यानी एक तो आपको खाने का बहुत शौक है, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, उत्तर पूर्व से, महाराष्ट्र में आए, तो 3 चीज़ें क्या खानी चाहिए, और गाना आपसे जुड़ गया है। ये बता रहे हैं कि आपका गला बहुत अच्छा है, ऐसा है आप कि मेरे मूड में होते हैं तो बड़ा अच्छा गाते हैं। इसी मुंबई में मैं विपक्ष का नेता था, मंत्री था, पार्टी का अध्यक्ष था। मेरा वजन था 135 किलो, अभी मैं हूँ 86। तो मेरे नियत में कमी नहीं आई है, पर खाने में कमी आई है। आज रात को मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये पक्का है। अच्छा, हाँ, तो ये मुंबई जैसा शहर नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जाओ, मैं विजिटर नहीं हूँ, मुंबई में जो मिलता है वो दुनिया में नहीं मिलता, रात को 12 बजे भी मिलता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब मैंने बहुत कंट्रोल किया है, अब मैं थोड़ा खाता हूँ। तो मुझे होटल वाले पहचानते हैं, तो बोलते साहब गलती हो गई क्या? बोला क्यों? बोले आप पहले आके ये इतना खाते थे, अब कुछ भी नहीं खा रहे थोड़ा। अच्छा। तो मैंने बोला तुम्हारे में गड़बड़ नहीं है, मेरे में गड़बड़ हुई है। तो अब एक अच्छा हुआ कि मैंने वजन को कंट्रोल किया। मैं 135 से 86 पे हूँ, अब मेरा वजन 86 है। तो अभी मैं नियत है, मेरी नियत में कमी नहीं आई, पर मैं खाने में बहुत कम खाता हूँ। मुंबई में खाना होगा तो मुंबई में दादर में 2-3 रेस्टोरेंट है, उसमें मिसळ खाइए, दही मिसळ। अच्छा। वो प्रकाश है और आस्वाद है, वहाँ बहुत अच्छी बनती है, वहाँ का थालीपीठ अच्छा बनता है। अच्छा, तो बहुत लोग खाता हूँ। ठीक है, ज़रूर ये ये करेंगे। महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है। और गडकरी जी गाना? मैं तो गाना गाता नहीं हूँ, पर मैं साहित्य, संस्कृति, संगीत, मैं एक हमारे यहाँ खास पर मैं बताता हूँ आपको, एक गाना बहुत पसंद है। कौन सा? जिंदगी कैसी है पहेली। नहीं, वो तो मुझे लकी अली का, मैंने आपके यहाँ फोटो देखा तो मैं सोच रहा था कि मैं उनका बहुत चाहता हूँ, लकी अली को। हाँ, उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आजकल मैं पब्लिक फिगर होने के कारण मैंने कुछ भी कहा तो तुरंत सब मीडिया पे चल जाता है। पर एक बात जरूर है, भारतीय, पर ये गाना आपको पसंद है ना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, किसी को हंसाए किसी को रुलाए। काफ़ी, मैं बहुत सी गीतों को, नए लोगों के, अभी आजकल मैं कबीर के भजन सुनता हूँ। अच्छा। मुझे कभी कभी नए युग के भी संगीत सुनता हूँ, और मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ नागपुर में, और रोज़ 50,000 लोग आते हैं, और ये जितने बड़े हैं सब लोगों के एक प्रोग्राम होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कल्चरल इवेंट्स व्यक्ति में एक ऐसा संस्कार देती है, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कविता, ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। और मुझे जब भी फुर्सत मिलती है तो मैं सुनता हूँ, गुलाम अली को सुनता हूँ, गज़ल सुनता हूँ, किशोर कुमार के पुराने गाने सुनता हूँ, मुकेश मेरे बहुत फेवरेट है। अभी नितिन मुकेश के मैं 5 कार्यक्रम नागपुर में कर चुका हूँ, क्योंकि मुकेश की पुरानी गीतें बहुत पसंद हैं। तो संगीत एक अलग प्रकार का आनंद देता है। अभी जिस तरह की राजनीति है उस पर कोई एक गाना है जो, मतलब जैसे सिचुएशन पे गाने बनते हैं हिंदी फिल्मों में, इस तरह की राजनीति पर कोई एक गाना है जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना, तो वो गाना था। कौन सा? जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो मैं उनको बताने वाला। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवालों के जवाब दिए, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं देने थे वो भी जवाब आपने दिए अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद गडकरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बात तो साफ है कि बहुत तेज़ी से आप हाईवेज का कायाकल्प कर रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस। दिस इज़ वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड। अविनाश पांडे जी से दरख्वास्त है टू प्लीज़ जॉइन अस ऑन स्टेज। हम गडकरी जी को एक टोकन देना चाहेंगे उनके समय के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा कर रहे हैं कि आइडियाज़ ऑफ इंडिया 2024 में भी आप इस मंच पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और शायद संगीत की बात तब होगी। A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the Honorable Nitin Gadkari ji. बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपांग जी।
दोस्तों आपसे अनुरोध है टू काइंडली टेक योर सीट्स. आवर नेक्स्ट गेस्ट इज ऑलरेडी इन द हाउस और मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. आपसे दरख्वास्त है टू काइंडली प्लीज टेक टू योर सीट्स as the honorable minister exits the hall. Thank you everyone. आपसे गुजारिश रहेगी कि please get back to your seats. चलिए, are we ready for the next session? अरे थोड़ा सा प्यार इधर भी दिखा दीजिए. I know everyone is talking, but are we ready for the next session? Amazing. तो जो हमारी next guest हैं, she has been a familiar face for all of us on television even before she made her lovely film debut. Her first film, Vicky Donor, was a unique choice to make, and that's not a choice that many people would have made at that time. It was so well received and it got both critical and commercial success. Since then, her choice of roles speaks volumes about the quality of the films that she wants to be part of. Please welcome on stage a consistent performer whose focus is on the acting and not on just being a star, although she undoubtedly is one. Please put your hands together for Yami Gautam. Welcome, Yami. Please take a seat. Don't be shy, my honey. Awake, अपने अंदर तू देख. The best of all is coming through. अपने rights, अपनी fight. Left or right, की आवाज को तुम भी सुनो. Let's talk fearless and free. फिर गूंजे अपनी यामी गौतम हमारे बीच है, तो जोरदार तालियां पहले बजा दीजिए और उसके बाद यामी गौतम के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे. यामी, इस खूबसूरत त्वचा का क्या राज है? अच्छा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा एक्टर हैं साथ में कुछ लेकर आए हैं, एक थोड़ी सी देर के लिए रुक नहीं सकती थी. इसमें सिर्फ गर्म पानी है, मेरा गला बहुत ख़राब है, सो इट्स जस्ट दैट. दूसरा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम. आपने मुझे बुलाया टू ABP एंड टू शोभना जी. ऑफ कोर्स हम पिछली फिल्म में मिल चुके हैं 10वीं के दौरान. और खूबसूरत त्वचा का राज मैंने आपको पहले भी बताया, फैंटास्टिक हेयर एंड मेकअप टीम, और कुछ नहीं है. अच्छा, मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सवाल अगर यामी गौतम के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि इनकी इतनी खूबसूरत स्किन कैसे है. क्या ये ग्लो एंड लवली का कमाल है, या वो हल्दी पानी जो इनकी मम्मी ने इनको आदत डाली है कि जब भी घर में आओ तो सीधे हल्दी पानी पियो? ये ब्रांड का नाम ये ले रही हैं, मैंने तो लेट मी क्लैरिफाई दिस. मैंने नहीं बोला ये सब बोलने के लिए. ऑफ कोर्स मतलब हिमाचल से हूँ, तो अगर पूरा थैंक यू इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, वो पेरेंट एज के लिए. बाकी थोड़ी बहुत आपको ऑफ कोर्स केयर तो करनी पड़ती है. हल्दी पानी सिर्फ एक किसी ने कहा नहीं था, सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि खासकर जब हिमाचल में हम लोग वहाँ ग्रो कर रहे हैं अपने फार्म पर नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए, और अच्छा लगता है थोड़ा. सो अगर वो भी कहीं ना कहीं उसका भी श्रेय है तो आई थिंक इट्स गुड. नेचुरल फार्मिंग पे भी मैं बात करूंगी यामी से. यामी का मैंने देखा है कि अगर आप यामी से सिर्फ खूबसूरती की बातें करें, गोरे रंग की बातें करें, तो ये बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं करती, मतलब कुछ नाराज सी हो जाती हैं. इसीलिए मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स. महिलाओं को सिर्फ उनके गोरे रंग से जोड़ना, उनकी खूबसूरती से जोड़ना, इस पर यामी का क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है अब वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है. जब मैंने भी करियर में अपनी शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, हर एक आदमी, हर एक जो भी आप अपनी जब जर्नी शुरू करते हैं, एक एक्सपीरियंस के बाद, एक टाइम के बाद आपकी भी थिंकिंग, आपकी भी चीज़ें बहुत इवॉल्व होती हैं, आप भी समझते हैं, आप खुद भी बहुत अवेयर हो रहे हैं
क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं इसलिए लगता है कि अच्छा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपके परफेक्ट आंसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, सब इंसान है, हम सब ग्रो करते हैं। द होल आइडिया इज़ टू इवॉल्व। और जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल खासकर जिस तरह की अवेयरनेस में देख रही हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर जिन लोगों के पास माइक नहीं है वहाँ तक ये बात ज़रूर जाए कि बिल्कुल आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत पर आपकी पहचान है और किसी रंग रूप से नहीं। बिल्कुल। और एक दौर बॉलीवुड में हुआ करता था यामी, जब खूबसूरती के बल पर, पता है, हीरोइन मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरती, फिगर, सब कुछ। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक बोल्ड इमेज, एक स्मार्ट इमेज, एक स्ट्रेंथ के ऊपर फीमेल रोल्स मिलने लगे हैं। आपने अपनी फिल्म का भी नाम जो है वो मैंने ले दिया है। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन है बॉलीवुड में? पहली बात, सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है बॉलीवुड शब्द से है। अगर आप किसी भी, मुझे लगता है, एक्टर से पूछेंगे या एक्टर या डायरेक्टर या जो भी सिनेमा से वाकिफ़ हैं, जिनका काम है, वो सब बोलेंगे कि ये शब्द अब अच्छा नहीं लगता सुनने में। और आज ही नहीं, कभी भी नहीं अच्छा लगा सुनने में। हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल लीजिए या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इज़ अ बेटर वर्ड। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन नोटेड जी, आई थिंक जितना ज़्यादा मीडिया भी खासकर अगर ये थोड़ा परिवर्तन ले आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, नोटेड। जी, दूसरी बात, आपके बात का सवाल, नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरी पहली फिल्म विकी डोने नहीं होती। मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही इस तरह की फिल्म से की थी जिसमें सब्सटेंस था एंड एट द सेम टाइम इंटेंशन था कि ऑडियंस तक पहुँचे। मेरी मम्मी के गोल्डन वर्ड्स है, ऑडियंस हमेशा खुश रहनी चाहिए, ऑडियंस खुश होनी चाहिए, आप कोई भी काम करें। पर बात अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, बात है कि क्या आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल रही हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगा कि उस वक्त सडनली जब आपकी पहली फिल्म उसको इतना सक्सेस मिले, आपके साथ टीम्स जुड़ जाती हैं, लोग जुड़ जाते हैं, आप एक इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री में आए जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आपके सिर्फ मन में बहुत सारी नोशंस हैं बट एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता। आज भी मैं बोल सकती हूँ कि अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी समझ रही हूँ। उसमें अपने आप को पाना, अपने आप को ही समझना कि आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, किस तरह की फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, आप ऑडियंस तक आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना और खुद की समझ रखना, उस थोड़ा तालमेल में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है 2019 से मेरे लिए पर्सनली वो वक्त दोबारा मुड़ कर आया, क्योंकि यही इंडस्ट्री एक बार मौका दोबारा ज़रूर देती है। बिल्कुल। मेरा सवाल अगला ये है कि एड फिल्म्स में काम करना, उसके बाद टीवी स्क्रीन पर आना, टीवी सीरियल्स में आना, उसके बाद 70 mm के पर्दे पर आना, ये सफ़र आसान नहीं होता है, क्योंकि एक परसेप्शन है पूरे इंडस्ट्री में या कहिए कि पूरे देश में कि जो टीवी पे काम कर रहा है वो कमतर है, जो फिल्मों में 70 mm पे काम कर रहा है वो बड़ा कलाकार है। तो क्या इस झूठ को, इस मिथ को तोड़ने के लिए यामी को बहुत संघर्ष करना पड़ा या ये सब होता चला गया फ्लो में? नहीं, संघर्ष तो बिल्कुल है, और संघर्ष आई एम श्योर सबकी ही फील्ड में होता है, आपकी फील्ड में है, सबकी फील्ड में है। बस फ़र्क ये है कि हम जो भी हमारा काम है, एक पलक भी झपकते हैं तो वो सब कैमरा पे आता है और उसके ऊपर बहुत वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी। बट एज फार एज द इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, आई थिंक वो जो परिवर्तन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज आई थिंक मुझे लगता है हो रहा है, और होना भी चाहिए। जिस तरह की फिल्में मुझे लगता है पहले बनती थी या जो आ रही थी, आई थिंक आज के टाइम में मुझे नहीं पर्सनली मेरी जर्नी टीवी में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही थी। बहुत मुझे लगता है मेरा पहला शो तो सिर्फ 3 महीने चला था, दूसरा 2 महीने और तीसरा कुछ 8 महीने तो बहुत इनकरेजिंग नहीं रहा था। बट आई अंडरस्टैंड वाई, और मुझे उसी दौरान समझ में आ गया था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ ख़राब है। मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पंकज कपूर जी, जिनके साथ मैंने अभी लॉस्ट में हाल ही में काम किया। उन्होंने टीवी किया, और उन्होंने टीवी उस दौर पे किया कि आज भी अगर हम उन शोज़ के नाम ले बात करें या सोशल मीडिया पे ढूंढे तो वो कमाल के शोज़ थे, वो कमाल की जो उसे बोलते राइटिंग थी। तो आई थिंक फ़र्क सिर्फ मुझे लगता है वहाँ पर था। तो मुझे लगा मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मेरा नाम इतना नहीं हुआ था टेलीविज़न इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंसेस कि एक आप फिल्म एक्टर हैं तो लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, और अगर आप टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं आपके
किरदार बड़ी से बात, जानते बहुत हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और उरी वर्सेस 10वीं। उरी में आपने एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी, 10वीं में आपने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी। तो अगर मैं दोनों में वर्सेस करूँ तो आपके दिल के करीब कौन सा रोल है और आपको क्या पहन के ज़्यादा मज़ा आया? नहीं, वर्सेस तो हो नहीं सकता। ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक दोनों ही एक आपके शरीर के अंग हैं, तो वर्सेस तो हो ही नहीं सकता। दोनों का साथ में साथ में चलना और वो बहुत ज़रूरी है। उरी में ऑफ कोर्स आई वाज एन एजेंट, NSA एजेंट, और उसमें वही बात है, उसमें यूनिफॉर्म आपकी एटीट्यूड में है, आपके सोच में है, वर्सेस व्हाट यू सीइंग ऑन स्क्रीन। 10वीं में ऑफ कोर्स मैं एक IPS ऑफिसर थी और मेरा तो काम है बस किरदारों पर काम करना, अलग अलग कहानियाँ आगे लाना। बाकी जिसको बोलते हैं कि सब कुछ ऑडियंस है, ऑडियंस ही हमें बनाती है, ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि अच्छा ये एक्टर को या ये फिल्म को हमने पसंद किया या नहीं किया। एंड लकीली दोनों ही फिल्म, भले ही ऑफ कोर्स उरी वाज अ मैसिव हिट, बड़े पर्दे पर आई, 10वीं OTT पर आई, पर हम इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकते कि अच्छा कौन ज़्यादा बेहतर था। दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ी सी इस मामले में बहुत जेनरस हूँ खुद को लेकर, अब होना भी चाहिए। और उरी फिल्म का जिक्र आया है तो उरी फिल्म के डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करते करते यामी को ही डायरेक्ट कर गए। तो अब ये बताइए कि घर में कौन किसे डायरेक्ट कर रहा है? नहीं, घर में कौन पूछ रहा है हाउ इज द जोश? नहीं, हम एक्चुअली उरी की फिल्म शूटिंग के बाद जस्ट प्रमोशन के टाइम टेक्निकली अगर मैं बोलूँ हमारी बात शुरू हुई थी, क्योंकि जब इंटरव्यूज़ होते हैं लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे जवाब, और जैसे अगर स्पेशली आप 5 लोग हैं, जब तक आपकी बारी आएगी तो आप दूसरे का आंसर सुन रहे हैं। उन्हीं दौरान थोड़ा सा एक जिससे बोलते हैं एक फ्रेंडशिप शुरू हुई, एक दोस्ती शुरू हुई कि अच्छा आप भी यहाँ से हैं या आप भी इस तरह की सोच रखती हैं। That's how it started. घर पे तो नहीं, ऐसा मेरी कुछ चलती नहीं है। मेरी क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा दोनों ही पहिए हैं उस गाड़ी के, दोनों का ही स्थिर रूप से एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मतलब कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करते, दोनों अपने अपनी गति से सामंजस्य बना रहे हैं। आपकी 10वीं क्योंकि OTT पे रिलीज़ हुई और आपने अभी जिक्र किया उरी जो थी वो 70 mm के पर्दे पर आई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि OTT पर फिल्म आना ये माना जाता था पहले, अब तो नहीं ये है कि मतलब उतना नहीं है, जब तक 70 mm का पर्दा ना हो, हाथ में पॉपकॉर्न ना हो, लार्जर देन लाइफ फील ना हो, तब तक फिल्म नहीं लगेगी। तो जब 10वीं OTT पे आने जा रही थी तो क्या ये चिंता, ये डर आपको था मन में? आपको लग रहा था कि यार ये तो थिएटर में ही रिलीज़ होनी चाहिए थी? देखिए, जो पहला प्यार जिसे बोलते हैं या फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी थिएटर्स। फिल्में बनी ही इसलिए गई थी कि आप ऐसे माध्यम में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ सिनेमा, कि जहाँ पे आप कट ऑफ है कि बाहरी दुनिया से, अंधेरा है, सामने स्क्रीन है और बस आपको जो भी वो डायरेक्टर का विजन है, जो भी उनकी क्रिएशन है, उसमें आप खो गए हैं। फिल्में बनी ही इसके लिए गई थी। और मैं 90s किड, मुझे आज भी याद है, आई थिंक आज वाज द लास्ट जनरेशन जिन्होंने वो सिंगल स्क्रीन का मज़ा लिया है, जहाँ पर सब कुछ गरम गरम पॉपकॉर्न और फैंस होते थे, मुझे याद है, और सब द जॉय ऑफ एक्चुअली वॉचिंग अ फिल्म टुगेदर। आजकल एक्चुअली अगर आप स्क्रीन्स में भी जाएँ थिएटर्स में, वहाँ पे भी सेलफोन्स की लाइट आपको दिख जाती है, कितने लोग वो जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी, बिकॉज अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का। बट मैंने हमेशा देखा है कि आपकी डिज़ायर्स अलग, बट वक्त की नज़ाकत है कि आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। मेरी पिछली 5 रिलीजेस OTT पे आई हैं और 5 ने ही अच्छा किया है। और OTT पे भी पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता चलता है आपकी फिल्म की कितनी व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप के साथ साथ पसंद आ रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विच ऑन किया, अच्छा है, मज़ा नहीं आया और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है कि द शो मस्ट गो ऑन, और चाहे OTT हो, थिएटर्स हो, हम चाहते हैं ऑडियंस, एज आई सेड, खुश रहे। हर एक फिल्म अगर अच्छी फिल्म है वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी कहीं भी। ठीक है, विमेन सेंट्रिक फिल्म्स की मैं बात करना चाहूँगी, चाहे गंगूबाई में आलिया भट्ट हो, चाहे गहराइया में दीपिका पादुकोण हो, चाहे लॉस्ट में आप हो। क्या बॉलीवुड बदला है? यामी को ऐसा लग रहा है या अब लग रहा है कि अभी और बदलने की ज़रूरत है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है। ठीक है, भारतीय सिनेमा जगत जी। और ये जो शब्द है ना वुमेन सेंट्रिक, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं, ये शब्द भी मुझे लगता है बहुत जल्दी जाने वाला है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये क्यों शब्द क्वाइन हुआ था, क्योंकि
मैथ अलग था, इकोनॉमिक्स अलग था, पहले ज़्यादा से ज़्यादा मेल डोमिनेटेड या मेल कैरेक्टर डोमिनेटेड फिल्में आती थी। पर अगर आप देखें ऑडियंस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैरेक्टर से फ़र्क पड़ता है। अब फीमेल इज प्लेइंग, मेल इज प्लेइंग, दैट डजंट मैटर, इट्स द कैरेक्टर एंड द स्टोरी जो मैटर करता है। और ये देखिए कोई भी जो चेंज आता है एक रात में तो नहीं होता है, जनरेशन लगती है, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। मदर इंडिया उस ज़माने में भी बनी है, जिस ज़माने में मुझे नहीं लगता ये कॉन्वर्सेशंस होती थी। स्मिता पाटिल जी जैसी एक्ट्रेस उस टाइम पे भी रही हैं, मैं उनकी इंटरव्यूज़ आज भी देखती हूँ। आई विश शी वॉज अलाइव, कि कितनी अवेयरनेस थी कि औरतों का, जो फीमेल एक्टर्स हैं उनका आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सिनेमा में। और मुझे लगता है इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं जिस मोड पर, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और डेफिनेटली इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। बेहतर किरदार लिखे जाएंगे, बेहतर राइटिंग होगी तो ऑफ कोर्स बेहतर परफॉर्मेंसेस भी आएंगे और ऑडियंस को अच्छी फिल्म से ही मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। फिल्म से निकलकर यामी आपके ऊपर आती हूँ। आप जो पार्टीज होती हैं आपके सिनेमा जगत में, अब क्योंकि आपने बॉलीवुड पे ऑब्जेक्शन कर दिया तो बॉलीवुड नहीं बोलूँगी, भारतीय सिनेमा जगत में जो पार्टियाँ होती हैं उसमें यामी गौतम नहीं जाती हैं, ज़्यादातर घर में रहना पसंद करती हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कंट्रोवर्सी से यामी गौतम बचना चाहती हैं, या वहाँ जो राजनीति होती है उस सिनेमा जगत में उससे बचना चाहती हैं, जो ग्रुपिज्म है, क्या वजह है, क्यों नहीं जाती हैं? पार्टीज में जाना तो सबको पसंद होता है ज़्यादातर। नहीं, मुझे कभी भी पसंद नहीं था और मैं हमेशा से, वो बोलते हैं ना कि आप अपने घर, अपने स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, काम ख़त्म किया और वापस घर आ गए, मैं उन बच्चों में से थी। और मुझे लगता है कि आप लाइफ में कितनी भी आगे चले जाएं, आप बढ़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो आपकी रियल एक पर्सनालिटी है, सक्सेस वही है जो आप हासिल करें अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने सिद्धांतों पर, जो आपको खुशी दें उसके ज़रिए। मैन ऑफ कोर्स, और पार्टी जहाँ तक की बात की जाए वो हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में भी होती हैं, जैसे मैंने कहा आपकी भी। बट यहाँ मेरी जो फील्ड है यहाँ पे 2+2 4 नहीं है। बहुत आपकी लाइफ का डिसीजन बाकी किसी और के हाथ में है। और मैं क्योंकि इस तरह की कभी नहीं रही हूँ कि मैं किसी कैंप में या मुझे किसी सर्कल में दिखना है तभी। कैंप्स हैं बॉलीवुड, मतलब सिनेमा जगत में कैंप्स हैं? आप मुझे पूछ रही हैं? हाँ, आप मुझे पूछ रही हैं। नहीं, आपने कहा मुझे कैंप्स में जाना पसंद नहीं है, कैंप्स मैं किसी कैंप में से ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ क्योंकि आपने वो शब्द इस्तेमाल किया और आई डोंट वांट टू गिव इट एनी नेम और एनी वर्ड, इट्स फाइन। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल में भी जाएं, हर एक का अपना ग्रुप होता है, ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, मेरा भी था। आप राजनीति में आ जाइए। अच्छा, क्यों? आप अच्छा बोल, अच्छी नेता बनेंगी। अच्छा, कर्म। मैं रोज नेताओं के इंटरव्यू करती हूँ, कर्म की बात कर मैं रोज नेताओं के इंटरव्यू करती हूँ, इतने पॉलिश्ड तरीके से वही बात को निकाल के ले जाते हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। मैं एक्टर ही ठीक हूँ, बट हाँ मुझे पसंद नहीं। और जैसे मैंने कहा आज ये वक्त है, अगर कोई है भी, कोई ग्रुप्स हैं जो भी आप बात कर रही हैं, बट मुझ जैसे लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी अपनी बढ़ाई करनी है, अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करना है। मैं इसलिए बात करती हूँ ताकि अगर कोई ऐसा देख रहा है, आप ऑफ कोर्स आपका प्लेटफॉर्म, आपका ये सेगमेंट बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लड़के लड़कियाँ देख रहे हैं जो पूछते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या वो ज़रूरी है, नेटवर्किंग नहीं। अगर आपके दिल से किसी चीज़ के लिए आवाज़ ना आए, प्लीज़ मत करिए। अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, अपने फैमिली से जुड़ी रहिए क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और एक वक्त ज़रूर आता है जहाँ पर, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री भी और कहीं ना कहीं एक सुपर पावर भी है जो जिनकी एक ब्लेसिंग ज़रूर एक वक्त पर आपको लगता है कि आजकल बड़े बड़े वेन्यूज़ और बड़े बड़े मेन्यूज़ के साथ शादी हो रही है, लेकिन यामी ने एक ऐसी शादी करी जो ना बड़ा वेन्यू था, ना बड़ा मेन्यू था, ना डिज़ाइनर लहंगा था। क्या वजह है? एग्जैक्टली वही वजह जो मैंने कहा। शादी हमारे यहाँ कहते हैं जीवन, मृत्यु और शादी 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में, या ऐसे जिसको बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट, बहुत 3 ऐसे ये इम्पॉर्टेंट, आप इंस्टीट्यूट मान लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। आपका जीवन, शादी एंड मृत्यु, ऐसे मुझे कहा गया। जब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने भी जा रहे थे तब भी बोला गया था। शादी क्योंकि इतना ख़ास दिन है तो वो आप
क्या सोच रखते हैं या आपकी फैमिली क्या सोच रखती है, वो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, वर्सेस कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की या मुझे किसी को प्रूव करना है। और मैं मानती हूँ जो आपको खुशी दे, आपको बड़ी शादी किसी को खुशी दे रही है, आप बड़ी शादी कीजिए। हमारी खुशी मेरी और आदित्य की पर्सनली ये थी कि हमें, और दिस इज अगेन अ कोइंसिडेंस, कि बचपन से ऑफ कोर्स हम लोग शादी अटेंड करते आए हैं, जो वेस्टेज होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या कई बार लड़कियों वालों में प्रेशर होता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, इट हैज़ टू बी, आपको इट हैज़ टू बी डन इन अ सर्टन वे, इतना खर्चा होना चाहिए, आपको ऐसे ही लगना है। ऐसा नहीं है। आपने अपनी माँ की साड़ी पहनी? मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी, और मैंने शुरू से सोचा था कि जब भी शादी हो, हाँ ये नहीं सोचा था कि मेकअप में खुद करूंगी। इसमें आपने अपनी मम्मी को क्रेडिट दिया कि नहीं? उन्होंने बहुत संभाल के उस साड़ी को रखा कि आप पहन पाई। बिल्कुल, मम्मी को क्रेडिट ही क्रेडिट है, मम्मी को क्रेडिट नहीं तो किसका, मम्मी को तो बहुत चीज़ों का क्रेडिट है। अच्छा, ये कहा जाता है कि शादी के बाद, ऐसा हमारा समाज भी ऐसा ही है कि शादी के बाद फिल्मी करियर जो है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, व्यूअर बहुत देखना नहीं चाहता है। तो क्या यामी को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऑफर्स कम आने लगे हैं, या लग रहा है कि नहीं अब तो उड़ने का वक्त है? नहीं, मुझे लगता है मैंने जितना काम पिछले शादी को तो खैर अभी 1.5 साल हुआ है, पर 3 सालों में जितना काम किया उतना विकी डोनर के बाद मुझे नहीं मिला। तो एक वक्त आई एम श्योर ज़रूर था जहाँ पर ये सिर्फ धारणा नहीं थी, पर ये होता भी था। हमने इंटरव्यू सुने हैं बड़ी बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस से, जहाँ पे उन्होंने कहा अरे हम पेड थे किसी के ऑपोजिट, जैसे ही शादी हुई अगले दिन आपको उनकी अब मम्मी का रोल करना है। वो पर वक्त और था, पर आज मुझे लगता है मैं ही नहीं बट जितनी भी एक्ट्रेसेस, चाहे मेरी कंटेम्प्रेरीज हों या सीनियर्स हों, वेदर आपकी पर्सनल लाइफ ये है और आप उसके प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मेन क्या है, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा खुश होंगे कि प्लीज़ शादी, हाँ किसी के जीवन में खुशी हो रही है, शादी हो रही है या बच्चे हो रहे हैं, ये हमारा काम है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। समय मेरे पास इतना ही है, बस आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश जाना चाहती हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती हैं, तो हम फैंस का क्या होगा फिर? नहीं, मुझे लगता है हम दोनों ही काम कर सकते हैं, और इसमें अगेन मैं श्रेय अपनी माता जी को दूंगी, अपनी मम्मी को दूंगी, मम्मी पापा मेरी फैमिली। हिमाचल में एक छोटा सा हमारा घर है जहाँ हमारी शादी भी हुई थी वहीं पर, और हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ नेचुरल फार्मिंग मतलब जो पुराने ज़माने में जो फार्मिंग करते थे, जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड इस तरह की कोई हार्मफुल पदार्थ यूज़ नहीं कर रहे, और हम जो उगाएंगे या जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उसके बारे में बात करेंगे। तो फिल्में भी हो सकती हैं साथ में, और वो काम भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यामी, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, इस मंच पर आप आई, आइडियाज़ ऑफ इंडिया के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच शोभना, थैंक यू यामी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सादगी हमेशा दिलों को छूती है। We wish you all the success in the world. Please stay with us on stage as I invite Rajiv Dubey, Head Media, Dabur India Limited, to present you with a token of our appreciation. It's been such a refreshingly honest and wonderful conversation. Thank you, Yami. A big round of applause, please, ladies and gentlemen, for a beautiful actress whose simplicity is endearing. Thank you, Shobna ji. Thank you very much. Just like there is nothing like Indian movies, there's nothing like an Indian general election as well, isn't it? And we're going to talk about that very, very shortly. But just as the stage is being set up for our next mega session, we should take a moment here to thank all our partners and sponsors. Ladies and gentlemen, Ideas of India is co-presented by Dabur Vedic Tea, co-powered by Dr. Ortho, Gallant Advanced TMT Sarya and Rajesh Masale. Driving partner Maruti Suzuki, technology partner Panasonic, gold partner Senco Gold and Diamonds in partnership with Vico Laboratories, Jungli Rummy, Tata Capital, Go Gas, Clean and Dry, MMRDA and Citco, and our knowledge partner is Sharda University. So we'll just be starting our session on the 2024 general elections. Just give a moment for the stage to be set up for that.
Our guests are here, so I think we have the green signal to go ahead. So, would you all agree that there's nothing like a general election in India? Looking for a show of hands here. Who thinks that there's absolutely nothing like a general election in India? Can we hear a big yes? Okay, couple of yeses. I think people are just observing our guests sitting in. पर ये कोई हैरानी की बात नहीं है दोस्तों that 2024 का जो घमासान होने वाला है उसकी शुरुआत काफ़ी महीनों से ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी सरकार के लिए कोई वास्तविक चुनौती नहीं है क्योंकि जो विपक्ष है वो खंडित है। ऑफ कोर्स जो विपक्षी दल हैं वो सहमत नहीं है इस बात से और भाजपा का सामना करने के लिए एक गठबंधन करने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। For this session of Ideas of India 2023, our focus is on what's going to be an unprecedented political battle, the 2024 general elections. So with a lot of love, please welcome our speakers for this discussion. First up, put your hands together for Priyanka Chaturvedi, Member of Parliament, Shiv Sena, Uddhav Bala Sahab Thackeray. Welcome Priyanka ji. अब स्वागत करना चाहूंगी कविता के, Member of the Legislative Council, Kamareddy and Nizamabad, Bharat Rashtra Samiti. A warm welcome, ma'am. Also, a big welcome to Raghav Chadda, Member of Parliament and National Spokesperson, Aam Aadmi Party. And kindly welcome on stage, Poonam Mahajan, Member of Parliament, the Bharatiya Janata Party. A big welcome to all of you and looking forward to this session. Please welcome on stage the one and only Veer Sanghvi to chair this discussion. Ladies and gentlemen, good evening. This is our debate. As you see, we have three very articulate politicians, and we're going to discuss, does the opposition really have a chance coming up to the next general election, or is it a done deal? I suspect one person on the panel will say it's a done deal, but there are three people here who will disagree. So I'm going to ask them to say, if it's not a done deal, why do you think that? I mean, what possible reason would anyone have to vote for you? So they're going to try and persuade you. We're going to try and make this vaguely formal and not just a TV debate. So of course, everything degenerates into a TV debate by the end. So what we will do is every speaker will speak for 5 minutes at the lectern, will tell us what their point of view is. And after they've all spoken for 5 minutes, then we'll make it a discussion. Before we actually have the debate, I thought I'd get your views before and after. How many of you think the opposition has a chance in the next general election? Put your hands up. Not so bad, huh? I thought we watch us. All right, how many of you think it's a done deal for the BJP? Okay, evenly divided. Either you people are genuinely divided or you're very bored and you're not answering. We'll figure that out. Let's start with the first. Yeah. No, they're not putting their hands up. You know? Let's start with the first thing. Let's start with the assumption that the I'll put you last after the question. Hello and good evening. And I'd like to begin with saying that no, it is not a done deal that the Bharatiya Janata Party government would be coming back to power in 2024. And I have my reasons to say so. Today, the opposition is speaking up for the people of this country. We are talking about the farmers, we are talking about housewives, we are talking about working women, we are talking about cost of living, we are talking about unemployment, we are talking about the youth, we are talking about crony capitalism. And what is the Bharatiya Janata Party talking about? Bharatiya Janata Party is talking about how it keeps adding to its election tools these arsenals which are known as the central agencies. They're talking about how do you make ECI the entirely compromised institution of India? They're talking about ED, how do you make it an extended department of the Bharatiya Janata Party? You're talking about the IT, you're talking about the CBI, and how they have become a toolkit for the Bharatiya Janata Party to keep consolidating their voter base
and at the same time trying to do away with India's opposition altogether. But India's opposition is determined that we are not speaking for ourselves. We are not speaking only about how to come back to power. We are speaking about the entire idea. Now we are speaking at a conference called Ideas of India. The idea of India. What is our idea of India? But he doesn't really practice it. He speaks about Vasudeva Kutumbakam. If you are speaking about Vasudeva Kutumbakam, how can you have differences between those who are strong and those who are weak? How can you have differences on the basis of caste and religious divides? How can you have hatred becoming a tool of consolidating your votes? And if you're talking about my idea of India is what democratic institutions and constitution is about. What did Dr. Baba Sahib Ambedkar strive for? He strove for a country which is equal for all. And we will continue speaking up for it as much as the Bharatiya Janata Party might want to thwart all these institutions, might want to undermine these institutions. And if you look at every election going state now, we are heading towards a scenario where people are going to be questioning the BJP and all the election promises that they had made way back in 2014. And no, whataboutery won't work. No, they cannot say, oh, this is what Congress used to do. Oh, this is what y'all used to do. Because y'all have come back on the promise of changing all that the Congress used to do, and you're committed to make a more vibrant India, a more inclusive India, a more economically empowered India, and you're totally silent about this. So we will continue fighting our fight because we know this is a good fight. And we will continue to speak up for the people of this country and for democratic principles. And considering I'm from the Shiv Sena, now I do not need to even stress I'm from the Uddhav Bala Sahib Thackeray Shiv Sena because people only know Shiv Sena as that of the Thackerays. And as much as you might bring in an ECI to change that status quo, in the minds of the people and in the minds of Maharashtra, we will continue to be the Shiv Sena which speaks for the people of Maharashtra. Thank you so much. And Thank you, Priyanka Chasway. A small miracle, the first politician I know who finished in time without having to be reminded. Okay. Second person giving the opposition case, Raghav Chadda. Can I ask you to speak? Is 2024 a done deal for the BJP? The answer to my mind is no. But before I come to the mathematics of it, permit me to say that today a new brand and a new vocabulary of politics in India is required to challenge the mighty BJP. A new idea of politics, a new messenger of the political vocabulary is required. And I think that is something that the Aam Aadmi Party does certainly bring to the table. Having said that, let me first rewind back to the election of 1977 before we speak more and more about the upcoming 2024 general election. In the year 1977, under the concept, under the formula of one candidate against one candidate of the BJP, the entire society at large, and not just political parties, got together and they defeated the mighty Congress. Post the 1971 India-Pakistan war, liberation of Bangladesh, the goodwill and the popularity of Mrs. Indira Gandhi was at its peak. But then, of course, due to rampant corruption, unemployment, inflation, and an authoritarian regime, that popularity and goodwill melted, and it melted faster than an ice cream on a hot summer day. As a result, the people got together to defeat the mighty Congress. No one had at that point in time thought that Mrs. Gandhi could be defeated. And Mrs. Gandhi was not only defeated at a pan-India level, but she also lost her own constituency, with Sanjay Gandhi also losing his own constituency, and the power of people winning that election. In that election,
the combined opposition got 294 seats. And out of those 294 seats out of 543, almost 200 seats were won by a victory margin of more than 25% of the votes. Not only that, the Congress, the mighty Congress in the year 1977, won only 154 seats. And out of those 154, roughly 115 seats came from the southern part of India. That's Tamil Nadu, Kerala, Andhra, etc. Because the Congress had a substantial presence in that belt. Now let's come to the BJP of 2024. If the opposition were to come together under the banner of one candidate versus one candidate of the BJP, or one election symbol versus one election symbol of the BJP, not only can the BJP be defeated, the BJP can be defeated, and a more crushing defeat can be handed out to the BJP than was handed out to Mrs. Gandhi in the year 1977. It's also because Mrs. Gandhi's Congress may had a strong presence in southern India in the year 77. Today's BJP has no presence in southern India of the 2024. BJP has 0 seats in Tamil Nadu, BJP has 0 seats in Kerala, BJP has 0 seats in Andhra, and I think about 3 or 4 in Telangana. And therefore, I think the mighty BJP can be defeated. Not only this, BJP has lost 9 of its most formidable allies over the last 5 years. With the Shiromani Akali Dal in Punjab dumping the NDA, to Shiv Sena in Maharashtra dumping the NDA, to JDU Nitish Kumar dumping the NDA. I think the BJP stands weakened, and all right-thinking individuals, and not just political parties, I think people at large need to come together to defeat the BJP. But this will only happen if we have 3 things, which I call the 3 M's, the 3 M's that can defeat the BJP. 1, a new message. 2, a new messenger. And 3, a new model of governance. Thank you. Thank you, Raghav. That was a very compelling speech, and I'm sure people are looking for a new messenger, though I note you didn't say who this messenger would be, but I can guess. All right, may I ask Kavita Rao to speak now? Good evening, everyone. Thank you, ABP, for having a very timely discussion and debate on one of the most important subjects, because this is a subject which will affect 140 crores of our Indians, and this will affect the future of India and the image of India internationally. So thank you so much for having a very timely and an apt debate. Now, I've heard my friends Priyanka and Raghav speaking about how BJP can be defeated. I want to once again agree with them, reiterate that not BJP can be defeated, but BJP must be defeated. Why BJP must be defeated? 2 things. We had, as Indians, collectively given power to the current government, believing in them that what Congress could not do in so many years, BJP will come and do it, because BJP had promised multiple things. In the first time, 2014, when we gave them an opportunity with 282 seats, they had promised for a lot of things. One being bringing back the black money, which only increased but never come back. One is 2 crore job every year, which nobody has seen. 3, a proper policies and development model, and stopping the rupee from falling, which has never happened. Well, Indians being Indians, all of us forgave. Mr. Modi, we said, chalo 5 saal क्या और 5 साल ले लीजिए, लेकिन कुछ तो बदलाव लाके दिखाइए. From 282, we reinforced Mr. Modi's strength, BJP's strength. We gave them 303 seats in the next election. But in the next 5 years, again, unfortunately, people gave them 303, but all BJP gave us is 3 black laws, which had ended up being responsible for 750 farmers dying in Singh border. They were anti-farmers, no jobs again, rupee value still falling, zero COVID management, and the list goes on and on.
Now here the point is, if a government gets 10 years of chance and doesn't perform, should we not root them out? That is a fundamental question. Two, we are not asking for them to bring the moon down to the earth. We are just saying, if we can do Mangalyaan at the cheapest price in this world and be proud of it, why can't we give water to every household in this country? In Bombay, the financial capital of this country, we still get only 2 hours of water every single day in Bombay. Whichever friend I talk to, they tell us, 2 घंटे आता है, we don't know कब आता है. Lekin in Hyderabad, within 7 to 8 years, we managed to make sure we gave water 24 hours in every small village of Telangana. If it can happen in Telangana, the same model can be replicated across the nation. And why isn't the current BJP government trying to do that? We're asking for basics, nothing else. Drinking water, irrigation water, jobs, that is all we are asking for. A new state like Telangana, if we can give away 2.5 lakh government jobs in 8 years, why is the central government sitting on 12 lakh vacancies in the government of India, not even giving a single notification? Forget about other notifications. In the premium institutes like IITs, IIMs, 28,000 jobs are vacant today and the government doesn't want to fill up. But we want to become Vishwaguru. How are we going to become Vishwaguru without teaching our students what to do? So these are the fundamental questions: drinking water, irrigation water, jobs. These are the only 3 things that we are asking. In these 3 things, Modi government has failed utterly, so we must root them out of power. And yes, the opposition stands united today. We've multiple times conducted various rallies from BRS party, where Aam Aadmi party was present, where Shiv Sena was present, where various other parties like CPM were present. So today, opposition stands united, and we would like to continue this unity, and we seek the support of the people. Thank you so much. Thank you so much. That was a really powerful speech. Okay, Poonam, you now defend the government against all 3 of these people. But you can have longer than 5 minutes you want. It's just 1 against 3. Thank you very much. I don't think I need 5 minutes. I'll also follow the same rule as though it's 3:1. But I love hearing my friends and colleagues in Parliament talking about the mighty BJP, the mighty BJP, and the mighty BJP. I would like to tell them, you are not the ones who call us mighty BJP. The BJP is mighty BJP because people of India trusted BJP and Honorable Narendra Modi to take idea of India forward. That's why it's mighty BJP. We don't have an arrogance of mighty BJP. We have that strength of mighty BJP. And that BJP is mighty because people of India trusted us in 2014. And as my dear friend Kavita told me, in 2019, with bigger numbers back in power and trusting. You know, idea of India, when we talk about India, the young India, we talk, when we look at world, and India is the bright spot right now. I remember before 2014, the Fragile Five, and now in 2024, when we go for the election in just 10 years, from the Fragile Five before 2014 to the 5th largest economy of the world is India. That's the strength and changes we could see. Before 2014, we were discussing, ये scam है, वो scam है, coal है, ये है, plane है, जीजा जी है, नाना जी है, ताया जी है. But from 2014 to 2024, we just saw a clean government which says and does what is being told. Promises are not to be said, but they have to be fulfilled. And when you see BJP's agenda and BJP's promises, whatever you look forward to, I was just telling Mr. Sanghvi that everybody is talking about Congress and its history, but sadly, supposedly the biggest opposition party in Parliament is not present here. So I don't know how seriously even media is taking Congress right now. But the way we look forward to that, in 2014 to 2024, the idea was, I still remember one old now history came out from Gaurav ji, so I just realized that one biggest leader of Congress had said कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं. लेकिन I'm proud to say that direct benefit transfer in India, the kind of leapfrog we have seen in that 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो direct benefit transfer से 1 रुपया जनता के हाथ में पहुंचता है. That strength and that idea of India we are talking about.
in 2024, when we're looking forward to elections, what promises were made? Today you talk about from fragile 5 to the strength of 5th largest economy. When we talk about around the world, India is the bright spot, and around the world, when you look at India, India is growing higher with 6%, and when you see recession all around the world, you see the bright spot of India because under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Everybody is saying the mighty BJP, हम सब साथ में मिलके लड़ेंगे और करेंगे. Now let's not get into their calculation of साथ में लड़ना और ये करना. We always see it, the circus on TV. But very importantly, to my dear friends, I really want to tell them, मोदी नहीं तो और कौन? पहले आप तय कर लीजिए. उसको तय करने के लिए आपके पास भी 1 साल है. And I'm very happy to you to call mighty BJP. You are also mighty in some states and not mighty in some states. You actually very heftily lost in a lot of states. So when you talk about idea of India, I think you should also see how BJP has worked hard for past 40 years to take the idea of India forward. That's why the trust of people is in BJP. I don't want to get into a negative politics. Positively, when you look at youngsters, someone talked about jobs, someone talked about how we are taking things forward. I would like to say that India is the bright spot, which is taking, we have 100, unicorns in this country. And in past 8 years, we have the national education policy, which was only planned and discussed, but it's right now here for people to take the education and understanding forward. The India's youth, the Gen Z now, who's now seeing India in a different manner, is believing the idea of India. They believe that India is the bright spot, and my dream is connected to India's dream because there's one mighty leader by the support of mighty India is Prime Minister Narendra Modi. And that's how we are taking the idea of India forward. I don't want to say certain things about Mumbai, but I want to request, since yesterday I've been seeing leaders from different parties, Honorable Chief Minister of Delhi also had come, and my friend Priyanka ji is sitting here, and my friend Kavita ji is sitting here. It's not Bombay, and I think part of Shiv Sena should say it's Mumbai, and we have made this as Mumbai, and we call ourselves Mumbaikar. So first, idea of opposition should get together, what the emotions of every party and their ideology is together, then we'll look forward to, if not Modi, who? Until that time, I have full faith in people of India to not to stop the idea, जो बुलेट ट्रेन के विचार लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. वंदे भारत के नाम से हम हर गांवों को और शहरों को जोड़ रहे हैं. छोटे छोटे एयरपोर्ट बना के लोगों तक पहुंच रहे हैं. ये आइडिया ऑफ इंडिया, लोगों के मोबाइल फ़ोन तक अपना पैसा आ रहा है. विधवा हो, युवा हो, हर किसी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उसकी ताकत उसको सीधे मिल रही है. वी वॉन्ट टू टेक दैट करप्शन फ्री आइडिया ऑफ इंडिया फॉरवर्ड, रीच टू द लास्ट माइल. That's the idea I want to take forward, and let's see what happens in 2024. I wish all my friends all the very best. Thank you very much. Thank you, Poonam. I had a feeling that 1 against 3 would not be an unequal fight because you were more than capable, and I was right. Congratulations. Okay, so now I ask questions. Shall we do this in the order in which they spoke? Priyanka Chaturvedi. The BJP's attack is that when you talk about the opposition, you talk about opposition unity. None of you people can really get along. And it gets a little more pointed. They say you people can't even get along in your own party. Right under the nose of your leader, the chief minister, the majority of his MLAs went through the back door and he had no idea. So, I mean, how will you unite when you can't even manage your own party? No, 8 years ago, nobody had the idea that a lot of promises were being made with regards to employment, with regards to zero corruption, with regards to doubling of farmer income, with regards to youth getting jobs, that they would see a phase where you are seeing unemployment at its highest. When you're seeing corruption in terms of crony capitalism, she was saying there's no Jijaji, no Dadaji, no Babaji, Bhabiji, Mamiji, whatever. Now you have Adaniji. So there is corruption. So what, 8 years ago, we were promised stronger institutions. 8 years ago, we were promised that Enforcement Directorate will do its job, Income Tax will do its job, CBI won't be a caged parrot anymore. What are we seeing now? CBI is not a caged parrot. It's a comatose parrot. It's on its deathbed. And we're all wanting to revive it. The opposition is talking about revival. Opposition is talking about the promises that they had made, and they have kept these unkept promises. And we have to talk about them. So now coming to my party. Yes, we have seen an exodus of people who have left us.
Why did they leave us? Now let's go to the extended department of Bharatiya Janata Party, which was put to work to gun after the opposition. Everybody was shown their files, and what happened to, let's say, the Pratap Sarnayaks and Eknath Shindes whose files were open? What happened to that? What's the movement? And the very same ED has now got a stamp of approval, taking away 40 MLAs and for making a government fall. You're seeing the, entirely compromised institution being wheeled in to give it a stamp of approval. And this is not about Shiv Sena anymore. This can happen to Aam Aadmi Party tomorrow, it can happen to BRS tomorrow, it can happen to any other party tomorrow. I would say if this is going to be the model of how ECI should work, everyone who's interested in contesting an election should not come from any political party. Just allot them a symbol, and they can be auctioned at a political party's behest, and whoever has the highest amount of money to bid for these MLAs, give it to them. Let's not have the concept of political parties. What is the 10th schedule for if you're going to be misreading the 10th schedule? So those are all, debates that we can have on constitutional morality and democratic principles. It's happened to us today. It could happen to any other party tomorrow if Bharatiya Janata Party continues its agenda of making them all a part of the electioneering process. They are the election toolkit for the BJP, and that is the unfortunate part. And it is not the Shiv Sena or political parties being harmed. It is our idea of India which is being harmed, it is our democracy which is being harmed, and it is our constitution which is getting compromised. That is all I'd like to say here. Strong stuff. Raghav, she's talked about the BJP targeting the opposition, using corruption cases. You've seen something like that in Delhi with the liquor scam. There's talk that Manish Sisodia may be arrested. Your leader, in fact, said yesterday that he'd heard rumors to that effect. Do you agree that the BJP, rather than fighting you guys on the electoral battlefield alone or on a political battlefield, is now relying on framing you guys? You have to be a coward to use agencies and state instrumentalities to attack your political opponents. I would say that BJP will be well advised to attack opposition parties and particularly my political party in the electoral battlefield by contesting an election against us. But if they choose to unleash the instruments of the state on my party and my party colleagues, it only goes to show that how frightened the BJP is, that mandates are being given to the Enforcement Directorate, the CBI, the income tax, so on and so forth, to just find, and if not find, fabricate evidence against the Aam Aadmi Party and put leaders in jail. But permit me to, say this, that Aam Aadmi Party and leaders of the Aam Aadmi Party are not scared of these agencies or going to jail. We are fighting for the country. This is a political party that was born on the streets of this country, fighting a corrupt regime and a change in the dispensation. So therefore, we are all fighters, we're born fighters, and we're willing to take on these state instruments. However, I think the issues today that matter to the people of India are not just how the opposition will get together or whether instruments of the state like ED, CBI, etc. have been unleashed. I think the issues that matter to the common man that is sitting in this room or watching this show on their television screens are issues of unemployment, which is at a 45-year high under the leadership of Prime Minister Modi and the BJP. Issues of inflation that have touched a 30-year high, a 3-decadal high under the leadership of Prime Minister Modi and the BJP. The issue of devaluation of rupee, where rupee has today crossed 80 in front of the dollar. The issues of how corporate India is being benefited by giving them tax waivers and loan write-offs, but in turn, neither jobs are being created, nor the goods and commodities are becoming cheaper, nor private investment is coming. And above all, the colleague from the BJP mentioned about startups and unicorns in her opening remarks. I would like to ask her, does she know that less than 10% of India's startups today see their 5th anniversary? This is the plight of Startup India today, which the BJP tom-toms at the national stage. These are the core issues that must be discussed at a panel like this. And permit me to, in conclusion, say this, that the BJP
when it came in power in 2014 and throughout their journey up till 2022, kept on saying, we will deliver in the year 2022, wait for 2022. What will we do in 2022? One, we will double the farmers' income. Has the income of farmers doubled? The Standing Committee on Agriculture in Parliament says that the income levels of Indian farmers has reduced by a whopping 30% in more than 4 states in India. Number 2, they said that bullet trains will start plying on rail tracks come 2022. How many bullet trains have you, Veerji, traveled since the year 2022? Third, they said every Indian and every Indian family in this country will get a house, a pakka makan. How many Indians have got a pakka houses? Have all Indians got pakka houses? They went on to say that India will become a 5 trillion economy by the year 2022. As a chartered accountant and as a student of economics, permit me to say that at the current growth rate, it will take 7 more years for India to become a 5 trillion economy. These were the promises that were made, and today, when you stand up to the BJP and ask them, what about your promises of 2022? They say, wait for 2047 when India will complete 100 years of independence. That is when we'll deliver. Today, we are living in the day and age of Amrit Kal, so therefore you can't ask us questions. I think these are at the heart of every Indian and every Indian household. Unemployment, price rise, corruption, waivers to corporates, joblessness, the depreciation of the Indian rupee. These are the issues. And of course, the plight of the Indian farmer, where the NCRB data says that more than 30 farmers in India commit suicide on a daily basis, and the debt of an Indian farmer has increased by a whopping 54% under the BJP's administration since the year 2014. These are the core issues that are at the heart of every Indian today, and that must be answered at a panel like this, Mr. Tan. Thank you, Raghav. Your turn. The Prime Minister has said, and I think many people probably agree, that the BJP, whatever its faults, is different from many other political parties in India, which he says are, and I quote, family parties. And he says they're beset by corruption scandals. And what he's offering is an alternative to those family parties and to that corruption. I think you're probably one of the parties he has in mind. So how do you respond? First of all, as an extension to what Raghav and Priyanka was saying, I would like to say, British government's policy was divide and rule. Today, BJP and Modi government's rule is raid and rule. So wherever you have to go, rule from the back doors, you raid, you divide that party and you rule. That is the policy right now of the BJP government. Second, when Mr. Modi very clearly said, na khaunga, na kane dunga, parivarvad, nepotism, corruption, what is he doing in the case of Mr. Adani? Adani ji आपके extended परिवार से है, आपके दोस्त है, क्या problem है? एक महीने के पीछे, just in January 25th to today February 25th, a company, Indian listed company, loses 12 lakh crores. LIC loses 80,000 crores. And Honorable Prime Minister is saying nothing. We ask for a joint parliamentary committee, we fight in the parliament, he says nothing. And if Mr. Modi is clean, he should at least now come out and say, put up a parliamentary committee. If you yourself are not clean, Mr. Modi, how are you even accusing the rest of the parties for being corrupt? That's a simple question. If you're not shielding Mr. Adani, why don't you just do the probe? They're doing a probe on me, they're doing a probe on 100 other people from the opposition parties. Why is Mr. Adani not being probed? Why is ED, SEBI, etc. not proactive in probing Mr. Adani? That is a simple question today. That in turn proves that Mr. Modi and BJP is not as clean as they say they are. That is precisely why we believe they will be voted out for this time. 2, and since this is a majorly women-dominated panel, I would like to request my dear friend Poonam, that Poonam, it's been 10 years, women reservation bill is pending. That was one of the poll promises in 2014 and also 2019 of Bharatiya Janata Party. Narendra Modi ji has said, we will pass the women reservation bill, जो अभी तक नहीं आया है. We have one more session to go.
I earnestly request Honorable Prime Minister and my very dear friend Poonam ji to get it passed, so women political representation in all the houses will be more. Two, from the time in 1830s, when Indian census has started, not even during the world wars, World War I, World War II, census never stopped. But in Modi regime, from 2014 to 2022, no census of India. We don't know how many people are there in India now. My demand today is census should happen immediately, and OBC census should definitely happen immediately. Otherwise, we cannot rule this country, we cannot allocate funds in a proper manner. This is our second demand. So we can go on and on and on about what Mr. Modi has not done and why he should be doing it, just by blaming the regional parties, saying you are from a parivar. My parivar, my entire parivar was on streets fighting for the state of Telangana. We came into politics, we came into people when we did not even have an idea that a state would be formed and then we will come to power, then you become MLA, MP. No, nothing. We were just fighting on the streets, rubbing shoulder to shoulder with any common man in Telangana today, and we automatically translated into a political party and became into power. So all parivars are not same. All parivars, if Modi ji wants to say parivarvad, no. We are in a parivar where we are facing very clearly and very boldly the agencies. Why isn't your parivar member, Mr. Adani, facing the agencies? That is a simple question. Okay, Poonam, let me just, they've said so many things. Let me summarize the main points of attack. One, I think it came from Priyanka, is that she believes in a kind of India that is no longer in existence. The other, and that's, I think, a point that's been made by everybody, is that you're not really content fighting elections. You get your opponents framed, you have them raided, you keep telling people they're crooks. Every time there's any chance of any opposition coming up to you, the ED is dispatched faithfully to raid them and to malign them. That's, I think, allegation 2. Allegation 3 is, yes, there's big talk about what you've achieved, but as speaker after speaker has said, and Raghav particularly, those points are not accurate. This is all hype. This is a jumla. You haven't actually done anything for the economy. The promises have not been kept. You can take as long as you want because there are big charges. No, I won't take too much. I should have, I didn't know this kind of show is happening. I would have gotten my pen and paper also to write all the questions down. But I'm very happy to answer as many as I can do. First of all, Priyanka ji has placed a very rightly said she wants the idea of India. I think the idea of India, in my speech also I said, that every Indian gets his due, what is promised directly. And that's what idea of India is. When she was talking about 10th schedule, party, infighting, ye, wo, fala, dhimka, I think some of the matters are sub judice. It's better I do not speak on it because I'm not a lawyer. And as I'm not a CA, but I can give some answers to that also, as being a little senior colleague in Parliament. But very importantly, what is happening with these state parties? It just, I heard a word tom-tom. I'm creating a tom-tom. BJP is doing it. Of course, I am BJP and BJP is me. But it's not about creating a tom-tom. It's just telling people what we have done. Now, all my dear friends sitting here are telling about idea of India, spoke about how BJP is wrong and this mighty BJP has to be defeated. एक ने अपने स्टेट में क्या अच्छा काम हो रहा है वो अब तक नहीं बताया कि हमने किया तो आप ये करके दिखाओ. You think about it, I mean, it's not like I'm putting some allegation on you, but at least you should have said, Poonam, I have done certain things in Delhi. Why didn't you do this in Delhi, in other states? If Maharashtra has done 2.5 years when Uddhav ji's Sena was working, you have done so much, but I'm just trying, I'm not here having any problem with that. But you should have actually come up with an idea what you have done and what you have not done. But it is all about, I don't like to use such words, but let's now grow up and not to be crybabies of questioning a party who's elected by people of India. Everybody sitting here is voted by people, their party, her party, my party, Kavita ji's party. So let's get into a more positive debate that this is what we want as idea of India. That's point number 1. Now what has happened in Shiv Sena is
what Election Commission has done. We have seen a lot discussion is going on, but always questioning every state of agencies. I think somewhere then you can fight it on the street, you can fight it more logically on it, is what the expectation I will have it. Third, someone is someone's extended family. I think on the Prime Minister's clear record, I think we should also think when we talk about Prime Minister on what level and how do we connect Prime Minister to certain people. And when the Congress leader who's done such a big Bharat Jodo all over India, I realized he was always in his speech, I was in the parliament using Adani, Adani, Adani. So I felt he had no idea what he was talking about. I don't know what he understands about financials. Actually, Gauravji can help him out. But in Marathi, Adani means, यहाँ पे राजीव जी बैठे हैं, अडानी मीन्स जो अनपढ़ है. तो जो आपको लड़ना है पढ़ के लड़िए और पॉइंट लेके आके लड़िए. This is what I wanted to say on this topic. Raghav ji said about Startup India and Stand Up India. I'm not even talking about scheme. I'm talking about giving a base to the startups. India is the only country where not 10%, 15 to 20% startups do see their 5th anniversary, and we do work on it. These are the numbers have been placed all over the world. That's why I'm trying to tell you. I'm just throwing numbers at it. Third, what you were asking about idea of India? No, I think you've handled that. That was Priyanka's first question. Respectfully, You're okay yes. The question you haven't handled is that these are all jumlas, that the actual statistics don't live up to these promises. Sir, I am not even coming with Punjab, Maharashtra 2.5 years Jumla numbers. I'm not talking about what Delhi has done. I'm not talking about my friend Telangana has done. Because all of us are, again, elected by people of this country. Again, I'm saying, when we talk about a certain kind of positive politics, I also want to hear what you have done and what you expect a particular party to do. That's what I'm trying to take this discourse and narrative of India towards that corner. And any other ways, if I want to talk about women reservation bill, I think I also support that, Kavita ji. We have 3.5 sessions still left, and I would like to take that idea forward and put it forward, that women's reservation bill. And in coming time, of course, with the new parliament, will we have more representation for parliamentarians, which is required for this 140 crore population of India. And I think we will be very positive on that. This is what I want to take it forward. All right, I have all the, Raghav, at the end of our time, I let you rebut. I have to let everybody else rebut, because everybody else, I think, wants to rebut it. But I actually enjoyed the debate because we had what? Outstanding parliamentarians speaking on issues, not resorting to personal abuse, not attacking each other, not interrupting. It's up to you to decide who convinced you or who didn't convince you. So let's do the same vote we did at the beginning. How many of you think the opposition has a chance? A little bit more? Some more, no? The number has increased. The number has increased, yes. How many of you think that this is all talk? At the end of the day, the election is a done deal for the BJP? Okay. Pretty much the same number as last time. So this is the debate. This bears no relation to reality. This is a very unrepresentative audience, what Mr. Deshmukh here would call a self-selecting sample. So, Mr. Samit, this is a very good representation of the vote share also, where roughly 37% are with BJP and 63 are with the That's the one way of opposition. looking at it. I just forgot to get my party karyakartas because I did not believe in that idea of India for clapping. Because I know all of them from Mumbai who comes from, supports which ideology, and they are my very good friends. Very good friends. Okay, all right. I think we'll all agree. I think we all agree that this doesn't mean anything in terms of the national vote, but it does mean something in terms of the debate. If these people have been able to change some minds, then the debate has been a success. But I have to say that whatever views I had, when I heard Poonam speak, I was just so impressed by what a great job she did fighting 3 different people. Very much, I think, the speaker of the debate. Thank you very much. We're already 5 minutes over. Thank you so much, and thank you to all our participants. Thank you. Thank you very much indeed. Requesting you all to kindly remain on stage for just a minute as I invite on stage Indrajit Rai, Input Editor, ABP News, to kindly present a memento
on behalf of the network and show our appreciation for all our guests. Ladies and gentlemen, this is certainly just a curtain raiser to what we can expect ahead of the 2024 elections. Really appreciate our guests joining us today. A big round of applause from Aam Aadmi Party's Raghav Chadha. Priyanka Chaturvedi, ladies and gentlemen. Thank you also to Poonam Mahajan for bravely taking on the opposition on the stage today. And thank you very much, Kavita ji, for your powerful words. एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर as we say goodbye to these wonderful panelists. What a lovely debate. Thank you, Mr. Sangvi, once again. Well, our final session of the day is just about to begin as well. Thank you very much. Thank you, Mr. Sangvi. Just take a minute or two for the room to settle down before we begin a rather delicious last session. आप सभी से निवेदन है to kindly take to your seats. एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी to kindly take your seats. Please do take your seats as we'd like to begin the next session. कुर्सी पर बैठ जाइए प्लीज आपसे निवेदन है we'd like to continue with the final session of the evening. Please take your seats. So जैसा मैं आपको कह रही थी, there is one power-packed session yet to come and it's a session that will get you in the mood for dinner. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस सेशन के लिए रुकें. But of course, you know, ladies and gentlemen, कि ये जो 2 दिन रहे हैं Ideas of India Summit के, they have passed very, very quickly. We've had a chance to learn from 60 thought leaders
and have a better idea of not just the India of today, but also the India of tomorrow. I'd now like to request on stage Avinash Pandey to address us with a vote of thanks, after which we have a beautiful session lined up for you with some delicious looking dishes as well, which will get you ready for dinner. But पहले स्वागत करना चाहूँगी अविनाश जी का for the vote of thanks. Please join us on stage, Mr. Pandey. Well, you know, at this point of time in the evening, and particularly when you are about to listen to Vikas Khanna, the only thing one should do is to shut up, right? But you know, what a 2 day, those of you who are attending for last 2 days, show me your hand if you enjoyed the evening. Last 2 days. So, what we did, what an amazing 2 days, calculated chaos, creating characters, not IAS officers. The violent do most violence to themselves. Who is a citizen, a refugee, an exile, or a migrant? Who is an Indian? What is the historical perspective to climate change? Telling original stories. Ladies and gentlemen, we have had 2 amazing days of listening to disruptions, innovators, movie makers, politicians, visionaries, and digital creators. We have had many ideas of India and ideas of India. My mind is full and my heart is overflowing. I thank you all for being with me on this amazing journey where we have traveled many eras, many time zones, and many lives. When we began Ideas of India last year, frankly, I had no idea that it would be such an adventure. We are so glad that we took a plunge. And thank you, the team on my right, who has actually put this together. And they work, I can tell you, 6 to 8 months in advance before the next event. I want to thank all our sponsors who believed in us, and they came overwhelmingly this year. All our supporters, the team behind it, the Ideas of India, and all of you who watched and listened to us. I hope we made you laugh, cry, think, and feel. See you again next year, same time. I promise you it will be even bigger and better. Thank you. Thank you so much, Mr. Pandey. Of course, this has become a flagship summit now, and this is going to be an annual calendar event that we will all look forward to. And so, ladies and gentlemen, it's time for the final session of Ideas of India 2023, and it couldn't end on a more delicious note. हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि भारत किस तरह से साथ में जुड़ रहा है, and you know how people are connecting, and the one thing that connects all of us besides our sport and our movies is our food. हमारे जो अगले मेहमान हैं उन्होंने भारतीय खाने को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है. He's a culinary wizard who has an infectious passion for food. He has worked very, very hard, incredibly hard, to be recognized as a top global chef. He is also a prolific author, filmmaker, and very importantly, he's a humanitarian. He manages to do all of this with a very charming smile as well. So please put your hands together for the dashing, and if I may say so, yummy Vikas Khanna. Please welcome him on stage. और उनके साथ स्वागत करना चाहूंगी चेतन भगत का. Good evening, welcome. वैसे खाने का टाइम हो गया, पर मेरे पास खाना बनाने वाला है. विकास, वेलकम. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. सुना मास्टर शेफ का फाइनल शूट करके आ रहे हो? जी, मास्टर शेफ का फाइनल चल रहा है. हाँ, चल रहा है. अच्छा, मैंने देखा, मैं आप पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने कभी किसी शेफ का ऐसे नहीं देखा. पीपल मैगजीन की एक वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मेन अलाइव आते हैं, नॉट सेक्सिएस्ट कुक्स अलाइव, ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती.
सेक्सिएस्ट मैन अलाइव में आप थे। मैं मैन हूँ, मैं अलाइव हूँ, पर सेक्सिएस्ट में नहीं आया। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब खाना बनाता हुआ आदमी इतना सेक्सी। I don't. It just came as something very different to us at that time. I think it was also Chef Gordon Ramsay. I was on his show, and he kept saying, you know, that how come you are like this? You know, it's like itna patla, itna. So like, you know, he was complimenting. So I think that has an infectious effect on people. I don't know what it was. मैं ही बना रहा हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा. It was a unique combination of things, I feel, because Indian food was at the cusp of being recognized as a mainstream cuisine in the US in so many ways, and I feel that they were looking for inclusivity. I feel सर इंडियन फूड पसंद है इसका मतलब ये थोड़ा है कि शेफ को सेक्सीएस्ट मैन अलाइव बोल दिया, पर वो तो आप हो गए. नहीं, मैं आई मीन आई वॉज गोइंग थ्रू योर स्टोरी. ये तो खैर बहुत बाद में हुआ है, और आपकी मैं बहुत लोग आपको जानते हैं, शायद लोग आपकी बैकग्राउंड नहीं जानते आपका, विच मेक्स योर जर्नी एंड मेक्स योर अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा इनक्रेडिबल. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. आपका बचपन अमृतसर, जिसे अमृतसर बोला जाता है. अमृतसर, हाँ. तो वहाँ क्या था, कैसा था? वॉज इट लाइक वर यू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, पुअर फैमिली? व्हाट वॉज इट लाइक? कैसे पहली कुकिंग शुरू की? पहली नौकरी क्या थी? ज़रा थोड़ा लोगों को बताइए जिनको नहीं पता. पता है जब हम ग्रो कर रहे थे सभी पुअर थे. अच्छा, राइट? किसी के बड़े घर थे पर सब पुअर ही थे. आई लाइक देयर वाज अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमी एट दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s ग्रोइंग अप. देयर वाज अ वेरी डिफरेंट सेंस ऑफ कि किसी ने कलर टीवी लिया तो सारी दुनिया की दुनिया उनके घर जाके बैठ बस ही गई. Like, you know, we come from that culture. Abhi to it's like very difficult to talk about those things because India has everything in abundance. But what we've lost, what we've bargained, is something totally different. We've bargained for nuclear loneliness. That's what I call. And my heritage comes from that richness of, even if you were not rich, there was so much of love at home. खाना पूरा हो के ना हो, प्यार बहुत था. कौन कौन था? दादी थे, दादाजी थे, मम्मा पापा, मेरी छोटी बहन जो मेरी बेटी की तरह थी, and my father and my brother, elder brother. And your nani was there? नानी was, of course, जैसे होता टिपिकल नानी का घर डिफरेंट है, पर मेरे को दादी ने सिखाया खाना. And then I started very early. At 16, because I couldn't study, problem थी मेरी, mental problem थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था. I couldn't have attention for anything. तो फिर सबने कहा चलो खाना बनाना चाहता है बना ले, इसका तो कुछ होना नहीं है. तो वो भी होता है ना फैमिली में, आपके साथ नहीं होगा ना, पढ़े लिखे बच्चे हो आप. But I feel that there was a very different energy at that time growing up in India. तो 16 साल में आपको कहा कि चल खाना बना सकते, क्या क्या डिशेस थी? तो I was very good in तंदूर, which is very rare thing. तंदूर बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि जो अमृतसर के जो हैं उनको पता है कि मकबूल रोड पे तंदूर का एक दुकान है. They used to think that I'm crazy, right? बच्चा था, बिल्कुल पतला सा, हड्डियाँ. And I used to put तंदूर very well. And फिर लोग मुझे पार्टियों में बुलाते थे तो बीजी बड़ा encourage करते थे, क्या बात है, गोल्ड रोटी बनाता है तो हीरो है. मतलब that was my parameter. And I feel that Golden Temple really helped me understand food on a much different scale and magnitude. I used to feel कि सिर्फ दुनिया में एक कला है जिसमें सब अमीर गरीब सामने बैठते हैं, सबको झुकना पड़ता है माँ अन्नपूर्णा के सामने. And I felt that that is something in my childhood, it had a very deep impact. And one of your first, you did many छोटे jobs, but one of your first businesses was the kitty party business. Yeah. So talk about that. क्या था, क्या concept था, क्या खोला, कैसे था? घर के पीछे ही था किटी पार्टी हॉल. जैसे घर के होता है, घर है तो पीछे गार्डन नहीं है तो उसमें दीवार तोड़ के बना दिया. तो पापा ने कहा ठीक है तो इसमें किटी पार्टी हाउस बना दे, बट यू नीड कैपिटल टू स्टार्ट दैट, राइट? सो 12,000 रुपये पापा ने कहा खर्चा चाहिए, कुर्सियाँ, टेबलें, तंदूर और किचन का थोड़ा बहुत बर्तन पतीले वगैरह. तो वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यू नो, आई विल बी ऑनेस्ट. एंड फिर आई यूज्ड टू, मेरी दादी और मैं और मम्मा, वी यूज्ड टू गिव, जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए खाना लेके जाते थे हम लोग. तो वहाँ पे प्रिंसिपल से बात की तो मैं भी बड़ा, आई वॉज ऑलवेज वेरी ओवर टॉकेटिव. तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमको स्वेटर चाहिए सर्दियों के लिए. तो मैंने कहा हम बना सकते हैं. आई लर्न हाउ टू नेट. आई मेड 700 स्वेटर्स लाइक पर्सनली 16 ईयर्स old. अब मुझे कोई शर्म नहीं है. लोग कहते हैं ये क्या काम था. मैं कहा हिम्मत से कमाए पैसे, तभी उनकी जाग लगी. आई डोंट नो इफ
जाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या, जो भी बोलते हैं, जाग होती है मतलब दही जाग के बिना नहीं जमता. तो माई ग्रैंड मदर सेज ये पैसा नहीं है, जाग आई है घर में. So I hope ये बरकत हमेशा रहे. So that I made 12,000 rupees when I was 16 to open that banquet with my mom, and I did terribly bad in business. कैसे? Why bad? What happened? बीजी कहते थे खाने के पैसे लेने नहीं चाहिए. जो आए हैं घर में, बीजी को लगता था घर ही है ये हमारा. बीजी means नानी. For those who don't know. तो बीजी को लगता था कि ये हमारा घर ही है. इन पैसे पागल है, पैसे ले रहे हैं. तो मैं कहता था ठीक है नहीं लेता. तो like you know it was like Papa used to say it should be called Lawrence Garden फाउंडेशन और चैरिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे देके नहीं जाता आप दोनों को. अब बड़े खुश होती हो जब पार्टी आती है. सो आई थिंक दैट बिकेम, पीपल फील दैट दैट वाज लाइक. क्या बनाते थे आप? 6 चीज़ें. 6 चीज़ें. भटूरे छोले, पनीर पकौड़ा, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन जैसे होता है, और सामने कुलचे, और साथ में जो मीठे खट्टे छोले होते हैं वो उसके आलू होते हैं वो. आई डिडंट नो हाउ टू मेक एनीथिंग एल्स. मुझे भी आज तक यही चीज़ें बेस्ट लगती है. वैसे ये बेस्ट टॉप हिट्स हैं ये, मे बी फॉर पंजाबीज. एक्चुअली आपने कभी सोचा पंजाबी फूड इतना इंडिया में कैसे पॉपुलर है? आई एम ऑल्सो पंजाबी बाय द वे, सो अलाउ मी दिस मोमेंट. बट बाकी भी हमारे स्टेट्स के कुजीन है, पंजाबी खाना आपको हर जगह बहुत चलता है. इंटरनेशनली के इंडिया में? इंडिया में तो डेफिनेटली, इंटरनेशनल भी आपने चला दिया. बिकॉज पहले इमिग्रेंट्स जो थे बाहर जाने वाले, वो लॉट ऑफ पंजाबीज वेंट आउट टू यूके. तो यूके में क्या हुआ कि टैक्सी चलाई, काम किया, फिर रेस्टोरेंट खोल लिया. वही दाल मखनी, पनीर, पालक पनीर, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, नान, रोटी, गार्लिक नान, खीर, गुलाब जामुन, रसमलाई, वही मेन्यू है स्टैंडर्ड. सो मुझे भूख लग रही है, आप बोल रहे हो ना. पर एनीवे, हाँ, यस. सारे कह रहे हैं बस करते खाने का बताना. बट इट वाज अ फैक्ट दैट आई हैड लर्नड अ फ्यू डिशेस. दी 6 डिशेज, ये 6 डिशेज आप रोज बनाते थे. किटी पार्टी, लॉरेंस गार्डन नाम में लोग आते थे, वो वेन्यू हायर कर सकते थे. 10 रुपए के खाती थी आंटी अनलिमिटेड भटूरे छोले. एंड इफ यू हैव पंजाबी रिलेटिव्स, यू नो दे कैन रियली ईट. और होता था उसमें लिमिटेड. पापा कहते लिमिट लगा दो, तो आंटी कहते नहीं लिमिट नहीं. इसलिए जब बुक करने आते थे कहा था जितना मर्जी खाना. तो डंडे पड़ते थे मेरे पापा से कि क्या कर रहा है ये बिजनेस. बट आंटी कितने भटूरे खा जाते थे? सच बोल सकता हूँ. हाँ हाँ, तो मतलब आंटियाँ क्या करती थी, खाती 7-8 थी, 6-7 खा लेती थी, और लिफाफे लेके आती थी, पैक करा के ले आती थी, और फिर बोलती थी मेरी बेटी जो है तो बच्चा है, इसके पैसे मत ले. मैं क्या आंटी 10 साल में इतनी बड़ी हो गई है, कुछ तो दो इसके पैसे. आई यूज्ड टू बार्गेन लाइक दैट, लाइक यू नो, अगर नजर ना लगा हमारे बच्चों को, बच्चे बड़े हो गए, खाने पीने दे उनको, तेरा क्या जाता है. एंड आई यूज्ड टू से ओके क्या जाता है. सो दैट 10 रुपी पर पर्सन अनलिमिटेड भटूरे छोले. आई कैन गेस इट्स नॉट वायबल. It was viable because I got my college admission because of that. अच्छा, कैसे? हाँ, वो भी. पर you first got rejected which college? and उन्होंने पहले आपको कहा कि नहीं यार अंग्रेजी नहीं बोलता, कुछ ऐसा? What? तो जब आप, I don't know if you know this, that छोटे शहर के बच्चों के ना एक बड़ी, there's a very strong vulnerability, एक fragility होती है उनकी. वो समझते नहीं है लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. एक्सेंट का मेरा हो, कुछ भी हो. तो मैं मणिपाल में एडमिशन होनी थी, केटरिंग स्कूल, केटरिंग जहाँ पे कुकिंग जहाँ से खाते हैं. तो मणिपाल इज़ डिफरेंट दैन मणिपुर. ये भी नहीं पता था जब पहुँच गया वहाँ पे. तो वहाँ पे प्रिंसिपल मुझे पूछ रहा है कि तू क्या करता है. मैं क्या, मैं आंटियाँ बड़ा तंग करती हैं, मेरे को पैसे नहीं देती, जैसे अभी रो रहा था, थोड़ी देर पहले रो रहा था. सो ये सेड अच्छा फिर क्या क्या बनाता है. तो आई टोल्ड द डिशेज एंड ये सेड बच्चे जा, जब तेरे को खाना बनाना आ जाएगा तब वापस आना. सो इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. ऐसा मुझे पता था आप शुरू से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बट क्या होता है कि आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती व्हेन यू कम फ्रॉम स्मॉल टाउन. तो मैंने कहा ठीक है मजाक उड़ा रहे हो, आप सब लोग हंस रहे हो, बट आप फिक्र ना करना, एक दिन मैं एसी होटल खोल के दिखाऊंगा. सो फॉर अस एसी इज़ अ वेरी बिग डील, राइट? मोस्ट ऑफ द ढाबाज डोंट हैव एसीज. तो एसी होटल ही बोलते थे. तो आई एम लाइक, बट देन ही सेड यू नो देयर समथिंग अबाउट हिम कि सब लोग बच्चे आ रहे हैं फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड्स, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई.